Hello, 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 hello. I'm audible, sir? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कैमरा आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके। पीछे आ रहा, बैकग्राउंड आ रहा है। ये अच्छा, थोड़ा सा फुल स्क्रीन देखें। थोड़ा सा रुक जाओ। बैकग्राउंड नो, नहीं आ रहा बैकग्राउंड। जस्ट फीडबैक देता रहो, फिर मैं अपनी हरकतें शुरू करता हूँ। रुक जाओ। अभी नहीं आया? आ गया? आना चाहिए अब। ओके, गया ना? ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द विराट महाचैंटिंग सेशन। और आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, और जिसमें सर 19 सब्जेक्ट खत्म होने वाले सिर्फ 6 घंटे के लिए। इसीलिए अभी से दिमाग को प्रिपेयर कर लो। और मेरे को पता है यार, इतनी मेहनत कर रखी है, इतना स्टैमिना बना हुआ है कि अब तो बस अब की बार 200 पार। सो आर वी रेडी सर? और आज सबसे खुशी की बात है कि दो मेरे बड़े भाई यहाँ पे आए हुए हैं जो एफएमजी हैं अपने, और इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है। सो आज ये भी हमारे विराट सेशन के अंदर जो है अपना धमाका डालने के लिए आए हुए हैं। सो वी विल वेलकम मेरे एक बड़े भाई जो है डॉक्टर दीपक अंजाना। हेलो गाइस। हेलो गाइस, डॉक्टर दीपक अंजाना इज हियर। एंड सेकंड मेरे भाई जो है बाबा खाटू श्याम के भक्त हमारे डॉक्टर प्रियम भट्ट भाई साहब। तो देखिए आज कितना अच्छा है, थोड़ा झुको। So ladies and gentlemen, we are live। वाह क्या बात है। तो दोस्तों एक बार हो जाए, आई विल पास, आई विल पास, आई विल पास। एक बार चैट बॉक्स भर दो इसी खुशी के अंदर। आज 3 नौजवान जो है साथी हमारे, वो चौथे हमारे रितेश भाई साथ में है। वो कभी अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहते, पता नहीं चेहरे पे नूर आना, चेहरा जो उनका। ठीक है, क्लियर हो गया फंडा? सो गाइज रिमेंबर समथिंग, नाउ वी आर 400 लाइव। एंड गाइज अब एक एक करके मैं अपने दोस्तों को बोलना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा हमारे साथ थोड़े वर्ड्स शेयर करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर दीपक अंजाना विल कम हियर एंड ही विल शेयर सम वर्ड्स। एंड गाइस डू आस्क एनीथिंग यार, ही इज द बेस्ट इन्फ्लुएंसर। ठीक है, इनके जो टिप्स है वो दूरों दूरों तक फेमस हो रखी है। बड़ी दिल को खुशी पहुंचती है जब अपने में से कोई आदमी इतना अच्छा करता है। दीपक, नेक्स्ट वर्ड्स आर ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच पारस भाई। आई थिंक यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। जो आप लोग फ्री में चैंटिंग सेशन और सारी चीज़ें हो रही है। और एक चीज़, एग्ज़ाम बस होने वाला है, परसों एग्ज़ाम है आराम से। और अब देखो, सबसे बड़ा जो हमको चीज़ सोचनी है ना, कि जो पढ़ना था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको बस सामने से चीज़ों को घुमाना है। तो जो आप एक बार सामने से एक बार चीज़ों को निकाल लो कि भाई आप जो चीज़ें कर रहे हो, आपने इतनी मेहनत करी है ना अब तक कितने टाइम से आप लोग पढ़ रहे हो। भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती ना। अभी आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। अभी सबके मैसेज क्या आ रहे हैं कि कुछ भी याद नहीं है। भाई याद ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं है। जब एग्जाम टाइम आ रहा है, परसों एग्जाम है, तो एंग्जाइटी उतनी हो जाती है क्योंकि इतने सालों से आप इस एग्जाम को पास करने का सोच रहे हो। तो अब जब ये एग्जाम आ गया है तो ऑब्वियसली एंग्जाइटी तो बढ़ेगी। बट जो भी आपने पढ़ा है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, अब ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ। बट उसका मत सोचो। जैसे ही एग्जाम में आप पहुंचोगे, ऑटोमेटिक चीजें याद आना चालू हो जाएंगी। तो उसकी टेंशन मत लो कि मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ। वो हर इंसान, मतलब जो 200 प्लस नंबर भी लाता है ना, उसको भी सेम होता है। या इवन नीट एग्जाम हो गई, उसमें हो गई, फर्स्ट रैंकर को भी ये होता है कि एग्जाम से जस्ट लगता है कि कुछ भी याद नहीं है। तो वो बिल्कुल टेंशन लो ही मत उस चीज का। और अब जो भी चीजें हमने बस करी है, आज उनको अच्छे से गो थ्रू कर लो। अभी चैंटिंग चल रही है तो आपके ज्यादातर सब्जेक्ट का आपको रिकेप हो जाएगा। तो उसमें आपके सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे, एक बार वो देख लो। कल का जो दिन है उसमें एक बार आप इमेजेस सारी देख लो। बस उसके अलावा ज्यादा अब लोड नहीं लेना है। जितना लोड लेना था वो हम ले चुके हैं।
अब कोई बहुत पढ़ने से ना कोई गेम चेंज होने वाला है। जो होना था गेम वो हो गया है, जो जितनी मेहनत आपको करनी थी वो हो गई। अब बस कंटिन्यूटी मेंटेन करो। अब परेशान मत हो उन चीजों को लेके कि यार ये अब नहीं हो पा रहा है, अब इतना तो पढ़ा नहीं, ये सब्जेक्ट छूट गया था, अब कैसे करें। जो छूट गया छोड़ो, जो उस चीज को छोड़ दो। अब मत करो उस चीज को लेके। अब अगर लेके बैठोगे कि यार ये छूट गया, अब ये पढ़ लूं, या यहाँ से इसका पीवाईक्यू अब पढ़ लूं, तो एक दिन में उसका पीवाईक्यू पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। तो अब जो छोड़ रखा है उसको छोड़ो। हाँ, जो अब पढ़ना है, जो आपने अभी तक पढ़ रखा था, उसी पे फोकस करो, चीजें अच्छे से सोल्व होने लग जाएगी। बोलते रहो बस, जैसे पारस भाई बोलते रहते हैं, I will pass, I will pass, I will pass. बस पास होते रहो, बोलते रहो, तो पास अब हो जाएंगे जितनी मेहनत आप लोगों ने करी है। और एक खासकर एग्जाम डे वाले दिन थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन जो भी आपने ऑप्शन एक बार क्लिक कर दिया है उस पर लगे रहो। एक बार पहले डिसाइड कर लो क्या क्लिक करना है। अगर एक बार डिसाइड कर लिया, एक बार जो क्लिक करना था कर दिया, उसके बाद नहीं चेंज करना है। कोई रिव्यू करने की जरूरत नहीं। देखो, हर इंसान की अपनी स्ट्रेटजी होती है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा नहीं है, बाकी हजारों बच्चों का भी जिनसे बात होती है। तो ऑप्शन चेंज नहीं करना है, रिव्यू नहीं करना है। अगर आपको एग्जाम के बाद में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिव्यू नहीं करोगे तो आधा आधा घंटा आपका बच जाएगा पेपर में, और बचता ही है। उस आधे घंटे में भले सो जाओ, बट रिव्यू मत करो। अगर आपने रिव्यू करा, आप कम से कम 30-40 क्वेश्चन चेंज करोगे। हाँ, हो सकता है कि उसमें से 5-10 सही हो जाए, बट उन 5-10 को सही करने के चक्कर में अगर हम 40-30 गलत कर देंगे तो वो हमारा लॉस है। तो कोई बात नहीं, उस चीज का ध्यान रखना है, ऑप्शन चेंज नहीं करना है। और कल शाम को 6-7 बजे के बाद में नहीं पढ़ना है। उससे कुछ भी नहीं होता, उससे एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। मतलब, और होगा ऐसा कि रात में नींद नहीं आती है, कम आएगी, 3-4 घंटे की भी नींद आ जाएगी तो बहुत है, बट हमको पढ़ना नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल 12 बजे की नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बेड में लेटे रहो, सो, मोबाइल में चलाओ, अच्छे अच्छे गाने लगाओ, सो आराम से। भले नींद नहीं आ रही तो भी बेड में लेट के रिलैक्स करो। उस चीज का ध्यान रखना है बस अपने को। ये बिल्कुल मत सोचो कि जो आपने चीजें अभी तक करी है उसको बस अच्छे से रिवाइज करो। एग्जाम डे वाले दिन अच्छे से भगवान का नाम लेके जाओ, थोड़ा सुबह में हल्का फुल्का खाना खा के जाओ ताकि वहां लगे नहीं। और हाँ, खासकर हेवी जैकेट्स मत लेके जाओ। अगर जा भी रहे हो तो साथ में कुछ स्वेटशर्ट वगैरह लेके भी जाओ, क्योंकि बहुत सारे सेंटर पे ऐसा होता है कि हेवी जैकेट्स को अंदर अलाउ नहीं करते। तो साथ में कुछ दूसरी भी लेके जाओ, क्योंकि अगर हेवी जैकेट बाहर उतरवा लिया तो अंदर भी ठंड लगेगी, ठंड का माहौल है। तो उस चीज का अच्छे से ध्यान रखो। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को। भगवान का नाम लेके, जिसमें भी आप मानते हो उनका नाम लेके, अपने माता पिता को, मतलब उनसे आशीर्वाद लेके अच्छे से जाओ और एग्जाम को पास करके आओ। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सो पारस भाई प्लीज कम। So we are very thankful to Dr. दीपक अंजना। जैसा मैं हर टाइम कहता हूँ कि सर, टाइम अपना देना ना किसी को सबसे बड़ी बात होती है। तो ये भाई अपने आए हैं, अपना टाइम कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट स्पीकर इज वेरी फेमस पर्सन, ठीक है, डॉक्टर प्रियम भट्ट भाई साहब जो है, इनके जो टॉप 300 के सेशन चलते हैं, जहर बंदे हैं ये, पूरे दिन रात लगे रहते हैं बाबा खाटू श्याम का नाम लेकर के। सेशन में कमाल ही कमाल मचाया होता है इन्होंने में। ही इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। एफएमजीज के लिए 19 सब्जेक्ट्स का ये सिंगल हैंडेड सोलोली पूरी क्लास लेते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप कभी भी देखेंगे, ऑलवेज अवेलेबल। और टचवुड, बड़े ही प्यारे बंदे हैं, आप इनसे बात करोगे मजा आ जाएगा बिल्कुल। अगले स्पीकर हमारे डॉक्टर प्रियम भट्ट भाई। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। बच्चों, हारने की जैसी फीलिंग आ रही है? सबको लगता है लास्ट मोमेंट के अंदर कि हम थोड़ा बहुत हार रहे हैं। हारने की जैसी फीलिंग आ रही है ना? हारने की जैसी फीलिंग आ रही है, मगर मैं हारा नहीं हूँ। हारने की जैसी फीलिंग आ रही है लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। मेरा खाटू श्याम बाबा मेरा सहारा है, मैं बेसहारा नहीं हूँ, है ना। तो बच्चों, हमारे बाबा हमारे साथ हैं, और हमारा तो हमेशा से यही टारगेट रहा है कि जो इंसान हार रहा हो उसका सपोर्ट करेंगे हम लोग। हम हमेशा हर हारे हुए बंदे का सपोर्ट करेंगे। हमेशा से पारस भाई के साथ थे, हैं और रहेंगे। हारने की जैसी फीलिंग आएगी बच्चों भी। लास्ट मोमेंट पे ऐसा लगता है कि किसी को कुछ भी याद नहीं है। मैं इस एग्जाम में 3 बार रुका हूँ, 3 बार, और प्राउडली बोलता हूँ 3 बार रुका हूँ। मुझे उन सब लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला होता तो बच्चों मेरा ये आज इस कंडीशन पे, आज इस लोकेशन पे मैं नहीं होता। आज इस ये इतनी सारी जो कुछ भी आज मेरे पास है सब खाटू श्याम बाबा का दिया हुआ है बच्चों। मेरे पास में मेरा कुछ भी नहीं है ना। तो आप अपने इष्ट के ऊपर भरोसा रखो, अपने भगवान पे भरोसा रखो, और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपने माँ बाप, मम्मी पापा की प्रेयर्स पे, माँ बाप के आशीर्वाद के ऊपर भरोसा रखो बच्चों। 100% अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। और हम आज रात को मिलेंगे, हम रात में मिलेंगे। अभी थोड़ा सा ही मोटिवेशन आपके लिए, इतना सही। अगेन बोल रहा हूँ, हारने की जैसी फीलिंग आ रही है लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। मेरा खाटू श्याम बाबा मेरा सहारा है, मैं बेसहारा नहीं हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सो बड़ी मोटिवेशन भरी लाइनें हैं, दोनों भाइयों ने चमक कर दी है। और एक अपडेट ये है कि प्रियम भट्ट भाई साहब ने जो है प्रॉमिस करा है अभी अभी मेरे को, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज के सेशन के अंदर फार्मा
माइक्रो और मेडिसिन, फार्मा, माइक्रो और मेडिसिन प्रियम भट्ट भैया लेंगे जब सारे सेशन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद भैया आएंगे रात को जोश के साथ, ठीक है। बाकी वी ऑल टीम इज अवेलेबल, कभी भी आप कोई भी किसी को भी मैसेज कर लो, हमेशा जवाब मिलेगा। सारे अवेलेबल बंदे हैं, ऐसा भी कोई नहीं है कि आप किसी को याद करो और कोई आपको मिले ना, ठीक है। एक बार मैं अपने दोनों भाइयों को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, ठीक है। दोनों भाइयों को बुलाना चाहूंगा, ठीक है। सो गाइस एक बार हो जाए साथ में तीनों भाइयों के साथ, I will pass, I will pass, I will pass, I will pass। अब की बार 200 पार। और गाइस मचा दो धमाल आज। सो 556 आर लाइव राइट नाउ। क्या ही बात है, क्या दिन है। और पूरे हिंदुस्तान से लोग जुड़े हुए हैं। दीपक भाई है अपने मध्य प्रदेश से, प्रियम भट्ट भाई साहब अपने राजस्थान से, उदयपुर से है, और मैं जम्मू कश्मीर से, रितेश भाई अपने बिहार से है। पूरा हिंदुस्तान ही कनेक्टेड है। तो इतिहास आज साथ मिलके रचेंगे। और कल हम तीनों की तरफ से एक्चुअली आप सबको इनवाइट है। कल पंचायती शिव मंदिर के अंदर गाइस, इफ आई शो यू दिस, टाइमिंग इज 6:15। एक हम लोगों ने जो है ब्लेसिंग सेशन रखा है, वहां पे आरती है और प्रसाद है आप सबके लिए। प्लीज जो भी लोग आ सकते हैं कल, प्लीज डू कम देयर, ठीक है। सब लोग वहां मिलेंगे। और मेहनत तो हमने कर ली है, अब उसकी ब्लेसिंग्स ऊपर वाला हमें जरूर देगा। और मेहनत का जरूर, कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक मेरे तीनों भाई यहीं पे है, तो मैं एक बड़ी प्यारी पोइम है जो मैं आप सबके साथ मिलके गाना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा मेरे भाई गाएं मेरे साथ में, और आप सब लोग इसे सुने और दिल से सुने, मेरे बड़े दिल के करीब है। कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सबसे प्यारी लाइन है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया था एंड वी आर वेरी थैंकफुल। अब हम अपना करेंगे सेशन स्टार्ट। और मेरे भाई जो है क्या कहते हैं उसे आए, और प्रेम भट्ट भाई साहब ने बोल दिया, बाकी सारी टीम अवेलेबल है किसी भी जगह पे। डॉक्टर दीपक को यू कैन मैसेज मी, डॉक्टर प्रियम भट्ट भाई, सबको किसी भी टाइम आप मैसेज कर सकते हो। एंजाइटी फील कर रहे हो, वी ऑल आर अवेलेबल यार, वी ऑल आर अवेलेबल। और दिल खोल के यार। सो प्लान क्या है ना सर आज का, व्हाट इज अ प्लान राइट नाउ सर? वी आर हैविंग अ प्लान, ठीक है। वी आर हैविंग अ प्लान, ठीक है, ठीक है। वी आर हैविंग अ प्लान कि आज हमारा, मैं एक बार जरा खोल लूं पीडीएफ्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली। तो पहला प्लान है कि वी आर स्टार्टिंग विद अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का पैथ, देन एफएमटी, देन फार्मा माइक्रो ही विल डू एट नाइट, एनाट, फिजियो, पीएसएम। सो ये 8 सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट होते हैं। कौन से होते हैं सर? फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट होते हैं। तो वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट पेपर फर्स्ट, और उसके बाद 9th सब्जेक्ट इज ऑप्थेमोलॉजी, पीडिया, सर्जरी, डर्मा, रेडियो, एनेस्थीसिया, ऑर्थो, साइकेट्री, ईएनटी, ओबीजी एंड मेडिसिन। सो दिस इज व्हाट आवर प्लान इज फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। आज का प्लान ये है हमारे साथ। आई होप पीडीएफ्स मैंने सारी, ऑल द पीडीएफ्स आर अवेलेबल ऑन दिस ग्रुप माय डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर हैविंग any problem, just remember this group is there. Yes my dear friends, this group is right there, ठीक है। this group is right there. जानवी डोंट वरी, वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ सर। जो भी इंपॉर्टेंट वाले, मैं इस सेशन को ऐसे लूंगा कि अगर मेरा एक परसों एग्जाम हो तो मैं कौन से टॉपिक्स को छूऊंगा, किस तरीके से टच करूंगा, क्या चीज को एम्फसाइज करूंगा, आपको भी मेरे साथ पूरा साथ देना है। सो राइट नाउ आर वी रेडी सर? If we are ready and PDFs are all there with you guys, please give me thumbs up in the chat box. We are going to complete this session. Mostly I'll be speaking today in English, है ना? Everyone should be comfortable. Meanwhile, we can have our chit chat and all those fun we are doing previously also. So guys, just please give me, ठीक है, clear हो गया? Just give me thumbs up and then we are going to start this session. तो 600 people are live with us in this विराट, विराट कोहली के सब लोग फैन है। मैं सोच रहा था क्या रखूं, सेशन का नाम क्या रखूं, फिर मेरे दिमाग में आया कि एक लेजेंड है जिसको सब लोग प्यार करते हैं। लेट्स डू द विराट सेशन टुडे सर। बहुत अच्छा लगा। ऑल द पीपल आर राइट हियर सर। तो बायोकेमिस्ट्री इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, सब लोगों का हाँ आ गया मुझे।
So first we talk about, you have to be very active in the chat box right now, sir. आपको चैट बॉक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा. दैट इज ओनली थिंग आई नीड फ्रॉम यू गाइस. दैट इज द ओनली थिंग आई नीड फ्रॉम यू गाइस, माय डियर फ्रेंड्स. सो फर्स्ट थिंग इज ग्लाइकोलाइसिस. अगर ग्लाइकोलाइसिस को कोई पूछे व्हाट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम, वी ऑल नो व्हाट इज दैट सर. फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1. व्हाट इज दैट सर? फॉस्फोफ्रक्टो. Krebs cycle, TCA cycle, citric acid. Citric का उल्टा नाम what is that sir? Isocitrate dehydrogenase. What is sir? Isocitrate dehydrogenase. मैं जरा खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ because I think I am big enough in this session कि दिखाई नहीं देगा फिर सबको ना. थोड़ा सा adjust कर लेते हैं. I'll do it right now and then we'll be back my dear friends. चलो जी, हाँ जी चलो प्यारे दोस्तों, हो गया सर? ठीक है चलो. So that's all we need to do. Gluconeogenesis. Gluconeogenesis, fructose 1,6 bisphosphatase. Glycogenolysis, guys. Glycogenesis, formation of glycogen. Glycogen synthase is there. What is there, sir? Glycogen synthase is there. Done. Like glycogenolysis. Breakdown of glycogen is by glycogen phosphorylase and HMP shunted pentose phosphate pathways. Very simple. G6PD. G6PD deficiency is also we have learned in the pathology. Can you just let me know G6PD deficiency anemia के अंदर कौन सी body देखने मिलती है? Yes, the answer is Heinz body by itself. Then urea cycle is CPS1. Urea cycle CPS1, that is carbamyl phosphate synthase 1. Lipid metabolism is something which is important right now here. My friends would be very there with me. बीटा, बेटे को क्या पसंद था? बेटा loves cat. That is why carnitine acyl transferase 1. Beta oxidation of fatty acid is carnitine acyl transferase 1. Then ketogenesis. Ketogenesis कट गया तो बनाना है. कैसे बनाओगे सर? HMG CoA synthase. HMG CoA synthase. Just let me know. My speed is absolutely fine for everyone. I want you to guys be comfortable. ठीक है, आज बहुत ज्यादा मेहनत करनी है. कल अपना थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाला मूड रहेगा. ठीक है, कल सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर लेनी है और परसों पेपर के अंदर जी जान लगा देनी है. सो कीटोजेनेसिस इज HMG CoA synthase. Fatty acid synthesis is what sir? Acetyl CoA carboxylase. It is what sir? Your acetyl CoA carboxylase. Acetyl CoA carboxylase. Cholesterol synthesis, it is. Cholesterol is bad thing, that is why we have to reduce it. It is HMG reductase. Done sir. Now next thing which is very important, a previous year question, von गिर के जीतना है. How you will win? Glucose 6 phosphatase. How you will win sir? Glucose 6 for Pompey. Two things you need to remember right here. So two things you need to remember, मेरे प्यारे दोस्तों. Remember something. Yes, it is GA gene. Pompey में क्या है सर? GA gene is there. GA gene is there. Yes, GA. Enzyme deficiency. Pompey is like a papa. Acid maltase. What is there, sir? Acid maltase. Now, Corey, after C, what is coming? D is coming. So, D branching enzyme. Anderson, after A, what is coming? B is coming. So, branching enzyme is there, my dear friends. 762 people are live. Love you all for so much of love. ठीक है? My dear friends, Macardal, M for M, muscle glycogen phosphorylase. M for M, muscle glycogen phosphorylase. Muscle glycogen phosphorylase. Next thing, guys, remember H for Hers disease. H for H, hepatic glycogen phosphorylase. Hers के अंदर क्या? Hepatic glycogen phosphorylase. Essential fructose urea. Again, a previous year question. Fructokinase. क्या होगा सर जी हमारा? Fructokinase. Fructose intolerance. Aldolase B. Fructose intolerance is what, sir? Your aldolase B. Aldolase B. Then coming to the next thing, next is our galactosemia. The enzyme deficiency is very famous. Galactosemia में कौन सा cataract you are going to see? देखो आंसर अपने आप आ जाएगा. Galactosemia, which cataract we are going to see, sir? Oil drop cataract. And breastfeeding is indicated or contraindicated. Then what you will answer, my dear friends? Breastfeeding is contraindicated in the galactosemia. Dun. How beautifully we are covering this. Now out of 3, 1 would be there on 20th. सर 20 तारीख को ये एक आ सकता है इनमें से. Very potent chances. Phenylketonuria, mousy musty order is there. In phenylketonuria, what is there, sir? Mousy musty order is there. The enzyme is phenylalanine hydroxylase. What is enzyme, my dear friend? Phenylalanine hydroxylase. Alcapt, K for काला सा काला मेरे काले. ठीक है, चलो. काला is black urine disease. Homogenticide oxidase कैसा है? Homogenticide oxidase. Then coming to the maple syrup urine disease. Burn sugar क्या बनता है? Syrup बनता है. तो guys remember BCKD. Which enzyme is there, sir? BCKD. क्या है? BCKD. Yes, branch chain keto acid dehydrogenase decarboxylase. This is again lipid storage disease is a 100% exam question. Mind your word. Yes,
100% एग्जाम क्वेश्चन ऑन 20th of January. ये क्वेश्चन आपके सामने होगा, आंसर अपने आप आते हैं सर आपको. Niemann-Pick, व्हाट इज योर आंसर? यस, आंसर इज sphingomyelin. Niemann-Pick disease, sphingomyelin is there. Gaucher is what, sir? Gaucher is beta glucocerebrosidase, beta glucocerebrosidase. Then coming to the crumpled tissue paper appearance is seen in, now your answer is same, that is what, sorry, Gaucher disease. Krabbe's is beta galactocerebrosidase. Then Fabry's is alpha galactocerebrosidase. Hexosaminidase A, hexosaminidase A, hexosaminidase A, remember, is hexosaminidase A. Is what, sir? Hexosaminidase A. Now coming to the Sandhoff. Sandhoff is hexosaminidase A and B. Sandhoff is both A and B. Now Leishman is Harpreet, guys. Lip and the nail biting is seen in the Leishman. Leishman is associated with the enzyme called as HGPRT. This table is also highly important before exam. टायरोसिन क्या क्या स्पेशल प्रोडक्ट बनाता है गाइस? T3 T4 कैटाकोलामाइन एंड मिलानिन, T3 T4 कैटाकोलामाइन एंड मिलानिन. Tryptophan, if we talk about vitamin B3, serotonin, melatonin. Vitamin B3, serotonin, melatonin. Histidine, we talk about histidine is what, sir? Histamine, and arginine is nitrous oxide. And guys remember, nitrous oxide is a vasodilator. चलो ये भी खत्म हो गया. और ये this is also previous year topic. Fluoride is what, sir? Anolase. Barbiturates rotinan, complex 1. Malonate is complex 2. Malonate is what, sir? Complex 2. Then antimycin A and Bal is having 3 words, 1, 2, 3. That is why complex 3. Carbon monoxide, cyanide, and hydrogen sulfide. Complex 4 is there. Oligomycin, complex 5. Oligomycin, complex 5 is there. Done. Now amino acid we can do later on. We have to find a very important topic right here is vitamins. Vitamins जरूर रिवाइज करके जाना एग्जाम के अंदर. Highly important topic, my dear friends. Number 1 is fat soluble. What is fat soluble? Right here we are having A, D, E, K. कैसे विटामिन है सर? A, D, E, K. और वाटर सॉल्युबल क्या है सर? BC. इनमें से K is दोगला. Why K is दोगला? Because K1 and K2 is what, sir? Lipid soluble. Who is what is soluble? K3 is water soluble. ये भी हो गया. Vitamin A, what is the active form? Retinol. और retinol किसके ट्रीटमेंट में काम होता है? Acne. This was previous year question of the FMG exam. Now deficiencies, bited spot on the conjunctiva. What is spot right here, sir? Bited spots are there on the conjunctiva. Now vitamin D, guys remember, deficiency in children will lead to what? You know the answer very well. Deficiency in children, it will lead to rickets. In the adult, there is osteomalacia, where you are going to see the loser zone. You are going to see what, sir, here, sir? Loser zone. Vitamin E function is antioxidant, and deficiency would lead to hemolytic anemia, cellular damage. Not that important one. But K is something which is important, guys. Remember, K is bleeding disorder. And remember, vitamin K antagonist is warfarin, and warfarin is contraindicated in pregnancy. Warfarin क्या है सर हमारा? Warfarin is contraindicated in the pregnancy. It's contraindicated in the pregnancy. खत्म हो गई बात सर यहीं पे. Vitamin B1 is thiamine. Thiamine के साथ, if you remember, something called a Wernicke-Korsakoff beriberi ophthalmoplegia is there. These are the symptoms which are associated with vitamin B1. Vitamin B1 is also called as, you know the answer, my difference, that is called as thiamine. Now vitamin B2 is what's a riboflavin. Chiliosis, inflammation of lip, you can very well see in the image, my dear friends. Then coming to the vitamin B3 is niacin. क्या है सर? Niacin. Deficiency would lead to what's a pellagra. What the deficiency would lead to? Deficiency will lead to pellagra, dementia, diarrhea, dermatitis. What is there, sir? Dementia, diarrhea, dermatitis was your previous year question of the FMG exam. Now coming to something called as vitamin B, is pantothenic acid. Burning foot disease is associated with pantothenic acid, and pantothenic acid is vitamin B5. Now vitamin B6 is pyridoxine. Vitamin B6 is what, sir? Pyridoxine. Yes, deficiency will lead to obviously sideroblastic anemia and hyperirritability. Vitamin B7 is B for ball, B for biotin, hair loss के लिए है. Vitamin B9 is folic acid, very important. Megaloblastic anemia and neural tube defect. Megaloblastic anemia and neural tube defect is there. Vitamin B12 is cobalamin, cyanocobalamin, methylcobalamin will lead to M4 megaloblastic anemia. Both, sir. B9 and B12 will lead to megaloblastic anemia, and deficiency will lead to subacute combined degeneration of the spinal cord. It will lead to, and this was your NEET PG exam question. Vitamin C deficiency will lead to scurvy. Vitamin D deficiency will lead to rickets. In the children, in the adult, it is osteomalacia. These points should be very crystal clear in your head before the exam.
Deficiency of zinc will lead to acrodermatitis enteropathica, and the mnemonic is DAD, dermatitis, alopecia, diarrhea. Again, DAD is a mnemonic for what's a acrodermatitis enteropathica, which is associated with the deficiency of the zinc. Which is associated with the deficiency of the zinc. What is that? Dermatitis, alopecia, and diarrhea. Dandana, 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 dun. So with this, we have completed our first subject called as biochemistry. कितना टाइम लगा सर हमें biochemistry साथ में रिवाइज करने के लिए? तो बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरा एक बार चैट बॉक्स में बता दो. आज अब तुम बोल रहे हो होगा नहीं, कैसे होगा? अब एक मैंने उदाहरण दे दिया कि ऐसे होगा. देखा कितनी प्यार से, कितने स्मूथली वी आर एबल टू रिकॉल एवरीथिंग व्हाट वी हैव स्टडीड माय डियर फ्रेंड्स. है ना मजेदार चीज? है ना? कर रहे हैं ना साथ में? विराट, महा, चैंटिंग, धमाल. यस, ठीक है. चलो गाइस, so we are all set right here, sir. Wow. Now we are moving on to the very next subject called as pathology. Let me find pathology for all of you, and we have complete the pathology, sir. If we talk about the pathology, right here pathology is there. ठीक है sir. So we are going to do it pathology. ठीक है sir. Best thing is what we are doing. We already did this. So hypertrophy, we all know, increase in size is called as hypertrophy. These days, these questions are not numerous, but you should be very clear with the definition, my dear friends. Remember, hypertrophy is increase in size and aplasia is increase in number. Atrophy is decrease and metaplasia is something I would love to revise. अगर मेरा एग्जाम है परसों तो मैं मेटाप्लेशिया को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेटाप्लेशिया को छोड़ करके नहीं जाऊंगा दोस्तों. और याद रखना, कोई भी एंजाइटी होती है, रात को कुछ भी होता है, do approach me on my Instagram pjamal7. and tomorrow guys, tomorrow, yes, if I can show you right now, if I'm allowed to do that, let me check if I can show you. Tomorrow I'm having a very big surprise for all of you. Where it is? I'm having a big surprise for all of you. कल के लिए बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए. Let me check if it is there with me or not. I will just love to show you all. चलो, I'll show you. I'll show you. So guys, tomorrow we are having a blessing Vijay Bhava session by our expert faculties और also बड़े experienced faculties. ठीक है, ठीक है. तो guys देख लो, ये कल का सेशन आप लोगों के लिए है. सारे दिग्गज टीचर्स और भी लोग ज्वाइन करने वाले थे, ड्यू टू सम पर्सनल वर्क दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन अस, बट उनकी भी उन्होंने बोला है कि सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. ठीक है, सारे टीचर से बात हुई थी, दे ऑल आर गिविंग. तो कल हम लोग सब लोग 8 PM लाइव आने वाले हैं और दिल की बात करेंगे सबके सब. सारी एंजाइटी, आज से पढ़ाई के बारे में सोचना है, कल सारी चीजें क्लियर करेंगे. सब लोग लाइव आएंगे. ठीक है, 8 PM टुमारो वी आर हैविंग इंस्टाग्राम लाइव विद ऑल द लेजेंडरी फैकल्टीज. ठीक है, सो एवरीवन इज वेलकम टुमारो, एवरीवन इज वेलकम टुमारो. ठीक है, मजा आने वाला, सब लोग आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो. मैंने हमेशा बोला था सर, यू आर नॉट अलोन एट ऑल, यू आर नॉट अलोन, वी ऑल आर विद यू, वी ऑल आर. देखो सारे के सारे टीचर्स आर रेडी टू रॉक एंड रोल विद अस. वो लोग भी हमारी उतनी फिक्र कर रहे हैं जितना हम लोग अपने एग्जाम के लिए फिक्र करें. ऑल फैकल्टीज, सारी जितनी भी फैकल्टीज हैं हमारे पूरे इंडिया, क्या जितना भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, सारे के सारे वो हमें सबको ब्लेस कर रहे हैं. ठीक है, कोई किस तरीके से कर रहा है, तरीका अलग अलग है, बट रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर एवरीवन इज ब्लेसिंग अस. ठीक है, ये तो हमारा हो गया. नाउ वी आर कमिंग बैक टू अवर टॉपिक मेटाप्लेशिया. व्हाट इज मेटाप्लेशिया माय डियर फ्रेंड्स? when one normal cell is replaced by another normal cell, when one normal cell is replaced by, ठीक है, replaced by another normal cell, that is called as metaplasia. Best is columnar metaplasia, hallmark is goblet cell, Alcian blue mucoramine is a stain we are going to use right now there sir. चलो ये भी खत्म हो गया. Then cell injury के बीच में अगर मुझे पढ़ना होगी what is reversible and irreversible, first I'll see if sodium is involved, that is reversible, only pycnosis is seen. Irreversible, earliest iron involved is calcium, myelin figures are seen, and 3 of them are seen. What are they? Pycnosis, karyorrhexis and karyolysis. Pycnosis,
कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस वी आर गोइंग टू डू। क्लियर होगा फटा? चलो ये भी खत्म हो गया सर। नाउ वी आर कमिंग टू द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन फ्री रेडिकल, ये दिमाग में रख लेना, इससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। गाइस रिमेंबर, if increase in free radical there will be oxidative stress, तो RBCs टूटना शुरू हो जाएगा। most potent free radical is hydroxyl, but why there is never a free radical injury to the brain? Because brain is having a protective factor, that is what sir, your SOD1. What is SOD1? Supraoxide dismutase. What is SOD1? Supraoxide dismutase. डन डना डन डना डन डना डन। चलो आगे बात करते हैं सर। सेल डेथ का नंबर वन थिंग इज नेक्रोसिस, और एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बीच में डिफरेंस करना हो, इफ इन्फ्लामेशन इज प्रेजेंट, व्हाट इज कमिंग इन योर हेड? If inflammation is coming, then what is present in your head? My dear friends, if inflammation is present, what is coming in your head? That is necrosis. Now I'll ask you, if step ladder pattern is there, what is coming in your head? Automatically your answer will come to apoptosis. Apoptosis. Now type of inflammation is something which is important. Cognitive necrosis is something seen in all solid organs except your brain. So what is seen in the brain? In brain you are going to see liquefactive necrosis. In brain, what you are going to see, my dear friends, it is what sir, your liquefactive necrosis. Then third one is caseous, paneer जैसा, cheese जैसा. So your answer was TSH sir. ठीक है, mnemonic was TSH. TB, syphilis, histoplasmosis. What is there sir? TB, syphilis, histoplasmosis, and there would be a cheese-like appearance. चलो ये भी खत्म हो गया। Next one what we are going to study sir right now is fat necrosis. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? Fat necrosis. Sir, chalky white deposits are seen. It is seen in pancreas. POMB बताया था ना, POMB. P for pancreas, O for omentum, M for mesentery, B for breast. And this was actually your previous year question where they have asked like this, where these are seen and not seen. So for seen, you remember POMB. P for what sir? ठीक है सर। ओके चलो, fibrinoid necrosis. Let's talk about the fibrinoid necrosis. It is seen in type 2, type 3 hypersensitivity reaction, and guys, fibrin-like appearances. If you can see, there is a blood vessel. Around blood vessel, there is a fibrin-like appearance, fibrinoid necrosis, and apoptotic pattern look like this. A for apoptotic, A for apoptosis. Apoptosis के अंदर apoptotic pattern is there, my dear friends. Step ladder pattern is there. Apoptotic pattern is something called a step ladder pattern. Inflammation is absent right here. And necrotic cells, we are going to see the smearing pattern, and inflammation is present in the necrosis. Now coming to the apoptosis, chromatin condensation is there. The earliest feature is the shell will shrink. Moment there is a shrinkage of cell, there will be a chromatin condensation. Because of that, you are going to see the apoptotic bodies. So these are what's are apoptotic bodies. Now enzyme involved in the apoptosis, my different caspase initiator and execution. Ini is 9, before 9 8, after 9 10, 8 9 10, execution 3 6 7 is there. Now factors in the apoptosis, one is pro people are who are on the back, so backs and back. Anti-apoptotic BCL, all L people who speak shit behind you, for you, they are L type of people. Clear हो गया फंडा? BCL2, BCLXL, MCL1, BCL2, BCLXL, MCL1, and sensors are BIM, BID, BAD, Noxa, Puma. Everyone knows this sensor. BIM, BID, BAD, Noxa, Puma. What are the sensors? My friend, BIM, BID, BAD, Noxa, Puma. Dun 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 dun. Now coming to the next things are not that important. Now calcification is something which is important. Two type of calcifications are there. One is dystrophic, another one is metastatic calcification. If we talk about the dystrophic calcification, D for dystrophic, D for dead tissue. Dead tissue के अंदर देखने मिलती है, no blood supply is there. That is why serum calcium levels are normal. That is why sir what? Serum calcium levels are normal. Metastasis, you know, metastasis means the living person is there and blood circulation is there. That is why one tumor is going from one side to another side. And guys, remember, Palvi कहती है, I am going so fast. Just let me know if I am going so fast. Then I can speed up little less, थोड़ा pace कम कर सकता हूँ. All up to your feedback, I'll work. ठीक है, जल्दी से बता दो यार. I'm waiting for your feedback. बेटा देखो, स्पीड तो यार बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं, हम पहली बारी संकल्प सेशंस के अंदर हमने ये सारी पीडीएफ्स पहले पढ़ी हुई है. सो नाउ वी हैव टू अल्ट्रा स्पीड अप दिस थिंग. तो कैसे पॉसिबल होगा 6 घंटे के अंदर
कंप्लीट करना चीजों को, है ना। चलो, I can little bit slow it down. So dystrophic is seen in dead tissues, metastasis living के अंदर है, serum calcium levels are raised there. Now pigments पे हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा. So guys, remember something, exogenous are tattoos, which is nothing but a carbon deposition is there. Endogenous, if we talk about, sir, melanin is there. On H and E stain brown color, if you will see melanin, hemosiderin, lipofuscin. This lipofuscin is also called as wear and tear pigment, which is also called as brown atrophy, my dear friend. This is also called as what, sir? Brown atrophy. Dandana, 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 done. Now, inflammation, if we talk about, sir, acute and chronic. छोटी ड्यूरेशन के लिए acute होता है, chronic inflammation होती है. Acute inflammation का cell होते हैं neutrophils. My dear friends, which cell is there? Neutrophil is there. So the first cell will come in the inflammation is neutrophil. Can you tell me which cells will come in first in the clot formation? क्लॉट फॉर्मेशन में प्लेटलेट आता है, इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल आता है, एंड इफ एनी काइंड ऑफ फॉरेन बॉडी इज कमिंग व्हिच इज द फर्स्ट सेल टू फाइट, एंड योर आंसर विल बी नेचुरल किलर सेल. योर आंसर विल बी व्हाट, सर? नेचुरल किलर सेल. नेचुरल किलर सेल. Now, cardinal signs of inflammations are something which were asked in the FMG exam. That is why these are very, very important. Rubor, tumor, dollar, calor, functionalism. Along with me, sir. Rubor, tumor, dollar, calor, functionalism. Rubor, tumor, dollar, calor, functionalism. Guys, remember, first four were given by Celsus and fifth one was given by Rudolph Virtue. Dandana, 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 da. Now coming to the acute inflammation. One is vascular event we have discussed. In the vascular event, one is transient vasoconstriction. What is happening, sir? Transient vasoconstriction. Then there will be dilation. Then increase in permeability is there. Then stasis is there. Then migration is there. चलो ये भी खत्म हो गया. Now let's talk about the cellular event. First event is margination. सबसे पहले वो margin के पास जाएगा. Rolling will be done by the selective people. E selective, P selective. The rolling is done by E selective, P selective. Other than that, my dear friend, adhesion is there. Who can adhere with each other? I can, we can, sir. I can, we can. Now transmigration is PECAM1 CD31. PECAM1 CD31. Chemotaxis is done by, yes, C5A LT B4 interleukin 8. दोबारा से C5A LT B4 interleukin 8. Interleukin 8. Interleukin 8. Dandana, 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 done. Opsonization C3B 4B 5B. Opsonization is what, sir? C3B 4B 5B and IgG. IgG. Then phagocytosis is by NAPPH oxidase. And guys, remember phagolysosome. Phagolysosome. They can help in the phagocytosis. चलो ये भी खत्म हो गया. Now giant cells. Speed up करते हैं सर. Giant cells कहाँ पे देखने मिलेंगे? Langhans giant cells are seen in TB. Ashkoff giant cell, they are seen in rheumatic heart disease. Reed-Steinberg, always you know the Hodgkin's lymphoma. Aulai appearance is also associated with the cytomegalovirus. If we talk about the Warthin-Finkelday giant cell, sir, Warthin-Finkelday giant cell, they are seen in the measles, asteroid bodies, sarcoidosis, Schumann bodies are also seen in the sarcoidosis. This is what, sir, Schumann bodies, and this is asteroid body. They both are seen in sarcoidosis. Can you tell me on X-ray what appearance you are going to see in the sarcoidosis? Which sign is there? Okay, which sign is there on the X-ray, my dear friends? Remember, that is panda sign, panda sign, panda sign. Here also, you know many things we are going to cover right here directly. Hypertrophic scar versus the keloid. Hypertrophic scar, the color is same as skin, and in keloid it is darker than the skin. In keloid, the three positions are fixed, that is your pinna, sternum, shoulder, and hypertrophic scar can be anywhere, and treatment is intrakeloidal injection of the triamcinolone. Next, coming to the granuloma, caseating granuloma is seen in TB, syphilis, histoplasmosis, and non-caseating is seen in the sarcoidosis. Palisading is seen in the vaginals, and remember G was replaced by C, that is why C Anka is seen. What is there, sir? C Anka is seen right here. C Anka is seen. C Anka is seen. Dandana, 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 done. Now coming to the stellate granuloma, it is seen in cat's scratch disease, and donut granuloma is seen in Q fever. And this is again a previous year question. Drugs granuloma, guys, remember Dirk's granuloma, cerebral malaria. Yes, Dirk's granuloma is seen in cerebral malaria. So these are some easy questions which can come in the exam, and hopefully there are two things which can happen. फर्स्ट पेपर इजी, सेकंड टफ. इसीलिए ना आधी लड़ाई लड़ करके ना हार मत मानना. इफ यू पीपल हैव गिवन टेस्ट एटसेट्रा, यू नो, हो सकता है थोड़े 4-5 क्वेश्चन आ रहे हो, उसके बाद यू विल फील लाइक आई एम ऐसा नहीं है. कल याद रखना,
150 क्वेश्चन इजी होंगे जो तुम्हें आते होंगे, ठीक है सर। 75 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें 50-50% आते होंगे, और बाकी के जो अगर मैं मान लूं 75% है, 75 क्वेश्चंस है, वो ऐसे होंगे जो बिल्कुल कम आते होंगे। सर 150 नंबर आ जाएंगे, थोड़े यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़े तुक्कों से आ जाएंगे, तो पास तो हम ऐसे ही हो रहे हैं। आज सर 2 दिन रह गए एग्जाम को, आज लाने हैं 75 मार्क्स, कल लाने हैं 75 मार्क्स, 150 मार्क्स एंड वी आर पास। पॉजिटिविटी की बात सोचोगे तो दिमाग में भी पॉजिटिविटी ही आती है, इधर उधर की बात करोगे तो दिमाग में इधर उधर की ही बात आपको आएगी। क्लियर होगा फंडा? और पेपर का मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, पिछली बार से पेपर इजी आएगा। यस, पिछली बार देयर वाज ब्लंडर, वो बहुत ज्यादा ब्लंडर था एग्जामिनर्स की भी तरफ से, ठीक है। whatever things I have felt myself and many faculties feeling the same only, that the paper would be easier than the last time. The people who have gave paper last time, जो भी तुम्हारा स्कोर आया था, just remember इस 6-7-8 महीने के अंदर we have improved a lot, उससे तो ज्यादा ही लाएंगे, वो जितना भी था उससे ज्यादा लाएंगे। अब कितना ज्यादा है वो अपने दिमाग से पूछ लेना तुम लोग, ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द फाइन थिंग, जस्ट रिमेंबर पेपर पिछली बार से इजी आएगा। एक पेपर पे रिजल्ट डिसाइड नहीं करना है गाइस, रिमेंबर। एक बार भी ऐसा हुआ, फर्स्ट पेपर इतना गंदा हुआ, आई वाज इन द नोएडा सेंटर, ओके, आई विल टेल यू द ट्रू स्टोरी। फर्स्ट पेपर इतना गंदा आया, द पीपल हु वर कमिंग आउटसाइड, मैं क्या भाई क्या हाल है, नहीं नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। एंड गाइस ट्रस्ट मी, सेकंड पेपर इतना इजी आया कि वही लोग आके गले लग रहे हैं, भैया क्या पेपर आया था, मजा आ गया मजा आ गया। अब जिन लोगों ने पहले पेपर से अपना मुंह छुड़ा लिया और सेकंड पेपर की तैयारी छोड़ दी, उनको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कल को पेपर इजी भी आ जाता है, अगर तुम हिम्मत ही हार के बैठे होगे तो तुम्हारे लिए तो टफ ही हुआ ना यार, तुम्हारे लिए कैसे इजी हो जाएगा? तुम अपने में ही हार के बैठे हो पहले से कि नुकसान हो गया नुकसान हो गया, नहीं, अभी भी मौका है लास्ट क्वेश्चन तक। हमारा एफएमजी एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, सारे आंसर मार्क कर सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया इंट्यूशन से पूछना, जो दिमाग का आंसर है, कुछ नहीं समझ में आया सबसे लंबा आंसर मार्क कर दो। कोई भी एग्जामिनर लंबा आंसर जो है रॉन्ग आंसर नहीं लिखेगा 99%। तो ये भी एक लॉजिक होता है एग्जाम के अंदर जो फिट बैठता है अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, एक्सपीरियंस एंड ऑल थिंग्स, ठीक है सर। चलो let's talk about something called as hypersensitivity. You all know the topic hypersensitivity, we all know this, direct question इसमें से कुछ भी नहीं आता है। Now this is something which is important, auto, iso, LO and xeno. Guys, auto is nothing but a self graft, iso is identical twin, LO is same species, LO is what sir? Same species, same species, same species. Now hyper acute, acute and chronic, guys timing याद कर लो बस, hyper acute, acute and chronic graft rejection. Sir, minutes to hour, we know this trick, minutes to hour, and sir days to week, and sir chronic graft rejection is what sir? Month to year. Done. Hyperacute graft rejection is minute to hour, like we have said, and this question was asked. Many people confuse with days to weeks. My dear friends, this blunder you don't have to do. Be careful while solving the question tomorrow. And sorry, why hyperacute? इतना acute क्यों है भाई, इतना उतावला क्यों? Because of the preformed anti-donor antibodies, preformed anti-donor HLA antibodies. Then acute graft rejection days to weeks में होता है, T cell की वजह से होता है. Chronic is also because of T cell, just the duration is more. And guys, remember, next question coming right here in front of you is all about the wound healing. Wound healing, two type of wound healing we are going to study, primary and secondary wound healing. If the wound is clean and there is no tissue loss, yes, the wound is clean and there is no tissue loss, then remember this is primary intention healing. Secondary intention is wound is infected and yes, tissue loss is there. Wound is infected and tissue loss is there, my dear friends, that is secondary infection. Here also two MCQs are there. As I told you, कि clotting का first cell is platelet, inflammation का first cell is neutrophil. Always remember, if it is asking about the clot, your answer is platelet. If it is asking about the inflammation, first cell is what sir? Neutrophil. First cell is what sir? Your neutrophils. Other question what can be asked is, what is the first cell coming to fight with the antigen who is coming inside the body? Your answer would be coming in the head right now, sir. That is your natural killer cell. What is your answer, my dear friends? That is your natural killer cell. चलो ये भी खत्म हुआ। अब न्यूप्लेशिया के बारे में पढ़ेंगे, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। सो पॉइंटर इंडेक्स को मैं दिमाग में रख लेता हूं। अगर ऐसे गोल गोलू पॉइंटर इंडेक्स है तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। इफ एबनॉर्मल ग्लैंड्स आर देयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिनो कार्सिनोमा। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट सर? एडिनो कार्सिनोमा।
Now, these are something which are very important, and I want each one of you to remember these four tables. ये four tables में से at least two questions will be there, will be there, will be there for the another 10 minutes. Be there with me, and we are going to make it very simple. Now, if we talk about the RB1 gene, RB1 gene is all about the retinoblastoma. RB1 gene is all about the retinoblastoma, retinoblastoma, retinoblastoma. Guys, we'll be talking. BRCA1 is all about breast and ovarian cancer. BRCA1, yes, it is breast and ovarian. And you know BRCA2, breast and prostate. Breast and prostate. BRCA1, BRCA2, both in the females, and in males only BRCA2 is there. Overall, most common cancer in the world would be breast cancer, and the cause of death, if someone is asking us, then answer will change into what's your lung cancer. NF1 is neurofibromas, NF2 means schwannoma, WT1, WT2 is Wilms tumor, VHL is clear cell renal cell carcinoma. VHL is what's a clear cell carcinoma, renal cell carcinoma. Now coming to the STK11. STK11 is Peutz-Jeghers syndrome. STK11 is what's a Peutz-Jeghers syndrome. Perioral lentigins are there plus GI polyp. Recent exam question was there. So Peutz-Jeghers के ऊपर आज तक ज्यादा नहीं तो if you will see the PYQs 10 questions were there. So these are the must know topics for the exam. APC is colorectal cancer and P10 is cowden. P10 is cowden. P10 cowden. P10 cowden. P10 cowden. P10 cowden. P10 cowden. Done, done. Coming to the next important tumor markers. If you talk about the PSA, prostate cancer, you know how much value I'm going to tell you right now. More than 10 nano. If more than 10 is there, we call that prostate cancer. If more than 4 is there, then benign prostate hyperplasia. Benign prostate hyperplasia is there. Now coming to the calcitonin. Calcitonin is medullary carcinoma of the thyroid. Calcitonin is medullary carcinoma of the thyroid. Surgery के अंदर we are going to discuss. HCG, sir, choriocarcinoma. Can you tell me if choriocarcinoma will go to the lungs, which appearance you are going to see? If your choriocarcinoma, wow, 842 people are live in the Virat session. विराट बनाने वाले तुम ही लोग होते हो दोस्तों, क्या ही बात है. मैं जितना तुम्हारी तारीफ करूं उतनी कम है, ठीक है. तो आज गाने कम रखते हैं, पढ़ाई ज्यादा रखते हैं, वरना टाइम ज्यादा लग जाएगा. Then coming to the alpha fetoprotein is hepatocellular carcinoma. CA99, if we reverse the 9, it will become P, that is pancreatic cancer. That is what's your pancreatic cancer. That is what's a pancreatic. CA125 is ovarian cancer. CA125 is all about ovarian. And these were your previous year question of the exam. कितने छोटे क्वेश्चन आते हैं. CA15-3 is all about the breast carcinoma. 3 को अब उल्टा करो तो ये बन जाएगा, ये देखो सर, breast carcinoma. Catecholamine's is pheochromocytoma. And moment the pheochromocytoma is coming, you all know epinephrine, non-epinephrine, all is increasing. Pre-op drug of choice is phenoxybenzamine, intra-op is phentolamine, and post-op is beta blocker. Automatically the questions are coming. Wow, my dear friends, 900 people are right now live with us. Now coming to the immunohistory, chemistry, and tumor distribution. Now, my dear friends, IHC and the tumor markers are very important these days. The questions are coming right there, sir. So we will be remembering cytokeratin. Cyto C for C is their carcinoma. You have to participate in the chat box also, sir. You have to participate in the chat box also. Sir, cytokeratin is carcinoma. Why maintain? Why, sir? Why? You are taking so many classes? Why maintain is sarcoma? Desmin, dasdo, rab, menu, dasdo, rhabdomyosarcoma. That is what, sir? Rhabdomyosarcoma. HMB45 is melanoma. HMB45 is what, sir? Melanoma. HMB45 is melanoma. S100 is Langerhans cell histiocytosis. Langerhans cell histiocytosis is also your previous year question. This is also what's your previous year question. Ab aaya synaptophysin, chromogranin, NSC and CD56. They are neuroendocrine. For example, small cell cancer. That is what's a small cancer. No, small cell cancer. Done. So again, I would love to repeat for all of my friends. Cytokeratin is carcinoma. Vimentin is sarcoma. Desmin is rhabdomyosarcoma. HMB45 melanoma. S100 Langerhans cell histiocytosis. Then synaptophysin, chromogranin, and NSC and CD56, my dear friends, neuroendocrine tumor. Wow. Congratulations and salute to each one of you for doing so much of hard work. May God bless you always, each one of you. जो भी है साथ नहीं है जुड़े,
everyone, God bless our hard work and we are going to rock together day after tomorrow. ये आवाजें, ये मेहनत कहीं भी बेकार नहीं जाएगी. आप किसी भी सेशन में जाते हो गाइस, जस्ट रिमेंबर माय कीवर्ड, आप प्लस में ही होके आते हो, माइनस में कभी नहीं. किसी भी सेशन में, किसी भी टीचर के सेशन में जाते हो, वो टीचर अपना बेस्ट ही आपको देता है. कोई भी आपसे नॉलेज छीनता नहीं, उल्टा आपकी नॉलेज बढ़ाता ही है. सो एक बारी 1000 होने की खुशी में आज इस विराट सेशन को विराट बनाने के लिए आप एक एक इंसान का, एक एक योद्धा का शुक्रगुजार हूं. और ब्लेसिंग्स तो है ही है, ऑलवेज हम सब पे रहे, आगे भी रहे, उन्हीं का मार्गदर्शन है मेरे प्यारे दोस्तों. सो वी आर 1100 राइट नाउ. सो गाइज एक बार हो जाए, आई विल पास, आई विल पास, आई विल पास, आई विल पास, आई विल पास. लव यू ऑल. तो पूरे इंडिया से कहां से लोग हमें देख रहे हैं, जस्ट राइट इन द चैट. आई नो people will not be staying till night because people have to travel today also. बहुत सारे लोग travel भी कर ले and many things are there, but video will be there, it will not be removed, my dear friends. This is for all of you. And guys, just I will pass, I will pass, I will pass, I will pass, I will pass. This is big moment for anyone. मैंने तो hope छोड़ दी थी कि मैं शायद अब छोड़ दूंगा सारी चीजें, बट रोज तुम लोगों ने मेरे को मोटिवेट करा. एक टफ टाइम आया लाइफ के अंदर जब आप लोगों ने मुझे मोटिवेट करा, चीजें भी नहीं थी, ठीक है, सब लोगों ने सपोर्ट करा, और आई एम जस्ट हियर बिकॉज ऑफ यू पीपल एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. नथिंग लाइक इट्स टू मच फॉर अ स्मॉल पर्सन लाइक मी. ठीक है, तुम लोगों का इतना ज्यादा प्यार, मतलब जी भर के, मतलब सदके जावा यार, लाइक जी आया नु. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. लव यू गाइज, लव यू गाइज, लव यू गाइज. ठीक है, चलो गाइज, चलो 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 चलो, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इज ऑंकोजीन. सर ऑंकोजीन में से क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर आ सकता है दोस्तों. एंड अगेन, इन सो मेनी पीपल आर लाइव गाइज, प्लीज इफ एनी नीड इज देयर सर, पी जमवाल 7, जितनी मेरी औकात होगी ना सर, जितना मेरे से बन पाएगा आई विल डू. जो भी मोटिवेशन देते देते कई बार गाइस टच वुड यार खुद की भी चली जाती है. इतना बार होता है ऐसा कि खुद का भी ऐसे परेशानियां चल रही होती है लाइफ के अंदर 10, बट फिर भी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं कुछ ना कुछ तुम्हें अच्छा ही कर पाऊं. और टीम की बहुत बड़ी सपोर्ट है यार, बहुत बड़ी सपोर्ट है. सारे लोग, डॉक्टर रितेश है, वो साइलेंट बंदा है मेरे साथ में, देखा हमेशा जो है हेल्प के लिए. थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जीन एंड द कैंसर. वी टॉक अबाउट द रेट जीन. रेट के अंदर लॉफ और गॉफ वी हैव स्टडीड. लॉफ एंड गॉफ वी हैव स्टडीड माय डियर फ्रेंड्स. लॉफ इज हचपंग डिजीज. लॉफ क्या है सर हमारा? हचपंग डिजीज. लॉफ इज व्हाट सर? हचपंग डिजीज. गॉफ इज व्हाट सर? गॉफ इज मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा. लॉफ इज हचपंग. लॉफ हो रहा है, बड़ा हो जाता है, मेगा कोलॉन, हचपंग डिजीज. लॉफ क्या है सर? हचपंग. मेगा कोलॉन क्या हो जाता है सर? मेगा कोलॉन, मेगा कोलॉन. एंड गॉफ इज व्हाट सर? मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा. Now C-KIT is just my dear gastrointestinal stromal tumor. ABL, CML is better answer than AML. जैसे CML आया, you have to think about the drug of choice. What is the drug of choice, my dear friends? What is the drug of choice right here, sir? क्या होगा drug of choice? Drug of choice CML is imatinib. Imatinib. We are going to talk about the hematology also. KRAS is K, Kalan, it is colon cancer. Kalan is colon cancer. H रास, H फॉर हल्का. हल्का कहां से होते हैं? किडनी और ब्लैडर में से. हल्का कहां से होते हैं सर? किडनी और ब्लैडर में से होते हैं गाइस. ब्लैडर एंड किडनी ट्यूमर, ब्लैडर एंड किडनी ट्यूमर, ब्लैडर एंड किडनी ट्यूमर. नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स C my C is Burkitt lymphoma. Moment Burking is coming, sir. Automatically in the head is what, sir? Your starry sky appearance is coming. 814 is coming. Ultimately L my C. LMIC, guys, remember small cell lung cancer. L for lung, L for LMIC. Then coming NMIC, N for N, neuroblastoma. So C my C is Burkitt. Cute कौन है? Burkitt. L for cell lung carcinoma, N for neuroblastoma. बर्फ जैसे बाल किसके हैं? मेरा ना स्कूल के अंदर, मैं बताऊं 12th क्लास में लखनऊ में पढ़ता था, मेरा दोस्तों ने नाम रखा था बर्फ. कहते तुम्हारे बाल ऐसे बर्फ जैसे हैं. तो बर्फ इज हेरी. किसके बाल? पारस सिंह के बाल. हेरी सेल ल्यूकेमिया. It is what, sir? Your hairy cell leukemia. This is nothing but your hairy cell leukemia. Then coming to the JAK is what, sir? Myeloproliferative neoplasia. तो ये सारे के सारे एक बारी दिमाग में रट्टा मार लेना, आपको याद हो जाएंगे. Now I would love to repeat it because these are important. RET is LOF के अंदर Hutchpung disease. GOF is medullary thyroid carcinoma. Next is what, sir? C-KIT is just. ABL is what? CML, AML.
K RAS colon, H RAS bladder kidney, C MIC is Burkitt, L MIC is small cell lung cancer, N MIC is neuroblastoma, BRAF is hairy cell leukemia, JAK is myeloproliferative neoplasm. Myeloproliferative neoplasm. Dandana, 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 done. Now we are coming. Yes, dry trap, fried egg appearance medico. Very good. Vasculitis के अंदर directly we are going to jump onto P ANCA, NC ANCA, my dear friends. This is highly important, my dear friends. P ANCA mnemonic is PCM, C for Churg-Strauss syndrome, M for microscopic polyangiitis. Churg-Strauss and microscopic polyangiitis. C ANCA is Wegener's granulomatosis, my dear friends. Then other than that, you have to remember rule in the vasculitis, which is commonly asked. मेरे प्यारे दोस्तों, ये रूल बहुत कॉमनली आस्क होता है एग्जाम के अंदर. सो माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 1 इज डायग्नोसिस ऑफ ऑल वैस्कुलाइटिस एंटीबॉडी या फिर बायोप्सी की मदद से करते हैं. एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल वैस्कुलाइटिस इज स्टेरॉइड एक्सेप्ट दीज 3 डिजीजेस. व्हाट आर द 3 डिजीजेस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर? What are the what are the 3 diseases we are going to learn, sir? Berger's disease. Berger's disease, you have to stop the smoking, and we are going to discuss this disease. Kawasaki, you all know, everything was RRRRR. Everything was what, sir? RRRR. It is IVIG. Then Wegener's granulomatosis, sir, cyclophosphamine. Sir, Wegener's के अंदर G से C को replace करा CN का से remember cyclophosphamine. CN का से क्या सर? Cyclophosphamine. 1,500 लोग live. मेरा खुद का रिकॉर्ड टूट चुका है लाइव का. आज कहते हैं अपने रिकॉर्ड आप ही में तोड़ते. टचवुड यारो, टचवुड. भारत माता की जय यार, भारत माता की जय दोस्तों, भारत माता की जय. मतलब मैं भूला नहीं सका ना. एनर्जी कहां से आती है दोस्तों? एनर्जी यहीं से आती है जब आप लोग इतना साथ देते हो ना. तो ना खाना पीना जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. लव यू ऑल, दिल खोल के लव यू ऑल यार, बहुत ज्यादा ट्रक भर के लव यू. ओहो मेरे यारो, तुमने मतलब सारी मेरी जो है ना मेहनत मोड़ दी आज मेरे को. बस इतना ही मूवमेंट काफी था. ये मेरा 2024 का बेस्ट मूवमेंट हो गया ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड्स. लव यू ऑल यार, लव यू ऑल सच्ची यार. लाइक कांट से. Temporal arteritis or giant cell arteritis. Temporal arteritis or giant cell arteritis. Guys, remember this was exam question. Temporal arteries involved facial pain है, chewing है, या फिर मुंह चलाते हो दर्द होती है, बॉडी में पेन होता है. टेम्पोरल आर्टरी का बायोप्सी लेते हैं और इसमें ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड देते हैं. एंड गाइज स्टीरॉइड की बात करूं तो रूल ऑफ 60 इज देयर. व्हाट इज देयर सर? रूल ऑफ 60 इज देयर. फीमेल मोर देन 60 years. What is there sir? Female more than 60, ESR more than 60, female more than 60, ESR more than 60, and prednisolone steroid we are giving 60 mg. This is just a short thing you need to remember for the exam. Short thing you need to remember for the exam. Now pan condition occur due to inflammation. Very good. Which type of inflammation? pan में 3 लफ्ज आते हैं, 1 2 3. type 3 hypersensitivity. Very easy. pan में 3 लफ्ज आते हैं, that is why remember type 3 hypersensitivity. पान कैन इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गन्स, पर पान कभी लंग्स में नहीं जा सकता. दैट इज व्हाई इट विल नेवर इन्वॉल्व द लंग्स. Diagnosis is biopsy, treatment steroid. Again Kawasaki. How? Sir, red eyes. Yes, redness of BCG, rash on the body, irritability, fever, and red tongue. Strawberry tongue is seen in Kawasaki. IVIG plus aspirin. We have to give Kawasaki. Kawasaki. Dandana, 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 done. Now coming Churg-Strauss. Churg-Strauss is something associated with the allergy, and remember allergy in which IgA may be increased. Asthma, eosinophilia would be seen. Allergy cases के अंदर क्या देखने मिलता है सर? Eosinophilia. Diagnosis is P ANCA. What is the diagnosis right now? P ANCA would be diagnosis. Churg-Strauss के अंदर, and treatment is steroid. Hinod, Scholin, purpura. What I'm feeling, this question would be there. This question would be there in the exam, my dear friends. Remember, Hinod, Scholin, purpura. Most common vasculitis in the children is Hinod, Scholin. Again, I would love to repeat that. Hinod, Scholin, purpura is the most common vasculitis in the children. It starts 1 to 2 days after the viral illness. 1 to 2 days after the viral illness. Palpable purple rash, ये word दिमाग में उस दिन आएंगे. Palpable purple rash associated with IgA. Whenever we are taking a biopsy of this rash,
we are going to see IgA antibodies. We are going to see what, sir? IgA antibodies. And guys, self-limiting condition 90%. If examiner is asking you what is the initial treatment, it is self-limiting 90%. If it is not resolving, then low dose steroid. Hinosh-Sholin purpura बच्चों के अंदर most common होता है. If treatment asking, then low dose steroid for 7 days. You have to remember, low dose steroid for the 7 days. Dandana, 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 done. चलो आगे बात करते हैं सर. Berger disease, you all know, because of smoking there is a narrowing of the arteries. This is gradual arterial obstruction. It takes some time. Young male smokers presenting to you with the black hands like this. On angiography, what appearance you are going to see, my difference? On angiography, what appearance you are going to see? On angiography, you are going to see corkscrew appearance. Corkscrew appearance. And if on diffuse, if on barium swallow, you are going to see the corkscrew appearance, that would be diffuse esophageal spasm. खत्म हो गया सर. चलो ये भी खत्म हो गया. लीवर की बात करेंगे. Let's differentiate between the acute and the chronic viral illness. Sir, acute viral illness less than 6 months, more than 6. Acute viral illness, you are going to see Councilman bodies, and chronic viral illness, ground glass bridging. Ground glass, अब glass का bridge बनाना है तो ground glass hepatocyte bridging fibrosis, bridging fibrosis. Dandana, 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 done. Now marker of hepatitis B. I told you one question would be there. If it is acute condition, IgM would be there. Chronic condition, IgG would be there, and that will become very simple for all of you to remember. HBS मतलब स्वागत हो गया, virus has entered. HBC antigen not detected. HBE मतलब infectivity is there. What is there, sir? Infectivity is there. Now anti-HBC, IgM is a marker of acute and G is a marker of chronic. Anti-HBE antibody, end of infectivity. Guys, if only this is present, do you know what we consider that? We consider person as vaccinated. We consider person as vaccinated. Is only, nothing is given, only anti-HBE antibody is given, and HBS antibody means cured. Now drug, let's remember, hepatitis B, drug of choice is tenofovir, entecavir, lamivudine, and hepatitis C, C is cute. Who is cute? Lady is cute. तो क्या बोलता है? Lady Pasvir Sofosbuvir. What is there, sir? Lady Pasvir Sofosbuvir. Lady Pasvir Sofosbuvir. Nothing important right now. Now we are moving on to the next, called as what's are your WBC ka number 1 is Hodgkin's lymphoma. Now before that, I just want to show you these two needle, Salah and Kalima. Salah and Kalima. In Salah S side pe you are going to see this spherical hook right here. Salah mein side pe you are going to see the spherical hook, and Kalima is L for long. You are going to see after this spherical thing, there is a long needle. There is a long needle, my dear friends. Now coming to the Hodgkin's lymphoma. Hodgkin's lymphoma, Epstein-Barr fever is associated. Hodgkin's lymphoma में what are the features? पैल, एब्स्टीन फीवर, नाइट स्वेट आते, रातों को पसीने आते, अल्कोहल के साथ सिम्टम वर्सन. गाइस, symptom worsen with the alcohol, and guys, painless cervical lymphadenopathy is there. Now histopath examination, 2 variants are there. Also you remember Reed-Steinberg cells are associated with the Hodgkin's lymphoma. They are associated with the Hodgkin's lymphoma. Now 2 variant, lacuna is the space. If space is around that is called as lacunar variant. If popcorn is there, that is called as popcorn variant. Popcorn variant is most commonly seen in NLPHL, nodular pre-lymphocyte predominant Hodgkin's lymphoma, which is the overall most common type of Hodgkin's lymphoma, nodular predominant. My dear friends, we are going to talk right now lymphocyte rich. Worst prognosis would be of a lymphocyte poor. सर गरीब होना बुरी बात होती है. Mixed cellularity is most common in India, क्योंकि इंडिया में people are mixing everything. Nodular, nada is long. That is why it is most commonly seen in the world. Now lymphocyte predominant is having the best prognosis. Lymphocyte predominant is having the best prognosis, and drug of choice for Hodgkin's lymphoma again ABVD. ABVD de Villiers है ना सर? Adriamycin. मेरे साथ साथ बोलो. Yes, everyone has to speak along with me, my dear friends. Adriamycin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine. Dandana, 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 da. Coming to the next, non-Hodgkin's lymphoma. The next thing is what, sir? Non-Hodgkin's lymphoma. My dear friends, feedback देते रहना. Speed is fine or not? Just give me feedback. How is speed? Speed ठीक है कि नहीं है? Just I want to know the feedback, my dear friends. What is the feedback right now, sir? What is the feedback, my dear friends? Feedback क्या है? चलो चलो फीडबैक क्या है सर? रिमेंबर, चलो जी, यहां पे everything is going fine, everything is going fine. Now we talk about the follicular cell lymphoma. Follicular cell lymphoma, guys, remember
B cell lymphoma. Follicle कैसा है? B cell lymphoma. Yes, there would be what sir? Follicles. The cells are arranged in follicles. और कैसा है? 14-18. कैसा है सर? 14-18. And कैसा है? BCL2 gene overexpression is seen. What is seen right here sir? BCL2 gene overexpression. BCL2 gene overexpression is there. Burkitt के अंदर 8-14 is there. Starry sky appearance is there. What else is associated with the working? C-MyC gene overexpression. कौन सा gene है sir? C-MyC gene overexpression. Then coming to DLBCL, sir, DLBCL dirty cells are there. MyC translocation is there. What you are going to see, sir? MyC, MYC translocation, plus there will be T314 plus BCL6 gene overexpression is there. Done. मेंटल सेल, मेंटल कौन है? मेल. कौन करता है? फीमेल. ट्रांसलोकेशन 11-14. क्या है सर? 11-14. इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑन साइक्लिन D1 जीन. कौन सा जीन है सर? साइक्लिन D1 जीन. लिम्फ नोड बायोप्सी यू आर गोइंग टू सी स्मॉल क्लीव्ड सेल. ये भी क्लियर हो गया सर. कमिंग टू द हेरी सेल लिम्फोमा, ट्रैप पॉजिटिव है गाइस, ब्राफ का म्यूटेशन है. रिमेंबर honeycomb or fried egg appearance, and drug of choice is cladribine. What is the drug of choice, my dear friends? The drug of choice would be what sir? Cladribine. The drug of choice is what sir? Cladribine cell. It's not a fungal infection. Very simple answer. Anaplastic large T cell lymphoma, ALK gene mutation, ALK2P, ALK gene mutation on 2P hallmark cells are seen. Now, treatment of non-Hodgkin's lymphoma is very simple, my dear friends. What is the treatment? R-CHOP is the treatment. Rituximab, cyclophosphamide, hydroxyduono-rubicin, oncovin, prednisolone. Yes, what is the answer right here, sir? Rituxi, R-CHOP, ABVD is for Hodgkin's lymphoma, R-CHOP regime is given for the non-Hodgkin's lymphoma. Very simple and sorted. Now we are moving to the next topic called as CML. CML clinical feature is hepatosplenomegaly. Guys, 922 Philadelphia chromosome is there. ABL BCR gene is active. What is active, sir? ABL BCR gene is there. Which appearance is this? This is garden party appearance. Which appearance is this, sir? Garden party appearance is there. Next is tyrosine kinase activity. What is tyrosine kinase? Who is blocking this activity? That is imatinib. So imatinib is a drug of choice in CML, my dear friends. And bone marrow biopsy, garden party appearance, college girl appearance you are going to see. Other than that, confirmed diagnosis is fish. Now AML, my dear friends, OR rods are there. Most common type is M2 where OR rods are thin. Most significant is M3. M2 के अंदर कौन सा translocation is there? Guys, remember it is 821. Which translocation is there, sir? 821. Most significant is M3, that is translocation 15 and 17 is there. Gingival infiltrate are seen with M5. Gingival infiltrates are seen with M5. Most common type M2. Most common M2. कौन सा वाला? 821. M3 15 17. Gingival. Now what about the Down syndrome? Down syndrome, it's M7. Down syndrome is was M7. Can come in your exam. Treatment is steroids, cytarabine, duono-rubicin, and bone marrow transplant. You have to remember like this. Now coming to the CLL. CLL, guys, Richter transformation, DLBCL, adult or elderly CLL. कैसी बातें, आवाजें कैसी आती? आहा, autoimmune hemolytic anemia, smudge cell, parachute cell, basket cell, they are also associated with CLL, my dear friends. And drug of choice is fludarabine. ALL सबको पसंद है बच्चे. So ALL most commonly seen in the children. L1 is most common. L3 is having worse prognosis associated with Down syndrome, and drug is VAPU. तो बच्चे का दूध कौन पिएगा? VAPU. Vancomycin, asparaginase, prednisolone, doxorubicin, and treatment of choice in all of these leukemia is bone marrow transplant. Is what's that? Bone marrow transplant. Now coming to the next important thing is iron deficiency anemia. Sir, 100% exam question on 20th of January. What is that, sir? Iron deficiency anemia. Most common type of anemia. Iron in the blood in the form of transferrin and stored in the form of teen ka dabba, that is ferritin. Now, my dear friends, remember only TIBC and FEP is high. Rest everything is low. TIBC, FEPP high, rest everything is low in the iron deficiency anemia. Other than that, my dear friends, remember on peripheral smear, what you are going to see? Normocytic hypochromic cell or pencil shape RBCs. Normocytic hypochromic cell pencil shape RBCs plus cholionicia, that is spoon shape nails. They all are associated with the iron deficiency anemia. And if hemoglobin is less than 7, PRBC we will give. If hemoglobin is more than 7, oral we will give what's a ferrous sulfate, and IV route we can give ferrous sucrose या फिर carboxymaltose. Now sideroblastic triple S disease. Sideroblastic कैसा है? Triple S disease, guys. Serum iron, serum ferritin level would be high. Serum iron,
serum ferritin level would be high, and guys, peripheral smear basophilic stippling would be there. And because why there is a basophilic stippling? Because of the lead poisoning and the iron overload. Lead poisoning and the iron overload is there. Because of the lead poisoning, you will see wrist drop and foot drop. Why wrist drop is there? Wrist drop is because of the involvement of the radial nerve. Why foot drop is there? Foot drop is because of the involvement of the common peroneal nerve. Because of involvement of what's the common peroneal nerve. Now coming to the next is AOCD. What is AOCD? Anemia of the chronic disease. Chronic inflammation is happening, then there will be a macrophage. Macrophage will activate the hepcidin. What hepcidin is going to do? Hepcidin is going to lock the stored form of iron. Hepcidin is going to lock the stored form of iron. That is why when we'll do the blood investigation, we will see serum ferritin level is high, rest everything is low. Serum ferritin levels are high, rest everything is low. This is AOCD. AOCD. What you will do? The cause was chronic inflammation. Treat the cause. Thalassemia, beta thalassemia, guys, remember crew cut appearance is seen in both beta thalassemia and sickle cell anemia, my dear friends. Other than that, you are going to see teardrop cell and target cell. Teardrop cell, target cell, they are seen in beta thalassemia. Now, guys, remember sickle shape RBCs are seen where, sir? It is your sickle cell anemia. Also, sickle cell anemia is associated with Salmonella typhi. Salmonella typhi. This was exam question. Dandana, 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 dun. Now coming to the splenectomy, if we do, sir, auto splenectomy, खुद से खुद को काटता है, sickle cell anemia. Planned is done in H spherocytosis, elliptocytosis, AHA. In these diseases, we are planning the splenectomy, and which body we are going to see, sir? Howell Jolly body. Which body we are going to see, sir? Howell Jolly body. Now G6PD deficiency anemia, we talk about this thing. Oxidative stress होता है, damage होता है, जिस वजह से we are going to see Heinz body and white cell. We are going to see what, sir? Heinz body, white cell. Now coming to the AHA, autoimmune hemolytic anemia associated with CLL. The treatment is steroid. If not working, IVIG. Next is splenectomy. After splenectomy, you are going to see what, sir? Howell Jolly bodies. Megaloblastic anemia, most common causes vitamin B12 ka deficiency. Guys, remember hypersegmented neutrophils are seen in megaloblastic anemia. Hypersegmented neutrophils are seen in megaloblastic anemia. Other than that, folic acid and vitamin B12, two deficiencies are associated. Folic acid is nothing but vitamin B9. They both are associated with the megaloblastic anemia. Guys, remember, folic acid, F for F, Figlu test is there, and for vitamin B12, Schilling test is there. Aplastic anemia, normally what is there, sir? There will be a hematopoietic stem cell and fat cell ka ratio, that is 1:1. Hematopoietic stem cell and fat cell ka ratio is 1:1, my dear friends. Because of aplastic anemia, your hematopoietic stem cells are removed. What is left? Only fat cells are left. If only fat cells are there, everything would be low. What is low, my dear friends? RBC, WBC and platelets. Now we'll do some pharma part here only. If your RBC is less, you have to increase the RBC. What you will do, sir? Darbepoetin, epoetin. What you will do, sir? Darbepoetin, epoetin. If platelets are low, you have to increase the platelet. That is eltromobopeg. And if WBCs are high, filgrastim, sagramostin, filgrastim, sagramostin, filgrastim, sagra, filgra, sagra, filgra, sagra, filgra, sagra, dandana, 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 dan. Now coming to this thing, this we have to remember. GP1B9 deficiencies, addition defect. Werner का सोल नहीं चिपकता तो बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम. GP1B9 deficiencies, addition का defect. Bernard Solier syndrome is there. GP2B3A. 2B3A is aggregation defect. Glanzmann. Man को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है. Glanzmann thrombasthenia is there. With this, we have completed our second subject, that is called as what, sir? Pathology. How are you people? कैसा लग रहा है? अब हम स्टार्ट करेंगे अपने 10 मार्क्स वाले सब्जेक्ट को, सर. देख रहे हो कितने प्यार प्यार से चीजें खत्म हो जा रही है जब हम इसको साथ साथ में कर रहे हैं. प्यार प्यार से साथ साथ में करेंगे तो चीजें ऐसे ही खत्म हो जाती है. हाउ इज द जोश, माय डियर फ्रेंड्स? हाउ इज द जोश, माय डियर फ्रेंड्स? जोश कैसा है? हाउ इज द जोश? ठीक है, हाउ इज द जोश, माय डियर फ्रेंड्स? हाउ इज द जोश? जल्दी से बताएंगे सर. हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? यस माय फ्रेंड्स, हाउ इज द जोश? यस,
Josh is high. It should be high. It must be high. Now we are moving on to the next third subject, that is called as FMT. FMT ke andar, guys, remember IPC is now, this can be question, just the name, my dear friends. IPC is now replaced with BNS. What is BNS? Bharatiya Nyaya Sanstha. That is what's a Bharatiya Nyaya Sanstha. And next thing is CRPC, now replaced with BNSS, that is Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Then Indians Evidence Act is replaced by Bharatiya Sakshya Bill. It is replaced by Bharatiya Sakshya Bill. Bharatiya Sakshya Bill. Now coming to the next thing, cognizable offense. This is previous year question. Arrest without warrant, rape, ragging, rash, robbery, and what they are coming under 2C CRPCs. Very cute answer, 2C CRPC. Chalo, ye bhi khatam ho gaya. Now we talk about the other things which are coming in non-cognizable. Then dowry death. Stalking means to follow someone. Voyeurism is to watch sex. कोई भी अगर कोई sex कर रहा है, तुम अगर ऐसे जा करके वहां से देखते हो चोरी चोरी, that is very bad, my dear friends. Now level of courts in India, remember 3, 2, 3. This is the rule to learn this. Highermost court is Supreme Court, then High Court, then Session Court, then there will be additional and assistant session, then there will be Chief Judicial Magistrate, first class magistrate, second class magistrate. Sir, Supreme Court is there in the country, High Court is there in the state, and Session is in the district. Now, if death sentence is given in the Session Court, it will go to High Court to Supreme Court. After Supreme Court, you can go to President. This is called as amnesty. Chalo, ye bhi khatam ho gaya. Now, police versus magistrate inquest. Police inquest comes under 174 CRPC and magistrate comes under 176 CRPC, my dear friends. Yes, peeping Tom, Surbiji. Minimum level of constable is head constable. Guys, remember, magistrate, police, custody, firing or interrogation. If death is happening, who will come? This was question. Judicial magistrate. Who will come? Judicial. If dowry death or exhumation. What is the exhumation? Digging of dead bodies called as exhumation. When it is happening in the bright daylight. What is the time limit of exhumation? Sir, it is lifetime. Who will come first? There will be a district magistrate, then sub-district, then executive magistrate would be there. Next thing I would love to discuss with you guys, dying declaration versus deposition. Declaration is something which is happening in India and deposition which is happening in UK and USA. In declaration, whatever the person is saying before dying would be legalized only after the death of a person, and in case of dying deposition it will be illegal or valid throughout the life. Chalo, next thing is what we are going to discuss, IPCs like 80 to 83. If the child age is less than 7 years, he is not liable for any crime. If the child age is between 7 to 12 years, yes, criminal responsibility is there. Yes, sir. Okay, criminal responsibility is there. Now, insanity is what, sir? IPC 84. Insane person not responsible for any crime. उसने अपनी मर्जी से शराब, insane person is something which is associated with EDH, my dear friends. Extradural hematoma in which middle meningeal artery is gone and you are going to see lucid interval. We all know this thing. Now, coming to the important thing is something called as 304A and B. Homicide not amounting to murder is having two IPCs. One is 30A and 30A and B. 304A is all about the apron. Who is wearing the apron? Doctor is wearing the apron. Medical negligence. 30B is all about the dowry death, my dear friends. Now coming to the hurts and simple hurt, in which do you have to remember only these two IPCs. 326A is for attack, B is for bach gayi, acid attack attempt, my dear friends. Sexual offense like rape, 375 is definition, 376 is punishment, 376A is rape victim dies or goes away, B is forceful sex after the divorce, C is custodial rape, my dear friends, and D is gang rape. 376E is excess heinous crime. 376E is what, sir? Excess heinous crime. Excess heinous crime. Dandana, 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 dan. Chal. उसके बाद में आया सर, this is previous year question topic, so you have to remember 312. Yes, 312 miscarriage with consent of mother. 313 is miscarriage without consent of mother, and 314 is mother's death due to the criminal abortion, my dear friends. And 317, not that important, but abandonment of a child less than 12 years. Coming to the next chapter, we have to talk something right here, sir. Anterior cranial fossa, you are going to see raccoon or panda, cribriform fossa, cribriform plate is damaged. Then petrous part of the temporal bone is damaged, that is by battle sign is there, which is seen in the middle cranial fossa ka fracture. Now guys, remembering, thank you so much, Dr. Nitesh. Coming to the next thing is laceration. The laceration types are important. In laceration type, split laceration.
If the bony prominence is there and you will hit the skin will be divided into two parts. This is split laceration. If you will tear skin like this is called a stretch laceration. Avulsion laceration is whenever there is a rotational force. Whenever there is a rotational force, there will be degloving injury, and in degloving injury, a fascia never comes outside. Cut laceration, heavy weapon like axe with a sharp edge. Heavy weapon like axe with a sharp, like guys remember, sharp edge is there. You will hit the body part and you will see the skin is gone. Along with the skin, your bone is also gone. Now coming to the next thing, we are going to talk very important, stab injury, entry and exit wound. Stab injury, entry wound is large, exit is small. If we compare this with a gunshot injury guys remember, your entry wound is small, exit wound is large. Done. This is the previous year question, most common type of skull fracture, where you are going to the single fracture line. This is called as linear fracture. Whenever you are hitting with the hammer, there will be a depression. This is called as depressed fracture. Then multiple fracture lines. Okay, multiple fracture line, my dear friends, they are communicating with each other. This is called as combinated fracture. Then if fracture line is running along the suture line, this is called a sutural or diastatic fracture. Ping pong fracture is there. Whenever there is a forceps delivery, there will be a depression on the head of a baby. This is called as what's a ping pong fracture. This is called as what's a ping pong fracture. Coming to the next thing, what we have to do right here is gunshot ke injury ke ranges are important. If there is a contact shot, you will see there will be a stellate wound, cruciate margin, star-like wounds are there. That means shot is taken from 0 meter. The shot is taken from 0 meter. Coming next is close shot. Close shot is less than 1 meter. Close shot is less than 1 meter. And moment there is a gunshot, there will be a fire. Because of fire, there will be a blackening, burning, tattooing. You are going to see what's that? Blackening, burning, and tattooing. Now coming to the next thing is intermediate shot. Intermediate shot, the dispersion has just started. That is why single hole with the small holes are there. And after 4 meter, complete dispersion has happened, my dear friends. Remember, there will be small holes you are going to see. Small holes you are going to see. Now there will be a difference between entry and the exit wound. Entry and the exit wound. In the entry wound, margins are inverted. Entry wound ke exit wound ke margins are everted. Inverted and everted. Done. Type of bullets you can also do, my dear friends. Car injury is something which is important right here. If there is the car injury, guys, if there is a car injury, there will be a hyperextension of the neck. Because of the hyperextension of the neck, you will see there will be a whiplash injury. Now your glass particles are coming onto your face. Because the glass particles are coming onto your face, there will be sparrow feet mark. And your steering is touching the aorta. That is why there will be a tear of aorta. And seat belt, it will be a mesenteric injury. There will be what's a mesenteric injury. Chalo, ye bhi clear ho gaya. Moment there is a blast injury, primary blast, what will happen? There will be air compression. Because of air compression, which organ will be gone first? Your ear will be tympanic membrane. Secondary blast, objects are coming. Because objects are coming, they'll be hitting to the body. There will be a pattern, aberration, contusion, laceration. This is called as Marshall stride, my dear friends. This is called as Marshall stride. Now coming tertiary blast injury, thrown away on the ground or wall. The most common organ which is injured in under blast is what's an intestine. It's what's an intestine. Ye bhi khatam ho gaya. Now we are going to talk about something called as torture method. Beating ear is called as, yes, very simple, telephona. ठीक है? चलो उसके बाद falanga और bastinado, beating the soul. Dry submarine is plastic bag on the face. Wet submarine is head underwater. Parrot's breech is hanging person on rod or pole. Saw horse is making person sit on a triangular surface. ठीक है? Triangular surface. ठीक है? Triangular surface. Or black slave, insertion of hot metal into the anus of victim. Planton, if we talk about the planton, ठीक है? Planton is prolonged standing, and ghotna is rolling of heavy wooden log over the leg. Heavy wooden log over the leg. Done. Now coming to the thanatology, guys, remember somatic and the cellular death is there. First, your heart, lung, and brain also stop working. This is called as Bishop tripod. After some time, your cells will start dying.
Moment your cells will start dying, there will be a time gap between them, that is called as supravital period. Now what are the postmortem changes? Something which is very important, guys. Length will increase. Eyes के अंदर two changes are there. What two changes you are going to see? One is retinal vessel segmentation, that is why there will be a railroad phenomena, plus there will be a trachinoid. Guys remember sclera is involved. Now algar is like a LG का fridge. LG fridge के अंदर temperature is decreasing. LG का फ्रिज के अंदर टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. रेट ऑफ फॉल इन समर इज 0.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर. इन विंटर इट इज 0.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, माय डियर फ्रेंड्स. नाउ पोस्टमॉर्टम कैलोरिसिटी. इन सम कॉजेज ऑफ डेथ इनिशियली द टेम्परेचर विल इंक्रीज. In some temperature will increase, my dear friends. That causes are like the bacterial activities most in the septicemia, heat stroke, pontine hemorrhage. These are some causes in which initially the temperature will increase and then it will decrease. Now liver mortis, guys. Liver mortis is post-mortem staining. Liver mortis, mechanism of liver mortis. After that, the blood in the body parts pool in the dependent area, and this is bluish purple because of deoxyhemoglobin. And guys remember, drowning in the river, post-mortem staining is absent. In such cases, post-mortem staining is absent. Now we talk about the color and the cause of death. And guys remember, carbon monoxide. This question is very important in the exam. Carbon monoxide poisoning, cherry red staining is there. Cyanide poisoning, brick red is there. Cyanide poisoning में क्या होता है? Brick red, hydrogen sulfide, bluish green is there. Opium poisoning, black color is there. Now we coming to the ban. Benzene, aniline nitrate. Benzene, aniline nitrate is chocolate brown. Hypothermia is pink color. Hypothermia is what's a pink color. Dun, 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 dun. Now rigor is something rigidity, decrease in ATP is happening. First overall most common site is myocardium. External side is eyelid. From eyelid it will go to toe and finger. This is called as Niston's rule. Another rule is rule of 12, where it will involve in 12 hours. It will involve all the muscle. In 12 hours it will remain, and after 12 hours it will disappear. Now coming to the other things, now we are going to talk about the putrefaction. The surest sign of death is putrefaction. जब हमारी बॉडी सड़ने गलने लग जाती, that is called as putrefaction. Putrefaction is the surest sign of death. Most common bacteria is Clostridium welchi. The enzyme involved is lecithinase. The enzyme involved is what's that? Lecithinase. First color change is, first external change is greenish discoloration of the sulfा hemoglobin की वजह से there is a greenish discoloration of the right iliac fossa. First, marbling is there because body is shrinking. The vessels is now what's a prominent. The vessels are prominent. Maggot formation is seen. Yes, gas production. Why there is gas production? Because bacterial activities are happening. The lecithinase is now enzyme which is degrading the body. Because of that, you will see the gas is produced hydrogen sulfide, which will ultimately helps body to float. Now remember, Casper dictum is a rate of putrefaction. Again, a previous year question, my dear friends. Yes, air, water, and soil. Air is 1 week, water 2 weeks, soil 8 weeks. Air 1 week, water 2 weeks, soil is 8 weeks. Done, 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 done. Now, putrefaction में सबसे पहले adiposity. What is happening, sir, in the body? The fat is converted into fatty acid. They bind with the calcium. After binding with the calcium, there will be adiposity formation. The smell is ammonical. What type of climate you need? Warm, moist climate. How much time you require? 3 days to 3 months. Done, done, done. Mummification is drying and dehydration of the body. What is mummification? The drying and dehydration of the body is called as mummification. Smell is odorless. Embalming in something in which we are injecting the fluid inside the body to preserve the body. That is PMKGF. Phenyl, methanol, glycerin, formaldehyde, as a phenol, methanol, glycerin derived, and formaldehyde, etc. and etc. Now we are going to talk about the postmortem changing. In postmortem, guys, remember something called as medico-legal autopsy के types. The previous year question was there in the exam from this topic also. Guys, num is luteal method. लुट गया सारा, entire organ mass is removed. लुट गया, luteal method क्या है? लुट गया, सारी चीजें क्या है? लुट गई. Guys, next, ठीक है? नेक्स्ट इज गॉन्स मेथड. गॉन्स मेथड क्या है? एक एक करके जाएगा. कैसे जाएगा? गॉन कहेगा एक एक करके. पहले थोरेसिक कैविटी, फिर एब्डोमिनल, पेल्विक कैविटी से, सर्विक्स की साइड से ऑर्गन करते, एक एक करके जाएगा तो गॉन. एन ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक. विर्चुअस मेथड,
body organs are removed one by one. पेट गया, lungs गए, अलग अलग करके निकाले जाएंगे. This is called as Virchow's method. Virchow's method. Then Rocky Tensky अंदर ही रखता है, अंदर ही dissect करना होता है. Infectious diseases like HIV etc. we have to do inside, in situ only. Now coming to the next important topic, what we have to revise before the exam is identification method. Number one is poroscopy. If we talk about the poroscopy is by Locard. Cilioscopy is given by Suzuki, my dear friends. Lip printing का cilioscopy है. Locard has given us the exchange principle. What is exchange principle, guys? To study the skin pore is all about the exchange principle. The skin pores का study poroscopy. Palatography is by Alan. Anthropometry is all about the body measurement. They are all about the body measurement, my dear friends. Then coming dactylography, it is for the fingerprinting, my dear friends. Fingerprints are not the same in the identical twins. Also, this is called as quitlet shoe. Now, classification was given by Henry. Loop, whirl, arch is there. Permanent loss of fingerprint is seen in leprosy, radiation, and charring. Tattoo mark, if body is fully burned. अगर body पूरी जल जाती है तो tattoo mark कहाँ पे देखने मिलेंगे? Guys, if body is fully burned, the dyes goes into lymph nodes. If we talk about the superimposition, skull is matched with the actual photo. This was previous or recent exam question right here. So, dun, 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 dun. Now coming to the next chapter, that is all about the asphyxial death. If we talk about the asphyxial death, my dear friends, asphyxia, there will be triads in cyanosis, petechiae congestion. Cyanosis, petechiae congestion is there. You will see there will be a petechiae, there will be a red color spots, blood spots in the eye. This is called as Stardew spot. अगर किसी की ऐसे गला जलने से मौत होती है तो Stardew spots are there. Now coming to the next is smothering. It is closing of oro and nasopharynx. Then gagging is there where you are obstructing your oropharynx, my dear friends. और किसी की बारात जा रही है, मैं क्या करूँ? थोड़ा सा रुक जाओ. कोई तो घोड़ी चढ़ा हुआ है, मजा लेने दो उसको. कोई तो घोड़ी चढ़ा हुआ है, उसको भी मजा लेने दो. चलो ऑडिबल नाउ. वो भी कल मजे लेगा यार, थोड़ा खुश हो जाओ, तुम्हारे भी दिन आ रहे मजे लेने के. नाच लेते, अच्छी बात है, नाच लेते, क्या बुरा ये नाच लेते, है ना. चलो सर, सो बात करते हैं सर. गैगिंग इज ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफ द Am I audible, sir? Am I audible, sir? Am I audible, sir? कुछ सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है आप तक, sir? Just give me feedback so that I can continue. Choking is obstruction of foreign body in the trachea. Moment there is an obstruction, my dear friends. Thank you so much, my dear friends. ठीक है? घोड़ी मेरी लाइब्रेरी के सामने ही है, गुलाम नबी. वाओ. So guys, remember there we have to Hellman's maneuver we have to give. Working is something examiner love to ask, in which there are two traumatic asphyxia plus smothering is there. चेस्ट को भी ब्लॉक कर दिया सर, नाक को और मुंह को भी ब्लॉक कर दिया. दिस वर्किंग. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज दिस इज टिपिकल, एटिपिकल. ठीक है सर. टिपिकल नॉट इज प्लेस्ड एट द occiput. इफ इट इज प्लेस्ड एट एनीवेयर एल्स, दिस इज कॉल्ड एज एटिपिकल. इफ इट इज entirely the body weight is acting as a constricting force, this is called as complete hanging. This is called as partial hanging, my dear friends. Partial hanging, my dear friends, is clear. Now coming to the next thing, if we have to learn right here, is mugging. Mugging is strangulation with the elbow. Garroting is with the metallic collar. Throating is with the hand. Barzola with the stick. First cavity to open in the asphyxial death is cranium, then thoracic, then abdominal, and the last we will open the neck, my dear friends. चलो ये भी खत्म हो गया. Now drowning, we talk about the fresh water and the sea water drowning. In fresh water, increase in potassium is there. The cause of death is arrhythmias. In the sea water, sodium concentration will increase. That is why cause of death is bradycardia.
Cause of death is what's a bradycardia. ये भी खत्म हो गया sir. Other type of death is what's a your dry drowning. When a person is going inside the water, there is a laryngospasm. Because of laryngospasm, the person is not able to breathe, and water is also not going inside. The person will die. Near drowning is post drowning complication like infection, etc. The person was saved. The person was a saved, my dear friend, it was saved by someone, okay, but later on he died because of the electrolyte imbalance, infection, etc. and etc. Now coming to the yes, if antemortem drowning is there, if the death is happening inside the water, yes, there will be a what, cadaveric spasm. The grass particles will be there in the face. Cadaveric, the lungs बड़े हो जाएंगे, lungs बड़े होंगे. If lungs are inflated by water, then the pleural vessels will bleed. Yes, from mouth and nose there will be what's a mucoid leathery frothy discharge. Trachea में mud particles are seen. Diatoms are the unicellular algae which are seen in antemortem drowning. Which are seen where, sir? Antemortem drowning. Antemortem drowning. Washerwoman syndrome is seen in both because of the predominant gas produced, which is hydrogen sulfide. The body floating is there. In summers, remember the reactions happen faster. That is why in summer only 24 hours, and in winter it is 1 to 2 days. Now coming to the sexual offense, my dear friends, if we talk about the crime scene के ऊपर question आते हैं, guys remember examination of a rape victim is important. Sir, as a doctor you should know, you should not disclose the identity of a rape victim. Guys remember IPC 228. Remember IPC 228, and burden of proof in the male is always on the male. It is always on the male. Consent taken from the victim under 53 CRPC. Now you went on the crime scene, guys. Seminal stain is there. First sperm we are having. Barbie went to Florida to celebrate Christmas. Barbie Rios test, fluorescence test, Christmas tree stain. This is all for sperm. What is left for semen? Lactate dehydrogenase and acid phosphate. Lactate dehydrogenase and acid phosphatase. Coming to the blood stain, screening test is BP, benzidine peroxidase, that is blue color, phenolphthalein peroxidase, which is pink color, orthotolidine peroxidase will give us blue-green color. Confirmatory is very important. Spectroscopy is better than Takayama and Tickman. Yama motorcycle se niche गिरते red color ka bleeding is there. That is how you have to remember Takayama crystals, and Tickman is all about the rhomboid crystal you are going to see right here, sir. Now coming to the next is adultery, which is not banned in India. Having sex with another wife, other person's wife is not banned in India. You can have it, but that person can divorce you. This is all your choice. Coming to the next thing is penoanal intercourse is called as sodomy. Yes, two female having sex is called as lesbianism. The female is giving stimulus, oral stimulus to the male. This is called as fellatio, and male giving stimulus to the female is called as cunnilingus. It is called as cunnilingus, and this is called as fellatio, my dear friends. Done. Now coming to the sexual perversion. Yes, sexual perversion पे question आपकी बार एग्जाम में आएगा. Guys remember sexual perversion पे बात करेंगे. Sadism. Person enjoy giving pain. Yes, the person enjoy giving pain is called as sadist person, and person who enjoy taking pain is called as masochist. Like NB people love to give pain, and FMG people love to take it. ठीक है? Frotteurism, rubbing private part of the female is called as fetish. Is person who is attracted to the female objects, clothes, etc. Person who wears the clothes is transvestism. Exhibition 294, we can't masturbate in the public, and inside the room, yes, you are eligible to masturbate. No one is stopping you, but publicly you are not allowed to masturbate. Now, voyeurism is peeping tom. If you are watching someone from the keyhole like this is called as what's your voyeurism. 353C is a IPC you are going to be punished with. Now coming to the next thing is urophilia. Person enjoy watching and having the smell of urine. Masturbation, which you guys have never did in your life. My person enjoy shaking his own penis. Person enjoy shaking his own penis is called as masturbation. Bobbit, male genitalia amputated by a female. Scatology is nothing but a phone sex. Now coming to the next chapter, guys. Next chapter we are going to talk about, yes, we can go to directly to what's your, yes, this is MTP 2021. We can go directly to the MTP 2021. Guys remember indication: therapeutic, eugenic, humanitarian, social. Therapeutic is risk to physical or mental injury, risk to the mother. Eugenic is exposure to X-ray, teratogenic drugs, etc. Humanitarian is all about the rape, and socioeconomic is failure of contraception. It is what's our failure of contraception. Now 0 to 20 weeks, one doctor is required. 21 to 24, two doctors are required. More than 24 weeks, only one doctor is required, and that is only then in case of emergency, and that to review with the medical board. You have to review with the medical board, my dear friends. Coming to the next thing is, yes, next is toxicology.
So there are the neurotoxic, vasculotoxic, and the musculotoxic snake. And if we talk about the cobra and common crate, what type of snake they are? Cobra and common crate, they are the neurotoxic snake, anti-snake venom. Yes, we will give. Viper is vasculotoxic, triangular head is there. Again, we will give the anti-snake venom. Sea snake is myotoxic. No need to give the anti-snake venom, my dear friends. Coming to the most common cause of death in the snake bite, guys, always remember it is fear due to the bite. Then treatment is right, reassure, immobilize. Tourniquet kabhi nahi bandha. Never put a tourniquet, my dear friends. Then G for go to hospital and treat for start the treatment. Done. Anti-snake venom, guys, remember we have done this. Poisonous, non-poisonous, mein how you are going to differentiate. Poisonous one, 2 fangs are there and multiple fangs are there. That means non-poisonous is there. We are going to talk about very first thing is stitching or nux vomica, which will mimic the tetanus. Tetanus is the 8th day disease of your tonus position and person will die because of respiratory muscle paralysis. Chalo, ye bhi khatam ho gaya. Datura is the 9D poison which will make people sleepy, which D is not included in Datura. Your diarrhea is never included in Datura. Now guys, remember antidote of Datura is physostigmine and it will inhibit acetylcholinesterase. Now coming to the next importance, cannabis sativa. What is cannabis sativa? It is CNS stimulant. What is the active component, which is also your previous year question, my dear friends? Yes, Dr. Shashwat Bora is here, who passed FMG exam already. He's here with us. Thank you. Tetrahydro THC, which is called as THC, is the previous year question. The exam which Dr. Shashwat Bora passed, in that exam this question was asked. Marijuana, if you talk about from any part of the plant, this is marijuana. Bhang is from dried leaf or stem, and bhang is from burned rope, my dear friends. Clear? Okay, Fanda? Burnt rope smell is there. Ganja is female plant. Female flower of the female plant. Flower of the female plant is ganja. Ganja में run amok, मारने या मरने जैसी feeling आती है. Now coming to the afim, also called as opium. Opium is afim and it is produced by Papaverum somniferum. Antidote is naltrexone, trachea, esophagus, oral route, and naloxone is systemic route, my dear friends. Coming to the cocaine, cocaine is also called as white lady, my dear friends, obtained from the coca leaf. Sign and symptoms are magnum symptom. You will feel like itching on the body, insects are running, but actually it is not there. Antidote is amyl nitrate. Now coming to the most common substance abuse in India is tobacco and use in India is caffeine, my dear friends. Very beautiful answer to the very beautiful question. Carbon monoxide poisoning, cherry red color is seen on the postmortem staining, which is also called as liver mortis. Hyperbaric oxygen is a treatment. Now coming arsenic. Arsenic mimics the cholera. Guys, remember subendocardial hemorrhage is there. White line is there. That is Eldritch Me line. Garlic smell is there. Golden hair is there. Antidote is what's a ball. Red velvety mucosa, and it is associated. Arsenic is associated with the black, black foot disease. Coming to the cyanide, which is also called as prussic acid. Prussic acid, guys, remember antidote is amyl nitrate. Now coming to the poisoning. Poisoning may first you will start the treatment, then you will inform the police, my dear friends. Gastric lavage is done with the help of evolved tube, and contraindication of gastric lavage is corrosive or kerosene. Corrosive or kerosene. Activated charcoal is the physical antidote we can give in this, my dear friends. Yes. Now coming to the iron toxicity, the antidote is desferoxamine. What is the antidote? Desferoxamine, my dear friends. Pencil is copper poisoning. Done. Hemodialysis also we do for the toxins which are there. The toxins which are there. Yes, my dear friends. If toxins are there inside the body, we do hemodialysis. KBC heroin, KBC kerosene, benzodiazepine, copper sulfate. These are the things we need to remember for the exam. Now phosphorus is of 2 types, white and red phosphorus. White is Diwali poison, white is toxic, smell is present, garlicky smell is there. Red is cider matchbox, non-toxic, no smell is there. And antidote is copper sulfate, vitamin K, my dear friends. Next important thing we need to discuss right here, sir, is all about something called as what, sir? Poison and the smell. If poison and the smell, hydrogen sulfide, rotten egg is there. Yes. Ethanol, guys, fruity smell is there. Nitrobenzene, shoe polish like smell is there. Hemlock is the nerve poison. There will be a carrot like smell. And which cavity you are going to open, my dear friends? Which cavity you are going to open? That will be a skull, my dear friends. That will be a skull. Done. Body packer and stuffer. If you are giving by oral route, this is packer. If you are stuffing in the body, that is called as body stuffer. So with this, we have completed our third subject ka revision.
How are you guys right now, sir? Pharma and micro Priyambat Bhaiya will do. Now we are going to complete anatomy, my dear friends. The next subject what we are going to start is anatomy. क्या बात है प्यारे दोस्तों, जोश कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए. And keep on saying I will pass, I will pass, I will pass, my dear friends. Jaldi se, if everything is going fine, just give me thumbs up in the chat box, and then we are going to start with the next subject called as anatomy. Yes, let's talk about anatomy, my dear friends. ठीक है, चलो एनाटमी की बात करते हैं सर. एनाटमी की बात करते हैं सर. बहुत बढ़िया सर, चलो आओ. चलो सर. We talk about anatomy. Yes, anatomy में upper limb की बात करेंगे. If we talk about upper limb, my dear friends, you are going to see the most common deformities right here. Ape thumb is seen in median now. Partial claw hand, ulnar now. Complete claw hand is ulnar and medial. Complete claw hand is what's that? Ulnar and medial. Ulnar and medial. Tennis elbow, if we talk about lateral epicondylitis. Golfer, if we talk about medial epicondylitis. Wrist drop is radial nerve. Foot drop is common perennial nerve. Foot drop is what's that? Common perennial nerve. Labor मेहनत करते हैं medial nerve. Musician nerve is ulnar nerve. Musician nerve is ulnar nerve. Now sternal plane was the exam question. It is from between T4. Posterior it is T4 to T5 से लेके आगे का manubrium से sternal body के बीचों बीच होता है. Now we are going to talk about something hand के बारे में. Largest bone is capitate, smallest is pisiform. Largest is capitate, smallest is pisiform. First to ossify is capitate, last to ossify is pisiform. Most common bone gone would be scaphoid, tenderness would be there, right there, sir. Anatomical snuff box. Remember guys, anatomical snuff box. And most common go to bone under avascular necrosis is again your scaphoid. Coming to the muscles of rotator cuff right now, it is sits. The mnemonic is what's a sits. What is sit right here, sir? Supraspinatus, infraspinatus, teres minus, and subscapularis. Supraspinatus, infraspinatus, teres minus, and subscapularis. Root values, axillaries, upper root value C5, C6. Radial medial is complete C5 to T1, and ulnar nerve is lowermost values, that is C7, C8, T1. Long thoracic nerve, if we talk about the uppermost three long values are there. This is a case of winging of scapula. This is due to the injury of the long thoracic nerve. Due to injury of the long thoracic nerve. Now serratus anterior, if we talk about the serratus anterior, there will be a boxer's muscle. Serratus anterior boxer's muscle is there. The nerve is long thoracic nerve. Action is punching and pushing. Latissimus dorsi is a climber muscle, चढ़ने वाला मसल है. thoracodorsal nerve. Pectoralis major का क्या फंक्शन होता है सर? ये मसल यहाँ पे होती है चेस्ट के ऊपर. medial and lateral pectoral nerve is supplying flexion and adduction of the this chest we are doing right here, sir. Now we're talking about the next thing is very important right here, sir. Muscle of the anterior compartment. If we talk about the muscle of the anterior compartment of the arm, guys, BBC muscle is there. Brachial biceps brachii, brachialis and coracobrachialis. Biceps brachii, brachialis and coracobrachialis. Nerve is musculocutaneous nerve. Action is flexion of the arm. क्या action है sir? Flexion of the arm. Now muscle of the posterior compartment is triceps. ये मछलियों वाले muscle. Radial nerve is supplying, my dear friends. What will happen if there is an injury to the shaft of the humerus? There will be a wrist drop. Why there is a wrist drop? Because of the radial nerve ka injury. Now herbs and clumpes. Yes, herbs is RB people. Upper root value is there. C5, C6. कैसा root value? C5, C6. Policeman tip deformity is seen. And what is policeman tip deformity? Guys, adduction, medial rotation and pronation. Adduction, medial rotation and pronation. Clump case palsy is what's a लटके हुए. नीचे की दो rate value C8, T1. Claw hand is seen, my dear friends. Horner syndrome is female. Guys, remember this is highly important. Guys, P for ptosis, M for meiosis, A for anhydrosis, L for loss of ciliospinal reflex, and E for anophthalmos. Dermatome of upper limb we talk about. Thumb it is C6, middle three finger is C7, little finger is C8. Little finger is what sir? C8. Dandana, 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 dan. Now anatomical snuff box is again your previous year question. Sir, anterior lateral boundary is formed by two. Anterior lateral boundary formed by two. What are there? Adductor, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis. Abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis.
and your medial boundary is formed by extensor pollicis longus. This is extensor pollicis longus. Dun 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 dun. Now coming to the floor, floor is formed by ST, that is scaphoid and trapezium. Floor is formed by ST, that is scaphoid and trapezium, and roof is formed by cephalic vein and superior branch of the radial nerve. चलो ये भी खत्म हो गया. Content is what, sir? Your radial artery. Now supination and pronation is occurring at which joint? Radio-ulnar joint, my dear friends. दूर कौन ले जाता है? Fingers को. Who is taking fingers away? This is abduction of the finger. Dorsal interossei. Who is doing adduction of the finger? This is palmar interossei. This is what, sir? Palmar interossei. And lower border of scapula पे बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं. Guys, remember this is C7 at present at C7, no, C7, T7. It is T7. Just correct it, my dear friends. Now we coming to this question is coming right away, sir. Right here, sir. ये यहाँ पे femoral sheath पे. Femoral sheath का lateral, intermediate and medial पे क्या क्या है? Lateral पे there is a artery and there is a nerve. Which artery is there in the lateral? It is femoral artery and genitofemoral nerve. Femoral artery, genitofemoral nerve. If we talk about the intermediate compartment, there will be a femoral vein. If it is a medial, then lymphatics and lymph node of Cloquet or Rosenmüller is the answer, my dear friends. ठीक है, clear हो गया फंडा? Now coming to the next thing is gluteal region, which is examiner's favorite region, my dear friends. Gluteal maximus, the nerve supplying is inferior gluteal nerve. The action is extensor of the hip joint. It helps in standing and sitting, my dear friends. Gluteus maximus, the nerve supplying is inferior gluteal nerve. Gluteus minimus and medius, the nerve is superior gluteal nerve. What it is doing? Chief abductor of the joint. Injury to the superior gluteal nerve से pelvis will fall onto the opposite side. Which side the pelvis will form? Opposite side. Trendelenburg side is positive. Which sign is positive? Trendelenburg sign is positive. And guys, my lurching gait is present. Which gait you are going to see? Lurching. Lachak lachak ke chalta hai. Now dorsal and palmar inflection are occurring at ankle joint. Eversion and inversion is happening at subtalar joint. Now sciatic nerve is something which is very important. Examiner's favorite topic, my dear friends. Tibial and the common peroneal nerve. Tibial is supplying, yes, lower leg we are talking about. Tibial nerve is supplying to the posterior compartment of the leg. Tibial nerve is supplying to the posterior compartment of the, and common peroneal nerve is winding around the neck of fibula, giving the two branches. What two branches it is giving, my dear friends? Deep peroneal nerve and superficial peroneal nerve. Deep peroneal nerve, if you talk about, it is supplying anterior compartment of the lower leg, and superficial peroneal nerve is supplying to the lateral. Again, sir, what is happening? There is a common peroneal nerve which is binding around the neck of fibula. Common peroneal nerve which is binding along the neck of fibula, deep and the superficial. Deep is supplying to the anterior compartment and superficial is supplying to the lateral compartment. Then coming to the first web space. The first web space is supplied by the deep peroneal nerve. Dun 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 dun. We talk about the thorax. Thorax ke andar, guys, remember, neurovascular bundle is present on the lower border. That is why always we have to go from the upper border. Whenever we are doing the surgery, we have to go from the upper border. Now coming to the next thing is called as esophageal openings. Esophageal opening, esophageal length is 25 centimeter and narrowest part is cricopharynx. Cricopharynx, guys, remember the most common site of impaction of foreign body is cricopharyngeal junction, which is present at level C6. Now coming right here, vena cava, esophageal and aortic opening. Vena cava is present at C8, esophageal opening is T10, aortic is T12. Aortic is T10. ठीक है? ठीक है? चलो. चलो, clear हो गया सर फंडा? चलो, let's talk about vena cava openings T8. Inferior vena cava and right phrenic nerve. My different esophageal opening is at level 10 and OVL is a mnemonic. क्या mnemonic है sir? OVL, O for esophagus, V for vagal trunk, V for vagal trunk, L for left gastric artery, L for left gastric artery. Aortic opening में ATA, aorta, thoracic duct, azygous vein. Aorta, thoracic duct and azygous vein is there. Now coming to this question which was there in the exam this time, coming to the constrictions present at the esophagus. First is at 6 inches, which is at pharyngoesophageal junction. Second is arch of aorta, 9 inches. Then 11 inches में left principal junction and at 15 inches at right crus of the diaphragm. क्या है sir? Right curve crus of the diaphragm. Again along with me. 6 inches there will be a pharyngoesophageal junction. 9 inches arch of aorta, 11 inches there will be a left principal junction and 15 inches right crus of diaphragm would be there. Now diaphragm is supplied by phrenic nerve. It is responsible for the hiccup, my dear friends. Hiccup किस वजह से आते हैं? This is because of the phrenic nerve, which is branch of the phrenic nerve. Dun dana dun dana dun dana dun. Clear हो गया? चलो.
हेड एंड नेक की बात करेंगे, नर्व्स यू ऑल नो, दिस इज समथिंग important foramen of the skulls are important. If we talk the cribriform plate, it is present at C1. ठीक है, cranial nerve 1, sorry, cribriform plate से कौन सी nerve जाती है, cranial nerve 1, and cranial nerve 1 is all about the olfactory nerve. This is all about what, sir? Olfactory nerve. Optic canal, cranial nerve 2 is there, that is ophthalmic, optic nerve and ophthalmic artery. Foramen rotundum, maxillary nerve is gone. Foramen ovale, what is going, sir? Male. Foramen ovale का निम्न क्या है? Male. Foramen ovale, male. Foramen ovale, male. Yes. Mandibular nerve. M for mandibular nerve, A for accessory meningeal artery, L for lesser petrosal nerve. Mandibular nerve, accessory meningeal artery, lesser petrosal nerve, and emissary vein. These are the things you need to remember. Now, nerve supply of the face is also very important. Supply, sensory supply of the face. ठीक है? ठीक है? ठीक है? Now, full face is supplied by trigeminal nerve, except the skin over the angle of mandible, which is supplied by the great auricular nerve. Yes, sir. Now, motor supplied by the facial nerve, except the muscle of mastication, which is supplied by the mandibular nerve, which is supplied by the mandibular nerve. Muscle of mastication, ये मुंह चबाने के muscle कौन से हैं? Guys, remember, masseter, temporalis, medial pterygoid, and lateral. Masseter, temporalis, medial pterygoid, lateral pterygoid. They are supplied by the mandibular nerve. They are supplied by the mandibular nerve. Now, depression, मुंह खोलने में कौन आता है? Lateral pterygoid. Lateral pterygoid is there. Now, coming to the next thing, this we all know, salivary gland. Parotid gland is drained by the Stensen's duct, which is also called as parotid gland. And if we are doing the surgery of parotid duct, my dear friends, we are getting a syndrome called as Frey syndrome. And Frey syndrome, it is due to the damage of auriculotemporal nerve. What is happening in the Frey syndrome, my dear friends? In Frey syndrome, always remember, whenever you are chewing something, there will be sweating, redness, etc., etc. This is Frey syndrome happening in the parotid gland surgery. Which nerve is going? The answer would be what, sir? Auriculotemporal nerve. Auriculotemporal nerve. Chalo, ye bhi khatam ho gaya. Submandibular gland is drained by what? Wharton's duct. Not that important. Carotid sheath is the next topic which is important for the exam. Guys, remember, carotid sheath ke andar there will be a structure. Common carotid artery, yes. Internal jugular vein, yes. Vagus nerve, yes. Guys, remember. Now, if we take a cut section, remember something. On the posterior side, sympathetic trunk is there. On the anterior side, previous year question, anca cervicalis would be there. In anca cervicalis, the muscle supplied is esophageal, sternohyoid, omohyoid, sternothyroid. ठीक है सर, चलो डन डन. Now coming to the tongue. Tongue is very important. Sir, tongue की बात करेंगे. If we talk about the sensory supply, anterior 2/3 generally by the lingual, taste is by the quada, and posterior 1/3 general sensation and taste is by glossopharyngeal, and most posterior is supplied by the vagus nerve. Safety muscle of the tongue, if you talk about, that is genius muscle, genioglossus. Hypoglossal nerve injury, the tongue will produce to the same side of the lesion. We were missing onto this part. This is motor supply. All muscles of the tongue are supplied by hypoglossal nerve except palatoglossus, which is supplied by the vago-accessory complex 1 and 2. Dun. Little area in ENT also we have learned, my different. Little area is the outer inferior quadrant of the nose, most common area to bleed, and it is supplied by Kiesel-Bax plexus. This is gas. Greater palatine artery, anterior ethmoid artery, sphenopalatine artery, superior labial artery. चलो ये भी clear हो गया. Next thing is neuroanatomy. Sir, cavity in a brain is called as ventricle. The cavity in a brain is called as ventricle, my dear friends. Lateral ventricle is formed by cerebral hemisphere. Third ventricle is between the diencephalon, and fourth is between the pons and cerebellum. Ica is a branch of basilar artery. Pica is a branch of vertebral artery. Circle of Willis is formed by anterior posterior cerebral artery and anterior posterior communicating artery. Anterior posterior cerebral artery, anterior posterior communicating artery. Chalo ye bhi clear ho gaya, sir. Now we going to the next thing is abdomen. Abdomen ke andar you have to remember the portal vein. Portal vein is formed by the union of splenic vein and the superior mesenteric vein at the level L1. Policeman of abdomen, greater omentum is a policeman of abdomen. Bed of stomach is never formed by spleen. The bed of stomach is never formed, but splenic artery is forming the bed of stomach. Large intestine, the longest part is transverse colon. The most common position of appendix is again a previous year question. The most common position of appendix is retrocecal. Least common position of appendix is post iliac.
If we talk about the duodenum, 25 centimeter length is there. Largest part is third part. Brunner's gland is present. What they are secreting? They are secreting bicarbs, my dear friends. Callous triangle content is cystic artery. Inferior surface of the liver is 1. Second is common hepatic duct. Second is cystic duct and gallbladder. Now, my dear friends, next thing we need to remember is descent of testis. Now, also, this is previous year question. True support of pelvis is round ligament. Who is a true support of pelvis? Round ligament is a true support of pelvis, my dear friends. Descent of testis. First, testes were there in the deep inguinal ring. 7th month, they will come to the inguinal canal. 8th month, they will be superficial inguinal ring. And 9th month, they will be in the scrotum. They will be in the scrotum. These are the abdominal planes which are asked these days most commonly. Guys, remember, first plane, if you see right here, subcostal plane. Number 1 plane is what's a subcostal plane. Subcostal plane is at L3 vertebra. Answer. Remember, next second plane is what's your intratubercular plane, which is at L5. Intratubercular plane is at L5. Subcostal plane it has L3. L3 पे भी एक plane होता है और एक L5 पे होता है. L3 वाला is called as subcostal plane. L5 is intratubercular plane. Intratubercular plane. Dandana, 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 dan. Now these structures are also you should have to remember. These are the 2 kidneys. This is spleen. This snake shape is pancreas. This is abdomen, and this is what's your bile duct. This is portal vein. This is hepatic artery. Bile duct, portal vein, and hepatic artery. Just the structures you need to identify. This was recent exam question in the FMG exam. Guys, bulbar urethra and membranous urethra. Bulbar urethra, the urine will extravasate. कहाँ जाएगा? Superficial perennial pouch, scrotum, and the penile region. And if there is a membranous urethra rupture posteriorly, it will go urine extravasate in the deep perennial pouch around the prostate and urinary bladder. अगर membranous urethra है तो deep perennial pouch में जाएगा. If it is bulbar urethra, which is anterior urethra, it will go into the superficial perineal pouch. It will go into the superficial perineal pouch. Dandana, 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 dan. So successfully we have completed our 4th subject, my dear friends. Now we are moving on to the subject called as what's your physiology. चलो अब हो गया, सारी चीजें इजी होती जा रही है. फिजियो में मेन चीजें क्या एग्जाम में आती है आज की डेट में. सो हाउ आर यू पीपल, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? स्मूथ, सिंपल एंड चमकदार माय डियर फ्रेंड्स. आई कैन हैव जस्ट वाटर. यस. Pharma, Priyam Bhaiya will take pharma, micro and medicine का class. After me, he'll be joining us for this Virat session. Dandana, 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 dan, my dear friends. Chalo. Let's talk about the, who will make the myelin sheath in the CNS? That is oligodendrocyte. What about the PNS? PNS is Schwann cell. PNS what's that? Schwann cell. Sir, CSF secretion is done by choroid and absorption is done by arachnoid. Chalo, ye bhi clear ho gaya. Then next thing we need to remember something is the cortical center, which helps in the memory formation. Memory is stored in the synapse of the neuron. Synapse of the neuron. Synapse of the neuron. Dandana, 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 dan. And guys remember, neocortex के अंदर memory store होती है. Who is converting your short-term memory to long-term memory? That is CA1 neuron of hippocampus. Now there will be auditory area, which is 41, 42, speech area 44, 45, language is 22. If you are not able to speak, that means 44, 45 chala gaya. If you are able to speak but grammar is not correct, then 22 is gone. Then what is gone, sir? 22 is gone. Dandana, 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 dan. Now guys, remember about the taste. Taste right here, you will see salty taste is there in the front. Salt is because of sodium protection. And sour and bitter is, sweet and bitter. Sweet and bitter is because of G protein. Sour is because of H plus. Umami, monosodium glutamate. Chili is not a sensation, it is a pain. Which receptors are there? Vanilloid receptor. This is something which is very, very important. Somatosensory receptors. Number 1 is Meissner. One question would be there from this, my difference. Tip of dermal papillae would be there. Rapidly adapting low threshold touch receptors are there. Fine touch 2-point discrimination is there. Low frequency vibration is there, my dear friends. If it is high frequency vibration, pressure in dermis and deep dermis, then Pacinian is there. Coming to the next one is Merkel. Slow adapting touch receptor help in blind people to read. Merkel, you have to answer Mark, my dear friends. Ruffini is for warm and Kranze is for cold.
Sex is free nerve ending से आता है sir. Sex. This is all we need to do right here, sir. Now coming to the ascending sensory talk. Tract, anterior spinothalamic tract carry itching, touch, crude touch or pressure. Lateral spinothalamic tract carry pain and temperature. Might be rest all is by dorsal column tract. Rest all is by what, sir? Dorsal column tract, dorsal column tract. Then coming to something called as upper motor. Upper motor के अंदर spastic paralysis होती है. Lower motor के अंदर होती है flaccid, लटकी हुई paralysis. अब क्या करता है सर यहाँ पे? cerebellum is for coordination and correction of the movement. ठीक है सर, चलो. Yes, my dear friends, cerebellum is coordination and correction of the movement. Basal ganglia is planning and programming. Limbic system is emotion genesis के लिए. Frontal lobe is cognition and control of the emotion. Cognition and control of the emotion. Now hypothalamic control the ANS and thirst center, circadian rhythm, hunger center, temporal temperature regulation also. So 5 important things what our hypothalamus is regulating, my dear friends. What are they? They control ANS, thirst center, circadian rhythm, hunger center, temperature regulation. Coming to the kidney, we talk about something is very important right here is, sir, counter current system in the kidney. Multiplier कौन है? Ascending lobe. Who is exchanger? Vasa recta. Who is exchanger, my dear friends? Vasa recta is an exchanger. Multiplier transport the solute, and exchanger reabsorption of water is there. If we talk about the other thing we need to remember here is collecting that is I think V2 receptor. और V2 receptor किसके होते हैं? Antidiuretic hormone. अगर ये absent हो जाते हैं V2 receptor तो nephrogenic diabetes insipidus, and drug of choice for nephrogenic diabetes insipidus would be what, sir? Your thiazide. If antidiuretic hormone is absent, that means neurogenic drug of choice is desmopressin. And if they are absent, excess urination will be there, that is called as polyuria. Again you will feel thirsty, that is called as polydipsia. Now guys, remember about something called as yes. Now just juxtaglobular apparatus right here. JG cell, if we talk about, present in the afferent arterioles, my dear friend. Lactic cell help in the phagocytosis. खाने में help करते हैं, my dear friends. Remember something? Thank you so much, Cerebellum Academy. Macula densa regulates the GFR. What they regulate? GFR. JG cell, guys, remember it is present in the afferent arteriole. They sense the renal blood flow. कितना renal blood flow होता per minute? 1250 ml. 1250 ml per minute is there. If flow is poor, then renin is released. RAS is activated. And you remember what are the renin inhibitor? Cleptopril, lisinopril. Pril drugs are there, which are renin inhibitor. Which are what, sir? Here, renin inhibitor. Now respiratory system, if we talk about, sir, Boyle's law is there. Boyle's law is pressure is directly proportional to the pressure, moment, volume. If pressure is there, volume will be less. Pressure is there, volume would be less. Done. Now if we talk about the inspiration, expiration and forceful expiration. Inspiration, guys, remember active process, diaphragm is used, external intercostal muscle is used. Expiration is a passive process, no muscle is used. Forceful expiration is again, my dear friends, abdominal and the internal intercostal muscles are used. Coming to the next is intra-alveolar pressure. Guys, intra-alveolar pressure at rest is 0. During inspiration -1, then it will become 0 at the end of inspiration, then it will become +1 during expiration. Intrapleural pressure prevents lung collapse at the time of rest. How much is intrapleural pressure at the time of rest? Your answer is -2 mmHg. Your answer is what, sir? -2 mmHg. Now, compliance is something called as stretchability. Stretchability is delta V by delta P, that is change in volume upon change in pressure. Now, restrictive lung disease, small lung because no compliance. An example is lung fibrosis. OLD is obstructive lung disease. Big lung compliance is there, but poor recoil is there. Example is emphysema. We all know very well about the emphysema. Surfactant is a 100% exam topic on 20th of January. Produced by type 2. Produced by type 2 pneumocytes and Clara cells. Function is decrease the surface tension. What is the component right there? So dipalmitoyl phosphatidylcholine is there. Lecithin and sphingomyelin is also. LS ratio. Lecithin sphingomyelin ratio should be more than 2. Then we consider lung as mature and normal. And production start at 18 weeks of fetal life. Secretions will start in the 28 weeks and it will get mature at the age of 34 to 35 weeks. Now we talk about something called as other thing which is important, right, is VQ ratio.
VQ ratio की बात करें, the air coming for exchange upon a blood coming for exchange, the ideally it is 1, normally 0.8, apex पे high होती है, how much? 1.3. Why it is high? Because of the poor perfusion. Base VQ ratio is low. How much low? 0.6. Why it is low? Because of the high perfusion. High perfusion. Now there will be a Henry's law. What Henry's law is? PaO2 depend on dissolved oxygen, not hemoglobin bind. And PaO2, guys, remember dissolved oxygen is only 1%. Is only 1%. Dun dana, dun dana, dun dana, dun. This is 100% exam question, multiple time repeated question of the exam. That is what's your oxygen hemoglobin dissociation curve. Guys, if it is going to the left side, that means it is going to the lungs. From lungs, it will get the oxygen. So left side in the Haldane effect, oxygen is high, along with oxygen, pH is high. Oxygen plus pH is high, rest everything is low. Oxygen plus pH is high, rest everything is low. That is Haldane. Bohr is right, guys. Remember, right ke andar carbon dioxide would be high, plus everything would be high. Only O2 is less and pH is less. If O2 is high, pH is high, it is left shift Haldane. If O2 and pH is low, rest everything is high, that is right shift, or it is also called as Bohr effect. It is also called as Bohr effect. पेसमेकर ऑफ रेस्पिरेशन, प्री बोर्जिंगर कॉम्प्लेक्स, पॉन्स एंड मेडुला. पॉन क्या करता है? उसको रेगुलेट करता है. मम्मा लाइक मेडुला उसको बनाती है. डन डना डन डना डन. नाउ कमिंग टू द जेवीपी. जेवी के अंदर ए सी एक्स वी एन बाई, ए सी एक्स वी बाई. ए फॉर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पीछे पीछे वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद एट्रिया रिलैक्स करेगा. जैसे एट्रिया रिलैक्स करेगा, एट्रियल फिलिंग वुड बी देयर. एंड वाई फॉर वेंट्रिकुलर फिलिंग. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया रिलैक्स. रिलैक्स होते ही एट्रिया फिल करेगा, फिर एट्रिया खाली, फिर एट्रिया खाली होएगा, सॉरी एट्रियल फिलिंग वुड बी देयर एंड देन वेंट्रिकुलर filling would be there. Dun 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 dun. Now coming to the next is something called as type of vessels. Wind Kessel vessel, guys. Exam का question है. Wind Kessel vessel, large vessel with the high elastic recoil. Example aorta. Capistance vessel. Yes, अगर आपसे पूछो where is your maximum blood stored in the body? Where is your maximum blood stored in the body? Guys, always and always remember this is your systemic veins. How much blood they are storing? 50 to 60% of the blood. Exchange vessels is capillaries. Resistance vessel is all about the peripheral vessels. Guys, muscular arteries and arterioles are responsible for the resistance. Now, what is the fourth power effect? Fourth power effect says if we decrease the resistance by 2 times, then it will increase radius by 2 times, then the resistance will fall by 16 times. This is called as fourth power effect, my dear friends. Now something called as medulla जो है maker है, so there will be a VMC and CVC. VMC is all about the victory, it is making. What is growing? What increase heart rate, cardiac output, BP, and CVC, that is cardiovagal. Cardiovagal is decreasing, heart rate, cardiac output, BP को कम कर रही है. And guys, remember there are the baroreceptor. Baroreceptor is a previous year question. 2 type of baroreceptors we have to study right here. What 2 type is? Aortic sinus baroreceptor and carotid sinus. Aortic sinus arch of aorta, carotid sinus baroreceptor bifurcation of common carotid artery. Aortic sinus baroreceptor is arch of aorta, carotid sinus baroreceptor bifurcation of common artery. Function is they act as a brake. तो ब्रेक कैसे एक्ट करेंगे? जो बढ़ाता है उसको रोक दो, जो कम करता है उसको बढ़ा दो. तो बढ़ाता कौन था? VMC. कम कौन करता था? CVC. CVC को बढ़ा दो, yes, CVC को बढ़ा दो and VMC को कम कर दो. That is how your baroreceptors are working, my dear friends. Now something we do know about the peristalsis. Moving bolus outside. Which are the hormones responsible for that? NO and VIP. It will relax and open the GIT. Reverse peristalsis is vomiting. Then before your mass movement will start, what will happen? You have to clean the stomach. How you will clean the stomach? It is because of the hunger pan. They are the broomstick of the abdomen, my dear friends. And that is what 90 to 100 minutes is the duration. Now mass movement, if you talk about, mass movement is all about the defecation. Mass movement is all about the defecation. Normally it's 3 times, more than 3 times we consider that as diarrhea. Pacemaker is ganglion cell of colon or Beck's plexus. If they are absent, it will lead to Hirschsprung disease. Hirschsprung disease. Hirschsprung disease. Hirschsprung disease. We have studied Hirschsprung disease today. Now coming to the next, Brunner's gland, duodenum में होता है. We all know this thing. Yes.
Now we talk about something called as what, sir? Right here, sir, active and the passive transport. Active is against the gradient. ठीक है sir, it uses the ATP. Yes, primary and the secondary active is talk about. Primary active is direct use of energy and secondary is indirect use of energy. And if we are indirectly using the energy, there will be a sodium glucose import, sodium amino acid import is there. Movement, the word import is coming, secondary active transport. Movement, the word import is coming, that is secondary active transport. चलो ये भी क्लियर हो गया. Passive is along the gradient, ये बहता हुआ है साथ में, no energy is required. Example is osmosis and diffusion, my dear friends. With this we have completed our 1 2 3 4 5 5 fifth subject. 5 subjects we have completed in just 2 hours, my dear friends. And अभी गाड़ी रुकी नहीं है, गाड़ी चलती रहेगी. The next subject what we are going to start, my dear friends, that is everyone's favorite in the first paper. And I can't see that right here, maybe I missed that. ठीक है, उसको कॉपी करने का मिस कर दिया मैंने शायद. Give me a minute and I will be back. नहीं दिख रहा, दैट मीन आई मिस्ड दैट सब्जेक्ट. जस्ट रुको, मैं एक बारी मिररिंग स्टॉप करके आई विल जस्ट रिकंसिडर दैट सॉरी नॉट फाइल, आई रिकंसिडर दैट फाइल, माय डियर फ्रेंड्स. So we are back, my dear friends, with the PSM. So right now we are going to do the PSM, my dear friends. PSM के साथ हम वापस आए हैं. We are going to talk about something right here, previous year question. So high stationary, if we see the birth rate and death rate, my dear friends, if we see the birth and the death rate in the high stationary, everything is gonna be high. Birth rate and death rate is high. Now question comes directly. I will come to straightforward कि क्या question आता है. इंडिया के बारे में पूछा जाता है. It is late expanding. Your birth rate is start decline and death rate is slow decline. It is slow decline. Death rate is start decline, then slow decline is there. Now coming to the GFR, TFR, GRR and NRR. GFR is general fertility rate, total number of live birth upon woman in reproductive age into 1000. TFR is total fertility rate, that is total number of live birth upon woman in reproductive age and age specific fertility rate into 1000. Third question, what we are going to do right now, sir, GRR. GRR is daughter born upon WRA plus ASFR multiplied by 1000. NNR is net reproductive rate, daughter born upon WRA plus ASFR plus ASMR. What is now ASMR? Age specific mortality rate multiplied by 1000. चलो ये भी हो गया. Contraception method, if we talk about the natural, calendar, body temperature, cervical mucosa thinning is there, lactational amenorrhea, cycle bead is there. Important thing is IUCDs. IUCDs are of 3 types. What 3 type of IUCDs we are having? IUCD number 1 is generation 1 is Lippes loop. Generation 2 is copper T. 2 type of copper T, T shape and U shape. U shape is most commonly used, that is half-life 10 years. Third generation is hormonal. 2 are there, Marina and progesterone. Marina, levonorgestrel is there and progesterone, natural progesterone is there. Now guys, remember OCP के अंदर माला N, माला D is there. Mala N, if we talk about, it is ethinyl estradiol, my dear friends. How much it is? 0.03. Mala D and Mala N, both of them, they are having this salt ethinyl estradiol plus levonorgestrel. Ethinyl estradiol plus levonorgestrel is there. 21 tablets are hormonal tablets and 7 tablets are iron tablets. In Mala N, you know money is given. D for देने पड़ते हैं. Mala D, money is given. Chalo. Now, injectables, we are having DMP. What we are having in the injectable, my dear friends? In injectable, we are having DMP. What we are having, sir? DMP, depot medroxyprogesterone. What we are having? Depot medroxyprogesterone.
Guys, remember it is also called as antara. It is also called as what, sir? Antara. Antara, 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 antara. Contraceptive of choice. Unmarried but sexually active. Condom plus OCP. Just married OCP. After delivery of first child, this is IUCD. This is IUCD. Now population covered. This is not that important. Asha is important. एक पे ही होती. The mark, the answer you are going to mark would be what, sir? 1 is to 10, 1000. Only female married more than 2 children. 10th pass should be there. ठीक है. Multi-purpose worker was given by Kartar Singh committee. एक 5000 पे होता है. It is there on the 5000, my dear friends. Then multi-purpose worker, male and female. If we talk about male, will do the malaria surveillance. Female is all about the antenatal and postnatal. Recent updates is there. If they are asking according to the WHO. If they are asking, my dear friends, according to the WHO, your answer should be 8. If they are asking according to the government of India, your answer is 4. 8 and 4 is clear. They conduct normal delivery. Yes. If they ask you about the Asha, Asha will conduct the normal delivery. Your answer would be no. If they ask about the multi-person female, you will yes. Yes, they will conduct the normal delivery. Now coming epidemiological triad and triangle exam का question रह चुका है. Agent host environment is epidemiological triad. Epidemiological triangle is with respect to the time. Just that thing is simple. In India, most common causative organism is falciparum, guys. Falciparum malaria, guys. Two type of malaria is there. Vivax and falciparum. For falciparum, treatment is CP, chloroquine, primaquine. Vivax, if it is positive, chloroquine, primaquine, we are going to give. Then if falciparum is there, you will check whether the female is pregnant or not pregnant. If non-pregnant female is there, again the criteria is Northeast and other state. Northeast is ACT-AL, other is ACT-SP. And if pregnancy is there in first trimester, we'll give the quinine. First trimester quinine will give. Second and third trimester Northeast state ACT-AL, other state ACT-SP we are going to give. This is something, it is National Vector Borne Disease Control Program. Guys, MCD, just FK, ठीक है. Malaria, chikungunya, dengue, Japanese encephalitis, filariasis, kala-azar. So guys, remember MCD, just FK. Guys, remember malaria, chikungunya, dengue, Japanese encephalitis, filariasis, and kala-azar. Dun dana, dun dana, dun dana, dun. Now, vectors and the diseases are something which I would love to revise all and all again and again. Now, sandfly, it is mnemonic, very simple. Koso. Koso mnemonic is yes, along with me. Kala-azar, oriental sore, sandfly fever, Oraya fever. Kala-azar, oriental sore, sandfly fever, and Oraya fever. Say if we talk about sleeping sickness is there. Black fly, onchocerciasis, soft tick, Q fever, hard tick, KFD, and tick typhus. Mite is scrub typhus, rickettsial pox. Louse is epidemic typhus. Rat flea is endemic and bubonic. Red-winged bug is Chagas disease. Itch mite is all about the scabies. If you see NO is up, this is anopheles. The disease caused by anopheles is malaria, my dear friends. Now coming to the Culex, Japanese encephalitis, then coming to the West Nile fever, and then coming to the filariasis. Then this is also tiger mosquito, Aedes mosquito. It will lead to dengue. It will lead towards a dengue. Dun dana, dun dana, dun dana, dun. Now dengue का test NS1 antigen test होता है. काला आजार serological and field. If they are asking about the काला आजार का serological RK39, if they are asking you the field surveillance, answer is aldehyde test. The answer is what's that? Aldehyde test. Coming to the next injection is liposomal. Liposomal amphotericin B, oral में miltefosine we can give. Liposomal amphotericin B and miltefosine. Japanese encephalitis, my dear friends, remember the RT-PCR is a diagnosis. Yes, the amplification host is pig and dirty water के अंदर रहता है. Paddy field is there. Japanese encephalitis vaccine is SA-14-14-2. Filariasis drug of choice is diethyl carbamazine. Epidemiology, if we talk about, sir, we have to talk about these 4 studies. Cross-sectional, case control, cohort, and ecological. These 4 studies we have to do. If it gives the prevalence, it gives the prevalence study of choice for burden of diseases, cross-sectional study. Prevalence is the what's an old and new cases is called as prevalence. That is cross-sectional study. आगे पीछे का cross-section हो रही है. Case control study, it will give the odds ratio. And guys, odds ring is talking about the past. So case control is past study, which is called as retrospective study. Cohort is forward study, prospective study. It will give you incidence, attributable risk, and relative risk.
Study of rare risk factor is cohort disease. ठीक है, cohort study. Ecological is a correlation between the study of population. So who is the study of rare risk factor? Cohort. Who is the study of rare disease? That is case control study. That is what's the case control study. Now coming to the other thing is bias. This type of bias, observer bias and interviewer bias, recall bias, Parkinsonian bias is there. These are the four bias. We have treatment of bias is blinding. Three type of blinding is single, double, triple blinding is there, my dear friends. Now coming to the next topic, what we are going to start right is anemia mukta Bharat. Anemia mukta Bharat के अंदर if the age is 10 to 49 years, iron folic acid is again iron is 60, folic acid is 500 microgram. How you will give weekly? You will give that. If pregnancy or lactation is there, dose is again same 60 and 500. 60 is for iron, 500 is for folic acid. And guys, OD dose you have to give. Now, what is this Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan? Every 9th of month you will be getting what? Free health checkup for the pregnant female, Janani Shishu Suraksha Karyakram, government hospital facility utilization should be more, my dear friends. HBNC is home based neonatal care. If we talk about the home based neonatal care, Asha will do the home care, HBNC. There will be a hospital delivery, there will be a home delivery. If it is hospital delivery, the number of visits are 6. If it is home delivery, my dear friends, remember, it is what's that? 7 visits are there. 1, 3, 14, 21, 28 and 42. Now coming to the Rashtriya Bal Swasthya Karyakram, sir, 5 Ds are there: defect at birth, disease, ये सारा इसके अंदर आता है. Deficiencies, disabilities, developmental delays, these all comes under Rashtriya Bal Swasthya Karyakram. Now coming to the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, incentives are given in this scheme. So one is for a postnatal care till 6 months, my dear friends. Lakshya is to improve the labor room ka quality. First referral unit was again exam question. PHC, first referral unit to CHC. Why CHC is the first referral unit? Because at CHC you will find MD, MS level of officers, and then to the district hospital or the medical colleges, etc. Coming to the next, cold chain is there. Cold chain temperature is 2 to 8, my dear friends. Then day carriers are there. It is present at sub-center. 6 to 8 vaccine will carry. Vaccine carrier number of ice packs are 4, and 16 to 20 vials we are able to store in the vaccine carrier. Vaccine vial monitor is something I would love to revise before my exam. If central part is paler than the cortex, the side part, guys, then we can use. If it is same or darker, then we cannot use. Now, guys, remember, open vial should be used if liquid within 28 days, if solid within 4 hours. We have to use after the dilution. ठीक है सर? कौन सा टेस्ट चेक करते हैं? शेक टेस्ट चेक करते हैं. अगर वो अंदर घुल मिल जाती है, that means vaccine is usable. अगर precipitate formation हो जाती है, that means the vaccine is useless. My dear friends. Coming to the next, strains are 100% exam question on 20th of January. Now, my friends, BC is दानिश. बहुत क्यूट कौन है? दानिश 1331. मीजल्स मजा आता क्या खा के? गुड़ खा के. जैगरीव, guys remember, जैगरीव is there. क्लियर हो गया? रूबेला is RA. बिला का ड्रेस RA 27/3. मम्स is जेरिलिन, मम्मी जेरिन. चिकन पॉक्स इज ओका. चिकन कैसा बना सर? ओका बना. येलो फीवर इज 17. OPV is 7. That is life. National TB elimination program target should be achieved by 2025. How the regime is given to for 2 months HRZD, for 4 months HR is given, money given is 500. Which app is there? Nikshay app is there. If it is Nikshay app, thank you so much Priya Bhatt bhai, thank you so much, and come soon भाई. मैं जब खत्म कर लूंगा जल्दी ही 10 साढ़े 10 बजे मेरा खत्म हो जाएगा, एंड माय ब्रदर विल कम हियर टू जॉइन मी, सपोर्ट मी. गले दुख जाता है यार, भैया ने बोला तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ. So it's all support. Thank you so much भैया. Now coming to the NACP, National AIDS Control Program 1990 strategy. What is that? 90% should be diagnosed, 90% should be on the treatment, and 90% should be cured. Antiretroviral therapy. सुरक्षा क्लिनिक का किट का ये लोगों का साइन ये है सर. गाइस रिमेंबर
Kit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kits are there. How you will remember this? Kit 1 is grey color, urethral discharge or cervicitis. Kit 2 is green color, that is for vaginitis. White is for genital ulcer. Blue is again genital ulcer. Difference kya hai? If penicillin allergy is there, then we'll give blue color kit. And this is non-herpetic genital ulcer. Kaisi hai sir? Non-herpetic genital ulcer. Non-herpetic genital ulcers are there. Then coming to the red, red is for genital ulcers, yellow is for lower abdominal pain, and guys this is black is for scrotal swelling. Kit के याद रखना चाहिए, एग्जाम में काम आएगा. National Leprosy Eradication Program. This is logo for leprosy. We'll give classification. Posse and the multi. Possillary, the lesions are 5 or less, multi 6 or more. In posse, treatment should be for 6 months. In multi, treatment should be for 12 months. What are the drugs we are doing? What are the drugs we are doing here? It is rifampicin, clofazimine, dapsone. And guys, the ulnar nerve is the most common nerve which is involved, and that is only involved with the multibacillary. Possibacillary के involvement के chances बहुत कम होते हैं. Now coming to the polio vaccine, there is bivalent vaccines we are using these days. P1 and P3 stool samples are taken. One is taken within 48 hours, another is taken within 14 days, and then with the help of reverse cold chain, we are sending that sample to the lab. Okay? All live vaccine are contraindicated in pregnancy except yellow fever. Again, important things we need to learn right here is all about the food adulteration. Sir, 100% exam question. Recent exam also one question was there from the food adulteration. Now also one question would be there in the food adulteration. If we talk about the latterism, lat leke bone gaya, kesari dal, arar ki dal, very simple. Endemic, andar aao pyari milte hain. पायरोलिजिडिन मिलेट सीड. एंडेमिक अंदर आओ, संग संग मस्ती करते हैं, ठीक है. एपिडेमिक आप संग संग मस्ती करो. सेंगुआरिन मस्टर्ड ऑयल. एर्गोटिज्म इज एर्गोट एल्गोलाइड एंड बाजरा. अफ्ला इज अफ्लाटॉक्सिन ग्राउंडनट. अफ्लाटॉक्सिन एंड ग्राउंडनट इज देयर. नाउ पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इस बार AQI पे क्वेश्चन आ जाए. सर AQI पे बात करते हैं गाइस. व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल गुड, इट इज लेस देन 50, बैड इज मोर देन 400. एयर क्वालिटी इंडेक्स. सर इफ इज 0 to 50 गुड, 50 to 100 satisfactory, then moderate, then poor, very poor, and after 400 we call that as severe. बहुत गंदा, जो दिल्ली में गया था. Now we talk about this is what's a Kata thermometer, which is for the what's a low air velocity and cooling power of the air. Sling hygrometer is for the humidity, my dear friends. Sling hygrometer is for the humidity. Now we talk about something called as what's a two tests are there for the chlorine. Now if best test for the fecal contamination in the water, कैसे पता चलेगा कि fecal contamination है कि नहीं है? E. coli के लिए check करो, ठीक है सर. Free chlorine level is in chloroscope. OT and OTA is there. OT is orthotolerant test. Free plus combined is given. OTA is better version of OT with the free residual and the total chlorine levels. Done, done. Now sir, housing standards की जगह हम school protocols को पढ़ते हैं, because this is again a previous year question. One classroom sir 40 students, one urinal 60 students, one latrine 100 students are there. Type of desk is 100 and per capita space is more than 10 square feet, my dear friends. Radiation is again a previous year question of the FMG exam. Thickness of lead apron is more than 0.5 mm. Natural radiation received is 0.1. Max permissible man and woman is 5 rad per year. Pregnant female is 0.5 rad per year. Man and woman it is 5 rad per year. Man and woman क्या है? Man and woman is 5 rad per year. Pregnant female is 0.5 rad per year. Sir, guys, remember something called as level of prevention is something which we need to know before the exam. Primordial, primary, secondary, tertiary. Primordial, guys, risk factor is absent, disease is also absent. Risk factor is absent, disease is also absent, my dear friends, like yoga, exercise, etc. Bimari nahi hai, then still we do that. Primary risk factor is there, but disease is absent. Vaccination. Why do we vaccinate? We are disease? No. We were normal, but risk factor is present. Vaccination, condom, yes, risk is there. That is why we. Secondary is now screening as per secondary, because disease and the risk factor both are present. Tertiary, now disease has happened. Now you have to limit the further progression of the disease. For example, there will be a rehabilitation, specs, etc. Those are something coming under the tertiary. Done. Now coming to the lead time, the time between possible diagnosis and appearance of first sign and symptom is called as lead time, my dear friends. Coming to the next important thing is what is the difference between quality and quantity data.
Quality is countable. एक बंदा, दो बंदे, दो बंदियां, तीन बंदे. These are countable data. Is called as qualitative data, and we can measure the height, weight, age. This is called as quantitative data. Now coming to the standard deviation. Area under curve is a Gaussian distribution curve, which is also called as Bell's curve, my dear friends. Remember, if it is one standard deviation, it is 68%. Two standard deviation is 95%. Guys, remember? Yes. And three standard deviation is 99%. Now, positive, right skewed, left skewed, normal curve. राइट स्क्यूब मीन मीडियन मोड. राइट स्क्यूब में कैसा मीन मीडियन मोड, लेफ्ट स्क्यूब में उल्टा होता है मोड मीडियन मीन. एंड व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एक्चुअली मीन इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू मोड. नाउ ग्राफ इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर. सर क्वालिटी विल रिमेंबर, रेस्ट एवरीथिंग विल गो इनटू द क्वांटिटी. क्वालिटी इफ वी टॉक अबाउट, देयर इज अ पिक्चर. इन picture there is a map. In map there is a bar. In bar there is a pie. Pictorial map, bar and pie. Pictorial map, bar and pie. Test of significance is also one. If we talk about the quantity के अंदर एक group होगा, they used to be paired, so this is called as paired t-test. If two groups are there, they will be fighting with each other. This is called as unpaired t-test. If three or more than three groups are there, this is ANOVA test is there. Quality, if we talk about small things are there, like Fisher exact test. And if quality is larger number, then chi-square test is done. What do we do, sir? Chi-square test is done. Coming to the waste disposable, my dear friends, yellow is infectious, non-recyclable, like anatomical waste, etc., blood product, etc., will give in the yellow part. Sir, vaccine, while we will send in the yellow part. Red part is recyclable. For example, we take as the gloves, etc., rubber items will go in the red. Sharp waste like scalpel blade, etc., will go in the white. Translucent, broken glass, metallic implants, they will go in the blue. They will go where, sir? They will go in the blue. Dun 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 dun. Iceberg of phenomena. Now, iceberg of phenomena. Tip of iceberg is diagnosed cases, and the submerged part would be undiagnosed cases. Iceberg's phenomena is not followed in MTR, measles, tetanus, and rabies. Measles, tetanus, and rabies. Now, Dali, Quali, Hail are the three terms you need to remember. Best indicator for the burden of disease is what's a Dali. Dali is best indicator for the burden of the disease. Quali is life after the treatment. This will tell you about the quality and the efficacy of the treatment also. Hail is health adjusted, means the time we have spent in the good health. Best indicator for the assessment of the health status of a community would be the hail. Would be what, sir? Your hail. Now coming to the quarantine. What is quarantine? Quarantine is done for apparently healthy people. In India, yellow fever 6 days, COVID-19 14 days. COVID-19 we are going to do for 14 days. Secondary attack rate and now these are not that important for the last moment revision. Now, National Program for the Control of Blindness and the Visual Impairment, less than 3/60 in the better eye with the available correction is what's your answer for the blindness. And in ophthalmology, we are going to discuss obviously in the detail. Three indexes, health indicator we have to learn: PQLI, HDI, and Global Hunger Index. PQLI, if we talk about, sir, infant mortality rate and life expectancy at 1 year and literacy. If we talk about the global hunger index, it is unnourished population, yes. Underweight child less than 5 years, yes. Under 5 death. ठीक है, चलो ये तीन चीजें हो गई. HDI is life expectancy at birth, expected schooling year, and income per capita. Income per capita. Done. Committees we are having. Kartar Singh was all about the multi-purpose worker, male and female manifest. Who is doing the normal delivery? Yes. Multi-purpose worker, female can do. Chadda is basic health work. Mukherjee is family planning. Srivastava is medical education. Bajaj is financial management. Now coming to the one-way communication is didactic, two ways called as psoriatic. If individual is writing, he can write letters or SMS, my difference. Now group discussion is between 6 to 12. If it is symposia, the series of lectures are coming by the expert and the people are listening to them. Panel discussion is like the Anjana Om Kashyap and all those people are sitting and we guys are watching them like a fool. Now mass method is TV, radio, and social media. Now disaster management, there are two type of phases are there in the disaster management. One is post-disaster and it is pre-disaster. Post-disaster is all about the response, recovery, and reconstruction. Pre-disaster is all about the prevention, mitigation, and preparedness, my dear friends.
And guys, remember what is the most common disease which is happening after the disaster? Guys, remember gastroenteritis is a disease. Most common macronutrient deficiency is vitamin A. Vitamin A deficiency we all are going to study in the opto also. Integrated disease surveillance program का logo एक बार आया था, not that important now. Integrated child development services, supplementary nutrition growth monitor. Ayushman Bharat 5 lakh rupees cover is given to whole family. PM Poshan Abhiyan, guys, remember if it is primary school child, the 12-gram protein is there and 500 kilocalories are given. If it's upper primary school child, then 20 grams of protein with 700 kilocalories are given. Midday meal scheme को replace कर दिया है with the PM Poshan Abhiyan. These are some logos. World Health Organization. This is for UNICEF, World Bank, Biohazard. These are the condoms. Now coming to Ujala, Ujjwala and Ujala. Guys, Ujala is red LED bulb. ठीक है, affordable prices के अंदर we are getting the LED bulb. Ujjwala is gas cylinder. Ujjwala is prevent human trafficking. What is that, sir? Preventing the human trafficking. चलो ये भी clear हो गया, sir. Now coming to the last part where we have to remember right here, sir. Yes, ORS, sodium and glucose is 75. Yes, potassium is like a banana 20, citrate is 10 and chloride is 65. Bioterrorism group A, B and C is something which is important. Bioterrorism group A, we talk about smallpox, anthrax, botulism and tularemia and viral hemorrhagic fever. Bioterrorism group B is Q fever, brucellosis and epidemic typhus. Q fever, brucellosis and epidemic typhus. Done. And guys, remember, bioterrorism group C is Corona Nipah Hanta. Would be what, sir? Corona Nipah Hanta. With this, we have completed our another subject. Now we are moving on to the next subject called as what, sir? Your ophthalmology. I hope everything is going very smooth, fine, shine. यस सर, ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ेंगे. ठीक है, तब तक मैं पानी भी पी लेता हूँ, गला गया है सूख. कभी हम 4 दिन में पढ़ते थे, फिर हमने 1 दिन में पढ़ना शुरू करी, फिर हमने 4 घंटे में पढ़ना शुरू करा और लास्ट में हमने तबाही मचा दी. बिल्कुल, है ना, बिल्कुल. चलो चलो जी, आ गए हैं वापस एक इंपॉर्टेंट काम करने के बाद. ठीक है, चलो. ठीक है, चलो जी, चलो. क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू थिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सर? ऑप्थेमोलॉजी. ऑप्था में मुझे पढ़ना होगा तो मैं पढ़ूंगा सबसे पहले ऑर्बिटल ब्लो आउट फ्रैक्चर, जो मुझे आता हुआ होगा. ठीक है सर, अगर हम इसको पढ़ेंगे, देयर विल बी anophthalmos, diplopia and infraorbital anesthesia, and on CT scan what I am going to see the teardrop sign. चलो ये भी खत्म हो गया. कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया इज बेंडिंग द लाइट. कॉर्निया क्या करता है सर? बेंड करता है लाइट को. कॉर्निया बेंड द लाइट. ट्रांसपेरेंट एवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है. कौन सा? कॉर्निया. पैकीमेट्री क्या करता है? कॉर्निया की थिकनेस को मेजर करता है. इफ यू टॉक अबाउट द केराटोमेट्री इज फॉर द कर्वेचर व्हिच इज प्लेसिडो डिस्क. व्हिच इज व्हाट, सर? प्लेसिडो डिस्क. क्लियर हो गया सर फंडा? चलो उसके बाद में आगे बढ़ेंगे. रिफ्रैक्टरी इंडेक्स इज एयर इज 1, लेंस इज 1.38 to 1.40. center of lens has maximum refractive index. This was previous year question of the FMG exam. This is previous year question of the FMG exam, my dear friends. Coming to the next thing is all about the important thing I would love to mention about the rods and cones. If we talk about the rods and cones, my dear friends, rods are present in the periphery and they are of one type and they are for black and white vision. And if we talk about the cones, cones are in the center and cones are of 3 types: red, green and blue, and they are for the color vision. What they are for? They are for the color vision, my dear friends. And color vision is photopic vision.
First cell to receive life is rod and cones. Yes. Now, aqueous humor is produced by ciliary body. Aqueous humor production is 2.5, outflow is 0.2. If aqueous humor is blocked, my dear friends, which disease is there? If aqueous humor is blocked, which disease is there? Guys, glaucoma is there. Vitreous humor is something which is present by birth, and you all know vitreous humor is 4 ml. Eyeball volume is 6 ml. Then who is the largest structure in the eye? In the largest structure in the eye, if we talk about, thank you, Dr. Lone Village. Yes, the largest structure in the eye would be what's your vitreous humor. चलो ये भी खत्म हो गया कितनी आसानी से. Now we talk about the vision. 6 by 6 is normal. Max specimen is 6 by 3, my dear friends. Number one, most commonly used chart is Snellen's chart. In the illiterate people, landlord's ring is there. Less than 3 is Allen's, and less than 2 is optokinetic drum. Best is what's a Logmar chart. Less is what's your Logmar chart. Logmar chart. Dun 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 dun. Intraocular pressure, if we talk about, intraocular pressure is exerted by both aqueous and the vitreous humor. Intraocular pressure is exerted by both. What are the both at aqueous and the vitreous humor? Normal pressure is 10 to 21 mmHg. More than 21 mmHg is by the glaucoma. It is by, sorry, more than 21 mmHg it is called as glaucoma, and it is measured by tonometer. Which tonometer? Goldman applantation. Again, a previous year question of the FMG exam. FMG exam. Visual field को measure करने के लिए there is a Humphreys parameter. This is a machine, Humphreys parameter. Color blindness. Which type of disease is color blindness? Color blindness is X-linked recessive. Color blindness कैसा है sir? X-linked recessive. Person is confused for color. Person is not, ठीक है? And female is a carrier. Who is disease? Male is disease, my dear friends. Now, if only rods are present, cones are absent, red, green, blue cone are absent, only rods are present, then you are going to see what's a black and white vision. Then which type of vision you are going to see, sir? Black and white vision you are going to see. Now, number one type is Ishihara. Most common number one type would be what's that? Ishihara. Would be what's that? Ishihara. 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 Ishihara chart. Then coming to the FM100 Hui. Then coming to what's that here? FM100 Hui. FM100 Hui. FM100 Hui. Clear funda? Now next is what's a Nagel's anemaloscope. Next is what's here? Nagel's anemaloscope. Nagel's anemaloscope. Nagel's anemaloscope, guys, remember. Now we are talking about something called as binocular single vision. Sir, there are 3 grades of binocular single vision. Grade 1 is simultaneous macular perception. Grade 2 is fusion. Grade 3 is stereopsis. What is stereopsis? Stereopsis is all about the depth perception. Depth is all about, now you have to give the license, driving license. You will give to the colorblind or you will give to the binocular single vision this stereopsis absent wala patient. Never giving to the stereopsis absent wala patient. We can give to the colorblind person. Why? Because that is confusion for the color. Okay. And isometropia, the power difference between the two eyes is more than 2 standard deviation. Can't wear glasses, it will lead to diplopia. Treatment of choice is contact lenses. Again, a previous year question. Cataract or falsification of a lens or capsule. Most common cause of blindness, yes, cataract. Second most common cause of blindness, yes, it is glaucoma. Most common infectious cause of blindness is trachoma. Most common blindness in the children is vitamin A. What is what's up? Vitamin A. And because of vitamin A deficiency, what you are going to see? You are going to see the mitoid spot. You are going to see, sir, you are going to see the mitoid spot. And guys, remember, according to WHO, less than 3 by 60 is blind. Then economic, social and manifest, ESM. कैसे याद करा था? ESM. ESM is less than 6 by 60. Social is less than 3 by 60. Manifest is less than 1 by 60. Type of cataract, nuclear, cortical, posterior, subcapsular. Again and again, question is coming on posterior, subcapsular. Day and night blindness, near vision is impaired. Day and night blindness is there, near vision is impaired. This is posterior subcapsular cataract. Now coming to the congenital cataract. Congenital cataract which is present by birth. So first is zonular, laminar or riders. You will see riders will ride, and riders having wheel. In wheels there are spokes. Spoke wheel opacity is there. Punctured or blue dot cataract, simple or blunt trauma. You are going to see flower shape or rosette cataract is there. Metabolic and the diabetic. So it is the only catalog. This is the only cataract which is a slow. The snowflake cataract, there will be a sorbitol plus fructose accumulated right here. Diabetic snowflake cataract is there. Only sudden cataract, rest everything is slow.
Now, Wilson's disease, you will see there is a deficiency of ceruloplasmin. Due to deficiency of ceruloplasmin, what is happening? Your copper is deposited in the different areas of the body, and this is happening in the eyes also. Then will be forming a ring called as Kesher-Fleischer's ring. Galactosemia, which enzyme I'm talking about in the biochemistry, we have read that galactosemia, it is gal put enzyme is there. Yes, galactosemia, breastfeeding is contraindicated. Which type of cataract you are going to see? A very simple answer would be there. That is what's your oil drop cataract. Would be what's an oil drop cataract. Now, myotonic dystrophica, Christmas tree cataract is there, sir. Note, if iron is deposited in the eye, if any history is given regarding the iron worker, guys, remember, this is sidrosis bulbi. Sidrosis bulbi. Chal. Now, symptoms of cataract, I told you, it's slow, painless, progressive loss of vision is there, diplopia, polyopia, color halos are there. For checking the color halos, which test we do the Fincham test. Which test we are going to give? Fincham. Slit lamp examination is there. You can see very well, she is checking the cataract right here. Now, sir, treatment of cataract. If there is a young patient, always prefer glasses. If there is an older patient, always prefer the surgery. Number one surgery, which is done in subluxated or dislocated cataract, guide, that is ICCE, intracapsular cataract extraction. Then ECC, extracapsular cataract extraction. Guys, remember, capsule is left inside now, and in capsule you are putting the intraocular lens, and the vision you are getting back is 6/18. The vision you are getting back is 6/18. And guys, now phacoemulsification is the stitchless surgery. Kaisa stitchless surgery? Kaisa incision and 3 mm. Now the indication is soft cataract, only 3 mm incision, soft cataract. You are putting the foldable intraocular pressure lens now, and guys, the vision we are getting back is 6/6 now. Again, advancement is there, and remember, guys, flask is there. Femto laser assisted surgery, which is best among all cataract. Now, guys, remember post-op complication of cataract, which is important for your exam. Secondary cataract is associated with the only two words you need to remember here: Elching pearl, Somerich's, and treatment is ND-accolation. Cystoid macular edema, yes, honeycomb appearance is there. Endophthalmitis is the third complication you can have after the cataract surgery. Infection of vitreous, yes, treatment is intravitreal injection of the vancomycin. Now, uveitis is the next topic. Sir, uveitis is divided into three parts. What three parts we are having? Anterior, intermediate, and posterior. Anterior, intermediate, and posterior. Anterior uveitis, it is painful. Rest two are painless. This is first difference. Yes, anterior uveitis is painful. Rest two are painless. Now, anterior uveitis, circumciliary congestion is there. That is why, guys, remember, that is why redness is there, pain is there. Other than that, most common cause, if someone is asking you about the anterior uveitis, your answer is what, sir? Idiopathic. What is the answer, my dear friends? Idiopathic. Other than that, guys, second most common cause is HLA-B27. Second most common cause is HLA-B27. And guys, remember, there will be a flare, mutton fat KPs, and Irish nodules are there. Irish nodules are of two types. If they are present at the surface of the lens, that is called as Busaka. If they are at the pupillary margins, they are called as copies. They are called as copies. Done, done. Thank you so much. Thank you so much for the love. Synecdoche, anterior synecdoche and posterior synecdoche. Two type of synecdoche. Anterior is A for angle closure glaucoma. It will lead to a complication called as angle closure glaucoma. If it is posterior synecdoche, my dear friends, the complication number 2 is cataract plus festoon pupil, that is distorted shape of pupil. Now, coming to the next drug of choice is topical steroid. If it's acute anterior glaucoma, then we will use the cycloplegic drug, and cycloplegic drug of choice in children is atropine. In the adult, it is tropicamide. In the adult, it is what's a tropicamide. Intermediate uveitis, intermediate snowball, snowbank. Again, most common cause is idiopathic. Second most common cause is sarcoidosis. And guys, remember, there will be a treatment steroid injection, triamcinolone. And intermediate uveitis is a painless condition. Khatam. Posterior uveitis cause can be infectious, non-infectious. On examination, two things you need to remember in the posterior. Guys, chorioretinitis is the most common manifestation. Creamy yellow patches are there. There would be what's that? Creamy yellow patches you are going to see. Headlight in fog appearance is seen in the vitritis. Chalo, ye bhi ho gaya. Treatment में क्या? Antimicrobial for the infectious, obviously. Toxoplasmosis for the spiramycin, obviously.
For the non-infectious disease, systemic steroids are there. What is there, sir? Systemic steroids are there. Now, ocular HIV was something question which was asked in the exam. Very important. Most common infection is CMV retinitis associated with what's are your that owl eye appearance. Drug of choice is valganciclovir is better answer than ganciclovir. Most common tumor is HHV8 associated Kaposi sarcoma. Now, glaucoma is the second important topic, my dear friend. Glaucoma is also known as congenital glaucoma is also known as bophthalmus. Bophthalmus, you are going to see the classical triad. What is that? It's a lacrimation, photophobia, blepharospasm. Lacrimation, photophobia, blepharospasm. This is a congenital glaucoma triad, also known as bophthalmus. Now, sir, adult glaucoma, we are dividing into two parts. What is angle closure and this open angle? Angle closure, we take that female is more than the male. Female angle eyes are small. That is why myopic eyes, sorry, hypermetropic eyes are there. Open angle males are more common than the females. That is why myopic eyes are there. If hypermetropic eyes, you have to think about the angle closure. And if myopic eyes are there, you have to think about the open angle glaucoma. Plus, female are fond of colors. That is why color halos are present in the angle closure glaucoma. Open angle races are there. Pupillary block. Female block people. That is why pupillary block. Open angle glaucoma, trabecular fibrosis would be there. Now, if we talk about the symptoms, pain, redness, sudden loss of vision is there in the angle closure. Open angle glaucoma, there will be a tunnel vision. अगर ऐसा कोई patient बोले डॉक्टर साहब मेरी peripheral से center की तरफ को my eyesight is going, then it is called as tunnel vision. चलो, now drug of choice in open angle angle closure is pilocarpine. Laser treatment is laser iridotomy with the help of ND-YAG lesion. If it is acute angle closure glaucoma, drug of choice is mannitol. Simple. Now, in case of open angle glaucoma, drug of choice in children is carbonic anhydrase inhibitor. That is what's a dorzola brinzola. And in adult, it is latanoprost. In adult, it is what's a real latanoprost. And treatment is trabeculoplasty by the argon laser. Chalo. Neovascular glaucoma, guys, new vessels are there. What drugs we can use to treat that? Bevacizumab, bevacizumab, ranibizumab, which is what's your anti-VEGF drug. Now, sir, let's talk about this thing we all know, sir. Myopia, hypermetropia. Renal detachment is something which was asked in the exam. So, 9 layers are separated from the 10th layer. What is happening in the renal detachment? Your 9th layers are separated from the 10th layer, my dear friends. Now, type of renal detachment, if you talk about rhegmatigenous, tractional, and the exudative. Rhegmatigenous, most common cause is myopia. Treatment is buckling. If we talk about the tractional, most common cause is diabetes. Remove the tractional membrane by vitrectomy. And guys, remember, exudative retinal detachment, most common cause is malignant melanoma of the choroid. Diabetic retinopathy, if type 1 diabetes is there, after 5 years, you have to check for the retinopathy. If type 2 diabetes is there, at the time of diabetes, at the time of diagnosis only, you have to check for the diabetic retinopathy. Earliest are microaneurysm and most specific is neovascularization. And to stop that, we can use a drug called as anti-VEGF drug. Anti-VEGF drug. Dandana. CRVO versus ARO. If tomato splash appearance is there, we call that as CRVO. If, sir, there will be a cherry red spot you are going to see, this is called as CRAO. CRAO, ocular massage, intraocular pressure you have to decrease because it is irreversible condition. IV mannitol we can use. And CRVO, where you will see tomato splash appearance, 90-day glaucoma, anti-VEGF drug, bevafarani, again we will go. रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा सर रात को नहीं दिखता और रात को कौन आता है पापा को हिंदी में बोलते हैं बाप bones spicule atrial arterial pale waxy disc and guys remember you cannot treat this condition retinitis pigmentosa you cannot treat but you can delay this condition. How you can delay this condition? With the help of vitamin A, my dear friends. Chal, retinoblastoma, most common tumor, ocular tumor of the children. RB1 gene is there, 13q14 is there. Then guys remember cottage cheese appear, leukocoria, cat eye pupil is there. Other than that, Flexner, Vincent, rosettes are there. Primary approach is save the life, save the eye, then save the vision. And most common cause of death here would be what? The most common cause of death, if we talk about it, would be what's your metastasis. Would be what's your metastasis. Now coming to the next question, which is exam question. Dry eyes or keratoconjunctivitis sicca. Dry eyes or keratoconjunctivitis sicca, absence of lipid aqueous or mucin layer. Sir, there will be a dryness in the eyes. Moment the eyes are dry, you will see, you will feel like patient.
Old age patients specifically, they will telling, sir, my eyes are drying. In the old age, what will happen? The eyes will become dry with the fan. They become intolerant. Symptom worsen in the evening because they are rubbing their dry eyes. That is why there is a redness also. Treatment is you are giving the methyl cellulose. Test is what's a shimmer test. Shimmer test is the tear breakup time less than 10 seconds. Now, coming to the next thing is what called as conjunctivitis. Viral conjunctivitis most common, and most common virus which is causing would be what, sorry, adenovirus. Other than that, we need to remember the trachoma. If we talk about the trachoma, most common infectious cause of blindness is trachoma caused by chlamydia trachomitis. Sir, hallmark number 1 is Sjogren follicles, 2 is Harbut pits, then arc line is there. Safe strategies there. What is safe? S for surgery, A for azithromycin, which is a drug of choice, and F for facial hygiene, E for environmental sanitization. Blanket therapy is 1% tetracycline ointment. WHO grading is Fisto. Follicle more than 5. Infection, scarring is there. There is a arch line. Trichiasis means misdirected eyelashes, and opacities are there. Spring cataract or vernal keratoconjunctivitis. Guys, spring cataract or vernal keratoconjunctivitis allergic condition hai. What type of condition this is? Allergic condition. Cobblestone papillae are there. Cobblestone papillae with the rope discharges there, and shield ulcers are there. Sir, here you need to give the mast cell stabilizer like sodium chromo, like a done. Important topic number next is what's your corneal ulcer. Next important topic is corneal ulcer. Acanthosis, acanth amoeba keratitis. This ulcer, guys, remember, is happening because of pseudomonas, and history would be associated with the contact lens wearers. जो contact lens wear करते हैं, with that the history would be associated. Drug of choice is cycloplegic drug, and you know cycloplegic drug in the children would be atropine, and in adult it is cyclopentolate. Clear हो गया फंडा? या फिर tropicamide is better answer. Bacterial keratitis, hypopyon is not fixed, it is everywhere. Most common cause in the world is Staph aureus. In India is Staph pneumoniae. Drug of choice is 4th generation fluoroquinolone. Fungal hypopyon is fixed. Feathery margins are there. And guys, remember, finger eye projection, feathery hypopyon is there, and treatment is natamycin. HSV keratitis, dendritic ulcer, geographical ulcer, antiretroviral therapy we have to give. For the non-healing ulcer, 2 things are there. One is keratoplasty, another is cyanoacrylate glue. If the perforation is very, okay? If the perforation is very, very small, okay? Okay? If perforation is very, very small, we can use a cyanoacrylate glue by difference. Keratoconus, progressive thinning of the center of the cornea will lead to keratoconus. Keratoconus treatment first is glass, second is RPG lens if it is not keratoplasty. Keratoplasty is contraindicated somewhere. Where your keratoplasty is contraindicated? Keratoplasty is contraindicated in the refractive surgery. That is what's your LASIK ka surgery. Excimer laser is used right there. This is again a key word right here, sir. Now coming to the next is Argyle Robertson pupil, prostitute pupil. Guys, pinpoint pupil is there. Accommodation is present, non-reactive to light. Comparing this with the Addicts tonic, light reflex is absent, accommodation is present. Pilocarpine test is done in case of Addicts tonic people. Horner syndrome P. Now cocaine test is there. Normal eye will dilate and abnormal eye will become normal in the Horner because meiosis is there. Papilloedema was something which was asked in the exam. Disc edema with the raised intracranial tension. Disc edema with the raised intracranial tension. Worst headache, projectile vomiting, 6th nerve palsy is seen. Vision is normal. In the papilloedema, vision is normal. Rest, everything is worse. Treatment is astazolamide. Now, different type of visual defect if we talk about. Optic nerve, if we talk about, some monocular blindness is there. One eye will see, one eye will be completely blocked, completely blind. Optic chiasma, you will have a horse-like vision, that is bitemporal heminopia. Temporal vision blindness would be there, central would be fine. Optic tract homonymous heminopia would be there, sir. One side right, one side in the lateral, one side in medial, vision would be gone. Macular sparing homonymous heminopia along with the right and left wall, lateral and the medial part, your central part is also gone. This is again an important topic. Now, dark room procedure, if we talk about the important procedure you need to learn is retinoscopy. It is a test of error, my dear friends.
pinhole diameter is 1 meter, 1 mm, and distance from which it is done, it is 1 meter. Direct ophthalmoscope, if you talk about sir, distant direct ophthalmoscopy, the distance is 25 centimeter. Normal eye, red glow will be there, retinal detachment, gray glow would be there, vitreous hemorrhage, no glow, cataract, black glow would be there. Dun, 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 dun. Direct ophthalmoscopy, distance not fixed, quality is virtual, erect, magnified, and with a magnification power 15x. If we talk about the indirect ophthalmoscopy, direct distance depend upon the arm of doctor, magnification power is 5x, and the quality of image is real, inverted, and magnified. With this, we have completed our subject, and now we are moving on to the next subject called as what, sir? Your pediatrics. The next subject is pedo. Where is pediatrics, sir? Pediatrics. Yes. Time to have some water. जोश कम नहीं होना चाहिए. Keep on saying I will pass, 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 I will pass. Very very good sir. चलो बहुत ज्यादा बढ़िया. Nice, amazing. Oh. We'll be doing everything. We'll be doing everything. Don't worry, my friends. We are right there, sir. चलो, ये भी हो गया, वो भी हो गया. अब पीडिया की बारी. किसकी बारी सर? पीडिया की बारी. चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्यारे दोस्तों. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जॉन्डिस का बात करते हैं. तो जॉन्डिस के अंदर कॉलयूरिक और एकॉलयूरिक जॉन्डिस इज देयर. इन जॉन्डिस व्हाट इज देयर सर? Choleric and acholeric. Choleric and acholeric is there. If we talk about the choleric, my dear friends, if we talk about the choleric, yes, choleric is there. What is happening in the acholeric? What is happening? Your lipid soluble is increasing, and that is unconjugated one. Unconjugated lipid soluble will not come in the urine. That is why urine color is normal. Rest everything is. ठीक है? Rest, ठीक है? ठीक है, rest everything, guys, remember, rest everything would be yellow. चलो, now there is an enzyme UDP gluconide transferase who will convert lipid soluble into water soluble. That will become what's a conjugated. If water soluble is increasing, then urine and skin is also yellow. चलो, coming to the next is breastfeeding jaundice and the breast milk jaundice. Breastfeeding is inadequate breastfeeding, dehydration की वजह से होता है. Continued feeding is a treatment. Breast milk is some X component is there in the breast milk which is going the intestine, will be obstructing the absorption from there, and that condition is self-limiting, my dear friends. Coming to the Kramer's rule for the visual diagnosis, my dear friends, if you talk about the visual diagnosis, Kramer's rule, if head we talk about head, 5 mg percentage is there. Head में 5 mg percent is there, my dear friends. And if we talk about chest, it is 10. Abdomen and thigh is 12 to 15. Palm and sole is 15 to 20. Clear okay, Fanta? Now, neurology is all about the seizure. Okay? Neurology is all about the seizure, my dear friends. Seizure disorder increase electrical activity in the brain. Convulsion is electrical activity with the motor activity, my dear friends. Clear okay, Fanta? Now, guys, epilepsy. Most common epilepsy is a subtle seizure, and most common cause of seizure is hypoxic ischemic encephalopathy. Hypoxic ischemic encephalopathy. Hypoxic ischemic encephalopathy. Chalo. Now coming to the absence seizure. Absence seizure, drug of choice is ethosuximide. And guys, remember, in children it is less than 2 years. GTCS valproate, more than 2 years. Drug of choice is valproate. Febrile, yes, IV, lorazepam. Intranasal, midazolam. Prophylaxis is what's a clobazam. Prophylaxis क्या है सर? ठीक है, चल क्लियर हो गया फंडा. Now coming to the brain tumor. If we talk about the brain tumor, sir, most common is metastasis, primary is glioma. Glioma कैसा है सर? हमारा metastasis, primary tumor है. Glioma कैसा होता है? Malignant tumor होता है. कैसा होता है? Malignant tumor, butterfly like appearance is there. कैसा है सर? Butterfly like appearance is there. Butterfly like appearance is there. Dun. चलो क्लियर हो गया सर फंडा? ठीक है, चलो, let's talk about the renal tube defect. Let's talk about the renal tube defect, my dear friends. If we talk about the renal tube defect, most specific is choline esterase.
Most sensitive is alpha fetoprotein. Prevention is by folic acid. How much we can give? 4 milligram per day we can give. What are the defects which are associated by difference? Yes, Dr. Survi. What are the defects? Number one is spina bifida occulta. If we talk about spina bifida occulta, skin and the hair are covering the defect like this. If meninges are coming outside, this is called as meningocoele. If along with the meninges, your nerve fibers are coming, this is called as meningomyelocele. This is called as meningomyelocele. If your head is absent, anencephaly. If your head is protruding outside, encephalocele. If your neural caudal pore, sorry, क्वाडल पोर is absent, ये डेवलप नहीं होता है, then what is happening sir? Cranioschisis and rachis. ठीक है, cranioschisis and rachis can happen. Done. Now coming to the dehydration, if it is mild to moderate dehydration, child is thirsty, then ORS is given. If it is severe dehydration, child is drowsy, IV fluid is given. For the first 10 kg, the fluid is given 100 ml per kg. For the next 10 kg, the fluid is given 50 ml per kg. The fluid is given what sir? 50 ml per kg. Less than 1 year, 30% and 70%. Guys, less time is taken for more than 1 year, that is 3 hours, and more time is taken from less than 1 year. Chota bacha hoga, you will take more time. That is what you need to know here. CVS we talk about sir, blood supplies. 2 umbilical artery and 1 vein is there. 2 umbilical arteries, 1 umbilical vein is there. Which umbilical vein is there? Left umbilical vein is left. Ductus venosus, left umbilical vein, inferior vena cava. Ductus arteriosus, pulmonary artery to the aorta, foramen ovale, right atria to the left atria. So guys, remember ductus venosus, left umbilical artery, left umbilical vein to the inferior vena cava. If we talk about the ductus arteriosus, pulmonary artery to the aorta, foramen ovale, right atria to the left atria. Now coming to the cyanotic and the acyanotic. Cyanotic, we are having 5 T's, 2 E's. What are the 5 T's? Tetalogy of palate, yes. TGA, transposition of great arteries, then TAPVR, tricuspid atresia, truncus arteriosus. 2 E's are there. What 2 E's we are having, sir? Epstein anomaly and Eisenmenger phenomena. These are the 5 T's and 2 E's. And in the acyanotic, we are having ASD, VSD, PDA. ASD mid-systolic and diastolic murmur is there. VSD pan-systolic murmur is there. And if we talk about the PDA, continuous murmur is there. Patent ductal arteriosus के अंदर the drug of choice is ibuprofen is better answer than indomethacin, a previous year question of the FMG exam. Now coming to the next topic called as what's a newborn, do not shiver, do not sweat. Newborn, do not shiver, do not sweat. How they generate the heat? They generate heat by the lipolysis of the brown fat. Done. Now newborn lose heat by 4 method. Overall most common method is radiation, that is near but not in touch of a cold surface, but at the time of birth is always and always evaporation. Always and always evaporation. Sir, Niku ka temperature is previous year question. 25 degree to 28 degree Celsius. Guys remember, indication to start is less than 37 weeks or less than 2.5 kgs. When to stop, more than 37 weeks or more than 2.5 kgs. If the child is less than 28 weeks, IV fluid, 28 to 32 NG tube. Yes, after 32 weeks we can give the Katori feed. We can give sir Katori feed we can give. Other than that, the important thing right here is mid-arm circumference is measured with the help of Bengal test and the Shaki tape. Shakir tapes on Arnold classification. Normal it is more than 12.5, mild it is 11.5 to 12.5, severe is less than 11.5. Normal more than 12.5, mild 11.5 to 12.5, severe is less than 11.5. Something which is important is malnutrition on the base of duration is divided into 2. What 2 things we have divided? Acute and chronic. What we have divided? Acute is weight, sir, weight is fasting, weight for height. Chronic is what's a stunting ke liye height for age is required. Coming to the next is, this is previous year question, severe malnutrition. We call what the severe malnutrition, bilateral pedal edema. Which edema is there? Symmetrical. Yes. Weight for height is less than -3 standard deviation and height for age is less than -3 standard deviation again, and mid-arm circumference is less than 11.5. Weight for height is vasting, height for age is stunting. The vasting is also seen, stunting is also seen. Mid-arm circumference is less than 11.5. These are the criteria for the severe acute malnutrition. Now this is something which is important and upcoming exam question you have to remember. Kwashiorkor versus the marasmus.
Kwashiorkor, the predominant deficiency is protein. Marasmus, it is of calories. Onset in the Kwashiorkor, it is 1 to 4 years of child, and marasmus less than 1 year. Edema is present in the Kwashiorkor. In marasmus, edema is absent, and muscle wasting because of edema is hidden in the Kwashiorkor, and in the marasmus it is visible. If we talk about the appetite in the in the Kwashiorkor, the appetite is poor. In the marasmus, the appetite is good. And general appearance in case of Kwashiorkor is very low, and in marasmus it is alert. Then, sir, additional feature is what, sir? Your flag sign you are going to see. Dun dana, dun dana, dun dana, dun. Now we talk about something called as what, sir? Your storage temperature of the milk. In room temperature 6 to 8 degree. Yes, in refrigerator 24. In freezer minus 20 degree. Guys, 3 months we can store. Zinc deficiency, acrodermatitis enteropathica. Selenium, it is Keheshans. Menke, sir, 7 ATP 7A is Menke. Wilson is 7B. Okay, Wilson is what, sir? 7B. Now we talk about next topic called as what, sir? Your primitive neonatal reflexes. Sir, rooting. If someone is touching you and you are doing like this is rooting. Next is sucking. If someone is giving something to baby, baby starts sucking. Then murus is your hands are like this. This is called as murus. Another thing is Apgar score. APGAR. Apgar appearance, sir, pink appearance is their body, full body, and extremities are pink. Then 1 marks or 2 marks will give. If acrosinuses is there, my dear friend. What do you mean by acrosinuses? Guys, your hand and the feet are what's a blue color, and the rest everything is pink. Then if it is blue color, then it is 0. Pulse more than 100 is what's a pulse more than 100 score 2, less than 100 is 1, and guys, no pulse 0 marks. Grimace, cries and pulse. You are putting something, baby cries a lot, that is score 2. If it is weak cry, then score 1, and 0 means no movement was there. Other than that, active movement is there 2 marks. If it is arm and legs are flexed, 1 marks. No movement, it is what's your 0 marks. Respiration, strong cries, slow or irregular. Guys, if strong cries there 2 marks, slow or irregular is 1 mark. No breathing, 0 mark will be there. Coming to the next genetic disorder topic, we are going to complete in pediatrics very soon. Down syndrome, if you talk about trisomy 21, most common genetic cause of low IQ is trisomy 21. And antenatal diagnosis, guys, remember first trimester, papa will go down, pregnancy associated plasma protein will go down, beta hCG will be high. Second trimester, there are 2 tests called as triple and the quadruple test. Alpha fetoprotein and U estradiol will be low, and your hCG will be high. This is called a triple test. If your inhibin also increases, this is called as what's a quadruple test. Edward, sir, Edward is 18 club foot. It is associated with Dennis Brown splint. We are going to study in the orthopedics chanting. Now, Patau syndrome is trisomy 13, my dear friends. Polydactyly you are going to see. Also, you will see cleft lip, cleft palate. Dun dana, dun dana, dun dana, dun. Turner syndrome is always seen in the female, guys, remember, and IQ is normal. There will be broad spread nipples, webbed chest, webbed neck is there. Turner syndrome 45XO. Guys, remember 45XO. Now, again, a pseudo Turner is there, can be seen in male and female. IQ is low, rest every feature is same. Klinefelter's long legs, absent pubic and axillary hairs, karyotyping 47XXY. Now puberty starts at time, progress slow. Angelman's is a genetic condition at chromosome number 15q, and very low IQ, smiling faces there. Scissor disorder is also present. Milestone, you guys can do very well, and with this there is a Duchenne's muscular dystrophy. Gene involved is dystrophin gene mutation, X-linked recessive disorder, most commonly seen in the boys. Trouble in getting up or running, my defense. And remember, CPR, when to start? If it is positive pressure ventilation, heart rate less than 100, we will give, sorry, if heart rate is less than 100 per minute, we will give positive pressure ventilation. And if it is heart rate less than 60 per minute, then CPR or compressions we are going to, CPR or compression we are going to give. Dun dana, dun dana, dun dana, dun. Meningitis in children is very important topic. Sir, there will be a fever, headache, vomiting, papilledema, neck stiffness. Fever, headache, vomiting, papilledema, neck stiffness. Intracranial pressure is normal, guys. Then lumbar puncture we can do. If intracranial pressure is high, lumbar puncture we cannot do. What we will do? CECT will do. Now, CSF examination is right there. Neutrophil, something is related to the bacteria.
proteins are high, glucose is low. This is bacterial meningitis. Lymphocyte high, protein very high, and glucose is low. This is tubercular meningitis. If lymphocyte counts are high, proteins are high, glucose is normal. Now it is viral meningitis. It is what, sir? Your viral meningitis. Viral meningitis. Dun dana, dun dana, dun dana, done. Coming to the HIV positive mother, if not taking treatment, yes, nevirapine for 6 weeks to the baby who is exposed. Okay, chalo. This we have done, my dear friends. Now we are done with the pediatrics also. The next subject, what we are going to start is what's are your derma. चलो स्पीड में डर्मा कर देते हैं ठीक है खत्म चलो let's talk about the dermatology let's talk about something called as what's your this melanocyte will synthesize the melanosome yes melanocyte to melanosome is having melanin my dear friends and one melanin unit is having 36 keratinocyte what they are having sir 36 keratinocytes and melanin is responsible for different color tones who is never responsible for the different color tones that is what's your keratinocytes why they are not responsible because in both of them they are equal in all of us they're equal 36 in number now coming to the next thing is Langerhans cell Birback granules are there tennis racket or rod shaped granules are there helps in the phagocytosis first layer to be formed is basal thickest is spinosum contain granulosum contain flagellin deficiency of flagellin will lead to ichthyosis vulgaris bulla is big vesicle is small bulla is big vesicle is small my dear friends coming to the pemphigus you will see IgG against desmoglein blister formation 2 type foliaceous and vulgaris desmoglein 1 is foliaceous 3 is vulgaris if it is granulosum foliaceous spinosus vulgaris superficial bulla phyllosis deep bulla it is pemphigus vulgaris dun dun. Now, if we talk about the clinical signs, Nikolsky sign is there. That is, you will apply a tangential fraction and skin will be scalded like this. Another thing is what's your bulla spread spine and this is seen when you are applying the perpendicular force. Coming to histology of row of tom appearance, histology of row of tom appearance is also seen right here. Direct immunofluorescence study, you are going to see the fish net pattern. Next is linear IgA disease, IgA against BPAG2 is there. String of pearl sign is there and drug of choice is Dapsol. Dermatitis herpetiformis, the diet you are going to ignore is abro, barley, rye, oat and wheat. Drug of choice is Dapsol. Another thing is erythema multiforme. The viral infection and drugs are the cause. Target lesion, Irish lesion and bull's eyes are there. Then we coming to the next thing is called as epidermal lesion and these are 10 and Stevens-Johnson's a previous year question of the exam. 10 is what's a basal surface area is more than 30%. Stevens-Johnson's basal surface area is less than 10%. 10 is basal surface area involvement more than 30%. Stevens-Johnson's basal surface area less than 10%. Coming to the erythrasma caused by Corynebacterium minotosumum. Rash is present on the axilla and whenever we are doing the Woods lab examination, what we are going to see is coral red color. Done. Non-bullous impetigo caused by Streptococcus pyogenes. Cellulitis, diffuse margins are there. Folliculitis, superficial infection, frunculosis, deep infection, single hair follicle is involved and carbuncle, multiple hair follicles are involved and this is again bacterial most common than the other fungal and the other viral causes. Pityriasis rose, versicolor, caused by Malassezia globosus, better answer than fur. Whenever we are putting these white rice powdery scales on the 10% QH mount, we are going to see spaghetti and meatball appearance. Woods lab examination, apple green color is seen. Topical ketoconazole, systemic it is selenium sulfide. Chalo. Now candidiasis, oral thrush is there. Vaginal white curdy discharge is there. Candida is caused by Candida albicans. Drug of choice is fluconazole. Now coming dermatophytosis, tricho, myco and epidermophyte. Tricho, everything is there, skin, hair, nail is there. Microphyton, skin and hair is there. Epidermophyton, skin and nail is there. As we already learned this thing, tricho is tricycle, cylinder type body is there.
Microsporum is having S spindle shape is there. Epidermophyton, guys, remember epic people go to club, that is why this is club shape, that is why this is what's a club shape. Now tinea infection is there. Tinea के ऊपर सर पे चढ़ी टीना कैपिटिस, दो बच्चे कीरन एंड फेवर्स, ड्रग ऑफ चॉइस इज ग्रेसियो फ्लोविन, my dear friends. Now this is Rose Gardner's disease. History is associated with the Rose Gardner sporotrichosis caused by sporothorax shanki. Most common linear nodules along the draining lymphatics. Now chromoblastomycosis, copper benny bodies are there. Drug of choice is itraconazole, my dear friends. Mycobacterial infections like lupus vulgaris, you will see apple jelly nodules right here, sir. Other than that, you have to remember what is scleroderma, where you will see the draining sinus right here. Leprosy we have learned. Syphilis is the third thing the third chapter. Syphilis is there. Treponema palladium, painless or painful, painless ulcers are there. Drug of choice is benzathine penicillin. If it is neurosyphilis, then drug of choice is what's aqueous crystalline penicillin. LGV, lymphogranuloma venerum, groove sign is there. Chlamydia trachomatis is the cause. Drug of choice is doxycycline. Now, chancroid is a painful ulcer caused by ecdysury. Drug of choice is azithromycin. Dunovenosis, Klebsiella granulomatosis, beefy red ulcers which bleed on touch. Drug of choice is azithromycin again. Gonorrhea, ceftriaxone is a drug of choice. Psoriasis, most common is psoriasis vulgaris. There will be a pinpoint hemorrhage on removing this. This is called as Auspich sign. Normally, the normal turnover time of a skin is 56 days. In psoriasis, it will be only 4 days. Dandana. Lichen planus, you will see in the mouth what's a lacy mucosa plus commonest phenomenon seen. The diagnosis is lichen planus. Lichen planus is an autoimmune condition. Where you are going to see this isomorphic or commonest phenomena, where else? VPL is a mnemonic, vitiligo, psoriasis, lichen planus. Vitiligo, psoriasis and lichen planus. Treatment is phototherapy. Melasma is seen after pregnancy. If it is in pregnancy, we call that as colasma. Nevus of Ota. If your mucota is involved, that is called as nevus of Ota. If body is involved, that is called as nevus of Ito. Bacchus nevus, there is hyperpigmentation plus hypertrichiasis. Acanthosis nigricans is associated with the metabolic X syndrome, my dear friends. This is important to know. And Peutz-Jeghers STK11, perioral antigen, hematomas polyp, recent exam question. This is fixed drug eruption is there. Coming to the next is your androgenic alopecia. What is most common cause? Faulty testosterone, that is dihydrotestosterone. In male, the pattern is Hamilton pattern. In a female, it is Olsen or Ludwig pattern is there. Now, alopecia areata exclamation mark here is there, my dear friends, and it is autoimmune condition. Patchy hair losses are also seen. Coming to the next important thing we need to learn right here, sir. Acne vulgaris, most characteristic is what's comedons. Open is black color, close is white color. Comedons are there. Treatment also oral isotretinoin, antibiotic, etc. Topical benzoyl peroxide we can give. Rosacea flushing is seen after drinking hot liquids or a hot working situation is there. Then there will be a flushing on the face. This is called as rosacea. Present by birth, bright red plaque is there. Common benign neoplasium in the children. Guys, remember this is nothing but a capillary hemangioma. Now we have completed our another subject in just 10 minutes. आता हुआ पहले किया हुआ 2-3 बार किया हुआ 10 ही मिनट में खत्म हो गया. This is how we have to revise again and again, and how our confidence will be boosted, my dear friends. Again and again, keep on saying, I will pass, I will pass, I will pass. Very good, Ankit. Yes, this is Rosie Bhavi. I will pass, I will pass, I will pass. Now we are moving on to the next subject called as what's our radiology. ठीक है सर, लेट्स डू रेडियोलॉजी. रेडियोलॉजी की बात करेंगे सर. यस, लेट्स डू द रेडियोलॉजी. एंड रेडियोलॉजी के अंदर इफ वी टॉक अबाउट द जीआईटी, ठीक है, उससे पहले मैं जरा थोड़ा सा पानी पी लूं. ठीक है सर, ठीक है. चल, if we talk about the GIT, barium swallow is in the esophagus. Barium swallow is esophagus. Barium meal is stomach and proximal duodenum. Barium meal follow through is small bowel, my dear friends. Barium enema is in the large bowel. Barium enema is in the large bowel, and barium enema large bowel में होता है. चलो, Plummer-Vinson syndrome, CIDG is a mnemonic. Cricopharyngeal web, iron deficiency anemia, dysphagia and glossitis is there. Xanthus diverticulum, Kilius dices is there. From there, out pouches is coming to the weak mucosal layer is there. Achalasia cardia due to failure of relaxation of lower esophageal sphincter, bird weak appearance is there.
Carcinoma of esophagus, right tail appearance is a diffuse esophagus cancer. You will see the corkscrew appearance. What are you going to see, sir? Corkscrew appearance. Congenital hypertrophic pyloric stenosis, thick pylorus mass is present, projectile vomiting is there, which is non-bilious. Then there will be what the alkalosis present, metabolic alkalosis present, and per abdomen olive-shaped lump is there. On barium meal examination, you will see something right here, some mushroom sign. Easy is the crisp and concise. Diverticulitis, different diverticulitis are coming. Sawtooth appearance, we're going to see colon cancer, apple core defect is there, intussusception, telescoping of the intestine. My dear friends, coil spring appearance, claw sign is there, donut sign is there, and sausage shape lump is there. Ischemic colitis, guys, remember there will be a thumb printing sign right here. Single bubble sign is pyloric atresia. Double bubble sign duodenal atresia. Triple bubble sign jejunal atresia. Insert duodenal atresia also what's an annular pancreas we have to add right here, sir. Other than that, sigmoid valvular anti-clockwise rotation is there. Sigmoid colon wrap against itself. Coffee bean appearance is also seen. Ulcerative colitis, lead pipe colon, collar button ulcer. This is purely surgery topic. Just remember lead pipe. This is what, sir? Your this is called as what? This is called as what, sir? Your water lily sign. This sign is called as what, sir? Your water lily sign is there. Gallstone you are going to see right here, sir. What's our posterior acoustic shadow? Congenital diaphragmatic hernia. You will see how your diaphragm was weak. That is why all the intestinal contents are right now in the thorax. Atypical pneumonia caused by mycoplasma, my dear friends. This is caused by mycoplasma. And again, exam question, Klebsiella pneumonia, bulging fissure, you are going to see on the right side. Aspergilloma, air crescent sign is seen on the CT scan. TB, you will see millet seed-like appearance, miliary TB. Gons focus is something which is present on the middle lobe to the lower lobe. This is primary TB. Simon focus, secondary TB, pleural effusion, you will see CP margins are gone, and pneumothorax, the mediastinal shift is not there, but the lung is collapsed. Tension pneumothorax, yes, mediastinal shift is also seen. Hydropneumothorax, you can very well see here your water and the air are in the same chamber. Cannonball appearance, if any cancer is going to the lungs, it will lead towards a cannonball appearance. Pancreas, apical mass on the right side, my dear friend, Pancon syndrome, Horner syndrome is there. Pulmonary hematoma, popcorn calcification on X-ray is there. Bronchiectasis, abnormal dilatation of the bronchi is there, my dear friends. अरे guys, ये पढ़ा हुआ पहले से, इसीलिए फास्ट जा रहे हैं. Signet ring appearance is there. Sarcoidosis, you will see panda size. Why there is a panda sign? This is because of bilateral hilar lip adenopathy. Emphysema is of two types, centri and the pan-acinar, my dear friends. Centri-acinar is because of smoking. Pan-acinar is because of deficiency of alpha-1 antitrypsin. Alpha-1 antitrypsin deficiency, most common cause is smoking. Again, barrel-shaped chest tissue. Silicosis, eggshell calcification is there. Now we are going to the cardiovascular system of the radiology. Transposition of the great arteries, egg on string appearance is there. TAVVR, if you'll see, sir, figure of 8 appearance or snowman appearance is there. Tetralogy of palate, 4 feature you need to remember. Pulmonary stenosis, ventricular septal defect, overriding of aorta, and right ventricular hypertrophy. Right ventricular hypertrophy is responsible for the boot-shaped heart. Right ventricular hypertrophy is responsible for the boot-shaped heart. Quadcation of aorta, figure of 3. Money bag, leather bottle appearance. That remember, guys. Remember something called as pericardial effusion. Abstinence anomaly. You remember the lithium toxicity, box-shaped heart because of the right atrial enlargement. Congestive heart failure, 4 features you need to remember. Pleural effusion, septalization of the vessels, curly B lines, increased cardiothoracic ratio. Increased cardiothoracic ratio. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Constrictive pericarditis, guys, remember there is a pericardium just surrounding the heart, and there is a calcification. That is most commonly seen in the TB patient. Aortic dissection, you will see the true lumen is here, more white, and false lumen is little low. Clear हो गया बेटा? ठीक है, चलो. उसके बाद sir, let's talk about the ischemic and the hemorrhagic stroke. Ischemic, it will look more black, and hemorrhagic, it will look what's white on the CT scan. Hemorrhagic stroke, most common cause is hypertension, then EDH, SDH, my dear friends. And ischemic stroke is because of the what's a thromboembolism. Sorry, thrombus formation. Subarachnoid hemorrhage, thunderclap, headache is there, bleeding, subarachnoid space bleeding हो रहा है, sir, remember. Now subdural hemorrhage, sickle shape hemorrhage is there, injury to the bridging vein is there. Extradural, which is associated with the idli, mama is cooking good idli, middle meningeal artery. Sturge-Weber syndrome, tram track calcification is there, port wine stain you are going to see. Neurocystic sarcosis, parasitic infection, tinea solium,
which is associated with the pork eating history on CT scan, cyst in a dot in a whole appearance. Multiple myeloma, guys, multiple myeloma, plasma cell cancer is there on X-ray, brain drop lesions are seen. Pegas disease, cotton wool skull, we all know. Diffuse axonal injury, tiny hypodense foci are seen on NCCT. Axons are damaged. Now, meningioma, if we talk about dural taint sign is there, this is most common benign tumor. And glioblastoma, if we talk about this is what's a butterfly shape, this is most common malignant tumor. Oligo, you will see fried egg-like cytoplasm. Calcium deposition is seen on the CT scan. Coming to the next system, it is renal calculi. Triple phosphate stone is there, which is formed on the alkaline urinary pH and most commonly seen in the young boys. Horseshoe kidney, most common renal fusion anomalies there, my dear friends. Duplex pelvic lesion system, guys, remember there will be drooping lily sign. What you are going to see right here, sir? Drooping lily sign you are going to see. Ureterocele, you are going to see cadre head or cobra head appearance. Now hydronephrosis, pelvic ureteric junction obstruction is there because of that hydronephrosis. Now posterior urethral valve, most common male में देखने मिलता है on USG, keyhole appearance is there. Neurogenic urinary bladder seen due to increased sphincter tone. Christmas tree appearance you are going to see. This was recent FMG exam question. Polycystic kidney disease is of two type, autosomal dominant and recessive. There will be multiple fluid collection right there on the CT scan. And on IVP, my dear friends, we are going to see the spider leg appearance. क्या देखने मिलेगा sir? Spider leg appearance. Renal TB, putty kidney appearance is there, my dear friends. Rickets के अंदर you will see the cupping, flaying, and rickety rosary on head. You are going to see the craniotabs. Scurvy, it is due to deficiency of vitamin C. White line of Frankels you are going to see right here. Hyperparathyroidism, increased bone resorption. Rugged jersey spine you are going to see. And salt paper like skull also can come in the exam, guys, remember. Okay, chalo. Now thalassemia, we talk about sir, crew cut appearance or hair on end appearance. Chipmunk face is there, beta thalassemia, guys, remember. Sickle cell anemia, edge shave vertebra plus again crew cut appearance is there. Now if there is a spinal hemangioma, guys, remember spinal hemangioma, most common vertebral body, benign lesion in the vertebral body. One is polka dot sign, another is jail bar sign. Another is what's a jail bar sign. Fibrous dysplasia, this was recent exam question. Ground glass matrix in the metafacial region, guys, associated with the Shepard-Croc deformity. You will see ground glass matrix is there in the metaphyseal cavity and Shepard-Croc deformity here. This is Shepard-Croc deformity you are going to see right here. Arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis you are going to learn right now. Osteoarthritis, degenerative disease is there. ऑस्टियोफाइट देखने मिलेंगे, इसमें जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, पहले लेटरल साइड का होता है फिर मीडियल साइड का होता है. Rheumatoid arthritis, female most commonly affected. In the morning, people will be complaining of what's a morning stiffness for more than 30 minutes. And guys, the most common deformities which are associated with this is swan neck deformities and Botnius deformities. Swan neck deformity and Botnius. Charcot joint, you will see it will look like a fracture, but this is a painful condition. Moment the fracture like this comes and it is painless, you have to mark answer, and diabetes history is given, answer is Charcot joint. Multiple myeloma, guys, it is multiple raindrop lesion, plasma cell ka cancer, and which proteins you are going to lose. Remember, there will be a Benz-Jones proteins. You are going to extra edge are two images we are going to. Number one is CT scan where lungs are black, PET scan where lungs are white, and PET CT whole body is burning. Technetium 99, this is normal. This is grave disease and this is toxic multiple goiter. आदमी की टांगे उठी हुई है. Toxic adenoma, big block is there. This is all about the radiology. Also, we have done some radiology. Now coming to the next subject called as anesthesia, my dear friends. Let's talk about the next subject called as anesthesia. Where is anesthesia? So we are right here. Keep on saying, I will pass, I will pass, I will pass. Keep on saying, I will pass, I will pass, I will pass. I will pass, I will pass, I will pass. So guys, remember now, right now, we are going to talk about something. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर तो ग्लूटामेट है, इनहिबिटरी तो गाबा है सर हमारे. टाइप कैसे कैसे रीजनल, जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया. The needle we are using in the spinal anesthesia is what's a Quincase needle. There what's are your Quincase needle. There what's are your Quincase needle. Quincase needle. White hair and spotty, and adult site is again L3 L4 and children L4 L5. Piercing till what's a subarachnoid space. They are piercing what's are your, ठीक है,
Piercing till what, sir? Subarachnoid space, subarachnoid space, subarachnoid space. Dandana, 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 dan. Epidural anesthesia, we talk about ligamentum flavum tak isko puncture karna hota, two ही needle is there. My dear friends, next, general anesthesia, component of general anesthesia, loss of consciousness. Number one, loss of reflexes. Two, amnesia, muscle should relax, analgesia is there. पहले क्या होता प्री ऑक्सीजनेशन इज रिक्वायर्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड सर प्री ऑक्सीजनेशन इज रिक्वायर्ड देन इंडक्शन मेंटेनेंस एंड रिवर्सल एजेंट ऑफ चॉइस फॉर रीसेंट एग्जाम क्वेश्चन दैट इज फ्लूमाज़ानिल एंड इनहेलेशनल के अंदर हिस्डी इज देयर हेलोथेन आइसो सीवो टेस्ट methoxy is not used why you all know this is what sir your nephrotoxic minimum alveolar concentration is inversely proportional to potency and mnemonic we have learned again his D was the mnemonic halothane isoflurane sevoflurane desflurane halothane is most potent with a minimum MAC desflurane is least potent with a maximum MAC my dear friends coming to the blood gas solubility guys remember blood gas solubility is inversely proportional to the speed जितना ज्यादा ब्लड गैस solubility को उतनी कम स्पीड होगी the desflurane is having the maximum speed with the minimum blood gas solubility then we are talking about the halothane is like second best in the children now coming which is the first best in the children your answer is sevoflurane is sweet smelling especially in the children sevoflurane is an agent of choice for asthmatic cardiac surgery neurosurgery etc avoided in renal pages xenon is expensive that is why and xenon is expensive that is why we do not use this mac is very low not very low it is average mac and guys remember why we cannot use xenon because it is very expensive nitrous oxide guys it contain oxygen that is why it is contraindicated in the laser surgery nitrous oxide का MAC बहुत ज़्यादा इसलिए potency is less that is why it cannot produce general anesthesia alone so we need some potent gas for example halothane is a second gas halothane is producing anesthesia inside the body this is second gas effect and moment they are coming outside they are getting oxygen so oxygen is the third gas and guys remember after oxygen coming outside inside there will be a diffusion hypoxia this is what's are called as third gas effect this is called as what's are your third gas effect dun. Now coming to the other topic we are having IV anesthetic agent thiopenton sodium smell is garlicky loss of consciousness is only seen in the 11 seconds guys propofol very important what is the mechanism of action of propofol GABA receptor attack karta hai color is milky white composition is diisopropyl alcohol plus EGS egg lecithin glycerol and soybean oil if we talk about the agent of choice in the daycare surgery if someone is asking you agent of choice in the daycare surgery, your answer is what? Sorry, propofol. Done. It is also agent of choice for TIVA, total intravenous anesthesia. Maintenance and induction is both by the IV route. Ketamine, cut the mind. This is called as dissociative anesthesia effect. Ketamine, cut the mind. This is called as dissociative anesthesia effect. Eye wide open, but no memory, no pain. Eyes wide open. No memory, no pain is there. It is contraindicated in neurosurgery, use in shock, asthma, etc. Side effects is post-op hallucination. Now coming to the next topic, that is what's a non-depolarizing muscle relaxant. Long acting is doxo and pan. Okay? Non-depolarizing is what's a doxo and pan. And intermediate acting may you have to remember Atra. Atra will show you something surprise. That is what's your non-enzymatic breakdown. Atracurium will show you surprise that is non-enzymatic breakdown. This is called as Hoffman degradation. Chal. इसके बाद we are going to talk about malignant hyperthermia. Malignant hyperthermia, guys, it is autosomal dominant condition due to mutation of. Again, I want to repeat. Yes, due to mutation of ryanodines receptor at neuromuscular junction. Ryanodines receptor at neuromuscular junction of chromosome number 19 and 17. Excessive calcium is released because of that muscle contraction is there. After muscle contraction, potassium is there. After potassium, what is happening? Arrhythmia. So earliest cause of death in the malignant hyperthermia would be what's an arrhythmia, and the late cause of death would be what's an myoglobinuria. And drug of choice is dantrolene sodium. Dun. Pin index are something which are important. 1,5 is for air, 2,5 oxygen, 3,5 nitrous oxide. 1,6 is carbon dioxide more than 7%, 2,6 is carbon dioxide less than 7%, 3,6 is cyclopropane. Antonox is again 50% oxygen, 50% nitrous oxide, my dear friends. Air, if we talk about a gray body with black and white shoulder, air,
the pin index is 1,5. Oxygen black body with white shoulder, pin index 2,5. Then blue color cylinder is nitrous oxide, pin index is 3,5. Carbon dioxide is 1,6 and 2,6. This is gray color oxygen, gray color cylinder. And carbon dioxide, my dear friends, carbon dioxide, if we talk about carbon dioxide, हमारा कहाँ पे use होता है? It is used in the laser surgery. Carbon dioxide is used in the laser surgery. Coming to the cyclopropane, this is 3,6. Orange color cylinder is an Antonox mixture of two gases. Blue body, white shoulder, and Antonox pin index is 7. So all pin index, everything. Intubation position is very important. So sniffing position, which is also called as barking dog position. Chin is lift, head is tilt. Chin is lift, head is tilt. This is intubation position, my dear friends. Coming to the Malam Patti scoring used to predict the difficult intubation. Guys, remember, class 1 and class 2 where soft palate and uvula is visible. There you will intubate. If class 3, class 4 is there, you don't have to intubate. Difficult intubation. Now, Makantosh is something which is big and tilted. It is used in the adult. Miller is something which is used in the children. Cuffed endotracheal tube is the best because it prevents aspiration. Double human endotracheal tube is used for the it is used for the lung surgeries because it can provide the single lung ventilation. ये भी clear हो गया? Flexiometallic tube is used for the head and neck surgeries, prone position surgeries, etc. and etc. Now, supraglottic airway device is placed above the supraglottis, my dear friends. LMA classic is one which is not used, not that important. Image base, yes, need to know. There is a hole in the front. This is ProSeal. LMO Supreme is L shape, my dear friends. iGel is cuffless device. Neuromuscular monitoring is there. This was recent exam question image. They have asked which nerve you are testing. Your answer would be also ulnar nerve. This is non-rebreathable mask, my dear friends. Answer is very simple. This is for the maximum oxygen for the person. Venturi mask special property about the Venturi mask is that yes, we can control the flow because there are the adjuster which are placed right there. Ambu bag is helpful in the mechanical ventilation right here. Now Boyle's machine. Boyle's machine, you will see this is example of closed circuit. There is a carbon dioxide absorbent. What is that? Soda lime. If you see soda lime will convert pink color to white color. Anesthetic agents and their vaporizer color. Halothane, red color. Yes. Sevoflurane, yellow color. Desflurane, blue color. Enflurane, orange color. And isoflurane, purple color would be there. If we talk about the flow, you will see normally 35 to 45 ke beech mein flow would be there, sir. Yes, my dear friends. And hyperventilation, there will be less than 35. Hypoventilation, it will be more than 45. Shark fin pattern is seen in COPD. What are your things you are going to monitor in the general anesthesia? Guys, in the general anesthesia, you are going to monitor the ECG, BP, pulse oxy, capno, and the temperature. These are the things you are going to monitor right here, sir. Now open and the closed circuit. Other than that, fluid of surgery is important. Colloid, you will give the blood product like PRBC, flash frozen plasma, platelet, etc. etc. Crystalloid, if we talk about of two type, isotonic and hypotonic. Isotonic NS ringer lactate. Ringer lactate is a drug of choice for surgery. Also in the burn patient. Also it is seen as a severe dehydration patient. ठीक है sir? Severe dehydration patient. ठीक है sir? Now hypotonic is dextrose 5%. In the low hypoglycemic patients, we will give this. Done sir? चलो clear हो गया? चलो जी. Now we talk about ALS protocol. Monitor करो ECG को. If shock is rhythmic, then we will start CPR also and we'll start CPR cycle along with that sir. रिदमेबल शॉक को क्या करोगे आप सर? D5 से क्या करोगे? शॉक दोगे. उसके बाद CPR स्टार्ट तो होएगा ही. एड्रेलिन 3 to 5 minutes देना है. 1 ml स्टैट देना है जब भी देना है. And amiodarone is given as an anti-arrhythmic drug. If not available, lignocaine is another choice. With this, we have completed a subject called as anesthesia. ये होती है हमारी क्लास. अब पढ़ेंगे हम ऑर्थोपेडिक्स. क्या पढ़ेंगे सर? ऑर्थोपेडिक्स. Yes, orthopedics. चलो जी. How are you people? Keep on saying I will pass, my friends. Keep on saying I will pass. तब तक मैं पानी पी लूं प्यारे दोस्तों. Wow, I will pass. इतने सारे सब्जेक्ट हमने खत्म कर लिए. Thank you so much इंद्रानी. Thank you so much अश्वती. Everyone right there, sir. बहुत ज़्यादा बड़े. मज़ा आ गया. Very good. So relax for a while and then we are going to start the next subject, sir.
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। राइट, चलो। So guys, let's talk about the important terms right here. So periosteum is a outer covering of the, yes, periosteum is the outer covering of the bone which protects the bone against the tumor and the infection. Tumor and the infection. Yes. Chalo. Periosteum is outer covering of the bone, my dear friends. It protects against the tumor and the infection. Sharpish fiber, it connect bone with the periosteum. Type 1 collagen is there. Osteomalacia, loser zone, you are going to see. Osteoporosis, you are going to see codfish or fish mouth vertebra. Marble bone, osteoclastic activity is hampered. That is why only blastic is there. Blastic, extra calcium. That is why marble bone disease is there. That is what, sir? Marble bone disease. Osteogenesis imperfecta triad is there. What triad is there? Blue sclera. Hearing loss, multiple bone fracture is there. Done. Paget's disease, what you are going to see, sir? Cotton wool skull you are going to see. Achondroplasia, autosomal dominant inheritance. Sir, most cause of dwarfism is achondroplasia. Trunk is normal, but the limbs are short. Trident hands are there. Champagne glass like pelvis is there. Osteomalacia is infection caused by Staphylococcus aureus. And chronic osteomyelitis is something which was previous year question, my dear friends. Chronic osteomyelitis, hallmark is sequestrum. Guys, involucrum is a new bone formed in the chronic osteomyelitis, and hallmark is sequestrum, which is a dead bone. Coming to the next is ankylosing spondylitis. The gene is HLA-B27. There will be a bamboo spine appearance you are going to see. Bursitis, the housemaid knee is something pre-patellar bursitis. Clergyman infrapatellar bursitis, guys, remember? Okay, chalo. Other than that, student's elbow is olecranon, which is previous year question. Weaver's bottom is ischial and talar LLL for lateral bursitis. Coming to the most common dislocation, shoulder is anterior, elbow is posterior, hip is again posterior, and knee is anterior, patella is lateral. Patella is lateral. Syndrome we talk about later, we all know. Complication of fracture, early complication is shock. Fat embolism, guys, question can come like this. Fat embolism may remember the timing is less than 2 to 3 days. 2 से 3 दिन का ही हिस्ट्री होगा लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर का. History of long bone fracture, 2 to 3 days. Remember, then there will be what's a fat embolism. Coming to what's your compartment syndrome, there will be Volksman ischemia like this. Guys, dear friend, these are something. Compartment syndrome treatment is urgent fasciotomy. What is the treatment you are going to give in the compartment syndrome? That is your urgent fasciotomy. That is what's your urgent fasciotomy. Chalo. Now coming to the delayed complication like myositis ossificans, where your muscle is converted into bone, avascular necrosis, which is most commonly seen in scaphoid, malunion and non-union, that works. Now all fractures we need to identify. Clavicle, what splint we are giving, figure of 8 splint will give. Neck of humerus, which nerve is gone, axillary nerve. Shaft of humerus, radial nerve is gone. Colles fracture is the fracture of distal end of radius with outward dislocation and dinner for deformity seen. Smith is again a fracture of distal end of radius. The mode of injury was flexed hand, and now the dislocation is inward, and garden spade deformity is associated with this. Dun. Clear? Sir, now. Barton's fracture is a fracture of distal end of radius involving the articular surface. Very easy. Scaphoid was recent exam question. What treatment you will give in the scaphoid fracture? The most common carpal bone to go under avascular necrosis is scaphoid. What treatment you are going to give in the scaphoid? It is glass holding cast. Rolando is a fracture of base of thumb, my dear friends. Boxes is a fracture of fifth metacarpal bone. If we talk about the mallet finger, it is an extensor tendon which is gone. Now, supracondylar fracture of the humerus, if we talk about, guys,
Most common nerve involved is AMRU, A for interosseous nerve, M for medial nerve, R for radial nerve, U for ulnar nerve. Most common artery is brachial artery, my dear friends, and late complication is gun-stalk deformity. Montage and Glazy are the two fractures which confuse us in the exam. Let's sort out this mess right now. Montagia is something up fracture. It is upper 1/3. You can say proximal 1/3 of the ulna with radial head dislocation. If it is distal end of the radius with radio-ulnar joint dislocation, we call that as Galeazzi. Shoulder joint, if it is dislocated, the head of humerus is like a hill. On that hill, there will be a hill sac lesion, and glenoid labrum is what's are your what's a glenoid labrum is what's are your there will be what's are your Bankard's lesion. Developmental dysplasia of the hip. What is the treatment? Pelvic harness is the treatment. Pelvic harness is a treatment. Now coming to the next important thing is deformity. If it is on the elbow, we call that as cubitus. If it is on the hip, we call that coxa. If it is on the knee, we call that as genu. We call that as genu. Okay, sir. If there is a space between the knee, this is called as varus. If they are attached with each other with the help of gum, this is called as genu. Well, gum. Genu, well, gum. Now, swan neck deformity is Botnius deformity. Guys, remember, they are opposite to each other. They both are seen in rheumatoid arthritis. And guys, rheumatoid arthritis is seen in the female. Early morning, you will see stiffness would be there. Early morning, there will be what's a stiffness would be there. You will see PIP and DIP. In PIP, hyperextension is there. PIP पे क्या है sir? Hyperextension is there. DIP पे flexion. In the Botnius deformity, opposite is happening. Dun, 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 dun. Wind sweep deformity. If it is in the children, the cause would be rickets. And if it is in the adult, the cause is rheumatoid arthritis. Chalo. Penicillin cup appearance is seen in psoriatic arthritis. Now coming to the splint, fracture is femur. Dennis Brown splint is there. Congenital talipes equinovarus clubfoot. It is associated with the Edwards syndrome, trisomy 18. Mermaid is rickets. Most common complication in rickets, not most common, but one of the complications is knock knees. Then cock-up splint, radial nerve. Knuckle bender, ulnar nerve. Aeroplane splint, brachial plexus injury. Taylor splint is posture corrections like lordosis, kyphosis, and Milwaukee's S-shape, scoliosis. Milwaukee is given in scoliosis, Cobb's angle will measure. Now coming to the next is giant cell tumor, lytic lesion without sclerotic margins. Guys, remember, and soap bubble-like appearance is there. Epiphyseal regions are involved right here. Aneurysmal bones is, you will see bone is surrounded by cyst. Ewing sarcoma, onion peel appearance is there in the Ewing sarcoma. Done. Osteosarcoma, periosteal reaction is there. Because of that, there will be a sunburst appearance and Codman's triangle. Osteochondroma, benign tumor originate from the metaphysis, just simple excision will do. And chondroma, most commonly seen in the hand. If multiple enchondromas, we call that as Ollier syndrome, and it is originated from the cartilaginous part of the bone, my dear friends. Now coming to the rat bite side, which is seen in the gout. Gout and pseudo gout are the important topics for the exam. In दोनों में से one would be there in the exam. दोनों को याद कर लो. If the position is first metatarsophalangeal joint, then answer is gout. If it is knee joint, then answer is pseudo gout. Now, telling about the crystals in the gout, there will be a needle-shaped crystal, that is monosodium urate ka crystal. In pseudo gout, the crystals are rhomboid shaped, that is calcium pyrophosphate crystals are there. On polarized light in the gout, gout is like a doubt. Doubt is negativity. Negative birefringes are there. If we talk about the pseudo gout on the polarized light, positive birefringes are there. What is there, sir? Positive birefringes. Both of them drug of choice. NSAID, my dear friends. Gout is also two types, acute and chronic gout. Acute gout drug of choice is NSAID, but we'll never give aspirin or PCM. Now, another thing is chronic gout. Chronic gout, the drug of choice is allopurinol, which is xanthine oxidase inhibitor, my dear friends. Simple answer. This is how we beautifully completed orthopedics also, sir. Orthopedics is also done. Now it's time for ENT. Let's talk about ENT. ठीक है sir? ENT करते हैं. Are we all ready for the ENT, my dear friends? Are we all ready for the ENT Virat Mahachanting session? So it's soon going to be the 4 hours, my dear friends, since when we have started this session. And congratulations to all of you. You all are here. May God bless your hard work. सबका सब कुछ अच्छा होगा. बहुत अच्छा होगा. Yes. Dr. Indrani, Divya, Riya, Ashwati, everyone is.
Keep on saying, I will pass, I will pass, I will pass, I will pass, I will pass. I will pass, 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 I will pass. आज हर तरफ से आ रही है ये आवाज. I will pass, बोलो I will pass. I will pass, बोलो I will pass. I will pass, I will pass. I will pass, I will pass. I will pass, I will pass, I will pass. Let's talk about the nose. Nose, there is a cut list test we done for the nasal uh, blockage. Saddle nose, most common cause is trauma, augmentation, rhinoplasty we do, basal cell carcinoma is most common malignancy which do not metastasize. As the malignancy, sir, जो metastasize नहीं करती है, that is basal cell carcinoma, rodent ulcer. Rhinophyma is happening because of hypertrophy of the sebaceous gland. There is a potato nose-like appearance. Now we talk with the foreign body. Foreign body is a unilateral condition. There will be epistaxis. Yes, there will be what's your blockage of the nose, and treatment is endoscopic removal. Now coming to the nasal bone ka fracture. Upper 1/3 part is bony part. That is why most commonly those parts are getting damaged, my friends. Other than that, immediate close reduction you will do with the help of Walsham forceps. Nasal septum fracture, front is coming from the force is coming from the front. This is called as what's an horizontal or jarge way. If the force is coming from the below, that is called as vertical or chevalet fracture. Vertical or chevalet fracture. Blowout fracture, we already know teardrop sign is there. Now CSF rhinorrhea is another case we can discuss. Good case. There is a cribriform plate cut damage. Because of cribriform plate cut damage, you will see the blood stain CF is coming, my difference. Beta 2 transferrin estimation we can do. It's the best test. How to check the site of leak. HRCT skull base is there. What is the treatment? Conservative, bed rest, etc. You will give. Along with that, what you will add? You will add the antibiotics. What you will add, sir? You will add the antibiotics. Antibiotics. Chalo. Now we talk about something called as middle meatus. Middle meatus के अंदर कौन कौन सा साइनस ड्रेन करता है? Maxillary frontal anterior ethmoid. Maxillary frontal anterior ethmoid. Landmarks are buoy. If buoy get blocks, buoy is what's a bulla ethmodalis. Yes. Second is uncinate process. Third is ethmoid infundibular. Bulla ethmodalis, uncinate process, ethmoid infundibular. This is buoy. If buoy gets blocked, which will lead to a disease called as sinusitis. Now, sinusitis, guys, osteometal complex is blocked, mucosal edema might be the reason. And now you have to check the sinuses. One is Waters view, occipitomental view. Occipitomental view is there, and you are going to see frontal sinus, ethmoid sinus, maxillary sinus. If in a same view you will open the mouth, you will be able to see the sphenoid sinus also, and this is something called as Pieris view. Very simple. Again, वाटर्स व्यू के अंदर फ्रंटल एथमॉइड एंड मैक्सिलरी साइनस अच्छे से दिख रहा है. वाटर्स व्यू के अंदर ही आपने मुंह खोल दिया, then sphenoid sinus is also visible. This is called as Pieris view. This is called as Pieris view. ठीक है. Now coming to this Ongren's line. Ongren's line will tell you about the maxillary carcinoma का prognosis. If it is below this Ongren's line, it will be good prognosis. If it is above this Ongren's line, there will be a poor prognosis. Now coming to the next thing is Samter's type. Nasal polyp, asthma, allergy to NSAIDs. This is what's are your. Thank you so much, Dr. Nitish. So sweet of you. Sharma ji ka ladka. Now, Samter's type, nasal polyp, asthma, and I would love to tell you about Nitish. Nitish is doing a tremendous work. इसने अपने अच्छे अच्छे ग्रुप खोले हुए हैं जिसके अंदर ही इज प्रोवाइडिंग ऑल द क्वालिटी कंटेंट राइट देयर सर. इज डूइंग वेरी गुड जॉब. ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो अपना टाइम देना पड़ता है इन सब चीजों के लिए, एंड ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क. ठीक है. सेप्टेस्टाइड, नेजल पॉलिप, अस्थमा एंड एलर्जी टू एनसेड्स. Mucormycosis, fungal infection of the nose is there. What is there, sir? Fungal infection of nose is there. Most common fungus is Rhizopus, seen in young diabetes HIV positive patient. Treatment is amphotericin B. Rhinitis medicamentosa, due to prolonged use of decongestant, guys, stop the drop. First thing is stop the drop. Start steroid nasal spray. Drop ko start or steroid nasal spray. Then deviated nasal septum. Sir, deviated nasal septum, guys, remember, yes, Kabila, yes, Indrani, correct. Kabila group he's handling. He's very good work he's doing. I'm very happy for my all FMG friends who are doing such great works. So proud of you. Deviated septum, you will see on the side of other side, you will see blockage, and this side there will be a crust formation, ruby nasal cavities.
plus inferior turbinate hypertrophy. It will lead to mulberry-like appearance. Guys, mulberry mass is there plus Sludder's neuralgia is there. Okay, sir? ठीक है sir, Sludder's neuralgia is there. Treatment is septoplasty. Then septal perforation cause can be trauma. Yes. Then another thing is what you will do. You will close this perforation with septal button. This is 100% exam question on 20th of January. Atrophic rhinitis, which is also called as ozina, caused by Klebsiella ozina, seen in female. Roomy nasal cavity is filled with crust. Now nasal blockage is there. Bad smell is coming from a patient, but patient has anosmia. Bad smell is coming from a patient. The patient has anosmia. First, medical management. After medical management, there will be surgical management. Guys, medical management, alkaline nasal douching is there. Sodium bicarbonate, sodium biborate, sodium chloride. Surgical management, Young's operation, modified Young operation, and Ladd-Slanger operation. Young's, modified Young's, and Ladd-Slanger operation is there. Ladd-Slanger operation is there. हाँ, ये virtual library भी चलाते. Very good. Now, rhinoscleroma is woody nose caused by Klebsiella rhinoscleromatis seen in UP and Rajasthan. Russell body nucleus cell we are going to see. Tetracycline streptomycin is a treatment. Rhinosporidiosis caused by Rhinosporidium severi, associated with the history of pond bathing, Tamil Nadu, mulberry-like mass, plus epistaxis, electrocautery of the mass with the drug called as Dapsone. Epistaxis, we all know, Little's area is supplied by Kiesel wax plexus. What vessels are there? Vessels are like this. We have learned a mnemonic called as gas. Kiesel wax plexus ka mnemonic kya hai? Gas. Gass. Greater palatal artery, here it is. Anterior ethmoid artery, here it is. Sphenopalatine artery, here it is. And superior level artery, here it is. Out of these four, which is the artery of epistaxis, your answer is sphenopalatine artery. Now we are coming into the pharynx. Pharynx mein number one is Keelius license, and you know outpouching from the Keelius license. Outpouching from the Keelius license, weak mucosal wall, there will be what's it? Zenker's diverticulum. Now you will see something called as what's your laryngopharynx. The pharynx part which is surrounding the larynx is called as what's your laryngopharynx. Laryngopharynx also called as hypopharynx. Guys, remember something. Most common site of hypopharyngeal malignancy is pyriform sinus. These parts are called as what's a pyriform sinus. And Murray's sign is present. What is Murray's sign, guys? Remember, if laryngeal crepitus are absent, which is most commonly associated with post-cricoid carcinoma, then we call that Murray's sign is absent. Murray's sign is absent. Now we talk about something called as nasopharyngeal carcinoma. Nasopharynx we are going to talk about. Two landmarks are there, adenoid and eustachian tube. Adenoid, if we see here, adenoid is a collection of lymphoid tissue in the nasopharynx. Yes, my dear friends. No capsule, no crypt, no definitive blood supply. On palpitation, there will be a bag of warm feel, grows up to 6 years, start decreasing at puberty, disappear by 20 years of age. If we compare adenoid with the tonsil, tonsil is bit richer. It's having capsule, own capsule, have crypt and have definitive blood supply. Adenoid hypertrophy होते ही बच्चे का नाक बंद हो जाएगा. If the nose is closed, there will be a history of mouth breathing. If history of mouth breathing is there, there will be adenoid phase. Open mouth, pinch nose, high palate, malocclusion of teeth. Yes, open mouth, pinch nose, high palate, malocclusion of teeth. These all are features of adenoid hypertrophy. Treatment is adenoidectomy. Curettage you will do in the rose position. Atlantoaxial subluxation can happen. This is called as Grissel syndrome. Atlantoaxial joint is a no movement joint. It is what's your no movement joint. No movement joint. Coming to the angiofibroma, most common benign tumor of the nasopharynx. Site of origin is sphenopalatine foramen. You will see angiofibroma, highly vascular tumor is there, bleeding is there. Yes, antral sign or Hallman-Miller sign is there. Anteriorly, if your base of your orbital floor is going anterior side, this is called as Hallman-Miller sign or antral sign. Antral sign. Coming to the next, nasopharyngeal carcinoma, previous year question. Most commonly in the China, etiology is Epstein-Barr virus. Site of origin is fossa of Rosenmuller. Site of origin is fossa of Rosenmuller. Trotter stride, guys, NPC, neuralgic pain, palatal palsy, conductive hearing loss. Trotter stride is what's an NPC. There will be a neuralgic pain, palatal palsy, and conductive hearing loss is there. And because of a eustachian tube blockage on the unilateral side, one side, that is why unilateral conductive hearing loss is there.
Now coming to the treatment of nasopharyngeal carcinoma, chemo radiation is better answer than the radiotherapy. Tonsil we talk about, this is a part of oropharynx. Tonsil is a part of oropharynx. Tonsil is which richer. Blood supply of the tonsil is tonsillar branch of facial artery and drainage is by paratonsillar way. Drainage is what sir? Paratonsillar way. Paratonsillar way. ठीक है, देखो कौन आया है, हेलो बोल दो भैया जी एक बारी, और हेलो बोल दो, और भैया जी लेके आए हैं चाय, गला गया था मेरा, थक, मैंने बोला भैया जी आ जाओ और भैया जी आ गए। यही होती प्यार की बात। बस अभी करेंगे एंटी खत्म, फिर भैया को ओवर दे दूंगा मैं मेडिसिन का और जो भी भैया जो सब्जेक्ट कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। फिर 12 बजे तक मस्त जो भी कंफर्टेबली क्लास चलेगी तुम्हारी, ठीक है। Now, primary if we talk about, it is during the surgery. Reactionary is within 24 hours of surgery. Why reactionary is there? Because of slippage of ligature. ठीक है, क्या करोगे, दोबारा टाके लगा दोगे, there is a re-exploration, ठीक है, immediately re-exploration. Next thing is what sir? Your secondary, more than 5 days, causes infection. Treatment is IV antibiotics. What you are going to do, sir? IV antibiotics. Thank you so much, भैया, thank you so much. तो cheers guys. तो चाय आ गई है, क्या बोलते हैं, पी लो जी श्रीमान, आज तुम गर्म चाय का प्याला, ओ मेरी चाय बड़ी है सस्ती, ओ पी के आ जाए इसको मस्ती, मेरी चाय बड़ी है सस्ती, ओ पी लो जी श्रीमान, आज तुम गर्म चाय का प्याला. For those who want to know in English, oh my dears, please drink my hot cup of tea. My tea is cheap, but it is full of love. That is why I am offering you tea from my heart. It is from heart to heart, hot tea. Have it and enjoy. Yes, that's what life is. Yes, my dear friends. Now we are going to talk about the secondary that is happening because of the infection. And treatment is what sir? IV antibiotic. It is what sir? Yeah, IV antibiotics. Done. क्विंसी में बस एक याद रखना, आउटर नेक नोड, सारे फीचर क्विंसी के तुम्हें पता है, आउटर नेक नोड मास इज नॉट देयर. इफ आउटर नेक नोड मास इज देयर along with all the features of Quincy, then it is what's a parapharyngeal abscess. Done. Ludwig's angina was also question I've seen in the many mock exams. It is infection of flora of mouth. Mylohyoid muscle is gone, dental infection, chin swelling, trismus, external incision and drainage is a treatment. But in a Quincy, internal incision and drainage, and it is interval tonsillectomy we will do after 5 to 6 weeks. Now thorax, so 3 unpaired cartilage we are going to talk about. If we talk about the number 1 is thyroid cartilage, it is open book like, male में 90 degree, female में 120, and in males it is going to form the Adam's apple. They are going to form what sir? Adam's apple. दन इश्मा जोत कहते हैं, विस्की पिएंगे, आय हाय उत्सुकता हो रही बहुत ज्यादा. कहते हैं 5 बजे एग्जाम खत्म, 5 पे बोतल खोली, है ना, ये वाली हरकतें करोगे तुम लोग, है ना. Naughty boys and naughty girls right there with me sir. Cricoid, R for ring like cartilage is there. Epiglottis is leaf like, leaf will cover. पुराने जमाने में पत्ते ढकने के काम आते थे, तन यहाँ ढक रहे हैं तुम्हारा मन, तो क्या है सर, यहाँ पे leaf like cartilage is there, covers sir. ठीक है, चलो ठीक है सर. थैंक यू अक्षिता, थैंक यू सो मच. हाँ, चाय को घूट मार लेते हैं, सही कह रही हूँ. लड़कियों के अंदर कितनी ममता होती है, लड़के कैसे होते हैं, जल्लाद. जल्दी करो, है ना. चलो जी गाइस, केराटोसिस लैरिंक्स. इन सम स्मोकर्स वोकल कॉर्ड एपिथेलियम शेड्स फास्टर. स्ट्रिपिंग करानी है, कुछ नहीं करना. प्यूबरफोनिया, फीमेल लाइक बॉय. फोनिया, स्पीच में क्या करोगे सर, टाइप 3 थायरोप्लास्टी. एंडोरफोनिया, फीमेल इज हैविंग मेल लाइक वॉइस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट सर, एंडोरफोनिया. ठीक है सर. चलो, नाउ कमिंग टू द, अगर कोई ट्रम्पेट ब्लोअर का हिस्ट्री दिया होगा जो बाजा बजाता रहता है, लारिंगोसील इज द आंसर. व्हाट इज लारिंगोसील? देयर इज अ सैक्यूल in the supraglottis. There is a saccule and saccule becomes very big जब आप बाजा बजाते हो. ओ राजा जी, बाजा बाजी की नहीं बाजी. So guys remember, saccule अगर बड़ा होगा, saccule is also called as oil can of larynx. It is also called as what sir? Oil can of larynx. Now sir, let's talk about the phonesthenia. If your adductor muscle, which are thyroarytenoid and intrarytenoid, if they become weak, there will be space, it will be keyhole glottis, and this is phonesthenia. Now vocal nodule versus polyps.
Nodule is bilateral. Nodule is bilateral और ज़्यादा चिल्लाने से होते हैं nodules. And polyps is again what unilateral condition. Site is again same junction of anterior 1/3, posterior 2/3 vocal cord. And if we talk about the treatment of nodules, nodules is voice rest. If we talk about vocal polyp, it is microlaryngeal surgery. Intubation granuloma पीछे की तरफ होता है, anterior 2/3, posterior 1/3, my dear friends, and treatment is microlaryngeal surgery. Done. Ringcase edema, yes, smoking, hoarse voice is there, stripping of vocal cord mucosa. Now, pediatric position of larynx has been updated right now, so C2, C3 high. Pediatric position of larynx is updated C2, C3 high, adult is C3, C6 low. और pediatrics means सबको अच्छे लगते हैं बच्चे सबको, और adult एक दूसरे की जी मारते हैं, तो दोस्तों ग्लास्टिस। चलो ये भी क्लियर हो गया। फंक्शनल एफोनिया, यू ऑल नो ब्यूटीफुल फीमेल वुड बी कमिंग टू यू, और जैसे ही ब्यूटीफुल फीमेल आपके पास आएगी, बोलेगी मैं बोल नहीं पा रही, बोलेगी क्या, प्रिटेंड करेगी बोल नहीं पा रही हो, कफ रिफ्लेक्स पॉजिटिव होगी, पकड़ी जाएगी। लैरिंगो मलेशिया ओमेगा एपिग्लॉटिस इज सीन बिकॉज ऑफ वीक एपिग्लॉटिस, यू विल सी इंस्पिरेटरी स्टाइडर इन द फ्यू डेज ऑफ बर्थ, यू विल जस्ट रीअश्योर द फीमेल। कमिंग टू द पीडियाट्रिक्स लारिंक्स, या तो ये आएगी या ये आएगी, दोनों में से एक तो आने ही वाला है। Acute epiglottis, if we talk about, it is an infection of supraglottis. Yes, step pneumoni is better answer than H. influenza. We also know that thumb shape appearance is seen on the X-ray. Chalo. Steeple sign is there, parainfluenza virus is there, infection of complete airway. This is nothing. Barking dog-like cough is there. This is nothing but your acute laryngotracheobronchitis. Khatam. Sir, now if your laryngectomy is done after the cancer, the voice production is esophageal voice like this. Tracheoesophageal puncture device is the best, and if she's using vibrator and vibrator is making her happy, this is what's an electrolarynx. अब आएंगे आगे की बात करेंगे ईयर पे। ईयर की बात करेंगे, ossicles are important. Sir, Malleus, Incus and Stapes. Malleus developed from first arch, Stapes developed from the second arch, my dear friends. And remember, if we talk about the pinna hematoma, if you will not aspirate the hematoma, there will be a necrosis. Coming to the next is malignant otitis externa. It is the infection of underlying bone of external auditory canal seen in the old diabetic patient. It is seen where, sir, old diabetic patient, ear ache plus granulation is there. And treatment is there in the third generation cephalosporin. Automycosis is a fungal infection of external auditory canal. Most common fungus is aspergillus. कैसी है? Wet newspaper appearance. Now, coming to the next important is glue ear. Serous otitis externa media. Collection of thick sterile glue-like fluid in the middle ear. Adenoid hypertrophy की वजह से blockage हो सकती है. दूसरा nasopharyngeal carcinoma is there. Guys, school age children, conductive hearing loss is there. And after examining otoscopy you are doing, after examining you will see there are the bubble type. This is thick sterile glue-like fluid is there. Bubble-like appearance is there just on the tympanic membrane. Will give you idea of a sterile fluid, and this is glue ear. Now treatment is myringotomy. You will cut the tympanic membrane and you will place a device which is helpful in the drainage of the glue-like fluid. This is government incision. Done. Coming to the next is middle ear cleft. Middle ear cleft की सबसे पहली बीमारी क्या है सर? ठीक है? क्या बात है सर? चलो, so middle ear cleft के अंदर सबसे पहले है acute suppurative otitis media, guys, infection of the middle ear mucosa. Most common organism if we talk about the Streptococcus pneumoniae. It is what's a Streptococcus pneumoniae. So cartwheel sign is there. Acute suppurative otitis media, step pneumoniae is a cause. Cartwheel sign is there. Myringotomy is there. If treatment not taken, safe type of CM. Safe type CM or CSOM and unsafe type of CSOM. What is the difference? With the safe type CSOM, guys, there is a permanent perforation in the pars tensa. पहले बात तो pars tensa पूरे तरीके से फटा होगा. दूसरा, the discharge is there, which is not foul smelling, which is not blood stain. If it is foul smelling, blood stain, we have to think about the unsafe type of chronic suppurative otitis media. So this is all the differences. Treatment part, if we talk about myringoplasty, is to repair the tympanic membrane, and yes, bones are getting eroded because there is a permanent perforation because of that air is directly contacting with the bones. The bone is getting got damaged. That is why we will do what's a repair the bone, and to repair the bone is called as tympanoplasty. Tympanoplasty bone को repair करने को बोलते हैं. Myringoplasty is to repair the tympanic membrane. It is to repair the tympanic membrane. Done. Now coming to the acute mastoiditis. Always and always remember rule of two here. Infection of the mastoid air cells. Pain is behind the pinna, my dear friends.
you will see there will be a reservoir sign and lighthouse sign. What is reservoir sign and what is lighthouse sign? Guys, if we talk about the reservoir sign and lighthouse sign, reservoir sign क्या होता है? You are removing the pus, and after removing the pus, my dear friends, after removing the pus, what is happening? The pus is again filling. The pus is again filling. This is called reservoir. And guys, remember, after pus it is reservoir side. And guys, remember, if pus is continuously moving, this is called as lighthouse side. This is called as what's a lighthouse side. Two views are there for the mastoid. This is Schuller's and Downey's, my dear friends. Yes, Schwartz operation is cortical mastodectomy. You have to find the antrum. Two landmarks are there. Again, the rule of two. Smack Evans triangle and supramatal triangle is there. Now, abscess related to mastoiditis, Bizold and Citilli. Bizold is sternocleidomastoid muscle. Bizold. Where is Bizold? Right here, sir. Sternocleidomastoid. Sit and digest, digastric muscle. Sit and Citilli क्या है? Digastric muscle. ठीक है? Rest two are not that important. Petrositis is called as Gradinigo syndrome. GERD. Gradinigo syndrome is what's a GERD. Mnemonic is there. Yes. E for ear discharge, R for retroorbital pain due to fifth nerve, D for diplopia is due to sixth nerve, my dear friends. Unsafe CSOFM, polysteatoma, skin ka mass which is present in the Prosac space. Where is Prosac space? Just after tympanic membrane, there is a Prosac space. Guys, there's an earache, blood stain is there, pain is there, foul smelling is there. This is all unsafe. Unsafe cut treatment is modified radical mastectomy. Sigmoid and lateral sinus thrombosis. Always remember on CT scan delta sign. Picnet fence fever एकदम बढ़ता है कम हो जाता है. Plus, guys, pitting edema means Gressinger sign is there. What is there, sir? Gressinger sign is there. Done. Now, inner ear के पास आते हैं. Sir, cochlea के पास organ of corta is for hearing. Macula is in the utricle and sacrum, that is for linear balance. और linear balance खराब होता है तो एक बीमारी होती है BPPV. We are going to discuss very soon. सेमीसर्कल क्लार क्रिस्टा पहाड़ों पे चलती है, एंगुलर बैलेंस बनाती है. एंडोलिम्फ अंदर केला ज्यादा है, पोटेशियम इज हाई, माय डियर फ्रेंड्स. रेस्ट एवरीथिंग इज हिस्ट्री. एंडोलिम्फ कौन सिक्रेट करता है? स्ट्राया वैस्कुलरिस. हु इज सिक्रेटिंग एंडोलिम्फ? स्ट्राया वैस्कुलरिस, माय डियर फ्रेंड्स. We will see there is a first thing, organ of corta is a main organ of hearing. Where it is? It is in the basilar's membrane. You can see utricle and sacrum is having, for the linear balance they are having the macula. If there is a problem, the macula, there will be a BPPV, that is benign proximal positional vertigo. Moment you are moving your head like this, there will be a vertigo. And diagnosis is Dick's Halpite. और ट्रीटमेंट क्या है? आपले. क्या है? Aples maneuver. क्या है सर? Aples maneuver. Dun 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 dun. Now semicircular plant function is angular balance. What is the function? Angular balance. क्रिस्टा पहाड़ों पे चलती है. Caloristasis cow, cold water opposite side, warm water same side. Now coming to the next is tunic form. Tunic form test is of two types, Rennes and Weber. You need to remember, most common tunic form would be 512. Sir, normally what is happening, air conduction is more than bone conduction. But if Rennes test is negative, guys, bone conduction would be more than the air conduction. This is conductive hearing loss. If Rennes test is positive, there are two possibilities now. Air conduction more than bone conduction is normal also, and it is seen in the sensory neural hearing loss also, sir. Now, Weber test, if you are taking the tunic fork and it is heard in the center, then it is what's are your? If it is heard in the center, then it is what's are your normal. If it is heard in the poor ear, that is conductive hearing loss. If it is seen in the better ear, that is sensory neural hearing loss. Sensory neural hearing loss. Coming to the next two special dips are there. What two special dips we are having? Dip at 2000 hertz in the BC, that is Cahart's notch, seen in the autosclerosis. What is autosclerosis? Fixation of the foot plate of stapes, and most commonly pregnancy aggravates this condition. These kind of words you will find in the exam, and exam will become simple for all of you. Dip at 4000 hertz at BC and BC, noise induced hearing loss. Now this is called as acoustic. Two special audiograms. One is presbycusis, Meniere's. Presbycusis is age related. Meniere's is something which is what's are your also called as glaucoma of the ear. And guys, remember, sloping audiogram is presbycusis, rising audiogram is seen in Meniere's. They both are sensorineural hearing loss. Bira is done in 6 children. Bira is 7 waves out of 7. Fifth wave is the most important wave. Now coming tympanometry. Guys, remember, if there is a distal long mountain, this is normal. In long mountain में पानी गिरा दिया, glue ear is there, so type B curve. This is called as eustachian tube dysfunction.
Proximal, there will be proximal big mountain and a small distal mountain is there. This is autosclerosis, my dear friends. Autosclerosis 2000 hertz. Guys, remember, yes. Ossicular dislocation, here will be a volcano mountain right here, sir. Now, Bell's palsy is a question which is going to come day after tomorrow on 20th of January. Lower motor neuron facial palsy, ipsilateral face is gone right now. Eye is also gone because one side of whole of the face is involved. Eye is also gone. What is gone in the eye? Eye is not able to close. आँख बंद नहीं होगा. There will be exposure keratitis, and to avoid that, we'll be providing artificial tear also. Other than that, what you can provide? Oral steroid. Yes, acyclovir if the patient is coming for 3 days. If granules are there, painful granules are there, along with the facial nerve involvement, this is Ramsay-Hunt syndrome. This is nothing but a Ramsay-Hunt syndrome is there. Drug of choice is again acyclovir and steroid. Autosclerosis, you have to look for the female. You have to look for the female who is pregnancy aggravates this condition. Dip is there in the 2000 hertz, that is called as Cahart's notch. Guys, you have to check in this case whether your tympanic membrane is normal or not. If tympanic membrane is not normal, then treatment will change. If not normal, that is flamingo pink appearance, that is short sign positive. If short sign is not there in the autosclerosis, the treatment is stapedotomy. If short sign is present, then treatment is sodium fluoride. That is what's a sodium fluoride. Dun. Now coming to the next, acoustic neuroma or vestibular schwannoma. It is a benign tumor of the 8th nerve. Okay, sir? Benign tumor of the 8th nerve. Earliest reflex loss the corneal. You will see ice cream in cone appearance. You are in the 8th nerve tumor, acoustic neuroma, my dear friends. Gadolinium enhanced MRI करते हैं. Gadolinium enhanced MRI के अंदर ही ice cream in cone appearance देखने मिले. Now coming to the next is glomus jugulare. Bulb जग रहा है. CT scan पे help sign. Philip company is making the bulb, my dear friends. Highly vascular tumor, that is why biopsy is contraindicated. खत्म करते हैं सर. Meniere's disease की बात करते हैं. Meniere's disease is endolymphatic hydrops. Meniere's disease is what, sir? Endolymphatic hydrops. Endolymphatic hydrops. इसमें वाईफाई ले लेना. Same Wi-Fi. Endolymphatic hydrops. It is glaucoma of the ear. Unilateral condition. Tried कैसा है? Hearing loss, tinnitus, vertigo. To marking, patient falls down while hearing the loud sound. जैसे ही मैंने जोर से चलाया, I will pass. ऐसे patient नीचे गिरेगा. In between episode, you will see recruitment phenomena, loud sound, more loud. Tullius phenomena, patient get vertigo on hearing the loud sound. Diplecosis, patient hears same sound in 2 frequencies. Investigation is electrocochleography. Medical management करेंगे, नहीं होता है तो endolymphatic sac decompression surgery करेंगे. If that is also not working, फिर कान मारेंगे. क्या मारेंगे? कान को मारेंगे. We will kill the ear with the help of gentamicin. With the help of what, sir? Gentamicin. Hearing aid will only work if it is less than 85 decibel. If it is more than 85 decibel, we will check whether the 8th nerve is there or not there. Sir, if 8th nerve is there, then cochlear implant. And if 8th nerve is not there, then auditory brain stem implant you will give. This is all for the ENT. Now I will give a charge to my Breger brother. He will come and give me rest and he will take all your medicine. He's doing MD medicine right now. Okay, so big achievement. I'm very proud. I will pass. Love you all, my dear friends. तो कितने सारे सब्जेक्ट हमारे हो गए. Now भैया जी will connect. अभी मैं अपना डिस्कनेक्ट करूंगा, आपका कनेक्ट करूंगा सर. ठीक है सर. चलो जी सर, चलो जी आ जाओ. आपका वाला ओ सर हो भी गया. ये तो बहुत जल्दी हुआ. बहुत बढ़िया सर. चलो जी, let's talk about the another session. भैया जी will take, then I will take after भैया जी. लो जी भैया जी. It's comfortable. Hello बच्चों, am I audible? Am I audible to everyone? Yes, stethoscope is very big motivation. I love this. बच्चों आवाज आ रही है मेरी? सब बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर पारस ने अभी तक तो 150 क्वेश्चन तो करवा दिए आपके हैं. 150 क्वेश्चन तो आप लोगों के हो लिए. 300 नंबर अब बच्चा ही क्या है? लड़ाई लग जाएगी. अरे 300 में से 300 मत ले आना, वरना कल को लड़ाई लग जाएगी यार. हैं? पूरा तो स्टार्ट करें बच्चों. कहाँ से करें? फार्मा से स्टार्ट करना है, मेडिसिन से स्टार्ट करना है, माइक्रो से स्टार्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है? जो आपकी चॉइस होगी वहां से स्टार्ट करेंगे. एंड लव यू गाइस. सबसे पहले तो मैं आप सभी को जय श्री खाटू श्याम जी महाराज की कहूंगा.
ठीक है, जय श्री खट्टूश्याम जी महाराज की जय हो बच्चों, और गॉड ब्लेस यू बच्चों। आप सब बच्चों का प्यार हम लोगों के साथ में है, और हमारा प्यार हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है। कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें बताओ जल्दी से बच्चों, जल्दी से। फार्मा, फार्मा, फार्मा फैन फॉलोइंग ज्यादा आ रही है लग रहा है। व्हाट किसके सबसे ज्यादा आ रहे हैं जल्दी? फार्मा, मेडिसिन, माइक्रो। डॉक्टर भारत सर ने तुम्हारे करवा दिए होंगे 150 प्लस, तो अभी सारे सबके हो रखे हैं, 200 प्लस हो रखे हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आपने अगर सर के हिसाब से चले, अगर उनके ब्रेन से चलोगे तो आपके 200 प्लस तो हो गए। बहुत 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 हार्ड वर्किंग, मतलब मैंने पहली बार ऐसा देखा है, इतने घंटे रेगुलर बैठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। चलो बच्चों स्टार्ट करें फार्मा से। ओके बच्चों, जय श्री खट्टूश्याम जी महाराज की। सबसे पहले फार्मा के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फार्मा में देखो बच्चों, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबको मालूम होता है, ठीक है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आपने कोई भी ड्रग को आपने डाला, ड्रग गया कहाँ पे? ब्लड में। ब्लड में सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है अगर कोई ड्रग, तो वो चीज उसकी कहलाती है बायो अवेलेबिलिटी। आपने कोई भी ड्रग दी, ड्रग देने के बाद में ड्रग सिस्टम की सर्कुलेशन तक पहुंचती है, जितना फ्रैक्शन उसका पहुंचेगा दैट इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। सो बच्चों, व्हाई सो वी आर यूजिंग, व्हाट इज द रीजन फॉर अ डिफरेंट डोज ऑफ सबलिंगुअल ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट एंड ओरल आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट? क्या रीजन होता है बच्चों कि दोनों को डिफरेंट डोज दिया जाता है? सबलिंगुअल देने का और ओरल देने का रीजन क्या होता है? सबलिंगुअली ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, क्यों? क्योंकि लिंगुअल वेसल कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है? लिंगुअल वेसल कहाँ पे? सीधा सुपीरियर वेना कावा के अंदर ड्रेन करती है। सुपीरियर वेना कावा में ड्रेन करेंगी तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? उसका एफिकेसी बहुत वीक हो जाएगी। वैसे बच्चों एक बात बताओ, ये नाइट्रोग्लिसरीन हम इसको बोलते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन के ऊपर 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए एफएमजी के पेपर में। पहला क्वेश्चन, नाइट्रोग्लिसरीन क्या रिलीज करवाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया पोटेंट विनोडाइलेटर। पोटेंट विनोडाइलेटर कौन सा होता है बच्चों? पोटेंट विनोडाइलेटर इज नाइट्रोग्लिसरीन बच्चों, है ना, नाइट्रोग्लिसरीन। तो बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? विनोडाइलेशन करता है, विनोडाइलेशन। एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, नाइट्रिक ऑक्साइड इज डिराइव्ड फ्रॉम, बायोकेमिस्ट्री में पूछते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज डिराइव्ड फ्रॉम एल-आर्जिनिन। एल-आर्जिनिन, क्या बात है, क्या बात है। पहले से बच्चों को आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। एल-आर्जिनिन से डिराइव होता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन इज अ पोटेंट विनोडाइलेटर एंड एल-आर्जिनिन, कल के पेपर में भूलना मत बच्चों, अच्छे से याद रखना। नाउ कमिंग ऑन द टॉपिक ऑफ द प्रोड्रग। बच्चों प्रोड्रग के ऊपर 7 प्रोड्रग के बाहर आज दिन तक कोई 8वां प्रोड्रग पूछा नहीं गया पेपर में, है ना। तो 7 प्रोड्रग अभी हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज इनालाप्रिल। इनालाप्रिल इज अ प्रोड्रग फॉर द, इसका प्रोड्रग का फॉर्म क्या रहेगा? इनालप्रिलेट। इनालाप्रिल कौन सी कैटेगरी में आती है बच्चों? एसी इनहिबिटर्स में। एसी इनहिबिटर्स के अंदर एक ड्रग होती है जिसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 100% पेपर के अंदर पूछा जाता है। कौन सा, क्या साइड इफेक्ट होता है बच्चों? कैप्टोप्रिल। एक ड्रग आपको याद आ रही होगी, प्रिल ड्रग सारी कैसी की होती है? एसी इनहिबिटर्स होती हैं। तो एसी इनहिबिटर्स में कैप्टोप्रिल C4 कफ, A4 एंजियोइडिमा एंड P4 प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, रीनल एब्नॉर्मलिटी करवाती है। तो बच्चों प्रेगनेंसी में जो ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ये शॉर्ट टॉपिक होते हैं, है ना। एनबीए ने क्या किया है आजकल की तारीख में? अप्लाइड मतलब अप्लाइड फार्मा, अप्लाइड मेडिसिन, अप्लाइड माइक्रो, मतलब क्लिनिकल सबको कर दिया है। तो बच्चों आपको नेक्स्ट एक स्लाइड बता रहा हूँ जिसके अंदर आपको अच्छे से याद रखना है कि ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर दी जानी चाहिए और प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड करनी चाहिए। तो व्हाट, एक मोस्ट कॉमनली टेलीग्राम ग्रुप में एक क्वेश्चन घूमते रहता है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चे बताएं, आंसर करें। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी इज लेविटेरासिटाम, लेविटेरासिटाम। एंड अवॉइड कौन सी करते हैं बच्चों? वेलप्रोइड, बिकॉज वेलप्रोइड इज अ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर वेलप्रोइड है क्या? नहीं है। कौन सी ड्रग होती है बताओ? मेथोट्रेक्सेट होती है, मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रेन को शार्प रखना है, ब्रेन को बिल्कुल शार्प रखो, मेथोट्रेक्सेट होती है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। तो वो फॉलिक, अच्छा न्यूरोट्यूब फॉर्मेशन कौन करता है? हु फॉर्म्स न्यूरोट्यूब? न्यूरोट्यूब का फॉर्मेशन कौन करता है? न्यूरोट्यूब का फॉर्मेशन फॉलिनिक एसिड, सबको याद आ रहा होगा। फॉलिनिक एसिड, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फॉलिनिक एसिड? ल्यूकोवोरिन, ठीक है। सो ल्यूकोवोरिन इज द अनदर नेम ऑफ फॉलिनिक एसिड एंड इट फॉर्म्स द, अच्छा अगर कल को आपको एनीमिया मुक्त भारत के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो एनीमिया मुक्त भारत के अंदर कितना मिलीग्राम हम फॉलिक एसिड देते हैं? जल्दी 60 mg 500 माइक्रोग्राम, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है बच्चों, एनीमिया मुक्त भारत पूछा जाता है। और 9th ऑफ एवरी मंथ को आशा वर्कर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो आशा वर्कर 9th ऑफ एवरी मंथ क्या लेके आएगी? प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, याद आ रहा है बच्चों? प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, प्रीवियस पेपर के अंदर योजनाओं के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए गए हैं।
सो प्लीज डू नॉट लीव योजनास. आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ पीडीएफ, है ना, ऑन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ योजनास, एंड दैट इज वेरी सिंपल योजनास जो आप आराम से याद कर सकते हो बच्चों. ठीक है. सो एपिलेप्सी के ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी कौन सी रहेगी बच्चों? लेविटेरासिटाम. लेमोट्रिजाइन हम लोग नहीं देते हैं. लेमोट्रिजाइन कई सारी बुक्स में लिखा गया है, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू अपडेट नहीं देते हैं बिकॉज इट कैन कॉज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. ठीक है, इट कैन कॉज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. सेकंड ड्रग इज अ बाइपोलर. सेकंड ड्रग विच बाइपोलर डिसऑर्डर, विच ड्रग, विच एंटीसाइकोटिक ड्रग विच इज यूजिंग इनटू द प्रेगनेंसी फॉर द बाइपोलर. बाइपोलर के लिए कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज की जाएगी बच्चों? एब्स्टीन एनोमली सबको याद आ रहा है. एब्स्टीन एनोमली सबको याद आ रहा है. बॉक्स शेप हार्ट करता है कि नहीं करता है ये बताओ. बॉक्स शेप हार्ट कौन करेगा? कौन करेगा जल्दी से बताओ. और टॉप याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टॉप याद आ रहा है. टॉप और बॉक्स शेप हार्ट ये तो हमेशा के क्वेश्चन थे. टॉप में आपको डॉक्टर पारस सर ने भी न्यूमोनिक बता रखा है, प्रूव न्यूमोनिक. मैंने उनके नोट्स पढ़े हैं, मैं पढ़ता हूँ उनके नोट्स, है ना. तो उसमें प्रूव न्यूमोनिक याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, PROV, V से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, E से इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर. अरे क्या बात है, सबको इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर. तो मेडिसिन भी यहीं पे पढ़ाऊंगा मैं. इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर. इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर कैसे चलेगा बच्चों? इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर कैसे चलेगा? कहाँ देखने को मिलता है? एओर्टिक स्टेनोसिस में एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस में. दोनों में सिखाऊंगा मेडिसिन के अंदर. बट अभी टॉपिक चल रहा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेगनेंसी, है ना. प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है? तो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर बच्चों आप एब्स्टीन एनोमली की ड्रग, अगर आप लिथियम दोगे, लिथियम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बच्चों फार्मा के हिसाब से. लिथियम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया, मेनिया पक्का. और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिया में क्या करेंगे? प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिया में क्या देंगे? वहां पे भी लिथियम देंगे. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन मेनिया एंड हाइपोमेनिया? ये क्वेश्चन अभी INI सेट में पूछा गया था. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन मेनिया एंड हाइपोमेनिया? हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन अगर आ रहा है दैट मींस दैट इज अ प्रॉपर काइंड ऑफ मेनिया. मेनिया मतलब पागल. और दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हमेशा ध्यान रखना. न्यूरोसिस वर्सेस साइकोसिस हमेशा पूछा जाता है. न्यूरोसिस में इनसाइट प्रेजेंट होता है, साइकोसिस में इनसाइट, न्यूरोसिस में इनसाइट एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है. जल्दी से बताओ. न्यूरोसिस में इनसाइट अंदर से पता होता है उसको, और साइकोसिस में एब्सेंट होता है. ठीक है. तो बच्चों कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग आप लोग दोगे प्रेगनेंसी के अंदर? जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से. लिथियम की जगह एरिप्रिप्रेजोल, एरिप्रिप्रेजोल. ठीक है बच्चों. तो आपको दोनों के दोनों ड्रग्स याद होगी. एपिलेप्सी की लेविटेरासिटाम कंफर्म पेपर में आएगा, एरिप्रिप्रेजोल कंफर्म पेपर में आएगा. नाउ एक टर्म है बच्चों प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन, है ना. और एक हाइपरटेंशन होता है प्रेगनेंसी से इंड्यूस्ड होने वाला. ठीक है. तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इसका क्राइटेरिया 20 वीक का बनाया गया है, बट ऑलरेडी क्रोनिक हाइपरटेंशन प्री एग्जिस्टिंग होता है ना. हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, हमको चीजों को समझना है. एग्जाम में बड़े बड़े लार्ज क्वेश्चन होंगे, बट आपको उसकी लास्ट लाइन और मिडिल लाइन, उन दोनों को, लास्ट लाइन तो किसी भी क्वेश्चन की नहीं छोड़नी है. ठीक है. लास्ट लाइन तो किसी भी क्वेश्चन की आपको नहीं छोड़नी है. बड़े आराम से पेपर सॉल्व करना है. 150 क्वेश्चन में से पहले 50 क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो सबसे पहले आराम आराम से करते जाना है, आराम आराम से करते जाना है. एक भी क्वेश्चन को छोड़ना, मतलब आपको लग रहा है जो आ रहा है वो पहले करो, जो आ रहा है वो पहले करो. अगर आपके 50 क्वेश्चन बन गए ना बच्चों, मेरी बात मानो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक भी जीटी में 150 प्लस नहीं आए थे. जिस पेपर में मेरे 209 मार्क्स आए थे, एक भी जीटी में 150 नंबर नहीं लेके आया था. हमेशा से हारा हुआ था, है ना. और हारे हुए के सहारे हमारे बाबा बैठे हुए हैं. तो जब तक बाबा हैं तब तक हमको हारने नहीं देंगे बाबा, है ना. आज ही कहा था हारने की जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन मैं हारा नहीं हूँ. मेरा श्याम बाबा मेरा सहारा है, मैं बेसहारा नहीं हूँ, कहा था ना. तो बच्चों अभी लास्ट मोमेंट पे सबको लगता है डर, डर सबको लगता है, लेकिन जीत डर के आ गई है, ये बात ध्यान रखना. और हम हारेंगे, हम डरेंगे तो हमारे पापा हमको डरते हुए देखेंगे क्या यार. गॉड इज इनविजिबल पेरेंट्स एंड पेरेंट्स आर विजिबल गॉड, है ना. तो बच्चों पापा हमको कभी भी हारते हुए नहीं देख सकते, है ना. कि मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी सांवरे. तो बच्चों याद आया? तो जब जिसको सांवरे की याद आ गई हो वो एक बार जोर से कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिख दें, और इन दोनों क्वेश्चन को यहीं कहीं याद कर लें. प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन जो होता है, प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन के अंदर आप ड्रग ऑफ चॉइस क्या दोगे? ड्रग प्री एग्जिस्टिंग हो या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हो. बच्चों हाइपरटेंशन के अंदर ये सबसे बड़ा आपने अभी तक डाउट दिमाग में पाला हुआ है, ले बेटा लोल ही देते हैं, ले बेटा लोल ही देते हैं, चाहे प्री एग्जिस्टिंग हो चाहे एग्जिस्टिंग हो, चाहे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हो, है ना. तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनाओगे? ले बेटा लोल. बट क्वेश्चन में आपको वो लोग घुमाएंगे, वो आपको वहां पे रेस्पिरेटरी रख देंगे.
कि पर्सन इज सफरिंग, फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम सीओपीडी, या फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, या फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकिएक्टिस, ब्रोंकाइटिस, कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दे दिया, उस कंडीशन में आप सेफेस्ट एजेंट के पास आ जाते हो, सेफेस्ट एजेंट के पास आ जाते हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कौन सी ड्रग दोगे बच्चों? ऐसी कंडीशन में आप कौन सी ड्रग दोगे? जल्दी से। यस, डॉक्टर शुभम मल्होत्रा, आपके पापा मम्मी को भी जय श्री श्याम मेरी तरफ से। लव यू लव यू लव यू सबको, सभी को लव यू, है ना। हम सबकी कोशिश है, हम सबके पीछे हमारे, हम सबके पीछे क्या, हम सबके आगे हमारे बाबा चल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रग होगी आपकी, सेकंड ड्रग होगी, थर्ड ड्रग होगी, फोर्थ ड्रग आपकी कौन सी हुई? प्रोपाइल थायरोयूरेसिल। कहां पे देंगे बच्चों? हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताऊंगा मेडिसिन के अंदर डिटेल में, लेकिन अभी आ जाते हैं सेफेस्ट एंटीकोगुलेंट के ऊपर। सेफेस्ट एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है बच्चों प्रेगनेंसी के अंदर? सेफेस्ट एंटीकोगुलेंट एजेंट कौन सा होता है? जल्दी से बताओ। जो कि एंस्टेमी के अंदर भी दिया जाता है बच्चों। एंस्टेमी में सोनम और होनम याद आ रहा है? हिपेरिन, हिपेरिन, हिपेरिन। तो हिपेरिन बच्चों याद रखो, हिपेरिन इज गिवन इनटू द प्रेगनेंसी इनटू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर बच्चों। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा को याद रखना। प्रियंका चोपड़ा आज 3 जगह आने वाली है। पहली जिंजिवल हाइपरप्लेजिया में आएगी, दूसरी हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर आएगी। तो पी से प्रोपाइल थायरोयूरेसिल, सेकंड सी से कार्बिमेजोल। अगर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर दे दिया, तब थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आप कौन सी चॉइस रखोगे? वापस वहां पे भी आपको कार्बिमेजोल को ही प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, सो एंटीबायोटिक्स आपको याद होगी। तो एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट यहाँ से बन गया। ठीक है, तो हम वापस से आ जाते हैं हमारे वापस से उस ड्रग के ऊपर, इनालाप्रिल। और प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन सी थी? कैप्टोप्रिल। सेकंड ड्रग इज लीवाडोपा। लीवाडोपा के ऊपर कंफर्म क्वेश्चन है बच्चों। लीवाडोपा एक वर्ड से ही हम पूरी की पूरी मेडिसिन का एक टॉपिक कवर कर सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? द टॉपिक इज पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म में कौन सी बॉडी देखने को मिलती है बच्चों? कमेंट बॉक्स के अंदर सभी बच्चे बताएंगे पार्किंसोनिज्म के अंदर कौन से कमेंट लिख रहा हूं। पार्किंसोनिज्म के अंदर कौन सी बॉडीज देखने को मिलती है बच्चों? जल्दी से। हिरानो मिलेगी या लिवाइज मिलेगी? हिरानो बॉडी या लिवाई बॉडी? कम ऑन कम ऑन, सभी बच्चे आंसर करो। हिरानो बॉडी मिलेगी या लिवाई बॉडी मिलेगी? लिवाई बॉडी मिलेगी, है ना। लिवाई बॉडी कहां जाके डिपॉजिट होती है बच्चों? ये ब्रेन का एक पार्ट होता है। देखो बच्चों, ब्रेन, न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो फिजियोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन सबको टफ लगती है। अभी मैं आपको सबसे पहले एक बार बताऊंगा कि आपको जो फियर हो रहा है वो फियर एमिगडेला, मार डाला हम पे। ये किसने वो गाना सुना है ना कि हरा रंग किसने डाला? मार डाला। तो एमिगडेला मार डालेगा, मतलब डराता है। द सेंटर ऑफ फियर इज एमिगडेला। मेरे साथ में अभी पहला सेंटर आप लोगों को याद हो चुका है, एमिगडेला, एमिगडेला। ठीक है, अभी आपकी मेमोरी बनती जा रही है। और ये एमिगडेला जो आपको याद हुआ ना, वो आपको कौन सा सेंटर करवा रहा है पता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपका मेमोरी बना रहा है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर पैथोलॉजी में डॉक्टर पारस सर ने भी आपको पढ़ा रखा है। और आप लोगों को पता होगा एट्रोफी क्या होती है। एट्रोफी मतलब साइज का छोटा होना। साइज का छोटा होना, साइज छोटा कब होता है? सेनाइल डिमेंशिया के अंदर। तो सेनाइल डिमेंशिया बुजुर्ग लोग जल्दी भूलने लगते हैं ना। एस्टेल कोलाइन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एस्टेल कोलाइन याद आ रहा है? यस। तो वो क्यों भूलते हैं? क्योंकि देखो, मान लो कि इस चाय का कप है, इतना ही साइज है आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। देखो पूरी बॉडी में जितनी भी पेरिफेरी बॉडी को आप देखोगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स वर्सेस मेडुला। कॉर्टेक्स वर्सेस मेडुला। तो कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, चाहे आप एड्रिनल पे जाओ, किसी भी ग्लैंड पे जाते हो, 2 ही मेन चीजें होती है। एक होता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट, एक होता है मेडुला। मेडुला इनर होता है, कॉर्टेक्स आउटर कवरिंग होती है। जैसे कि पेरी ऑस्टियम, अभी शार्प फाइबर्स वगैरह जो सर पढ़ा रहे थे अभी आपको, है ना, आपको याद आ रहा होगा, पेरी ऑस्टियम इज द आउटर कवरिंग। तो वैसे यहाँ पे आउटर कवरिंग कॉर्टेक्स ही होती है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर अगर बच्चों एस्टिल कोलाइन कम हो गया, तो विद न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलेटेड टू योर मेमोरी। 2 टाइप की मेमोरी होती है बच्चों। एक होती है लर्निंग, रीजनिंग वाली, मैथमेटिकल रीजनिंग वाली मेमोरी। और एक मेमोरी होती है नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म फॉर्म होती है ना। शॉर्ट टर्म कब फॉर्म होगी? जब आप रात को एनआरईएम में होंगे, जब आपका ब्रेन बिल्कुल शांत होगा। तो यस, यही बच्चों, अगर आप अभी हड़बड़ाहट में रहोगे तो आपको याद नहीं होगा, आपकी मेमोरी फॉर्म नहीं होगी। तो एनआरईएम की कंडीशन की तरह, मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अभी शांत मन से सीखो, जो सीख रहे हो शांत मन से सीखो। एस्टेल कोलाइन जितना बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपकी मेमोरी बनेगी। ठीक है, तो लीवाडोपा के अंदर क्या होता है? सब्सटेंशिया निग्रा के अंदर जाके डोपामाइन, डोपामाइन नहीं, लीवाई बॉडी जाके डिपॉजिट हो जाती। तो डिपॉजिट होगी। अब उसने क्या किया? अंदर एरिया कवर कर लिया। एरिया, चाय के कप में मान लो चाय का कप है, इस कप के अंदर में मान लो कीचड़ डाल दूं, कीचड़ डाल दिया, डर्ट, है ना, डर्ट घुस गया। तो मेमोरी फॉर्मेशन के लिए एस्टेल कोलाइन तो कम ही रह गया, है ना। सेम ऐसा होता है उन लोगों के साथ में। और एक निमोनिक याद आता है इसमें, फास्ट ट्रैप, FTRAP, फास्ट ट्रैप निमोनिक। ठीक है, तो फास्ट ट्रैप निमोनिक के हिसाब से फास्टिनेटिंग गेट, T फॉर ट्रीमर, R फॉर रिजिडिटी। कौन सी रिजिडिटी देखने को मिलती है? कॉग व्हील, कॉब वेब पे कंफ्यूज मत होना बच्चों। ये क्वेश्चन आपको पिछले अटेम्प्ट में पूछा था, कई सारे बच्चे गलत मार्क करके आए थे। कॉब वेब अपीयरेंस आपको टीबी के अंदर देखने को मिलता है। कॉग व्हील रिजिडिटी इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो टीबी मेनिंजाइटिस के अंदर
आपको देखने को मिलेगा कॉग वेब अपीयरेंस, ठीक है। और वेब स्पेस एक वर्ड और याद रखना, एनाटॉमी में भी आपने पढ़ी होगी और याद आ रहा होगा, वेब स्पेस इन बिटवीन ग्रेड टो एंड फर्स्ट टो, उस पर भी क्वेश्चन आता है ना। तो ये बात ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये कि फर्स्ट टो और ग्रेड टो के बीच में वेब स्पेस होता है, वहां की नर्व सप्लाई कौन सी होती है, डीप पेरोनियल नर्व। तो वो क्वेश्चन भी वहां से टिक कर करेक्ट करके आओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, तो सभी को फास्ट स्टेप कॉग्वेल रिजिडिटी याद हो गया, रिजिडिटी। ए से एक आइनेजिया किसको याद नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ, एक आइनेजिया किसको याद नहीं है, एक आइनेजिया सबको याद है ना। एक नया क्वेश्चन इजाद होता है यहाँ पे कि फास्ट स्टेप FTRAP पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, पोस्चर इंस्टेबिलिटी मतलब चलते चलते ऑन ऑफ फिनोमिनन हो जाता है, चलता है रुक जाता है, चलता है रुक जाता है, चलता है रुक जाता है। तो ऑन ऑफ फिनोमिनन मतलब क्या हो रहा है बच्चों तुम्हारे मेडिसिन का बहुत बड़ा पार्ट पार्किंसनिज्म है, ये समझ के चल लो। तो अभी इसको यहाँ पे याद करो, ऑन ऑफ फिनोमिनन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनेगी, ये बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है, तो अभी के अभी याद कर लो। ऑन ऑफ फिनोमिनन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी बच्चों, यस वेरी गुड इन कमेंट बॉक्स, इनटेक अपॉन, वेरी गुड, स्माइल कोर, स्माइल पेन, बहुत बहुत जबरदस्त। नाउ कोई भी नर्व का इन्फ्लामेशन हो, चाहे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, चाहे वो मल्टीपल माइलोमा हो, मल्टीपल माइलोमा तो आपको 3 बार से रेगुलर पूछा जा रहा है, नोटिस किया है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, 3 बार से रेगुलर मल्टीपल माइलोमा पूछा जा रहा है, 3 अटेम्प्ट से रेगुलर, ठीक है। और एक चीज नहीं पूछी है उसमें उनमें, ठीक है, एक तो लाइटिक लेजन देखने को मिलते हैं, 3 अटेम्प्ट से रेगुलर पूछ लिया है, लाइटिक लेजन, एक बार फोटो दे दिया था, एक बार वन लाइनर दे दिया, लेकिन इस बार वो इंटरल्यूकिन के ऊपर पूछेंगे तो आप लोग क्या मार्क करके आओगे। 2 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ बच्चों को मल्टीपल माइलोमा में, याद रखना मल्टीपल माइलोमा में लाइटिक लेजन तो देखने को मिलते ही है, बट बेंस जोन्स प्रोटीन यूरिया इज अ न्यूअर थिंग। एक क्वेश्चन फियोक्रोमोसाइटोमा, एक मिनट इंटरल्यूकिन बता देता हूँ पहले, इंटरल्यूकिन 6 IL-6 रिलीज होता है, याद रख लेना। फियोक्रोमोसाइटोमा में भी एक क्वेश्चन नया पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है। मैं आपको डेफिनेटली हर चीज को हम कवर करेंगे आराम से, अभी सेशन को हम आराम से चलने दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड अप होंगे थोड़ी देर के बाद। तो आपके सामने प्रैक्टिस हो रहा है, सारे नर्व इन्फ्लामेशन के अंदर दे रहे थे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी दे रहे थे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है बच्चों, डीमाइलिनेशन किसका होता है, नर्व का। तो मैसेज आगे कंडक्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ, नहीं होगा यार, जब तक माइलिन शीथ ही नहीं होगी। माइलिन शीथ का काम क्या होता है, नर्व कंडक्शन, मैसेज कंडक्शन, तो मैसेज कंडक्ट होगा नहीं होगा। पर इस पे 2 फिजियोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या बनाती हैं, माइलिन शीथ कहाँ पे बनाती हैं, CNS में, और PNS के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट कौन सी सेल्स बनाती हैं, श्वान सेल्स बनाती है माइलिन शीथ को, याद रखना। नाउ 4th क्वेश्चन इज एसाइक्लोविर। अभी सर आपको पढ़ा रहे थे रामसे हंट टाइप 2 सिंड्रोम, आपको याद आ रहा है, जिसमें आपको बेल्स पल्सी लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें है ना। एक क्वेश्चन अगर इन केस अगर आपको इमेज बेस्ड ऐसा दे दिया गया जिस साइड अपने फेस को ट्विस्ट कर पा रहा है ना, ट्विचिंग कर पा रहा है, एक तो चौवस्तेक साइन है ना, ट्रोसियो साइन, और ये राम से बेल्स पल्सी वाला साइन, ये साइन हमेशा ये आते ही हैं कंफ्यूजन करने के लिए ना, इनके पास लिमिटेड टॉपिक है, ये वहीं से पूछते हैं। तो चौवस्तेक साइन तो हाइपोकैल्सीमिया का साइन है, जिसमें टच करेंगे तो चेहरा ऐसे घूमता हुआ नजर आता है। बट एक जो टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको याद रखना, बेल्स पल्सी टाइप रामसे हंट टाइप 2 सिंड्रोम के अंदर भी इस टाइप से आपका पैरालिसिस हो जाता है, हाफ ऑफ द फेस पैरालिटिक हो जाता है। तो उसमें ट्रीटमेंट में आप लोग वहां पे भी क्या दोगे, ट्रीटमेंट एज ए ट्रीटमेंट क्या दोगे, प्रेडनिसोलोन अलोंग विद एसाइक्लोविर, जेनसाइक्लोविर। और बच्चों HIV के ऊपर अभी नीट PG के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो HIV इज अ हिट टॉपिक, विटामिन इज अ हिट टॉपिक, मिनरल्स आर हिट टॉपिक 100%। तो HIV CD4 काउंट के हिसाब से पूछते हैं। तो CTHPC निमोनिक किसको याद नहीं है बताओ, CTHPC निमोनिक किसको याद नहीं है, यस CTHPC निमोनिक याद है। तो सर ने जो अभी याद कराया था रामसे हंट टाइप 2 सिंड्रोम, सबको याद हो गया, उसका ट्रीटमेंट भी याद हो गया, एसाइक्लोविर याद हो गया, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस करवाता है। नाउ 4th वन इज सिम्वास्टेटिन एंड लोवास्टेटिन। अब मेडिसिन का कार्डियोलॉजी पढ़ोगे तो कार्डियोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा पार्ट होता है स्टेटिन्स का बच्चों, कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग स्टेटिन कौन सा है। थोड़ा सा अपग्रेड पूछ रहे हैं बच्चों, अब लेवल मेडिसिन के अंदर अपग्रेड आ रहा है ना, लो ग्रेड नहीं आ रहा है। हमको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिठानी होगी, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होगा, बट नेक्स्ट स्टेप पूछते हैं हमसे। तो याद रखो, लॉन्गेस्ट एक्टिंग स्टेटिन, वन लाइनर कई बार पूछा गया है कि रोज अगर दोगे आप, है ना, गुलाब अगर दोगे, वैलेंटाइन पे रिजल्ट आएगा, उस नियर बाई आएगा, तो अगर आप रोज दोगे तो आपको रोज मिलेगा, ठीक है, आपका रिलेशनशिप लॉन्ग चलेगा, ठीक है। तो याद रखना, रिलेशनशिप को अगर लॉन्ग चलाना है तो आपको रोज देना होगा, ठीक है। तो आप रोजुवास्टेटिन ड्रग इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग एंड मोस्ट पोटेंट स्टेटिन कौन सी ड्रग होती है, पिता से बढ़ के कोई पोटेंट इस दुनिया में नहीं होता, है ना। कि मैंने हमेशा अपने हर बड़े से बड़ा सपना, या बच्चों में आपको चैलेंज करता हूं, आप अपना दावे में केवल ऊपर वाले का अधिकार है, चैलेंज पे केवल ऊपर वाले का अधिकार है, पर फिर भी एक चैलेंज करता हूं, आप चाहे कितनी भी बड़ी ख्वाहिश कर लो, आपके पापा की जेब से बढ़ के वो बड़ी ख्वाहिश नहीं होगी।
आपके पापा की जेब कभी भी आपके सपनों से छोटी नहीं होती। आपका जो सपना था, पापा ने भले आलू की जगह भिंडी की जगह आलू खाए होंगे, आपके लिए संघर्ष सहा होगा, है ना, फटे कपड़े पहने होंगे, उन्होंने नया ड्रेस नहीं लिया होगा दिवाली पे, पर बेटा या बेटी को जब जरूरत होती है तब माँ बाप ने हमेशा अपनी जेब को भरे रखा है। आपने 3,000 मांगे होंगे, पापा ने 4,000 ट्रांसफर किए होंगे कि बेटा 1,000 और एक्स्ट्रा रख। हर महीने $100 मांगते थे तो 50, मतलब माँ बाप ने कभी, मैं कह रहा हूँ, माँ बाप से बड़ा अमीर मैंने इस दुनिया में कोई भी नहीं देखा, है ना। तो नेक्स्ट आपका सिम्वास्टेटिन, पिटावास्टेटिन। तो याद रखना कि मोस्ट पोटेंट कौन होता है इस दुनिया में, हमारे पापा। पापा हमारे मोस्ट पोटेंट होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन अल्फा मिथाइल डोपा। अल्फा मिथाइल डोपा, अल्फा मिथाइल डोपा इज ए प्रोड्रग, सिंपली पूछा जाता है 5-फ्लोरोयूरेसिल। और अभी इसी 5-फ्लोरोयूरेसिल के साथ में मैं आपको पूरा कैंसर 1 मिनट के अंदर खत्म करवाऊंगा। कैंसर, सारे कैंसर की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, सभी कमेंट बॉक्स में अभी बताओ। ऑल काइंड्स ऑफ कैंसर की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, ऑल काइंड्स ऑफ कैंसर की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से सारे बच्चे। बायोप्सी, बायोप्सी। अब कहां कहां नहीं देंगे वो याद कर लो। फियोक्रोमोसाइटोमा में छेड़ोगे नहीं, बायोप्सी से नहीं छेड़ सकते, छेड़ दोगे तो वो कैंसर आपको हालत खराब कर देगा। दूसरा, टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर आप दोगे नहीं दोगे, टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर बिल्कुल भी टच नहीं करोगे आप। पर अगर आपने बायोप्सी कर दी, टेस्टिकल से रिमूव कर दिया, या बायोप्सी का सेगमेंट ऐसे थोड़ी लिया जाता है। बायोप्सी आपने देखी है कभी कि देखना अभी कभी बायोप्सी का कोई वीडियो देखना, है ना, यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे बहुत सारे वीडियो। जब आप देखोगे तो आप वहां से रिसेक्ट करते हो। रिसेक्ट वर्ड सुना है, एक्सीजन वर्ड सुना है, एक्सीजन करते हैं। तो एक्सीजन कर दोगे तो उस बंदे के अंदर वैसे ही यार गायनोकोमेस्टिया डेवलप हो जाएगा, है ना, क्योंकि टेस्टिकल्स आर द मेन ऑर्गन, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे छोटे छोटे बच्चों के टेस्टिकल कार्ड्स दिए जाते हैं और फिर उनको रेड लाइट पे खड़ा कर दिया जाता है ना। तो ये आधे इस टाइप के जो जेंडर, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो यही लोग होते हैं, है ना, जो थर्ड जेंडर जो होता है। तो बच्चों याद रखना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सबको याद हो गया, सबको सारे कैंसर याद हो गए। कैंसर जिस्ट के अंदर भी नहीं देते हैं, जिस्ट में कौन सी ड्रग देंगे हम, इमाटिनिब, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ऑल कैंसर कौन सी होगी, बायोप्सी एक्सेप्ट टेस्टिकुलर, फियोक्रोमोसाइटोमा, जिस्ट, ठीक है। और एक पेपिलरी फॉलिकुलर कैंसर आपके थायराइड का, याद रखना, वहां पे भी आप लोग टच नहीं करते हो कैंसर को, कैंसर को नहीं छेड़ना चाहिए। इन जगहों में बायोप्सी नहीं करेंगे, यूएसजी करेंगे, ठीक है। और एक ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर क्वेश्चन कंफर्म आता है यार बच्चों, है ना। तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपकी बायोप्सी ही होगी। बट ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बच्चों एक बात ध्यान रखना कि इसके अंदर आप मोर देन 40 ईयर्स एज देके आपको कभी कभार कंफ्यूज करते हैं। तो मोर देन 40 ईयर्स दे दिया मतलब कि आपको क्या मांग के चलना है, मोर देन 40 ईयर्स दे दिया मतलब मेमोग्राम करते हैं। क्यों मेमोग्राम करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू डेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो सबको यहाँ तक का याद हो गया, सबको याद। नाउ जिंजिवल हाइपरप्लेजिया किसको याद नहीं है, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा ने लिप्स की सर्जरी करवाई थी, नहीं करवाई थी, है ना, लिप्स की सर्जरी करवाई थी, होंठ बिगाड़ दिए थे, अच्छे कर दिए थे, बिगाड़ दिए थे उसने अपने होंठ, इतने प्यारे होंठ थे उसके पहले, है ना। ऐतराज मूवी तक तो उसके होंठ बहुत अच्छे थे, उसके बाद में उसके होंठ बिगड़ गए, है ना। क्यों, करीना से कंपटीशन करना पड़ा। ये कंपटीशन जो लोग करते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को ही बर्बाद करते हैं, ठीक है, अपने आप को ही बर्बाद करते हैं। कुछ लोग हैं जो सबसे कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, पर वो उनको नहीं मालूम है कि वो क्या कंपटीशन करते हैं, या क्या मल्टी ब्राउजर चलाते हैं, या क्या करते हैं। दुनिया को मालूम है कंपटीशन की जगह होता है, पॉजिटिवली होना चाहिए, है ना। हमको पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। सचिन तेंदुलकर ने कभी किसी भी स्लेजिंग का जवाब अपनी जबान से नहीं दिया था, अपने बल्ले से दिया था। इसी कारण सचिन तेंदुलकर दुनिया का सबसे ज्यादा शतक बनाने वाला बना, मतलब प्लेयर बना। और हमारे पारस भाई इस फील्ड का सचिन तेंदुलकर है यार, ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो पारस भाई बिल्कुल, हमारा जो ये सेशन जो चल रहे हैं, इन सेशन से बस भगवान से ये प्रार्थना है कि इन सेशन से अच्छे खासे मार्क्स आ जाएं, ये सारे बच्चे पास हो जाएं, है ना। तो बच्चों प्रियंका चोपड़ा याद रही, फेनिटोइन साइक्लोस्पोरिन दोनों याद हो गया, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया था ड्रग्स विच अफेक्ट्स डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है, याद रहा, याद रहा, याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। एमटीपी, एमटीपी, एमटीपी करते हैं मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेथोट्रेक्सेट, पायरीमेथामाइन, ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है। तो एमटीपी का आपको क्राइटेरिया बताया होगा डॉक्टर्स वाला, ठीक है। तो ल्यूकोवरीन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। अब आ जाओ बच्चों मेथोट्रेक्सेट ड्रग के यूजेस पे, मेथोट्रेक्सेट के यूजेस के ऊपर आ जाओ जल्दी से निमोनिक के। पार्सल, 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 तो पी से सोरियासिस, ये क्या होता है, एंटी मेटाबोलाइट होता है। ये जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ना, उसके एंटी चलता है, उसके एंटी चलेगा। तो एंटी मेटाबोलाइट, पी से सोरियासिस, सोरियासिस के अंदर भी हम इसको देते हैं, स्किन के ऊपर लगाते हैं, एंटी मेटाबोलाइट, एक्स्ट्रा स्किन नहीं बनने देगा। एबॉर्शन, ए से एक्स्ट्रा क्या बन रहा है, एबॉर्शन क्या बन रहा है, एबॉर्शन हो रहा है,
हो रहा है कि एक एक्स्ट्रा बच्चा बन रहा है तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बच्चों रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे क्वेश्चन आपको 2 टाइप के पूछे जाते हैं, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डाल रखा है, याद रखना बच्चों। बोचार्ड नोडुल और हेबर्डन नोडुल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है यार, है ना। तो बोचार्ड नोडुल बीपी हमेशा एचडी में देखते हैं, बीपी हमेशा एचडी में, ब्लड प्रेशर हमेशा किस में देखते हो, हाई डेंसिटी में देखते हो ना। तो इस क्वेश्चन को कवर करके चलना कि बोचार्ड नोडुल्स कहाँ पे प्रॉक्सिमल होंगे, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल, और हेबर्डन नोडुल्स कहाँ पे डिस्टल होंगे। याद रखना रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस डीमार्ट्स के अंदर कौन सी दी जाती है, मेथोट्रेक्सेट। और एक क्वेश्चन टेलीग्राम में बहुत ज्यादा घूमता है और वो पेपर के अंदर भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ड्रग, क्योंकि आप भी बोलोगे सर आपने एक ड्रग नहीं पढ़ाई अभी डीमार्ट्स वाली, कि प्रेगनेंसी में कौन सी डीमार्ट दी जाएगी। प्रेगनेंसी में कोई डीमार्ट, कोई पेशेंट अगर आपको आ गया प्रेगनेंसी में बीमार होके आ गया तो कौन सी डीमार्ट देंगे। तो बच्चों डीमार्ट एक बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ लो, है ना। मल्लिका शेरावत पागल सी, ऐसे करके याद रखो, मल्लिका शेरावत पागल सी। तो मेथोट्रेक्सेट देते हैं। मेथोट्रेक्सेट क्या करती है बच्चों, मेथोट्रेक्सेट की एक तो एट, पीछे सफिक्स क्या लग रहा है इसका, सफिक्स क्या लग रहा है इसका, एट लग रहा है। कौन सी ड्रग एसिडिक होती है, कौन सी ड्रग एल्केलाइन होती है, इसको सिंपली एक लाइन में बात खत्म। जिस भी ड्रग के पीछे एट लगता है वो सारी ड्रग एसिडिक होती है। ईट एट ईटन याद आ रहा है, ईट एट ईटन, खाना खाने के बाद में ही एसिडिटी होती है ना। तो जिस भी ड्रग के पीछे एट आ रहा है, चाहे वो वेलप्रोएट हो, बार्बिट्यूरेट हो, मेथोट्रेक्सेट हो, सबके पीछे एट आ रहा है ना, तो वो सारी ड्रग एसिडिक ड्रग है। और एसिडिक ड्रग क्या करवाएगी, अगर मेथोट्रेक्सेट का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा, मेथोट्रेक्सेट का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट यही होगा, इसोफेजाइटिस। तो यहाँ पे एट मल्लिका रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मेथोट्रेक्सेट। बट वो करती क्या है, बोन मैरो का सप्रेशन और फोलिनिक एसिड उसका एंटीडोट है, ये सभी याद रखना। बट बच्चों आपसे पूछ लिया गया प्रेगनेंसी में कौन सी देंगे, प्रेगनेंसी में कौन सी देंगे। आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन प्रेगनेंसी के अंदर एज अ डीमार्ट दी जाती है। यस बच्चों, है ना। तो प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है। हम लोग प्रैक्टिकली ओपीडी के अंदर रेगुलर पेशेंट देखते हैं। डीमार्ट्स की कुछ पेशेंट्स आती हैं, हम उनको क्या देते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देते हैं। कुछ मंथ की बात होती है, कुछ मंथ के अंदर उनकी, और अल्नर डेविएशन बच्चों इसका होता है। ये वर्ड भी याद रखना, एक वन लाइनर आज शाम ही मैंने पढ़ा था तो उसमें पूछा गया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर किस टाइप का डेविएशन देखने को मिलता है, तो अल्नर डेविएशन। ठीक है, तो बच्चों ये आपको याद हो गया। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस टॉपिक आपका कवर, पूरा टॉपिक कवर, ठीक है, सारी प्रोड्रग कवर, है ना। अब आपसे अगर ये बोचार्ड नोडुल्स क्या है एक बार इनकी देख लो, और हेबर्डन नोडुल्स क्या है वो देख लो, बोचार्ड और हेबर्डन नोडुल्स क्या है देख लो, ठीक है, सारे के सारे देख लो। अब आपके सामने पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द गिवन कंडीशन। कंडीशन कौन सी है, देखो अल्नर डेविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग खुद बताओ। अल्नर डेविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना अल्नर डेविएशन, अल्नर की साइड पे डेविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो अल्नर डेविएशन आपको देखने को मिल रहा है, दैट मींस दैट इज अ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो आप लोग बच्चों याद रखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द गिवन कंडीशन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कई सारे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचेंगे कि इसका आंसर तो रूमेटॉइड फैक्टर होना चाहिए भैया, है ना, रूमेटॉइड फैक्टर, क्योंकि वही सबसे नियर बाय लग रहा है। लेकिन बच्चों नहीं, एंटी सीसीपी एंटीबॉडी इज द इन्वेस्टिगेशन, अरे इज द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो पार्सल निमोनिक सबको याद हो चुका होगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है फार्मा से, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी बनेगी। अगेन आ गया इसमें बिसफॉस्फोनेट। तो मेरे बच्चे सारे ऑडियंस कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएगी कि बिसफॉस्फोनेट कौन सी ड्रग है, एसिडिक है या एल्केलाइन है, एसिडिक है या एल्केलाइन है। कम ऑन, सभी बच्चे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में एसिडिक है या एल्केलाइन है। एड लग रहा है मतलब कि एसिडिक है, ठीक है। तो इसोफेजाइटिस करवाएगी, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसोफेजाइटिस, सबको याद हो गया। नाउ बच्चों एक मेडिसिन का फार्मा को मेडिसिन पढ़ेंगे आज हम, है ना। हम फार्मा और मेडिसिन दोनों को ऐसे कंबाइन करके चलेंगे कि फार्मा भी कवर होता रहेगा और मेडिसिन भी कवर होता रहेगा आपका, है ना। तो एक्रोमेगेली पॉइंट के A to Z के सेशन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो एक्रोमेगेली बच्चों आता है, एक्रोमेगेली में क्या हो रहा होगा बच्चों, ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव रिलीज हो रहा होगा या कम रिलीज हो रहा होगा, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है या कम रिलीज होता है बच्चों। देयर इज अ निमोनिक GGTPP MMC LF, GGTPP MMC LF। तो एक मिनट बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। आपका हाइपोथैलेमस के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइपोथैलेमस कौन कौन से सब्जेक्ट में आती है बच्चों, एनार्ट में पूछते हैं, फिजियो के अंदर आती है, मेडिसिन के अंदर आती है, फार्मा में आती है और पैथो में भी आती है। तो ऐसा टॉपिक जो 4-5 जगह आ रहा है वो आपसे नहीं पूछा जाए, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों? ऐसा ही ADH वगैरह जो भी हम पढ़ेंगे अभी मेडिसिन के अंदर, सारा के सारा हाइपोथैलेमस से रिलेशन है। इवन तो गायनी का हाइपोथैलेमस से रिलेशन है। कैसे पिट्यूटरी का नेक्रोसिस आपको शिहान सिंड्रोम में देखने को मिलता है ना। तो हाइपोथैलेमस से आपके 2 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, आप हमेशा याद रखो, एक होता है रिलीजिंग और एक होता है इनहिबिटरी, ठीक है।
जो भी हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर, ये अभी अच्छे से समझना तो आपको पूरी एंडोक्राइनोलॉजी मेडिसिन वाली समझ में आएगी। अगर इस पॉइंट को आप मिस कर गए तो बच्चों फिर समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज अभी स्टे अटेंटिव, बी अटेंटिव, अभी एकदम अटेंटिव रहना। जी जी टी पी पी एम एम सी एल एफ, नीचे से स्टार्ट करते हैं, एल एच एफ एच एच। दोनों को अगर एग्जामिनर जीएनआरएच बोल देगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों जीएनआरएच ही हैं। और जीएनआरएच का एक एनालॉग होता है बच्चों, याद रखना कौन सा, नेफेरेलिन। नेफेरेलिन और नेसल रूट से लिया जाता है। अगर नेसल ऑल्फैक्टरी, अगर किसी का नाक टूट जाए, जैसे कि अभी भारत सर आपको पढ़ा रहे थे ऑर्बिटल फ्रैक्चर, ऑर्बिटल फ्रैक्चर उन्होंने सबसे पहले ब्लो आउट फ्रैक्चर सबसे पहले पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा, है ना। मेमोरी बच्चों ऐसी शार्प बनाओ, है ना, कि आप जहां बैठे हो आपके आसपास लोग जो पढ़ा रहे हैं या आसपास पढ़ रहे हैं या जो एक्टिविटी हो रही है आपको याद होनी चाहिए बच्चों। यू हैव टू अटेंटिव एवरी मोमेंट, आपको हर मोमेंट अटेंटिव रहना है, तब बच्चों आपको चीजें याद रहेंगी, है ना। मैं कोई रट्टा करके थोड़ी बैठा था बच्चों, अभी अभी रट्टा करके थोड़ी बैठा था कि नहीं भारत भैया ने अभी ये पढ़ाया, ये पढ़ाएंगे ये टॉपिक, नहीं बच्चों। देखो आप लोग कभी गलियों को याद करते हो क्या, कि इस गली से गए थे, उस गली से गए थे, वहां नहीं याद करते ना। एक फ्री ब्रेन से पढ़ा करो, फ्री ब्रेन से पढ़ा करो, ठीक है। फ्री ब्रेन, जितना ज्यादा रिलैक्स माइंड होगा उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो बच्चों भारत सर ने क्या पढ़ाया था, ब्लो आउट फ्रैक्चर पढ़ाया था, उसमें आपका मैक्सिलरी फ्रैक्चर हो गया, है ना, बॉल लग गई तो आईज नीचे गिर गई, टीयर ड्रॉप साइन देखने को मिल गया, तो आपको उसी हिसाब से जीएन। अब वही अगर बॉल अगर नाक पे लग जाती तो आपकी सबसे पहली कौन सी नर्व होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व। फर्स्ट नर्व कौन सी होती है, ऑल्फैक्टरी। कहां से जाती है बच्चों, आपके नेसल नाक के अंदर ही उसके सारे नर्व एंडिंग होते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व के सारे, है ना। अब अगर ऑल्फैक्टरी नर्व वाला वही पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो बच्चों एक बात और याद रखना, सारे जीएनआरएच का एब्जॉर्प्शन ऑल्फैक्टरी नर्व, क्योंकि नेसल रूट से ही दिए जाते हैं पहली बार, और ऑल्फैक्टरी नर्व से ही वहीं से एब्जॉर्प्शन होता है। और अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा बच्चों, कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा, कालमन सिंड्रोम, जो गायनेकोलॉजी के अंदर आप लोग पढ़ते हो, कालमन सिंड्रोम। यस बच्चों, तो नेसल ट्रॉमा इज नॉट अ माइनर थिंग, है ना। नेसल ट्रॉमा इज नॉट अ माइनर थिंग, नेसल ट्रॉमा इज मेजर थिंग, है ना। तो बच्चों जीएनआरएच से आपको याद रह गया होगा नेफेरेलिन। नाउ सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एडिशन डिजीज अभी सर पढ़ा रहे थे, आपको पढ़ाया होगा। नाउ एमएचएच, आरएच, एमएचएच, आईएच। नाउ प्रोलैक्टिन के ऊपर आते हैं। प्रोलैक्टिनोमा इज एक्टिव ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी, ठीक है, याद रखना। अभी आपको करवा देता हूं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, इसको थोड़ा इस टाइप से लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द हैरिसन 22 एडिशन, हमको ऐसे चलना होगा। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएचआरएच, जीएचआरएच और जीएचआईएच। ये हार्मोन अगर आपको याद हो गए मतलब आप समझ लो कि आपकी एंडोक्राइनोलॉजी पूरी मेडिसिन की और पूरी फार्मा की, पूरी पैथो की कवर, है ना। थोड़ी बहुत पैथो पढ़ाऊंगा बच्चों में मिक्स करके, थोड़ा सा उसको भी पढ़ लो, आपके लिए फायदेमंद होगा पेपर के अंदर। तो ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेसिव रिलीज हो गया बच्चों, अगर एक्सेसिव रिलीज हो गया तो क्या होगा, एक्रोमेगेली जाइगेंटिज्म होगा या नहीं होगा, सभी बच्चे बताओ, एक्रोमेगेली होगा। नाउ ऑक्ट्रियोटाइड क्या है, ऑक्ट्रियोटाइड इज द एनालॉग ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। ऑक्ट्रियोटाइड इज एनालॉग ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, तो वो इनहिबिट करता है। तो एक्रोमेगेली में क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको इनहिबिट करना है। तो इनहिबिट करने के लिए हम लोग ऑक्ट्रियोटाइड दे देते हैं। ऑक्ट्रियोटाइड इज एनालॉग ऑफ सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या होता है बच्चों, सोमेटोस्टेटिन क्या होता है, इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। और बच्चों एग्जाम में अगर आपसे दो क्वेश्चन पूछ लिए जाए, कि जैसे कि मैंने एक पीडीएफ देखी थी, एक क्वेश्चन देखा था, है ना, बताता हूँ, मुझे अभी भी याद है कि वो अराइज एकेडमी की एक पीडीएफ थी जिसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें ऑप्शन उन्होंने डाले थे, लैंड्रियोटाइड डिपोट वर्ड उसमें यूज कर दिया गया था। तो बच्चों डिपोट के ऊपर 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। अभी आईएनआई सेट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, 3 नंबर मुझे ज्यादा याद रहता है। क्या क्वेश्चन आया था आईएनआई सेट के अंदर, कि प्रेगनेंसी के अंदर इन थ्रेटन एबॉर्शन की हिस्ट्री दी थी उन्होंने। थ्रेटन एबॉर्शन में क्या होता है बच्चों, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, थ्रेटन एबॉर्शन क्या होता है बच्चों, स्पॉटिंग, स्पॉटिंग फ्रॉम द वेजाइना, है ना, कि डिलीवरी का मंथ चल रहा है 8-9 मंथ और स्पॉटिंग स्टार्ट हो गया, ब्लड बाहर आना इज अ साइन ऑफ एबॉर्शन, है ना, ब्लीडिंग इज अ साइन ऑफ एबॉर्शन, बट स्पॉटिंग हो रही है, स्पॉटिंग मतलब 1-2 ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो 1-2 ड्रॉप्स आ रहे हैं मतलब थ्रेटन, यूट्रस धमकी दे रहा है। थ्रेटन एबॉर्शन की डेफिनेशन क्या होती है, धमकी दे रहा है, इनएविटेबल जिसको रोका ना जा सके, थ्रेटन मतलब धमकी दे रहा है, स्पॉटिंग हो रही थी, तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या किया था हमने वहां पे, प्रोजेस्टेरॉन, which hormone maintains the pregnancy बच्चों, which hormone maintains the pregnancy,
Progesterone will maintain the pregnancy. So what kind of the hormone you will give to the patient? You will give the progesterone depot. आप डिपोट मतलब आप लार्ज स्टेट डोज देते हो। आप नोट्स डालोगे भी थोड़े टाइम में, जैसे आपका इंटर्न में आओगे, है ना, इंटर्न कंप्लीट होगा, इंटर्न में जब आप नोट्स डालोगे, है ना, हम लोग भी नोट्स डालते हैं, तो कंटिन्यूस स्टेम ट्रीटमेंट CST आप हमेशा लिखोगे, ठीक है। लेकिन वहां पे साथ में आप एक चीज और ध्यान रखोगे, वहां पे कोई भी दवाई स्टेट डोज दिया जाता है ना, स्टेट मतलब एक साथ दे दिया हमने, डिपोट मतलब लार्ज डोज दे दिया। तो वैसे ही वहां पे तब मेरे को क्लिक किया उस क्वेश्चन के अंदर जो PDF के अंदर दिया गया था कि एक्रोमेगेली का ड्रग ऑफ चॉइस वहां ऑक्ट्रियोटाइड भी दे रखा था, लैंड्रोटाइड डिपोट भी दे रखा था। तब मेरे को क्लिक किया गया कि यार इसका आंसर तो लैंड्रोटाइड डिपोट होना चाहिए, और लैंड्रोटाइड डिपोट उसका आंसर था, है ना। तो प्रेगनेंसी के अंदर क्रिएटिन एबॉर्शन के अंदर क्या ट्रीटमेंट बनेगा आपका? प्रोजेस्टेरोन डिपोट। तो बच्चों क्या लग रहा है अब तक कितने क्वेश्चन आपके कवर हो गए? क्या लग रहा है? 3-4 क्वेश्चन तो बन गए ना अभी तक? 3-4 क्वेश्चन तो बन गए होंगे, ऐसा लग रहा होगा, है ना। अभी तो और बाकी है ये। तो अभी आप फार्मा को मेडिसिन पढ़ो तो सही बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा यहाँ तक का, डाइहाइड्रोफोलेट रिलेटेड इनहिबिटर सबने पढ़ लिया, फोलिनिक एसिड सबने पढ़ लिया, प्रियंका चोपड़ा सबने पढ़ ली, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया पढ़ लिया। जिंजिवा से मुझे एक FMG का फेवरेट क्वेश्चन याद आता है। FMG वालों से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, नीट PG वाले इस क्वेश्चन को अवॉइड करें, बट FMG वाले हमेशा इस बात में ध्यान रखें कि स्ट्रॉबेरी जिंजिवा हमेशा पूछते हैं, वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस। ऑल्दो इट इज अ मिसनोमर, ये मिसनोमर है, ये प्रॉपर डिसऑर्डर नहीं है ना। प्रॉपर वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस इज नॉट अ स्ट्रॉबेरी जिंजिवा डिसऑर्डर, ये प्रॉपरली डिसऑर्डर नहीं है वैसा जैसा इसको माना जाता है ना। जैसे PCOD भी कोई डिसऑर्डर नहीं है ना, मिसनोमर है। तो स्ट्रॉबेरी जिंजिवा किसमें देखने को मिलता है? वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस। वैसे स्ट्रॉबेरी नेसल मास पूछा जाता है, राइनोस्पोरिडियोसिस। नेसल मास और नेसल म्यूकोसा में कंफ्यूज मत होना, सार्कोइडोसिस के अंदर नेसल म्यूकोसा स्ट्रॉबेरी कलर की दिखती है। देन स्ट्रॉबेरी वेजाइना के ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों, स्ट्रॉबेरी वेजाइना एंड कैंडिडा एंड बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, इन तीनों के ऊपर कंफर्म क्वेश्चन है बच्चों। तो स्ट्रॉबेरी वेजाइना आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? आपको ट्राइकोमोनियोसिस के अंदर, ट्राइकोमोनियोसिस के अंदर आपको स्ट्रॉबेरी वेजाइना कंफर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। बीवी क्या देती है? वो एक बात बताओ, बीवी क्या देती है जब भी गुस्सा होती है? मान लो मेरे घर पे मेहमान आ रखे हैं और अगर मेरी बीवी है तो बीवी क्या देती है? बीवी क्लू देती है, बीवी क्लू देती है कि देख लो मैं नाराज हूँ, है ना। तो वो क्लू, तो फिर आपको जाना पड़ेगा सरोजनी नगर उसको लेके, ठीक है, सरोजनी नगर पिंक लाइन। तो याद रखो, पिंक कलर की चीज अगर चाहिए तो पिंक लाइन पे आपको जाना पड़ेगा और फिर आपको सरोजनी नगर से शॉपिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो यस, तो बीवी क्या दे रही है? आपको क्लू दे रही है। कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आता है? विफ टेस्ट। विफ टेस्ट ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही, यस, और बिल्कुल उसको स्मेल किया जाता है ऐसे ही, है ना। बड़ा वियर्ड सा होता है, मैंने देखा गायनी वाली जो रेजिडेंट मेरे साथ में, वो करती भी है विफ टेस्ट। मैं देख के कहता भी हूँ उसको कि क्या ये चीज है, बट यस वी आर डॉक्टर, वी शुड हैव टू डू इट। एंड वाइसो मैंने अभी स्टेथोस्कोप क्यों पहन के रखा है? ये इसलिए पहन के रखा है बच्चों की ये मेरा लकी स्टेथोस्कोप है ना। मैं लिटमैन भी रख सकता था लेकिन बच्चों नहीं, मैंने क्यों स्टेथोस्कोप को रखा? इस स्टेथोस्कोप ने, मैं कहीं पे भी कभी भी कोई भी पहली बार शुरुआत करता हूँ तो बच्चों स्टेथोस्कोप को मेरे साथ रखता हूँ, है ना। इस स्टेथोस्कोप ये मैंने सबसे पहले लिया था, और जिस अटेम्प्ट में ये स्टेथोस्कोप, मतलब बस मेरा ये मानना है, एक आपका बिलीफ हो जाता है किसी एक चीज के ऊपर, है ना। तो जैसा मेरे खाटू श्याम बाबा पे बिलीफ है, मेरे पेरेंट्स पे बिलीफ है, मेरे अपनों पे बिलीफ है ना, वैसा ही स्टेथोस्कोप पे बिलीफ है कि ये जब तक मेरे साथ रहता है ना, मैंने कभी किसी पेशेंट को जाते नहीं देखा, है ना। और ये स्टेथोस्कोप उस दिन भी मेरे काम आया था जब राइगर स्टार्ट हुआ और 12 मिनट कवर हो गए थे राइगर के, उसके बावजूद मेरा वो पेशेंट, मैंने वापस, मेरी नर्सिंग स्टाफ थी साउथ इंडिया की, उसने आके मुझे बोला प्रियम सर वंस प्लीज ट्राई वंस, उसने आके रिक्वेस्ट की। मैंने कहा वो ऑलरेडी जा चुका है, CPR देने का कोई सेंस नहीं है, फीबल पल्स है, ऑलरेडी डोपामाइन पे। बट उन्होंने जैसे कहा प्रियम सर प्लीज ट्राई, क्योंकि उनको मेरे फेथ के ऊपर फेथ है, उनको मेरे फेथ पे मुझसे ज्यादा फेथ है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत छोटा सा भक्त हूँ, है ना, उनको मेरे फेथ पे मुझसे ज्यादा फेथ है। और जब मैं गया बच्चों, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने डिफिब्रिलेट जैसे ही चार्ज करके डिफिब्रिलेट किया और फर्स्ट शॉट मारा, फर्स्ट शॉट, मेरे को पता नहीं क्या अंदर से गूज़बम्स आए। मैंने सेकंड शॉट जैसे दिया, मैंने देखा, मैंने सोचा कि 100 जूल से काम नहीं बनेगा, 250 जूल एक साथ दे दो, वैसे ही जा चुका है। 250 जूल जैसे ही एक साथ दिया, पेशेंट रिवाइव हो गया बच्चों, उसकी लाइनिंग आने लगी ECG में। और बच्चों लाइफ की सबसे बड़ी गूज़बम्स तब आपको फील होंगे जब गया हुआ पेशेंट आपके सामने आप वापस लेके आते हो। आपकी एज क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरी एज क्या है, मैं केवल 20-25 साल का, 25-30 साल का एक छोड़ा हूँ, है ना। और आज मेरे एक डिफिब्रिलेटर देने से 12 मिनट बाद अगर वो पेशेंट वापस आता है, तो बच्चों ये कितना बड़ा मोटिवेशन है। बच्चों ऊपर वाले ने आपके हाथों को चूज किया एज ए डॉक्टर, किसी इंसान ने चूज नहीं किया है। ये आपकी इच्छा नहीं थी डॉक्टर बनना, ये आपके माँ बाप की, आपके माँ बाप आपके भगवान है ना, आपके माँ बाप भी आपके अल्लाह जी हैं, वाहिगुरु जी हैं, जीसस जी हैं। याद रखना, आपके हाथों को चूज किया है भगवान ने, और आपको पास कराने की जिम्मेदारी भगवान की है, ये बात याद रखना,
ठीक है, आपको पास कराने की जिम्मेदारी भगवान की, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे हाथों को चूज किया है, तुमने चूज नहीं किया इस प्रोफेशन को, है ना। ये जो भी हो रहा है ना यहाँ पे, ये सब उनकी इच्छा से हो रहा है। तो बच्चों तुम्हारे सिलेक्शन की जिम्मेदारी भगवान की है, ज्यादा घबराओ मत, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, ठीक है। थोड़ा बहुत उनके हवाले, थोड़ा बहुत नहीं, सब कुछ उनके हवाले कर दो, वो ज्यादा बेहतर संभालेंगे, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया टेरेटोजेनिक ड्रग्स। अब अभी तक हमने सारी ड्रग्स पढ़ी, उन ड्रग्स के सारे कोरिलेशंस पढ़ लिए, सारे इंटीग्रेशंस पढ़ लिए, द रियल इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया। नाउ विच ड्रग्स आर टेरेटोजेनिक, ठीक है। तो थैलिडोमाइड देने से क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ, थैलिडोमाइड से क्या साइड इफेक्ट करता है बच्चों, फोकोमेलिया। इमेज देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो बच्चों, फोकोमेलिया, 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 ठीक है। लिथियम क्या करवा रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, एप्चिन एनोमली करवा रहा था, सबको याद है। एसी इनहिबिटर्स, रीनल एजेनेसिस, देखो लो बच्चों, आपको पहले ही पढ़ा दिया ये सारा टॉपिक, है ना। कार्बिमेजोल, मेथिमेजोल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देंगे, प्रोपाइल थायोरेसिल, सेकंड ट्राइमेस्टर में आप दे सकते हो। और अभी आपको एक बात बता रहा हूँ, आयरन इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट याद रखना आयरन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अब उसमें नीट पीजी में विक्स डाल दिए थे उन्होंने, 12 वीक्स, 14 वीक्स, 12 वीक्स, 14 वीक्स, 10 वीक्स, 8 वीक्स, 8, 10, 12, 14 ऐसे दे रखा था। अब ऐसे क्वेश्चन में जहां पे फंस जाओ, वहां पे क्या आंसर करना चाहिए, वहां पे आपको आंसर करना चाहिए 12 वीक्स तक तो नहीं दे सकते, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक नहीं दे सकते, तो मोर देन 14 वीक्स, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आउट ऑफ 150 जो 50 क्वेश्चन पहले आ रहे हैं, उन 50 क्वेश्चन को पहले करो। 50 क्वेश्चन बनते आपके खुद के दिमाग में आ जाएगा कि हाँ भाई अब तो 25 ही क्वेश्चन और करने हैं, है ना। तो बस वो 25 क्वेश्चन तो आप बच्चे उसमें से मार ही लोगे, है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलप्रोएट और मेथोट्रेक्सेट क्या करती है, वेलप्रोएट और मेथोट्रेक्सेट क्या करती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कौन सा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवाती है, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। फेनिटोइन क्या करवाती है, क्लेफ्ट लिप। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन 101% पेपर के अंदर है आपके, 101% पेपर के अंदर आपके यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट, अब फार्मा को 1 मिनट के अंदर अगर आपको एएनएस खत्म करना है, 1 मिनट के अंदर अगर आपको एएनएस खत्म करना है, तो अभी मेरे साथ में फोकस रहो बच्चों, 1 मिनट के अंदर आपका पूरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में अंदर आपको एक ही ड्रग पूछी जाती है, उस ड्रग का नाम क्या है बच्चों, एट्रोपिन। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बच्चों एक बात ध्यान रखना, कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक वर्सेस एंटी कोलिनर्जिक। तो जो सब कुछ बढ़ाता है वो क्या होता है बच्चों, जो सब कुछ बढ़ाता है वो क्या होता है, कोलिनर्जिक, और जो सब कुछ घटाता है वो क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक, एक्सेप्ट 2 थिंग्स, नंबर 1 हार्ट रेट, नंबर 2 आइज का साइज, आइज का साइज, आइज का साइज जो घटाएगा, आइज का साइज जो घटाएगा वो क्या होगा, कोलिनर्जिक, और जो हार्ट रेट को बढ़ाएगा वो क्या होगा, एंटी कोलिनर्जिक। जो हार्ट रेट और आइज की साइज को बढ़ाएगा मतलब मिड्रेसिस करेगा, मिड्रेसिस करेगा। तो आइज के साइज को बढ़ाया, मिड्रेसिस किया, किसने किया, किसने किया, एंटी कोलिनर्जिक ने। तो बच्चों याद रखो, एट्रोपिन कौन सी ड्रग है, एट्रोपिन ड्रग कौन सी है, एंटी कोलिनर्जिक। ठीक है, एट्रोपिन, याद हुआ बच्चों अभी कभी, ठीक है। तो एक बात बताओ, सीपीआर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, एड्रेनालिन। सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लिया तो सीपीआर के अंदर आप क्या मार्क करके आओगे, एट्रोपिन मार्क करके आना बच्चों, एट्रोपिन प्लीज मार्क करके आना। अभी जो पढ़ा हूं बच्चों, प्लीज लास्ट मोमेंट पे पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट दे रहा हूं, सबसे बेस्ट। मुझे मालूम है कल आपका पेपर है, तो आज वही बात होगी जो पेपर में आ सकती है। तो बच्चों 1 मिनट के अंदर पूरा एएनएस आपका कंप्लीट हो जाता है। याद करो मेरे साथ में जो सब कुछ बढ़ाता है वो क्या होता है, कोलिनर्जिक, जो सब कुछ घटाता है वो क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक। और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी होती है, एट्रोपिन, एट्रोपिन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन आंसर भी करूंगा, ठीक है, आपको नहीं छोड़ा जाएगा, आपके साथ क्वेश्चन आंसर भी किए जाएंगे, और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट बच्चों एट्रोपिन आपने दे दिया, एट्रोपिन आपने एज ए ट्रीटमेंट, मान लो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, मैं आपको पहले बता दूं कि आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि अब सब कुछ बढ़ा रहा है, मतलब एक पेशेंट आया, एक फार्मर की हिस्ट्री देते हैं मोस्ट कॉमनली, 99.9% फार्मर की हिस्ट्री देंगे और पूछेंगे आपसे कि फार्मर है,
फार्मर का सब कुछ बढ़ता है, मतलब लैक्रीमेशन हो रहा है, सलाइवेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, लूज स्टूल हो रहा है, यूरिनरी इनकंटिनेंस हो रहा है, सब कुछ सारे सिम्टम्स उसके साथ हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन मेडिसिन के अंदर आप देखोगे, ठीक है, तो आप एज अ ट्रीटमेंट, आप पेशेंट जैसे आएगा, मैंने आपको कई बार पहले भी पढ़ा रखा है, जैसे ही पेशेंट आएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग उसका डायग्नोसिस बनेगा। क्यों? वो आप उससे जैसे हिस्ट्री लोगे वो बोलेगा मैंने खेत के अंदर दवाई डाली थी डीडीटी, ठीक है, डीडीटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों, डीडीटी याद रखना। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होगी। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होगी तो उसके ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम लोग? एट्रोपिन ट्रीटमेंट एज ए ट्रीटमेंट क्यों देंगे? क्योंकि जो सब कुछ बढ़ रहा है उस सबको घटाने की भी जरूरत है, उस सबको घटाने की भी जरूरत है। तो व्हाट इज द साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन? व्हाट इज द साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन? आप कैसे पता करोगे कि आपने एट्रोपिन का डोज दिया है वो परफेक्ट है या नहीं है? रंजन सर ने पढ़ा रखा है, पॉइंट याद आ रहा है? याद आ रहा है? फार्मा में पढ़ा रखा होगा आपको, है ना? तो बस बिल्कुल साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन इज मियोसिस, जो आपका विट्रियसिस, जो आपका आइज का जो क्यों मियोसिस हो रखा था ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, यहाँ पे आइज डायलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, वापस मियोसिस से नॉर्मलाइज होना लग जाएंगी। और इन केस किसी नॉर्मल से डॉक्टर ने विकेरियस लायबिलिटी कर दी, किसी नॉर्मल से डॉक्टर ने विकेरियस लायबिलिटी कर दी। क्या होता है विकेरियस लायबिलिटी? अभी आपने फोरेंसिक के अंदर पढ़ा होगा, रेस इप्सा लॉक्यूटर पढ़ा होगा, विकेरियस लायबिलिटी पढ़ा होगा कि अगर कोई गलती हो जाए, द थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ इज द रेस इप्सा लॉक्यूटर। ये कभी बार पूछ लेते हैं बच्चों, है ना? तो व्हाट इज विकेरियस लायबिलिटी? कि किसी जूनियर ने गलती कर दी और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप रहोगे। तो मेरे वहां पे जो इंटर्न है या फर्स्ट ईयर जेआर है, सेकंड ईयर जेआर है, थर्ड ईयर जेआर में हम लोग आते हैं, तो अगर कोई फर्स्ट ईयर जेआर है उसने कोई गलती कर दी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? हम होंगे। अब उसने एट्रोपिन का डोज इतना ज्यादा दे दिया कि एट्रोपिन एज ए ट्रीटमेंट तो दे रहे थे, उल्टा दर्द दे दिया उसने एट्रोपिन का, ठीक है? तो एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी होगी। तो एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी के अंदर हम कौन सी ड्रग देंगे? हम बच्चों बताओ, एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी के अंदर हम कौन सी ड्रग देंगे? जल्दी से बताओ। साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन दो होते हैं, एक तो पिपिल का साइज, दूसरा रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। तो एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी होगी तब क्या देंगे हम? फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन याद आ रहा है बच्चों? स्टिग्माइन वर्ड बोलते हैं, 3 और स्टिग्माइन याद आ रहे हैं? 3 नंबर हमारा लकी नंबर है, 3 और स्टिग्माइन याद आ रहे हैं? वैसे फाइसोस्टिग्माइन 2 और जगह दिया जाता है। नॉट ओनली एट्रोपिन पॉइजनिंग, इट इज ऑल्सो गिवन अलॉन्ग विद द बेलाडोना एंड धतूरा पॉइजनिंग। और धतूरा अभी नीट पीजी में पूछा है 22 तारीख को, 22 मई को, ठीक है? और 5 मार्च के पेपर के अंदर भी बेलाडोना के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है? याद आया? याद आ रहा है ना? तो एट्रोपिन, बेलाडोना, धतूरा, ए बी डिविलियर्स की पॉइजनिंग होगी। धतूरा सब कुछ डी करता है बच्चों, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल, ड्राई माउथ, ड्राई स्किन, ठीक है? तो उस सबको, ये हो गया आपका धतूरा, ठीक है बच्चों? तो उस सबको ट्रीट कौन करेगा? फाइसोस्टिग्माइन। अब फाइसोस्टिग्माइन से मुझे 3 स्टिग्माइन और याद आते हैं जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलो उन स्टिग्माइन के पास जल्दी से। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन सबको याद हुई कि नहीं हुई? अभी कार्बामेट पूछे या ऑर्गेनोफॉस्फेट पूछे, ट्रीटमेंट एट्रोपिन ही रहेगा एज ए ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में कभी बार एड ऑन ड्रग के बारे में पूछते हैं तो प्रालिडोक्साइम याद रखना। बट बच्चों अगर आपसे अब बात आती फाइसोस्टिग्माइन के अलावा और कौन कौन से स्टिग्माइन से जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, तो सबसे पहला स्टिग्माइन है आपका रिवास्टिग्माइन। रिवास्टिग्माइन याद आ रहा है कहां पे देते हैं बच्चों? जहां पे ताऊ हमारे हीरो हैं, ताऊ हमारे हीरो हैं, मतलब ताऊ प्रोटीन हिरानो बॉडीज। याद आ रहा है बच्चों? ताऊ प्रोटीन हिरानो बॉडीज। हिरानो बॉडीज कहां देखने को मिलती है? यस, कमेंट बॉक्स। हिरानो बॉडीज कहां देखने को मिलती है? हिरानो बॉडीज देखने को मिलेगी हमारी अल्जाइमर डिजीज के अंदर, न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स, याद आ रहा है? एनएफटी। तो ताऊ प्रोटीन कहां पे देखने को मिलता है? हिरानो बॉडीज कहां पे देखने को मिलती है? अल्जाइमर के अंदर। और उसके अंदर एज ए ट्रीटमेंट देखो बच्चों, टेक्राइन ड्रग बैंड कर रखी गई है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्जाइमर डिजीज इज डोनेपेजिल, डोनेपेजिल, डोनेपेजिल। ये फार्मा के अंदर पूछा गया। तो हो गया ना तुम्हारा फार्मा को मेडिसिन, है ना? तो फार्मा, इधर से फार्मा होगी, उधर से मेडिसिन होगी तुम्हारी। तो अल्जाइमर के अंदर डोनेपेजिल ड्रग ऑफ चॉइस है। और यहाँ से स्टिग्माइन वर्ड तुम्हारा दोनों समधी दोनों स्टिग्माइन, रिवास्टिग्माइन। पर एक तीसरा समधी और आ जाता है यार, और वो क्वेश्चन कंफर्म पेपर के अंदर आने के चांसेस है यार, कंफर्म पेपर के अंदर आने के चांसेस है। कौन सा स्टिग्माइन होगा? कमेंट बॉक्स में कोई बताएगा? जो कमेंट बॉक्स में बताएगा उसको चॉकलेट, मेरी तरफ से पेटीएम। जल्दी से। नियोस्टिग्माइन स्नेक बाइट, है ना? देखो बच्चों 4 स्नेक के ऊपर क्वेश्चन आते ही है ना? एफएसएम में भी पूछा जाता है, पीएसएम में भी पूछा जाता है, और यहाँ पे फार्मा में भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, फार्मा को मेडिसिन के अंदर। तो नियोस्टिग्माइन स्नेक बाइट में दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? बताओ यार, है ना? यार बच्चों ये फेवरेट टॉपिक है इनका,
कंफर्म पूछेंगे आपसे। और चारों अभी स्क्रीन पे फोटो नहीं है मेरे पास, बट बच्चों मैं आपको बता दूं कि चारों स्नैक अच्छे से याद कर लेना। चारों स्नैक के बारे में मैं बता देता हूँ, आप लोग याद कर लेना, पोस्ट कर देंगे हम लोग सर के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी कर देंगे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी कर दूंगा कि बच्चों वहां पे आप याद रखना कोबरा एंड करेत, कोबरा एंड करेत, क से कोबरा क से करेत दोनों क्या है, न्यूरोटॉक्सिक है। वाइपर का मुंह वाइड होता है ना, वाइपर के दोनों दांत होते हैं ना वो इस साइड ऐसे होते हैं, जैसे भूतनियों के नहीं होते हैं चुड़ैलों के, वैसे दोनों दांत साइड में होते हैं, तो वो वैस्कुलो, वी फॉर वाइपर, वी फॉर वैस्कुलोटॉक्सिक। और एम फॉर एमएस धोनी सबको याद होगा। सी स्नेक क्या होता है, सी स्नेक क्या होता है, मायोटॉक्सिक, है ना। तो बच्चों नियोस्टिग्माइन एज ट्रीटमेंट दिया जाता है, नियोस्टिग्माइन भी दिया जाता है, एट्रोपिन भी दिया जाता है। बट अगर आपसे क्वेश्चन को घुमा दिया गया और पूछ लिया गया कि एंटीडोट ऑफ चॉइस फॉर द स्नेक बाइट, तो एंटीडोट बच्चों एंटी स्नेक वेनम ही होगा। बाकी सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसका एंटीडोट देंगे। क्योंकि जब तक देखो सिम्टम्स को ट्रीट करके क्या करोगे, जब तक आपने एंटी स्नेक वेनम नहीं दिया, है ना। तो आपको याद रहा, कोबरा बाइट सबको याद हो गया, करेत सबको याद हो गया, नियोस्टिग्माइन सबको याद हो गया। चौथा स्टिग्माइन जो बताएगा उसको पक्का पेटीएम। रिवास्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, फाइटोस्टिग्माइन तीनों ने पढ़ दिया, मैं खुद को पेटीएम कर दूं। पायरिडोस्टिग्माइन, मायस्थेनिया ग्रेविस, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों। मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर हम पायरिडोस्टिग्माइन देते हैं, तो मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर बच्चों अब आपसे जैसे पिछले क्वेश्चन पेपर के अंदर आपसे क्या पूछा गया था, पोस्टपार्टम हेमरेज की आपको ऑलरेडी उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि आप सभी को पता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, या आप सभी से वहां पे पूछ लिया था डायरेक्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, डायरेक्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी आप सभी के सभी सब याद करके गए थे पीपीएच होता है, पर आंसर वहां पे नहीं था, पीपीएच ऑप्शन में ही नहीं था, ऑप्शन में प्री क्लेम्सिया दिया था। तो सेम चीज बच्चों अब आपसे यहाँ पे पेपर में की जा सकती है कि मायस्थेनिया ग्रेविस का पायरिडोस्टिग्माइन, आपको चौथा स्टिग्माइन याद तो है, बट अगर उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पूछ लिया तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एजाथायोप्रिन के साथ किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना मायस्थेनिया ग्रेविस का क्राइसिस भी होता है, जैसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है, थायरोटॉक्सिक थायराइड का क्राइसिस होता है ना, थायराइड पे हाइपो और हाइपर, कंफर्म क्वेश्चन, कंफर्म दोनों में से किसी एक के ऊपर। यार हाशिमोटो पे थायराइड में पढ़ाऊंगा, अभी टाइम है हमारे पास, हम पढ़ाएंगे। पारस भाई अभी टाइम है ना अपने पास में, है ना? तो भाई बस बिल्कुल, फिर बच्चों याद रखो मायस्थेनिया क्राइसिस अगर पूछ लिया तो मायस्थेनिया क्राइसिस के अंदर आप लोग क्या करेंगे, हम लोग आईवी आईजी देंगे, आईवी आईजी देंगे। और हाँ, इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, इसका टेस्ट किया जाता है बच्चों एड्रोफोनियम टेंसिलोन टेस्ट, इसमें आईवी एड्रोफोनियम दिया जाता है, ठीक है। मैंने भी लाइव में एक ही बार देखा है, ठीक है। मायस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट था, मैंने भी लाइव में एक बार देखा, मैंने देखा पेशेंट बैठा हुआ है ना, और हमारे ऑप्था के सर हैं, ऑप्था के सर आईवी एड्रोफोनियम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन वालों का कॉल होता है, मेडिसिन कॉल को हमको कभी ऑप्था में बिठाते हैं, तो मैंने देखा आईवी एड्रोफोनियम दिया, उसकी प्यूपिल और प्यूपिल क्या, उसकी आंख की जो आई लैशेज हैं, वो आई लैशेज ड्रूपिंग थी, पहले ड्रूपिंग हो रखी थी आईलिड्स की, और थोड़ी देर के अंदर इंप्रोवाइज होगी, थोड़ी देर में इंप्रोवाइज होगी, जिससे ये कंफर्म हो गया कि इस पेशेंट को मायस्थेनिया ग्रेविस से ना तो उसको बेल्स पल्सी या डिफरेंट किसी और कोई और रीजन नहीं है उसका, है ना, आईलिड के नीचे लटकने का, उसका रीजन ड्रूपिंग ऑफ आईलिड का रीजन मायस्थेनिया ग्रेविस ही है ना। तो यही होता है, सीनियरों से आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। तो एड्रोफोनियम टेस्ट किया जाता है, टॉसिस, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये सबको याद हुआ कि नहीं हुआ। मायस्थेनिया ग्रेविस बच्चों आपको खुद को पता है, हिट टॉपिक है, पूछा जाएगा। अल्जाइमर हिट टॉपिक है, पूछा जाएगा, है ना। नाउ कमिंग ऑन द टॉपिक ऑफ स्मोकिंग सीसेशन बच्चों, स्मोकिंग सीसेशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन 3 टाइप से पूछा जाता है। पहला, स्मोकिंग सीसेशन के लिए हम लोग क्या देते हैं, NVB, एन से निकोटीन, एन से बच्चों क्या हो गया, निकोटीन, वी से जल्दी बताओ, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्मोकिंग सीसेशन है, ये DOC है, वेरेनेसिलिन, और एंटी साइकोटिक ड्रग या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग विच इज यूजिंग फॉर द स्मोकिंग सीसेशन। कुछ लोगों को एंटी डिप्रेसेंट देना पड़ता है ताकि उनका CNS सप्रेस हो और उनकी क्रेविंग कम हो जाए, है ना। उसके लिए आप कौन सी ड्रग देते हो, बिप्रोपियोन, ठीक है, एंटी साइकोटिक ड्रग है, ठीक है। तो यहां तक का बच्चों सबका कवर, यहां तक का सब कुछ कवर। और मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन हाइपोथैलेमस के ऊपर जो पढ़ाया था, ऑक्ट्रियोटाइड उसका एनालॉग था, हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ग्रोथ हार्मोन के ऊपर के सारे क्वेश्चन हमारे कवर्ड हो गए, ठीक है, पक्का। तो फार्माकोमेडिसिन साथ में कवर हो रही है ना, हो रही है ना। और पिछली बार आप लोग खुद एक बार बताओ, इस चार्ट से 2 क्वेश्चन थे या नहीं थे। अल्जाइमर अभी आपको इंपॉर्टेंट बताया, मल्टीपल माइलोमा अभी आपको बताया। इस चार्ट के ऊपर आप लोग खुद बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर,
कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों? कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? ए बीटा अमाइलोइडोसिस। और अमाइलोइडोसिस बच्चों 4 जगह देखने को मिलता है ना। 4 क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। एक तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? एथलेटिक्स के अंदर देखने को मिलेगी। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? रिस्ट्रिक्टिव जहां पे एमाइलोइडोसिस हो रखा है। एमाइलोइडोसिस एक टाइप का क्या होता है? फाइब्रोसिस होता है ना, कि कुछ जमा हो गया। फाइब्रोसिस जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन में फाइब्रोसिस हो रहा था लिवर सिरोसिस के पेशेंट को, है ना, वैसा ही यहाँ पे भी फाइब्रोसिस हो जाता है एमाइलोइडोसिस के अंदर। तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर आपको वहां पे आपको अमाइलोइडोसिस देखने को मिलता है। वैसे अल्जाइमर के अंदर भी अमाइलोइडोसिस हो रखा है। किसका? ए बीटा प्रोटीन का। ये ए बीटा क्या है? ए बीटा प्रोटीन है। तो इस एक चार्ट से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म पेपर के अंदर। ठीक है बच्चों, ये वो टॉपिक हैं जो अनटच्ड टॉपिक होते हैं बट एग्जाम पेपर में आते हैं, है ना, तो इनको याद करके चलेंगे। ठीक है, याद कर लिया बच्चों? सबको याद हो गया? मल्टीपल माइलोमा भी साथ में करवा दिया हमने। चारों स्टिग्माइन याद हो गए आपको, है ना, नियोस्टिग्माइन, पैरेटोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन एंड रिवास्टिग्माइन। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना, रिवास्टिग्माइन के साथ में सेकंड ड्रग, अरे सॉरी, डोनाफेजिल के साथ में सेकंड ड्रग रिवास्टिग्माइन कभी नहीं देंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड ड्रग कौन सी देंगे? सेकंड ड्रग कौन सी देंगे? यस, मेमांटाइन देंगे। ठीक है, कभी क्यों? क्योंकि देखो, कभी कैप्टोप्रिल इनालाप्रिल साथ में देते हैं क्या पेशेंट को? मान लो आपके सामने कोई बीपी का पेशेंट आया, उसको एक ही कैटेगरी की दोनों ड्रग दोगे, बेटाप्रोलोल और क्या बोलते हैं, बिसोलोल या एटिनोलोल, कोई भी प्रोलोल, कोई भी लोल ड्रग, मेटोप्रोलोल, इनालप्रिलेट को साथ में दे सकते हो आप, मेटोप्रोलोल को और डायरेटिक्स को आप साथ में दे सकते हो, पर कभी भी मेटोप्रोलोल और प्रोप्रेनोलोल को आप साथ में नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग करती है ना। एक क्वेश्चन इस पे और याद आ गया, अच्छा हुआ यार प्रोलोल याद कर लिया। लोल के ऊपर याद आ गया कि ऐसी कौन सी ड्रग है, जैसे ले बेटा लोल, क्यों प्रेगनेंसी के अंदर एज अ हाइपरटेंसिव ड्रग ऑफ चॉइस तो है ही, बट क्यों रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को नहीं दिया जाता? और एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, भूल ना जाऊं, पहले जल्दी से बता देता हूं कि ले बेटा लोल इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि बच्चों बताओ कि बीटा 1 रिसेप्टर कहां पे लोकेटेड होते हैं? हार्ट एक होता है तो बीटा 1 हार्ट पे होते हैं, लंग्स 2 होते हैं तो बीटा 2 लंग्स पे होते हैं। तो जो काम वो वहां पे उल्टा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो मुझे ये याद आ गया। दूसरा क्वेश्चन रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन और रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, कि आपने प्रॉपर ड्रग दे दी, इंक्लूडेड लेसिक्स, इंक्लूडेड डायरेटिक्स, फिर भी पेशेंट अगर ट्रीट नहीं हो रहा है, उसका हाइपरटेंशन बीपी वैसा का वैसा है, दैट मींस दैट इज अ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। और आपने 5 ड्रग दे दी, इंक्लूडेड लेसिक्स, ठीक है, तब 5 ड्रग देने के बाद में भी अगर पेशेंट का हाइपरटेंशन ट्रीट नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर इसी कंडीशन को आप लोग क्या बोलोगे मेडिकली? ऐसी कंडीशन को आप मेडिकली क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ। यस बच्चों, रेजिस्टेंट या रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो फिर ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट किससे करोगे यार बच्चों? अगर ऐसा कोई पेशेंट आ गया आपके पास, तो या आप कहोगे सर हमने तो एडीसी इनहिबिटर्स भी दे दी, हमने बीटा ब्लॉकर्स भी दे दी, हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे दी, हमने लेसिक्स का इंजेक्शन भी लगा दिया, ठीक है, हमने तो सर बेस्ट ट्रीटमेंट कर दिया, अब बताओ सर नेक्स्ट ड्रग कौन सी? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड अभी पड़ी है ना तुम्हारे पास। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्यों लेके रखी है? फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर इंट्रा ऑपरेटिव यूज करते हैं बच्चों, हैरिसन के अंदर लिखा हुआ है, हैरिसन के अंदर ये लाइन कोटेड है। कई बार कई जगहों पे गलत पढ़ाया जाता है, बिल्कुल रॉन्ग पढ़ाया जाता है। फियोक्रोमोसाइटोमा भी मेरे साथ में याद रखो, 1 मिनट के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा सबको याद हो जाएगा। फियोक्रोमोसाइटोमा, PHE, पी से क्या होता है बच्चों? फियोक्रोमोसाइटोमा मेडिसिन का फेवरेट टॉपिक है और कंफर्म क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। तो P4, हाँ वो मुझे मालूम है, एक जगह गलत भी पढ़ाया गया उसको, वो फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, तो वो जो गलत पढ़ाया गया वो गलत आपका एक क्वेश्चन लेके जा सकता है। 149 वालों को उसका इंपॉर्टेंस पता होगा, ठीक है, आई हैड 148, आई नो। ठीक है, तो बच्चों P से पल्पिटेशन, H से हेडेक, E से एक्सेसिव स्वेटिंग। बच्चों याद हुआ? ठीक है, PHE फियोक्रोमोसाइटोमा। इसमें आप एक क्वेश्चन प्री ऑपरेटिव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग कौन सी ड्रग दोगे? फिनॉक्सीबेंजामाइन। इस पर पूछा गया था पेपर में आपके, इस बार पेपर में पूछा गया था आपके, रिसेप्टर पूछा गया था अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के ऊपर। अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर के ऊपर आप लोग BPH के अंदर प्राजोसिन भी याद रख के चलना,
प्राजोसिन भी पूछा जाता है, ठीक है, प्री ऑपरेटिव। और एक पूछा जाता है आपसे पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव, तो पोस्ट ऑपरेटिव ड्रग कौन सी है बच्चों? फेंटोलेमाइन, फेंटोलेमाइन, ठीक है। अब इंट्रा ऑपरेटिव, बच्चों एक बात बताओ, प्री ऑपरेटिव तो पेशेंट स्टेबल है, प्री ऑपरेटिव तो पेशेंट स्टेबल है, और इंट्रा पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट वहां पे भी स्टेबल है। असली दिक्कत कहां पे होती है पेशेंट को? इंट्रा ऑपरेटिव, ऑपरेशन चल रहा है और वाइटल फ्लक्चुएट कर गए, ठीक है, ऑपरेशन चल रहा है और वाइटल फ्लक्चुएट कर गए, तब सर्जन तो घबरा जाते हैं, सर्जन तो सीधा मेडिसिन कॉल कर देते हैं कि मेडिसिन वाले आ जाओ, देख लो तुम्हारा काम है। तो फिर हम लोग जाते हैं और फिर हम लोग वहां पे जाके ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं बच्चों? हम लोग वहां पे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड देते हैं। तो इसलिए बच्चों इंट्रा ऑपरेटिव याद रखना, अकॉर्डिंग टू द हैरिसन, बच्चों में ये बात बोल रहा हूँ, हैरिसन के रेफरेंस से पेज नंबर 2347 है ना, और एक एडिशन 22 के अंदर भी दे रखा है, मैं अपलोड कर दूंगा, है ना, दोनों का रेफरेंस भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो याद रखना इंट्रा ऑपरेटिव बच्चों आपको कई जगहों पे अभी गलत पढ़ाया गया है, अभी भी वही पीडीएफ चल रही है। याद रखना इंट्रा ऑपरेटिव क्या दोगे? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो हो गया ये तुम्हारा मेडिसिन और फार्मा का दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो फिब्रोमासाइटोमा कवर। अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन आपका एएनएस से जो एक्स्ट्रा टाइप का पूछा जाता है, द ड्रग ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मस्कुलर क्रैम्प्स, सलाइवेशन, फ्रोथिंग फ्रॉम द माउथ, स्वेटिंग, लैक्रिमेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, मियोसिस प्लस मियोसिस, ब्रोंकोरिया एटसेट्रा, है ना, आफ्टर कंज्यूमिंग द फूड आइटम शोन इन द पिक्चर बिलो इन विच अमंग द फॉलोइंग। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? सब कुछ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बच्चों? पहले ये आप फोटो देख लो, ये फुटू है, फुटू हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, हमारी देसी लैंग्वेज में मशरूम को, मशरूम है। तो मशरूम पॉइजनिंग का साइन नजर आ रहा है बच्चों? मशरूम पॉइजनिंग का साइन नजर आ रहा है बच्चों? जल्दी से, फिर मेरे को आपकी माइक्रो इजी करवानी है, माइक्रो का ट्रेलर दिखा दूं, फिर माइक्रो भी इजी करवानी है तुम्हारी, और मेडिसिन का थोड़ा सा पार्ट जो बच रहा है वो इजी करवाना है। यस, अमाटॉक्सिन नया वर्ड है, याद रख लेना। अमाटॉक्सिन किसके अंदर? मशरूम पॉइजनिंग के अंदर। तो कई सारे लोगों को मशरूम खाने के बाद में, मटर मशरूम की सब्जी खाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में उनको हाइव्स निकल जाते हैं। तो हाइव्स निकल के मतलब व्हाट इज दैट? दैट इज अ हाइपर सेंसिटिविटी। तो उस हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर क्या करोगे आप? यहाँ पे क्या हो रहा है? सब कुछ बढ़ रहा है, मियोसिस हो रहा है और ब्लरिंग ऑफ विजन। इवन दो बच्चों आंख के अंदर भी सब कुछ बढ़ ही रहा होता है। सी फॉर कॉन्ट्रेक्शन, सी फॉर कोलिनर्जिक, याद रखो, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द जीआईटी, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डिट्रीजर मसल्स, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द ऑल सिलेरी मसल्स। तो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, तो इसका ट्रीटमेंट, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? साहिल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, एट्रोपिन विल बी द, यस मोहम्मद यासिर, वेरी गुड, एट्रोपिन विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द गिवन कंडीशन, ठीक है। बट अब अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि एट्रोपिन, मान लो सब एग्जाम में पता है ना कि ये बच्चों को आता होगा, तो जो बच्चों को आता होगा वैसा क्वेश्चन वो नहीं करता है, वो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अमाटॉक्सिन जो होता है वो अमाटॉक्सिन इन पॉइजनिंग ड्यू टू फूड आइटम शोन इन द पिक्चर बिलो एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग व्हिच अमंग द फॉलोइंग। किसको इनहिबिट करता है? हेमाटॉक्सिन इनहिबिट किसको कर रहा होता है बच्चों? पहली बार डीएनए को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, लॉजिकल थिंकिंग है, डीएनए को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट अमाटॉक्सिन एक ऐसा फैक्टर है जो जाके आरएनए को या एडिनोसिन को या जी प्रोटीन्स को किसको मॉडिफाई कर सकता है, किसको जाके पंगे ले सकता है, किससे पंगे ले सकता है? यस, इट कैन मैसेंजर आरएनए के साथ में पंगे ले सकता है। तो यस, ये मैसेंजर आरएनए को परेशान करता है, और वही मैसेंजर आरएनए मियोसिस करवाता है, लैक्रिमेशन करवाता है, सेलाइवेशन करवाता है, ठीक है। अब आपके सामने एक कंडीशन दे दी है, मेडिसिन की है, ऑल्दो फार्मा के अंदर दी है, मेडिसिन के अंदर, बट फार्मा को मेडिसिन पढ़ने का मजा अलग होता है ना। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द टॉक्सिक फॉर्म ऑफ कंडीशन शोन इन द फोटोग्राफ इज, यस बच्चों, सभी कमेंट बॉक्स में। ये कौन सा मल्टी नोडुलर गोइटर नजर आ रहा है? मेडिसिन पढ़ाते ना, मल्टी नोडुलर गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, 3 टॉपिक अभी एक साथ आपके कवर करूंगा मैं, ठीक है। 3 टॉपिक अभी एक साथ कवर करूंगा आपके। जल्दी से आंसर करो। मल्टी नोडुलर गोइटर है तो ट्रीटमेंट किससे करोगे? लेबेटालोल, मेटोप्रोलोल, प्रोप्रेनोलोल या टोलाजोलाइन। एक ड्रग है जिसका नाम है बाहुबली ड्रग,
एक ड्रग है जिसका नाम है बाहुबली ड्रग। बच्चों मैं माइक्रो का ट्रेलर दिखा रहा हूं अभी आपको 2 मिनट में। इतनी सिंप्लीफाइड माइक्रो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी जितना सिंपल माइक्रो को कर दिया गया है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से, यस मल्टी नोडुलर गोइटर। बच्चों मेडिसिन से 45 प्लस क्वेश्चन आएंगे आप, इसलिए बच्चों फार्मा को मेडिसिन की जहां बात आती है 75 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं दोनों सब्जेक्ट मिला के। तो इसको प्लीज अच्छे से इंटीग्रेट करते हुए समझते हुए पढ़ लो। प्रोप्रेनोल इज द बाहुबली ड्रग फॉर द, प्रोप्रेनोल कहाँ दी जाती है? 6-7 जगह दी जाती है। कहाँ दी जाती है? प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में प्रोप्रेनोल देते हो, यस और नो? देते हो या नहीं देते हो? प्रोफाइलेक्सिस ऑफ फिब्रोमाइल्जिया में देते हो कि नहीं देते हो? देते हो ना, ठीक है। प्रोप्रेनोल हाइपरटेंशन के अंदर देते हो कि नहीं देते हो? ठीक है। अच्छा, माइग्रेन के ऊपर भी आपका ये भी मेडिसिन का टॉपिक है, तो माइग्रेन के अंदर भी क्वेश्चन, माइग्रेन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनेगी? साथ बता दो, साथ में बताओ। ट्रिप्टान्स। और एक्यूट सीवियर माइग्रेन के अंदर एक्यूट वर्ड आ गया तो एनसेट्स। एनसेट एक्यूट सीवियर भी आ जाए तो भी बच्चों आपको एनसेट को ही मार्क करके चलना है। एक्यूट माइग्रेन आया या एक्यूट सीवियर माइग्रेन आया, आपको किसी चीज को ऐसे लेके नहीं चलना है कि क्या बोलते हैं हमारा एक्यूट सीवियर वर्ड दे दिया तो सीवियर वर्ड दे दिया इसका मतलब ये माइग्रेन ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका एक मिनट रुकना, एक मिनट सर्च करें। चलो, तो कोई बात नहीं बच्चों, उसका रेफरेंस में डाल दूंगा। ठीक है, माइग्रेन का रेफरेंस डाल दूंगा। एक्यूट सीवियर माइग्रेन हो या माइग्रेन का कोई भी टाइप हो बच्चों, माइग्रेन पे प्लीज करेक्ट आंसर मार्क करके आना। माइग्रेन कंफर्म क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा। ठीक है, उसको करेक्ट मार्क करते हुए चलना। ठीक है, एक मिनट, गिव मी ओनली 1 मिनट बच्चों। पॉइजनिंग के ऊपर क्वेश्चन कंफर्म है आपके? ठीक है, चलो बच्चों एक काम करते हैं, उसको मैं एज ए रेफरेंस बाद में डाल दूंगा पेपर के अंदर। ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों। तो ये मेरे को ये वेव भी समझानी थी आपको। तो पहला ईसीजी अब आपके सामने है, पहला ईसीजी अब आपके सामने है, पहला ईसीजी अब आपके सामने है। ठीक है, जल्दी से। पी वेव आपको कंटिन्यूस दिख रही है, पहला ईसीजी। पी वेव आपको बरीड इनटू द टी वेव नजर आ रही है। पी वेव बरीड इनटू द टी वेव, पी वेव बरीड इनटू द टी वेव। पी वेव किसके अंदर घुस गई है? टी वेव के अंदर घुस गई है। बच्चों ईसीजी को आज इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा जितना तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार माइक्रो को एक बार यार नजर घुमा ही ली जाए यार, सारे बच्चे सारी ऑडियंस एक बार नजर जल्दी से माइक्रो में बता देता हूँ बच्चों। ये तो एक बार नजर घुमा लो, रीजन बता रहा हूँ उसका, ताकि आपको आने वाले टॉपिक्स के लिए ओवर एक्साइटमेंट रहे पहले से। क्या ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, हम इसको पढ़ने वाले हैं, हम इस वाली माइक्रो को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने पहले से ओवर एक्साइटेड रहो कि आप ये रहा आपका पूरा माइक्रो। ठीक है, अभी तक आपने माइक्रो कैसे पढ़ी होगी, है ना? आपको सारे मीडियम्स 2 मिनट के अंदर, ये माइक्रो 15 मिनट के अंदर खत्म होने वाली माइक्रो है। ठीक है, पूरी माइक्रो यहाँ पे, पूरी माइकोलॉजी यहाँ पे, पूरी बैक्टीरियोलॉजी यहाँ पे, और पूरा वायरोलॉजी आपको यहाँ पे। ठीक है, पूरा वायरोलॉजी एक चैप्टर, एक पेज के अंदर, 2 पेज के अंदर पिछले 5 साल के पूछे गए सारे क्वेश्चन है। पिछले 5 साल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वायरोलॉजी के, वो इस एक पेज में और 1.5 पेज में, 1.5 पेज में पूरा हेपेटाइटिस यहाँ पे है। ठीक है, ये हेपेटाइटिस अभी जानबूझ के मैं पढ़ा रहा हूँ, जानबूझ के ये चीज दिखा रहा हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि मेरे को अभी इसको फार्माको में पढ़ाना है। ठीक है, देन आपके सामने पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी अभी मेडिसिन का ट्रेलर, मेडिसिन अभी स्टार्ट भी नहीं किया, पर आपको पहले से पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स आते हैं, तो आपको ये पहले से ही पता है। ठीक है, सो बच्चों ट्रेलर देख के अभी से बोल रहा हूँ, कैंडिडा एल्बिगेंस अभी आप लोगों ने कार्डिवाइड डिस्चार्ज पढ़ा नहीं है, पढ़ा है। कैंडिडियासिस अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जहाँ पे मैंने ट्राइकोमोनासिस, कैंडिडियासिस और बैक्टीरिया वेजाइनोसिस तीनों को डिफरेंशिएट किया था ना। वहां पे ट्रीटमेंट पूछा जाता है कि ओरल कौन सी ड्रग दोगे, है ना? ओरल ड्रग में देना है या टॉपिकल देना है या सिस्टेमिक देना है या स्किन के ऊपर देना है या जेनाइटल में देना है। क्वेश्चन कंफर्म आता है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। बच्चों ये क्वेश्चन आप 100%, 101% नोट डाउन करके चल लो कि पेपर के अंदर आने के पूरे चांसेस हैं, पूरे के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इसका रीजन बताऊं, आप लोग प्रीवियस अटेम्प्ट का मुझे नहीं पता, पर मेरे चारों अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है, आई वाज पास इन 4th अटेम्प्ट बच्चों, चौथे में पास हुआ। चारों अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। और अभी 5 मार्च के नीट पीजी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस।
ठीक है, 5 मार्च के नीट पीजी के अंदर भी पूछा गया था। तो इस बात को याद रखना। और बच्चों पूरा के पूरा आपका माइकोलॉजी और पूरा के पूरा वायरोलॉजी अभी 2 पेज में खत्म हो जाएगा। बट बच्चों जो चीज टफ है उसको हम लोग पहले कर लेते हैं, जो चीज इजी है उसको हम थोड़ा बाद में कर लेंगे, तो इससे हमारे लिए बेटर हो जाएगा। ठीक है, पहले से आपके कंसेप्ट बने हुए हैं। तो बच्चों अब आपके सामने मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है, पहला क्वेश्चन कि ड्रग टॉक्सिसिटी प्रेजेंट विद द मियोसिस, सेलाइवेशन, लैक्रिमेशन, ब्रेडिकार्डिया, इनवॉलंटरी यूरिनेशन एंड डिफिकेशन। सो व्हाट विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस? Is it organ of hospital poisoning? Yes or no? Yes or no? Organ of hospital poisoning. So what will be the management? Atropine. Now drug toxicity with mydriasis, hyperthermia, urinary retention, tachycardia and delirium. Which drug you will give to those patients? Yes, that is the effect of anticholinergic. So you will give physostigmine. Clear? Now if the examiner will ask you, patient develops swelling of the face and difficulty in breathing after insect bite. On examination BP is low. On examination BP is low. So patient is into the condition of shock. So BP is low. So how could you differentiate this question with the scorpion sting? What will be the treatment of choice in such situation? Patient develops swelling of the face and difficulty in breathing after insect bite. On examination BP is low. ऑलरेडी बच्चों मैंने आपको अभी बताया, 2 मिनट पहले बताया है ना, कि इसमें इसको स्कॉर्पियन स्टिंग से कैसे डिफरेंशिएट करोगे, और आप लोग उसी का आंसर कर रहे हो प्राजोसिन। नहीं, गलत बात। क्या करोगे ट्रीटमेंट? बीपी फॉल। सारे शॉक में बीपी फॉल होता है, ऐसा कोई शॉक ही नहीं है जिसमें बीपी फॉल ना होता हो, ऐसा कोई शॉक ही नहीं। सब शॉक में बीपी फॉल होता है, चाहे एनाफाइलेटिक शॉक हो, कार्डियोजेनिक शॉक हो, सेप्टिक शॉक हो, न्यूरोजेनिक हो, हाइपोवोलेमिक हो, कोई भी शॉक होगा तो बीपी तो क्या होगा? बीपी फॉल होगा। तो बीपी फॉल आपके सामने हो रहा है। ठीक है, सो पेशेंट डेवलप स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मतलब लेरेंजियल एडिमा हो गया उसको। ठीक है, आफ्टर एन इंसेक्ट बाइट। सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एनाफाइलेक्सिस। तो एनाफाइलेक्सिस की सिचुएशन के अंदर आप ट्रीटमेंट क्या दोगे? वेरी गुड। सबसे पहला कमेंट कौन कर रहा है? एनाफाइलेटिक डॉक्टर शिम्पी वर्मा। वेरी गुड बहन। एड्रेनलिन 1:1000 IM। वेरी गुड, वेरी गुड। एड्रेनलिन देंगे 1:1000 IM देंगे या IV देंगे, ये बता दो। IM देंगे, कंफर्म? ठीक है, चलो बच्चों IM ही दिया जाता है ना। कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है ना तो उसमें IM रूट को यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, IV रूट इमीडिएटली यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ओवर कॉम्प्लिकेशन, एक फर्दर कॉम्प्लिकेशन को हम लोग सह नहीं कर सकते, है ना। ओके, तो एनाफाइलेटिक शॉक कभी भी हो तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनेगी? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन। अब कार्डियोजेनिक शॉक पे बच्चों आपको घुमाया जा सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक कब होता है बच्चों? देखो, सबसे पहले तो होगा आपको एंजाइना। एंजाइना 3 टाइप का होता है। ठीक है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड प्रिंजमेटल। तीनों एंजाइना आपको याद है या नहीं है? सबको तीनों एंजाइना याद है या नहीं है? अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया एंजाइना पेक्टोरिस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर, फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का पूछा ही जाता है। एंजाइना, हाइपरटेंशन, है ना, हार्ट फेलियर, इनके फेवरेट टॉपिक हैं। तो बच्चों थोड़ी सी कार्डियोलॉजी में को आपको भी पढ़ानी पड़ेगी, बेसिक्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी कार्डियोलॉजी बेसिक्स यहाँ पे ऐड कर देता हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना के अंदर क्या होता है बच्चों? स्टेबल एंजाइना में कितना % हार्ट ब्लॉक रहता है? हार्ट ब्लॉक नहीं, सॉरी, टेकिंग माय वर्ड्स बैक। क्या होता है? कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज के ऊपर, यस। तो स्टेबल एंजाइना के अंदर कोरोनरी आर्टरी कितना % ब्लॉक्ड होती है बच्चों? ऑलमोस्ट बना के दिखा दूं फोटो? ऑलमोस्ट 70% ब्लॉकेज हो रखा होता है। ठीक है, मिनिमम 70% ब्लॉकेज अकॉर्डिंग टू द हैरिसन, है ना। तो 70% ब्लॉकेज है। अब 70% ब्लॉकेज है तो अभी बैठे बैठे तो आराम से काम चल रहा है, बैठे बैठे आराम से काम चलेगा। लेकिन मान लो कि मैंने कोई काम किया, कोई एक्सर्शन किया, एक्सर्शन, ऑन, ये ऑन एग्जामिनेशन नहीं है, ऑन एक्सर्शन है। ठीक है, ऑन एक्सर्शन मेरी बॉडी को मैं कोई भी काम करूंगा तो देखो, चलता हूँ, फिरता हूँ, भागता हूँ, तो मेरी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, है ना, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटी सारी बढ़ने लगेंगी। तो ऑन एक्सर्शन देख लो, यहाँ से 70% ब्लॉकेज है, तो ब्लड आगे कितना % जा रहा है?
30 ml जा रहा है खाली। कहाँ पे जा रहा है? कोरोनरी आर्टरी। देखो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हार्ट कर रहा होता है, और हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन कर रहा होता है? कोरोनरी आर्टरीज। अब कोरोनरी आर्टरी अराइज कहाँ से होती है? एनाटॉमी का क्वेश्चन है। कहाँ से अराइज होती है? बेस ऑफ एओर्टा से, बेस ऑफ एओर्टा से। तो कोरोनरी आर्टरीज मेन सप्लाई कौन सी कोरोनरी आर्टरी होती है? लेफ्ट और राइट दोनों कोरोनरी आर्टरीज होती है। मेनली कौन सी? आर्टरी ऑफ विडो कौन सी होती है? लाडा। आर्टरी ऑफ विडो कौन सी होती है? लाडा। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लाडा, सबको याद है ना? और सेकंड कौन सी होती है? सर्कमफ्लेक्स या राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी में ओनली, सॉरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के अंदर ओनली 15% केसेस डेथ जाते हैं। 90% डेथ केसेस आपको कहां पे मिलेंगे? आपको लाडा के अंदर। दैट इज व्हाई दैट आर्टरी इज नोन एज आर्टरी ऑफ विडो। तो 30 ml ब्लड अगर आगे जाएगा तो एक्सर्शन जब किया, मान लो इस इंसान ने एक्सर्शन किया, तो इसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? ब्लड कैरीज ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है? तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। और अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेबल एंजाइना के अंदर पेशेंट को पेन फील होगा, तो पेन ऑन एक्सर्शन। और कौन सी ड्रग दोगे जिससे उस पेशेंट ट्रीट हो जाएगा? एग्जाम में पूछ लिया कौन सी ड्रग दोगे, तो कौन सी ड्रग से पेशेंट ट्रीट हो जाएगा? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन के साथ और कौन सी ड्रग दी जाती है? नाइट्रोग्लिसरीन तो उस टाइम पे दे दी, बट मेन रेगुलर ट्रीटमेंट के रूप में आप कौन सी ड्रग देते हो? बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि बीटा ब्लॉकर के ऊपर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर के ऊपर अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया, मैं बता देता हूं एक बार, एक क्वेश्चन, ठीक है। A 50-year-old man present with recurrent episodes of chest pain on exertion. He is diagnosed as a case of chronic stable angina. On routine monitoring, BP is found to be consistently elevated. Which of the following is the best drug for management of this patient? Which of the following? Yes, guys? Metoprolol. Metoprolol. So please do not tick nitroglycerin. है ना? नाइट्रोग्लिसरीन टिक मत मार देना अगर पेपर में आ जाता है तो। रेगुलर यूजिंग के रूप में पेन ऑन एक्सर्शन, एक्सर्शन के टाइम पे नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, बाकी टाइम पे मेटोप्रोलोल देंगे। बच्चों ऐसे ही वर्ड प्ले खेलते हैं वो आप लोगों के साथ में, है ना? बट बीटा ब्लॉकर्स एक जगह कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है बच्चों? जल्दी से बता दो, कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? प्रिंज मेटल एंजाइना के अंदर, वेरिएंट एंजाइना जिसको बोलते हैं, वेसोस्पास्टिक। ऑलरेडी वेसोस्पास्टिक है वो, ऑलरेडी वेसोस्पास्टिक है। और वेसोस्पास्टिक होने के बाद में भी उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा वेसोस्पाज्म अगर कोई ड्रग करवाती है तो वो ड्रग कौन सी करवाती है? बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर एक्स्ट्रा वेसोस्पाज्म करवाएगी। दैट इज व्हाई इसके अंदर प्रिंज मेटल एंजाइना के लिए ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछ लिया गया तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंजाइना, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंजाइना, डीओसी कौन सी होगी? नाइट्रो, डीओसी कौन सी होगी? नाइट्रोग्लिसरीन। ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंजाइना के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी बच्चों? तो ये तो होगी तुम्हारी फार्मा, और इधर से तुम्हारा हो गया पैथो और मेडिसिन का दोनों का पार्ट। तो स्टेबल एंजाइना सबको ये कवर हो गया। नाउ अगर बच्चों यहां से जैसे ही ये प्लेक है, ये प्लेक है या हाइपरटेंशन हुआ इस पेशेंट को, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं है कि यार कभी भी एमआई का पेशेंट आता है, सोनम निमोनिक सबने पढ़ रखा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, एस्पिरिन एंड एम से मॉर्फिन, कोई एंटी हाइपरटेंसिव क्यों नहीं दी जा रही है? आप लोगों ने 99.9% यही सुन रखा है ना कि यार एमआई तो, हार्ट अटैक तो हाइपरटेंशन के पेशेंट को दिया जाता है, अरे पेशेंट को होता है। एमआई को कौन से पेशेंट को हो रहा होता है? हार्ट अटैक कौन से पेशेंट को आता है? हाइपरटेंसिव पेशेंट को आता है ना, है ना? फिर भी एक भी एंटी हाइपरटेंसिव नहीं दी जा रही, क्यों? क्यों? क्योंकि बच्चों हाइपरटेंशन के कारण जहां पे प्लेक रप्चर हुआ तो इसके इवेंट्स आपको सबसे पहले समझने होंगे। तो सबसे पहला इवेंट क्या था? ब्लड फ्लो स्लो हो गया। ब्लड फ्लो स्लो हो गया। ब्लड फ्लो स्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेसिस। उसी को हम लोग बोलते हैं इस्चेमिया। इस्चेमिया मतलब आपका हाइपोक्सिक कंडीशन आ गई। इस्चेमिया मतलब स्लो ब्लड फ्लो। स्लो ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो अगर स्लो रहेगा, कम ब्लड अगर आगे जाएगा तो हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया मतलब लेस ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो पेन करवाएगा, नंबर 1।
नंबर 2, अगर वही प्लेक अगर वहां से रप्चर कर गया, मान लो ये वाला प्लेक है, ये वाला प्लेक है, ये यहाँ से रप्चर कर गया, तो रप्चर करते ही बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे इस जगह पे क्या जमा हो जाएगा, वॉन विलिब्रांड फैक्टर के बारे में सुना है बच्चों, वॉन विलिब्रांड फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। और वॉन विलिब्रांड फैक्टर का काम क्या होता है, वॉन विलिब्रांड डिजीज सुन रखा है बच्चों आप लोगों ने, सुना ही होगा, मेडिसिन की फेवरेट डिजीज है, ठीक है। तो वॉन विलिब्रांड फैक्टर का काम होता है प्लेटलेट का एग्रीगेशन। और यहाँ पे एक और चीज पढ़ी जाती है, यहाँ पे एक और चीज पढ़ी जाती है, कौन सी, प्लेटलेट एग्रीगेशन के अलावा एक और चीज पढ़ी जाती है, वर्चो का ट्रायड, वर्चो ट्रायड सुन रखा है, वर्चो ट्रायड बच्चों आप लोगों ने, विर्चो ट्रायड भी बोलते हैं इसको, विर्चो बोल दो, वर्षो बोल दो, जो बोलना है बोल दो, ठीक है। हमारे साथ में तो वर्षा करके मेरी एक बैचमेट थी, उसने याद करवाया था, तो हमने वर्षा हमने याद किया था वर्चो ट्रायड, ठीक है। तो याद रखो बच्चों, क्या होगा आपका, जैसे ही वहां से प्लेक रप्चर हुआ, जैसे ही प्लेक रप्चर हुआ, ठीक है, तो वहां पे एंडोथेलियल सेल इंजरी हुई या नहीं हुई, हुई। अब एंडोथेलियल सेल इंजरी होने की वजह से, एंडोथेलियल सेल इंजरी होने की वजह से ब्लड फ्लो, ब्लड के अंदर स्टेसिस होगा, स्टेसिस से पहले विर्चो का ट्रायड जैसी एंडोथेलियल सेल इंजरी हुई, वॉन विलिब्रांड फैक्टर एक्टिवेट हो गया, वॉन विलिब्रांड फैक्टर एक्टिवेट हो गया, और वीडब्ल्यूएल फैक्टर ने क्या किया, प्लेटलेट एग्रीगेशन करवा के पूरा ब्लॉकेज और बढ़ा दिया। ये उखड़ के यहाँ पे आया तो उल्टा प्लेटलेट ने ही पूरी की पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, और वो आर्टरी का ब्लॉक ऑलमोस्ट 90%, जो 70% था वो 90% ब्लॉक हो गया। तो 90% ब्लॉक हो गया, तो स्टेबल एंजाइना के पेशेंट के अंदर तो 70% ब्लॉकेज था, अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट के अंदर कितना परसेंट ब्लॉक हो गया, 90%। तो 90% ब्लॉकेज है, तो बच्चों बंदे को रेस्ट में पेन होगा कि नहीं होगा, बंदे को रेस्टिंग में पेन होगा कि नहीं होगा, रेस्ट पेन होगा कि नहीं होगा, यस। तो बंदे को रेस्ट में भी पेन होगा, बैठे बैठे भी पेन होगा, है ना। तो उसको यस, तो इसके लिए ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले दोनों वॉन विलिब्रांड फैक्टर तो सबको समझ में आ गया होगा बच्चों, प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है, यस। इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, यस, कमेंट बॉक्स में बताओ, यस, वॉन विलिब्रांड फैक्टर एडेशन भी करता है GP1B के साथ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया निशान भाई, क्या बात है। तो एंडोथेलियल सेल इंजरी होगी, अब एंडोथेलियल सेल इंजरी होगी और वहां पे एक्स्ट्रा वॉन विलिब्रांड फैक्टर ने प्लेटलेट को एग्रीगेट करवा दिया, तो ब्लड कैसा हो गया, हाइपर कोगुलेबल हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ, ब्लड हाइपर कोगुलेबल हुआ कि नहीं हुआ, मोहित भाई जल्दी बताओ इसका आंसर, ब्लड हाइपर कोगुलेबिलिटी हुई या नहीं हुई, फार्मा का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा बच्चों आपका, या मेडिसिन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा आपका, पूरा कवर होगा, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बस कंसेप्ट समझते जाना, ठीक है। तो एंडोथेलियल सेल इंजरी, हाइपर कोगुलेबल। अब एक बात बताओ यार, एक पाइप है, एक पाइप के अंदर अगर मान लो हाइपर कोगुलेबल, मतलब कि मान लो कि उसके अंदर कचरा भी है, पानी प्लेन जा रहा था, पानी के साथ साथ कचरा भी जा रहा है, और कचरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो कचरा बढ़ जाने से उसकी स्पीड तो स्लो होगी कि नहीं होगी, पानी की नली से जो ब्लड आगे जा रहा हो, तो स्टेसिस होगा कि नहीं होगा, स्टेसिस मतलब स्लो ब्लड फ्लो। तो बच्चों ये तीनों के तीनों तुम्हारा एंजाइना कवर हो गया, तीनों एंजाइना कवर। अब ब्लॉकेज तक तो आपने देख लिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इवेंट लिख देता हूं मैं, इस इवेंट के थ्रू अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं दी जाती। ये क्वेश्चन भी अभी INA सेट के अंदर पूछा गया था, ठीक है, कि why so we are not providing the patients of MI and any kind of any anti-hypertensive drugs. The reason behind it, number one, सबसे पहले इस्चेमिया होता है, इस्चेमिया के बाद में नेक्स्ट क्या हो रहा होता है बच्चों, इस्चेमिया, इसी को बोलते हैं स्टेसिस। इस्चेमिया के बाद में आप मान लो एंजाइना हो गया, अब एंजाइना कन्वर्ट हो गया मान लो अनस्टेबल एंजाइना में, अनस्टेबल एंजाइना में कन्वर्ट हो गया, ब्लॉकेज, अब वो ब्लॉकेज 90% से बढ़ के मान लो वो प्लेक रप्चर कर गया और 100% ब्लॉक हो गया, तो 100% ब्लॉक होते ही आपको कौन क्या हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब मायोकार्डियल सेल वापस रीजनरेट क्यों नहीं होती है बच्चों, क्यों मायोकार्डियल सेल्स और न्यूरॉन रीजनरेट नहीं होते, बिकॉज दे लैक इन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल लैक करता है, सेंट्रियोल नहीं होता है उसमें। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, यस बच्चों, यही रीजन है पैरालिसिस का, जो पेशेंट एक बार पैरालिसिस हो जाता है तो वापस उसको नर्व्स को रीजनरेट करना इम्पॉसिबल सा होता है,
क्यों? क्योंकि हमारी नर्व्स में, हमारे न्यूरॉन्स में और हार्ट की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उन इनवॉलंटरी जो मसल्स होती हैं, उन सब के अंदर बच्चों आप याद रखना सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो इनवॉलंटरी मसल्स जो इनवॉलंटरी मसल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है, हार्ट की मसल्स के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी इनवॉलंटरी मसल्स तो आपके इंटेस्टाइन में भी होती हैं, ठीक है। तो याद रखना सेंट्रियोल अगर एब्सेंट है, तो अगर सेंट्रियोल एब्सेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन नहीं करेगा। तो इसी के कारण बच्चों LVEF आप लोगों ने सुन रखा है, नॉर्मली कितना होना चाहिए LVEF, इट शुड बी मोर देन 55%, मोर देन 55%। बट MI के पेशेंट्स के अंदर मान लो पहला अटैक आया 25% हार्ट गया, दूसरा आया 25% गया, तीसरा आया तो आदमी लुढ़क जाता है। तो क्यों लुढ़क जाता है? पहला हार्ट अटैक आया तो 25% गया, दूसरा आया तो 50%, तो हार्ट उसका वैसे ही चला गया, ठीक है। तो इवेंट के हिसाब से आप MI, अब MI आ रखा है, MI के पेशेंट को हम क्यों एंटी हाइपरटेंसिव नहीं देते? MI का नेक्स्ट स्टेप ही होता है हार्ट फेलियर। MI का नेक्स्ट स्टेप ही होता है हार्ट फेलियर। क्यों? हार्ट फेलियर की डेफिनेशन क्या है? इनएबिलिटी टू पंप ब्लड, इनएबिलिटी टू पंप ब्लड, ब्लड को पंप नहीं कर पाता, ब्लड को पंप नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है बच्चों? क्योंकि हार्ट की सेल डेड हो रखी है, और एक बार अगर हार्ट की सेल डेड होगी तो क्या वो उसको पंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यही रीजन है बच्चों, हार्ट ऑलरेडी इनेबल है पंप करने में, और आप उसको ऊपर से एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हो और उसका बीपी लो करवा रहे हो, बीपी ऑलरेडी नहीं है और बीपी करवा रहे हो। कितने टाइप के हार्ट फेलियर होते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ? हार्ट फेलियर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइडेड, एक होता है राइट साइडेड। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के बच्चों लिए बच्चों एक प्यारी सी इमेज बना रहा हूं, ठीक है। आपको कभी भी कार्डियोलॉजिस्ट आप में से जो भी बनना चाहता है, हमेशा याद रखना लेफ्ट साइडेड हार्ट हमेशा पकड़ के चलना, लेफ्ट साइडेड हार्ट हमेशा पकड़ के चलना। लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपका है वो हमेशा आपका मेन, पूरे हार्ट के अंदर मेन फंक्शनिंग लेफ्ट वेंट्रिकल की ही होती है। अब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, हार्ट फेलियर हो गया, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, मान लो किसी ने बता दिया कि आपको लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, तो लेफ्ट साइड का हार्ट काम कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड डिपॉजिट हो रहा होगा, यस। लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड डिपॉजिट हो रहा होगा, यस। ब्लड लेके कौन आ रहा है? ब्लड लेके कौन आ रहा है? पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेके आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है, यस और नो? यस। तो पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही है? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। पर यहाँ पे तो ब्लड आगे जा ही नहीं रहा, हार्ट फेलियर है यार, हार्ट इज इनेबल टू पंप, ठीक है, हार्ट इज इनेबल टू पंप। तो वो तो ब्लड तो आगे यहाँ पे एओर्टा की तरफ जा ही नहीं रहा है। आगे एओर्टा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से टच है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, आगे तो ब्लड जा ही नहीं रहा है। तो वो ब्लड रिवर्स प्रेशर बनाएगा कहाँ पे? आपका हार्ट से लंग्स की तरफ। तो रिवर्स प्रेशर के कारण प्रेशर रिटर्न आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन इज द ओनली सिंगल वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी सब ब्लड वेसल्स के अंदर, बाकी सब वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ के आपकी जो एल्विलाई होगी गुब्बारे की तरफ फूलेगी 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 फूलेगी, और एक टाइम के बाद में वो रप्चर कर जाएगी। रप्चर कर जाएगी तो आपको कैसा स्पुटम देखने को मिलेगा? पिंक फ्रोदी स्पुटम। क्यों देखने को मिलता है बच्चों? कमेंट बॉक्स पहले से ही भर दिया किसी ने, पिंक फ्रोदी स्पुटम। क्या बात है, क्यों पिंक फ्रोदी स्पुटम देखने को मिलेगा? क्योंकि एल्वियोलर बस्ट हो जाता है, एल्वियोलाई बस्ट होगी, एल्वियोलाई बस्ट होगी तो वो बस्ट होगी तो ब्लड ब्लीडिंग होगा, और वो ब्लीडिंग कब के साथ में आएगा? तो हेमाप्टाइसिस होगा कि नहीं होगा? तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर अगर पेपर के अंदर आपको दे दिया तो पिंक फ्रोदी स्पुटम की हिस्ट्री दे दी, साथ में ऑर्थोपनिया या नॉक्टर्नल डिस्पनिया दे दिया आपको, तो नॉक्टर्नल डिस्पनिया दे दिया। तो बच्चों ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोग क्या टिक करके आओगे? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में बच्चों एक चीज ध्यान रखना, कुछ नहीं है, यहां से मैं मिटा रहा हूं इसको, देख लो बहुत इजी है। आपके राइट साइडेड हार्ट जो होता है ना, वो राइट साइडेड हार्ट यहाँ पे एक ऊपर एक आर्टरी होती है, उससे जुड़ा हुआ रहता है, एक आर्टरी और एक वेन, यहाँ पे आपकी एक वेन होती है, उससे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे वेना कवा आ रहा है ना, तो बस वो एक ओपन पाथवे होता है, वो वेन का नाम क्या है? जुगुलर वेन, जुगुलर वेन। तो आपका राइट साइडेड हार्ट जो है ना, वो ओपन है, जुगुलर वेनस। तो जुगुलर वेनस प्रेशर आपका बढ़ता हुआ नजर आता है। तो बच्चों जुगुलर वेनस प्रेशर कब बढ़ेगा? जब राइट साइडेड का हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइड का हार्ट का प्रेशर बढ़ेगा, तभी तो जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ेगा। ओपन है, बिल्कुल ओपन सिस्टम है। तो यही रीजन होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर के पेशेंट को जब हम लिटाते हैं और उसकी गर्दन घुमाते हैं, उसकी गर्दन घुमा के हम उसके लीवर को पल्पेट करते, लीवर को दबाते हैं,
लीवर को दबाने का रीजन क्या होता है, वहां से हम आर्टरी कंप्रेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, आर्टरी वेनस। तो कंप्रेशन जो कर रहे होते हैं, ठीक है, हमने पल्पेट किया, दबाया, ठीक है, और यहाँ से देखा तो यहाँ से उसकी जुगुलर वेन डायलेटेड दिख रही है। कभी कभार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कैनन 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 अपीयरेंस ऑफ या जेवीपी जुगुलर वेनस कहाँ पे देखने को मिलता है, या रेज्ड जुगुलर वेनस प्रेशर कहाँ पे देखने को मिलेगा, वहीं पे जहाँ पे राइट हार्ट की कोई ना कोई एनोमली होगी, राइट साइडेड हार्ट की, ठीक है। तो बच्चों ये याद हो गया आपको। तो ये दोनों के दोनों हार्ट फेलियर आपको याद हो गए, राइट वर्सेस लेफ्ट। तो दोनों के दोनों लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर प्लस राइट साइडेड हार्ट फेलियर, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है बच्चों। तो आपको मेरी अकॉर्डिंग कार्डियोलॉजी किसी को टफ तो नहीं लगी अभी तक? अभी तक किसी को भी कार्डियोलॉजी टफ तो नहीं लगी बच्चों? सबको समझ में आया? ठीक है। तो हार्ट फेलियर की सिचुएशन में है, इनएबिलिटी टू पंप है, और उसमें अगर हमने उसको और एंटी हाइपोटेंसिव दे दी तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। सोनम निमोनिक सबको पता है ना। एमआई का ट्रीटमेंट क्या होता है? एमआई का ट्रीटमेंट इवेंट के हिसाब से देखोगे तो दो टाइप का एमआई होता है, ठीक है, दो टाइप का एमआई। एक होता है सोनम, ठीक है, जिसमें एसटी सेगमेंट इलेवेशनल एमआई के अंदर हम सोनम देंगे। एनएसटी एमआई नॉन एसटी सेगमेंट का एलिवेशन नहीं है, ऐसी कंडीशन के अंदर हम कौन सा ट्रीटमेंट देंगे उसको, उस पेशेंट को? यस बच्चों, हिपेरिन देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज नहीं देंगे, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम ही चलता है। अब एमआई है, एमआई में आपको एसटी सेगमेंट कैसा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों, याद रखना। एक क्वेश्चन ऐसा है कि एमआई में आपका एसटी सेगमेंट इलेवेशन ऐसा देखने को मिल रहा है, अगर ये वाइडेंड हो तो, अगर ये वाइड है तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, बच्चों याद रखो, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की सिचुएशन के अंदर आपका एसटी सेगमेंट का एलिवेशन वाइडेंड होता है, बहुत ज्यादा वाइड, बहुत ज्यादा वाइड, ठीक है। दूसरा, एमआई के अंदर हमारा पेटेंट 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 हमारा निमोनिक है साली एफ, ठीक है। साली एफ निमोनिक से आपका पूरा पूरा दुनिया का कोई भी एमआई हो, अगर आप डायग्नोस नहीं करोगे तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। पहला साली, SALI, एस से सेप्टल, ए से एंटीरियर, एल से लेटरल, आई से इंफीरियर। अब बच्चों क्या करना है, मैथमेटिक्स लगानी है। V1, V2, V3, V4, V5, V6, और 6 में L आ रहा ना, L आ रहा है तो AVL कर दो यहाँ पे। और I के अंदर आपको याद रखना है सेकंड, बच कौन सी गई, V1, V2, V3, V4, V5, V6 तो हो गया, अब बच कौन सी रही है, सेकंड, थर्ड, और AVA। अब इंफीरियर, मैंने साली एफ बोला, साली एफ, तो साली क्यों एफ, अब एफ एफ थोड़ा सा समझ जाओ, ठीक है। तो फ्लर्टिंग साली के साथ में फ्लर्टिंग होती है कि नहीं होती है, ठीक है, तो साली फ्लर्टिंग, तो एफ, AV एफ। अब आपके सामने गूगल खोल के बच्चों, सफारी खोल के आपके सामने दुनिया का कोई भी एमआई हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की इमेज खोल लो, ECG खोल लो, इन्फार्क्शन की ECG खोल लो, और आप लोग खुद डायग्नोस कर लो कि आपको 2 मिनट के अंदर अंदर केवल साली एफ निमोनिक से सारी ECG याद आ जाएगी। कैसे, ये कौन सी वॉल का एमआई है, ये कौन सी वॉल का एमआई है, ये आपको अभी देख के समझ में आ जाएगा। देख लो कहाँ पे एसटी एलिवेशन है, सभी एसटी एलिवेशन देखना, आइसो इलेक्ट्रिक जो इसमें आइसोमेट्रिक जो लाइन होती है उसके ऊपर देखो एसटी एलिवेशन कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। सबसे पहले V1, V2, V3, V4, V5, V6, मतलब प्रॉपर V1 to V4 के अंदर आपको प्रॉपर एसटी सेगमेंट इलेवेशन देखने को मिल रहा है। V1, V2, V3, V4 मतलब सेप्टो एंटीरियर वॉल। चलो ठीक है, पहला ECG, पहला कवर्ड। दूसरा V1, V2, V3, V4, V5, V6, अगेन एंटीरियर वॉल का एमआई, ठीक है। यहाँ पे V1 में नहीं है एसटी इलेवेशन, V2 में है, V3 में है, V4 में भी है, बट V5, V6 में नहीं है। तो बच्चों V3, V4 एंट्री वॉल का एमआई, ठीक है। ये सारे एंट्री वॉल की दिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग लिख देते हैं इंफीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल सेकंड थर्ड AVF आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे इंफीरियर वॉल के अंदर आप आ जाओ, सेकंड लीड देखो इसकी, सेकंड लीड में एसटी इलेवेशन है या नहीं है बताओ, है ना। थर्ड में भी एसटी इलेवेशन है कि नहीं है, और AVF फ्लड करोगे, AVF के अंदर भी है कि नहीं है। तो बच्चों सिंपल सा हो गया, साली एफ निमोनिक आप कहीं पे भी अप्लाई करो, आप प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा 2-4 ECG और देख लेना, आपको बड़े आराम से ECG याद हो जाएगी कि V1, V2 के अंदर इलेवेशन है तो सेप्टल वॉल का एमआई है, V3, V4 के अंदर है एंट्री वॉल का एमआई है,
V5 V6 AVL के अंदर तो लेटरल वॉल का एमआई, और सेकंड थर्ड AVF तो इंफीरियर वॉल का एमआई, ठीक है। तो और मेरा एक वीडियो भी बना रखा है बच्चों, मैंने ECG नाम से बना के रखा है, ठीक है, जिसमें मैंने सारी ECG करवा रखी है। तो वो वीडियो एक बार देख लेना, 15 मिनट का ही वीडियो है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है वो, ठीक है, 15-20 मिनट का वीडियो, एक बार नजर घुमा लेना, ठीक है। एस स्टॉल की कंडीशन का भी देख लेना, एमआई मोबिट्स टाइप 1 2 3 वो भी देख लेना, ठीक है। तो एमआई का ECG सबको सिंपल, सबको क्लियर, यस और नो? कमेंट बॉक्स एक बार बता दे, ऑडियंस एक बार बता दे कैसा चल रहा है सेशन बच्चों, मजा आ रहा है बच्चों? एवरीथिंग इज इजी, थैंक यू डॉक्टर पारस। थक गए होंगे अभी, है ना बच्चों? सबसे ज्यादा सैल्यूट आप लोगों को है कि आप लोग टिके हुए हो अभी तक, है ना। आप लोगों अभी तक जो डेडिकेटेड हो ना, यस बच्चों, आप सिलेक्शन डिजर्व करते हो, आप सेलेक्ट हो चुके हो, ठीक है। कहते हैं ना कूद के पग पालने में दिखने लग जाते हैं, आज इनको इतना थकाएंगे, सो जाएंगे, है ना। मस्त इनकी स्लीप साइकिल भी अच्छी हो जाएगी। आज बढ़िया से थक जाओ, आज थक के आराम से आज सो जाना, स्लीप साइकिल वास्तव में इनका बेटर हो जाएगा। 6 बजे से बिठा रखे हैं। शाम की 6 बजे से बैठे हुए हो, हेड्सऑफ है यार आपको यार, और हेड्सऑफ पारस भाई को भी यार, इतने घंटे कैसे बैठ लेते हो भाई यार, कैसे पॉसिबल, कैसे इतने घंटे बैठना? मैं तो इतनी देर बैठने के बाद फिर थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, है ना। नहीं बट ब्रेक लेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग इस बार ठान के बैठे हैं कि आई विल पास, आई विल पास, आई विल पास। जो निमोनिक आपको बता रखे हैं, जो ट्रिक्स आपको बता रखे हैं डॉक्टर पारस और हम सब एक ही टीम है, हम सब एक ही है, ठीक है, और हम सबका एक ही है बच्चों। हम लोगों को क्या मिल रहा है? हम लोगों को बस आपका प्यार और आपका सिलेक्शन। हमारी सक्सेस कब है? जब आपकी सक्सेस होगी, है ना। तो बच्चों प्लीज जो भी मेहनत करो, जो भी टिक मारो, कभी भी क्वेश्चन, ठीक है। तो यस, हम गुरुओं का आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा है। वैसे हम गुरु है नहीं, बड़े भाई हैं आपके, ठीक है। मैं तो ब्रदर ही हूँ भैया, है ना, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, गुरु नहीं है ना, दोस्त। हाँ। और पारस भाई आपके नहीं, पारस भाई भी आपके सर हैं, गुरु भी हैं, दोस्त भी हैं, सब कुछ हैं, बस दोस्त। ठीक है। अरे दोस्त हैं, ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है? चलो, इसी मजे की जरूरत थी। और हेड्स ऑफ आप लोगों को सच में है, आप लोग सिलेक्शन सच में डिजर्व करते हो, ये बात मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ। आपके पेरेंट्स भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के पेरेंट्स को मैं सच में आपके बच्चे जो हैं वो सिलेक्शन डिजर्व करते हैं। रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, पर आपके बच्चों ने मेहनत की थी, आपके बच्चों ने मेहनत की है, और आपके बच्चे अभी मेहनत कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो गॉड ब्लेस यू। तो एनाफाइलेटिक शॉक बच्चों सबको कवर, पूरा एमआई सबको कवर। अब बच्चों एक बात बताओ, हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, आपका इवेंट हार्ट फेलियर का आ गया। हार्ट फेलियर का नेक्स्ट इवेंट क्या होता है? टपक जाना, वो तो चला गया कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो अब हार्ट फेलियर का जो पेशेंट है वहीं पे अब हार्ट फेलियर की सिचुएशन आ रखी है, उसी को बोलेंगे शॉक, उसी को बोलेंगे शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक क्या हो गया वो सबको समझ में आ गया। ऐसी कंडीशन में दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, विथ हाइपोटेंशन एंड विदाउट हाइपोटेंशन। तो विदाउट हाइपोटेंशन, तो विथ हाइपोटेंशन और विदाउट हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन सॉरी। ठीक है बच्चों, तो विथ हाइपोटेंशन एंड विदाउट हाइपोटेंशन। ठीक है साहिल भाई, वो भी करवा देंगे। लव यू बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सारे क्वेश्चन करवाएंगे। अभी मेडिसिन देखो, अभी पहले मैं आपको फार्मा कंप्लीट कराऊंगा, फार्मा को मेडिसिन, ठीक है। ये आपका ऑलमोस्ट फिनिशिंग के ऊपर ही है, एक बार ये फिनिश हो जाए, ठीक है। फार्मा से बच्चों आप, मैं बताऊं, फार्मा को मेडिसिन से आपके 30 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं, और मेरा टारगेट है, मेरा मेन एम है आपके इतने सारे क्वेश्चंस कवर करवाना, है ना, कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। मेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको एक टॉपिक, ये एक सब्जेक्ट है उसको जल्दी से कंप्लीट करना। मेरा एम एक ही है, कैसे भी करके आपको 30+ मार्क्स, मतलब मैं 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट करूं, उस 1 घंटे से भी आपके 30+ मार्क्स हो जाए, है ना। तो बच्चों अच्छे से याद करो कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेटिक शॉक कौन सी है? एड्रीनलिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक कौन सी बनेगी बच्चों? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक कौन सी बनेगी? ये स्पैम मत करो बस, बिल्कुल मैं पक्का पक्का पढ़ा दूंगा, पक्का पढ़ा दूंगा। आप बस मुझे जैसे ही मैं आऊंगा एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर पक्का करवा दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट,
जय श्री राम। ठीक है, पक्का हनुमान जी पक्का करवाएंगे हम। ठीक है, ओके बच्चों। सो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर बच्चों, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर आप कौन सी ड्रग, अगर आपसे विदाउट हाइपोटेंशन पूछा, चलो तब तक तो ठीक है, या डायरेक्ट कार्डियोजेनिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ली, आपने डोबिटामाइन मार्क कर लिया, तब तक ठीक है। पर इन केस आपको एक स्पेशल वर्ड मेंशन कर दिया उन्होंने, विथ हाइपोटेंशन, तब आप लोग क्या आंसर करोगे? इन दैट सिचुएशन व्हाट विल यू मार्क? इन दैट सिचुएशन व्हाट विल यू मार्क? जल्दी से बता दो यार, जल्दी 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 बताओ। In that situation, what will you mark? NORAD, 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 noradrenaline, noradrenaline, norepinephrine. वेरी गुड डॉक्टर असगर अली, क्या बात है, यही कॉन्फिडेंस, यही कॉन्फिडेंस। डॉक्टर माही ने डोपा लिखा है, नहीं बेटा माही डोपामाइन नहीं होगा, नॉरेड देंगे। यस, बट माही भाई जो भी बता रहे थे आंसर, डोपामाइन भी दिया जाता है कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट्स को। यस, है ना, डोपामाइन भी दिया जाता है, शायद आप लोग अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से बोल रहे हो, है ना, डोपामाइन भी दिया जाता है। बट अगर नॉरएड्रेनालिन और आपका डोबिटामाइन ऑप्शन में नहीं हो, ठीक है, तब डोपामाइन पे जाना है। क्यों? क्योंकि डोपामाइन इज अ थर्ड ड्रग ऑफ चॉइस विच इज गिवन इनटू द पेशेंट्स ऑफ द रीनल इंपेयरमेंट, विच इज गिवन इनटू द पेशेंट ऑफ रीनल इंपेयरमेंट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े तो स्टेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, एनी काइंड ऑफ शॉक, व्हिच ड्रग यू विल प्रीफर? यू विल प्रीफर नॉरएड। ठीक है, तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट डेवलप रेज इन ब्लड प्रेशर, pulmonary edema is there and seizure after an insect bite. Seizure after an insect bite. What will be the diagnosis? Scorpion bite बच्चों, the diagnosis would be scorpion bite. पेपर में पूछ लिया, अब ये है आपका स्कॉर्पियन बाइट। तो स्कॉर्पियन बाइट के अंदर आप कौन सी ड्रग देते हो? यस बच्चों, स्कॉर्पियन बाइट में आप कौन सी ड्रग देते हो? प्राजोसिन। कौन सी ड्रग दोगे? प्राजोसिन दोगे। ठीक है, पक्का प्राजोसिन दोगे? ओके, प्राजोसिन और कहां पे दी जाती है बच्चों? प्राजोसिन और कहां पे दी जाती है? प्राजोसिन बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के पेशेंट को दी जाती है या नहीं दी जाती है? एक इंट्राक्रेनियल हेमरेज बच्चों प्लीज पढ़ लेना, इंट्राक्रेनियल हेमरेज है ना, दूसरा एपिड्यूरल हेमरेज, एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज और सबड्यूरल हेमरेज, इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज है ना, इंटरनल ब्लीडिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन कंफर्म है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज बच्चों प्लीज पढ़ के जाना। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं लेफ्ट राइट पढ़ा रहा हूँ, लेफ्ट राइट नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा बायोकेम की बात कर रहा हूँ, ये हैरिसन है, हैरिसन 22 एडिशन। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज पक्का क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज पक्का पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस 444 नंबर क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 444 पक्का क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाला है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ड्रग ऑफ चॉइस कार्बामाजेपाइन। ठीक है, कब पक्का, मतलब मैं कह रहा हूँ बेल्स पल्सी मैंने आपको क्यों समझाया था, डिसऑर्डर ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्यों समझाया मैंने आपको। ठीक है, पेपर के अंदर आएंगे। ठीक है, पेपर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, प्रायन डिजीज कंफर्म पेपर, विल्सन डिजीज के ऊपर कंफर्म क्वेश्चन, ATP7B जीन डिफेक्ट, द पोरफायरियस कंफर्म, मतलब ये वो टॉपिक हैं जो आपके पेजेट डिजीज, एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये अब आप कहोगे ये ऑर्थो का है, भैया ऑर्थो पढ़ा रहे हो। ठीक है, नाउ अब आप सभी के सामने आपकी दुनिया का सबसे मेन जो सबसे अभी तक मतलब डाउट चल रहा है, फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, वो फियोक्रोमोसाइटोमा का डाउट भी आपका क्लियर कर दिया जाएगा, पेज नंबर 2976 के ऊपर है। क्या हो गया? शायद लैग कर रहा है, आईपैड भी आज लैग कर रहा है, बैटरी लो है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, जैसे वो हल्का होगा आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, मैं रेफरेंस के साथ में पोस्ट करूंगा। ठीक है, और वो पूरा फियोक्रोमोसाइटोमा अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, वो पूरा अच्छे से याद करके जाना। तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का पेशेंट होगा तो क्या दोगे बच्चों? बीपीएच प्लस हाइपरटेंशन के पेशेंट को प्राजोसिन। नाउ पेशेंट सफर्ड अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बच्चों, आरटीए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों आरटीए के ऊपर मीज लाइंस के अंदर, है ना, कि आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर भी पूछा जाता है। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है बच्चों? मीज लाइंस देखने को मिलती है। कौन सी लाइंस देखने को मिलती है? मीज लाइंस।
ठीक है, तो मीज लाइंस कहाँ पे देखने को मिलेंगी, आर्सेनिक पॉइजनिंग में। बट बच्चों अगर आपके सामने ऑप्शन दे दिए 4 और उसमें आपको चारों एक ऑप्शन दे दिया मीज लाइंस, एक ऑप्शन दे दिया आपको रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, एक ऑप्शन दे दिया रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और एक ऑप्शन दे दिया आपसे मान लो कोई ना कोई इसी से रिलेटेड रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, मीज लाइंस, आरटीए, रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और चौथा आपको दे दिया रिस्ट टेस्ट। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ फॉर द मीज लाइन टॉक्सिसिटी या आर्सेनिक टॉक्सिसिटी, कौन सा होगा? उसमें आंसर आप मीज लाइन मारोगे। क्यों? क्योंकि देखो रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस भी होता है, देखने को मिलता है, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन भी देखने को मिलता है, रिस्ट टेस्ट भी करते हैं, बट मीज लाइंस 5 से 6 वीक बाद करते हैं। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें चारों के चारों आंसर करेक्ट हो, तो फिर आपको डिफरेंशिएट करना है कि यार जो आंसर लेस करेक्ट हो, मतलब जिसके चांसेस कम करेक्ट होने के हो, ठीक है, जो थोड़ा सा कम करेक्ट हो, है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके, आउट ऑफ 300 20-30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है, और वो छोड़ने के लिए नहीं है बच्चों, ठीक है, कोशिश करना उनमें भी मार्क करके आओ, ठीक है। जिस एग्जाम के अंदर 209 मार्क्स आए थे बच्चों, उस एग्जाम के अंदर मेरे मुश्किल से एक भी जीटी के अंदर मतलब 150 प्लस नहीं गया था। तो आप लोग जो डर रहे हो ना कि अभी अभी आप सबके अंदर एक फियर फैक्टर, मैं समझ सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ कि कल अगर मेरा पेपर होगा तो आज मेरे अंदर क्या सिचुएशन चल रही होगी। और एग्जैक्टली यस बच्चों, टाइम क्या हो गया, 12 बज गई है बच्चों, ठीक है। सोचो 12 बज गई है और अभी हम लोग सब पैनिक है, ठीक है। तो बच्चों यस, तो जल्दी से हम लोग कवर करते हैं। हमारा पेशेंट सफर आरटीए, स्पाइनल कोड का ट्रॉमा, स्पाइनल कोड का ट्रॉमा होगा तो स्पाइनल कोड में क्या होती है, नर्व्स होती हैं, तो न्यूरोजेनिक शॉक लगता है कि नहीं लगता है? यस, जल्दी से। ड्यूरिंग लेबर फीमेल डेवलप्स नोजिया एंड वॉमिटिंग फॉलोड बाय लो बीपी, तो दैट इज लोकल एनेस्थेसिया इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन, ठीक है बच्चों। तो फार्मा का बच्चों इसके अलावा बाकी वन लाइनर्स ही हैं, तो वन लाइनर्स में आपको पोस्ट कर दूंगा। हम लोग अब माइक्रो पे मूव कर जाएं, ठीक है। ये पार्किंसनिज्म मैंने पढ़ा रखा है, अल्जाइमर मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। कार्डियक मर्मर एक लास्ट कार्डियक मर्मर का टॉपिक करवाना है, ठीक है। उसके साथ में आपकी फार्मा और मेडिसिन दोनों पूरी, और सिर्फ एक माइक्रो बचेगा, और माइक्रो अगले 15 मिनट के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। तो सिर्फ मर्मर अभी एक बार मैं सिखा देता हूं, मर्मर एक बार अभी मेरे साथ में सीख लो सारे। ओनली 15 मिनट्स की और क्लास बच रही है आपकी, एक बार अच्छे से दिल से समझ लेना, ठीक है। ये आपका है हार्ट, ये आपका है हार्ट, ठीक है। हार्ट में आपका सभी बताओ सारे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है ब्लड आगे भेजने के लिए? आपका हार्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यस। पर आपका जो आप 120 जो बीपी देखते हो, वो बीपी कहाँ का होता है बच्चों? वो बीपी कहाँ का होता है? वो बीपी कहाँ का होता है? वो बीपी यहाँ का ही होता है। किसका? लेफ्ट वेंट्रिकल का। लेफ्ट वेंट्रिकल का बीपी होता है आपका 120। लेफ्ट वेंट्रिकल का बीपी होता है आपका 120, ठीक है, याद रखना। अब वही क्या करता है बच्चों? इजेक्शन करता है, इजेक्शन। अब एक बात बताओ, अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा बाहर आ रहा है, एओर्टा को नैरो कर दूं, एओर्टिक वॉल्व अगर नैरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेनोसिस। तो एओर्टिक स्टेनोसिस ऑफ एओर्टा इज नोन एज एओर्टिक स्टेनोसिस। तो स्टेनोसिस एओर्टा के वॉल्व का हो गया, ये क्लियर, यहां तक पक्का। अब एक बात बताओ, एओर्टा का जो वॉल्व है उसको अगर ब्लड आगे भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? इजेक्शन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और इजेक्शन कब होगा? जब सिस्टोल होगा तब, या डायस्टोल होगा तब? जब सिस्टोल होगा तब, या डायस्टोल होगा तब? जब सिस्टोल होगा। तो कौन सा मर्मर सुनाई देगा आपको? कौन सा मर्मर सुनाई देगा आपको? इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। सिंपल सी बात है। यही स्टेथोस्कोप आप बिल्कुल कान में लगा के बिल्कुल सुनोगे, कहाँ पे? निप्पल के जस्ट नीचे की तरफ, मेल्स में, ठीक है। आप देखोगे और जैसे ही सुनोगे आपको एओर्टा का अगर स्टेनोसिस हो रखा होगा तो इजेक्शन प्रॉपर इजेक्ट नहीं कर पा रहा है। इजेक्शन कब करता है? सिस्टोल के वक्त। इजेक्शन कब करता है? सिस्टोल के वक्त। तो कौन सा मर्मर सुनाई देगा एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर? इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। ठीक है, पहला मर्मर आपको क्लियर। देख लो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आपको कहां पे देखने को मिल रहा है? एओर्टिक स्टेनोसिस में। देख लो ये नीचे सिस्टोल लिखा हुआ है, और इस सिस्टोल को ऊपर लेके आओ, देखो पढ़ो यहाँ पे। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर पे लाउड साउंड है कि नहीं है? देखो
लाउड साउंड है कि नहीं है वो देख लो। है ना, ठीक है। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर कवर्ड, ओके। अब अगर एक बात बताओ, यही वॉल अगर रीगर्जिटेट कर रहा है, अगर यही वॉल अगर रीगर्जिटेट कर रहा है, रीगर्जिटेट कब करेगा? जब ये इसी का वॉल जो होगा, इसी का वॉल जो होगा वो एक टाइप से क्या होगा, रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है, एओर्टिक रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है? valve is unable to close properly, valve is unable to close properly, valve properly close नहीं हो पा रहे, तो मतलब कि खुला रह गया, खुला रह गया। अब बच्चों एक बात बताओ, यहां से जो ब्लड आगे भेज रहा है वो ब्लड जब ये डायस्टॉल करेगा, जब आपका हार्ट डायस्टॉल करेगा तब रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा पीछे की तरफ? जब वॉल्व खुला हुआ है तो पीछे की तरफ आएगा, आएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ी सी कोशिश और करेगा, अगले सिस्टोल में और ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा, फिर भी थोड़ा बहुत ब्लड तो पीछे आता ही रहेगा, थोड़ा बहुत ब्लड तो पीछे आता ही रहेगा। तो बच्चों आप जब ब्लड को और आगे भेजने की कोशिश करेगा तो फिर भी कितना भी कोशिश करे थोड़ा बहुत ब्लड पीछे की तरफ आता रहेगा, क्योंकि वॉल ओपन है, वॉल ओपन है। तो दम लगा के हईशा ऐसे बोलते हैं ना हम, जब हमको दम लगाना होता है, धक्का मार रहे होते गाड़ी को, तो वैसे लेफ्ट वेंट्रिकल दम लगा के हईशा कर रहा होता है। तो दम लगा के हिस्सा, तो उससे याद होगा डी से डी क्रिसेंडो, क्रिसेंडो मरमर, डी से डी क्रिसेंडो, क्रिसेंडो मरमर। और कब? डायस्टोल के वक्त देखने, जब आपका ब्लड रिटर्न कब आएगा? जब डायस्टोल होगा या सिस्टोल होगा? जब डायस्टोल होगा। तो मिड डायस्टोलिक मरमर कार्डियक आपको कब देखने को मिलेंगे? मिड डायस्टोलिक मरमर आपको कब देखने को मिलेंगे? जब आपका एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगा। देखो यहाँ पे नीचे क्या लिख रखा है, डायस्टोल लिखा हुआ है, डायस्टोल लिखा हुआ है। तो मिड डायस्टोलिक मरमर आपको कब देखने को मिल रहे हैं बच्चों? एओर्टिक रिगर्जिटेशन के वक्त देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पक्का सबको एओर्टिक रिगर्जिटेशन समझ में आ गया? अब बच्चों एक निमोनिक बात याद करवा रहा हूँ, एओर्टिक स्टेनोसिस और एक चीज याद करवा रहा हूँ यहाँ पे, एओर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस दोनों सेम होता है, दोनों में सेम कार्डियक मरमर आपको देखने को मिलेगा। तो अब मुझे बताओ, टॉफ के पेशेंट के अंदर जो प्रू निमोनिक था, प्रू निमोनिक आपको याद करवाया होगा अभी, है ना, पारस भाई ने याद करवाया था ना, PROVE, जिसमें आपने पी से पल्मोनरी स्टेनोसिस पढ़ा था, तो वहां पे ई से क्या था? इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर था नीचे। तो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर आपका एओर्टिक स्टेनोसिस में भी होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस में भी होता है, ठीक है। पक्का याद हो गया? एओर्टिक रिगर्जिटेशन आपको याद हो गया, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। एक बात और ध्यान रखना, मिट्रल रिगर्जिटेशन जो होता है और मिट्रल स्टेनोसिस जो होता है, आपको मिट्रल स्टेनोसिस जो होगा वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन को फॉलो करता है, ठीक है, और मिट्रल रिगर्जिटेशन जो होता है वो एओर्टिक स्टेनोसिस को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये चारों चार कार्डियक मरमर याद हो गए। पांचवा कार्डियक मरमर आपको जो नजर आ रहा है नीचे रेगुलर ऐसा डक 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 कैसा सुनाई देगा पता है? आप ऑस्कल्टेट करोगे ना, जैसे ही आप ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको ऐसा सुनाई देगा, आप बिल्कुल एकदम ऐसा साउंड सुनाई देगा जैसे हार्ट में लगाओगे, और आपको रेगुलर ऐसा ऐसा साउंड आएगा। ऐसा साउंड क्यों आएगा? क्योंकि कंटिन्यूअस मशीनरी मरमर। तो कंटिन्यूअस मशीनरी मरमर आपको कहां पे देखने को मिलता है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में। मैंने सबसे पहला कार्डियक मरमर कोई सीखा था तो वो यही सीखा था, क्योंकि बाकी समझ में नहीं आते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा कार्डियक मरमर सुनने के बाद में बड़े मुश्किल से, मैं एक्सेप्ट करता हूँ हाथ में विद्या है, बड़े मुश्किल से थोड़े बहुत कार्डियक मरमर समझ में आए हैं बच्चों, है ना। वो भी हर कार्डियक मरमर को नहीं पकड़ पाता हूं मैं, है ना। स्टिल थर्ड ईयर में हूँ, बट शायद और मुझे सीखने की जरूरत है, और सीखूंगा और कोशिश करूंगा कि सीखूं। बट बच्चों एक कार्डियक मरमर तो मैं बड़े आराम से पकड़ लेता हूँ, और वो तो आप भी बड़े आराम से पकड़ लोगे, ठीक है। वो क्या है? टक 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 कंटिन्यूअस मशीनरी मरमर। कहाँ पे देखने को मिलता है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के पेशेंट में। और उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में ओपन रखने के लिए और वॉल को क्लोज करने के लिए दो टाइप के अलग अलग क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अगर आपको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को ओपन रखना है तो एल प्रोस्टाडिल दोगे, क्लोज रखना है तो क्या दोगे? इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन। अगर इंडोमेथासिन ऑप्शन में नहीं है तो क्या दोगे? आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन भी ऑप्शन में नहीं है तो क्या दोगे? पैरासिटामोल, ठीक है। तो ये आपका कार्डियो मेडिसिन
ठीक है, मेडिसिन का जितना पार्ट मैं करवा सकता था, बाकी सब वन लाइनर से बच्चों। मैं अपने नोट्स शेयर कर दूंगा, पारस भाई के ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, आप वहां से ये वन लाइनर टाइप के है ना, ये सारी डीओसी है, इनको बस रटना ही है कि टाइप 1 डीएम के अंदर इंसुलिन, टाइप 2 डीएम के अंदर मेटफॉर्मिन, टाइप 2 डीएम ने अगर नेफ्रोपैथी के साथ में तो टोल्बिटामाइन, ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज है तो इंसुलिन दे दो, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है इंसुलिन दे दो। तो ये वन लाइनर टाइप के जो है रटने वाले, उन सबको आप अच्छे से रट लो बच्चों, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब आपके सामने मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट खोल रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बच्चों और टॉक्सिकोलॉजी वाला पार्ट मत छोड़ना बच्चों, ठीक है, नेफ्राइटिक और ये जी गैस्ट्रिक, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका ऑलरेडी सर्जरी वाले पार्ट के अंदर पारस भाई करवा चुके हैं, ठीक है, सर्जरी वाला पार्ट आपका। तो अब हमारे माइक्रो के अंदर जल्दी से बताओ, हमारे चारों तरफ कौन सा ऑर्गेनिज्म घूम रहा होता है, हमारे चारों तरफ कौन सा ऑर्गेनिज्म घूम रहा होता है, जल्दी से बताओ, जो सबसे ज्यादा होता है। स्टेफ ओरियस सबसे ज्यादा होता है। और बच्चों मीडिया कोई भी एग्जाम में समझ में नहीं आया ना तो ब्लड अगार मार्क करके आ जाना, मीडिया अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। तो अगले 15 मिनट में मेरे साथ में माइक्रो में प्लीज भी फोकस रहना बच्चों। स्टेफ ओरियस मीडिया, आप मकोंग की अगर याद रख लो, इसके अंदर ये अकेला एक ऐसा है, इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चन किया जाता है, स्टेफ ओरियस कैन कॉज एब्सेस। सेकंड, फुरंकल को कैसे पढ़ना है बच्चों, फुरंकल क्या होता है, ये आपका हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल अगर सुपरफिशियली अगर फॉलिकुलाइटिस हो रहा है दैट इज नोन एज सुपरफिशियल फॉलिकुलाइटिस, पर डीप इन्फ्लामेशन हो गया अगर उसकी रूट भी डैमेज होगी सो दैट इज फुरंकल। और मल्टीपल अगर है तो कार्बंकल, मल्टीपल फुरंकल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बंकल। तो एब्सेस बना रहा है, फुरंकल बना रहा है, सेलुलाइटिस के अंदर भी यूज होता है सेलुलाइटिस। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, सेलुलाइटिस और इरिसिपिलास में कंफ्यूज मत होना, सेलुलाइटिस और इरिसिपिलास के अंदर कंफ्यूज मत होना। सेलुलाइटिस में केवल अपर लेयर डैमेज होती है, ऐसा नहीं। सेलुलाइटिस और इरिसिपिलास में सुपरफिशियल लेयर डैमेज होती है, सेलुलाइटिस में डीप लेयर भी डैमेज होती है। दिखने में दोनों सेम होते हैं, पर डीप लेयर डैमेज कहाँ पे होगी, आपके सेलुलाइटिस के अंदर पूरा का पूरा नीचे का फेशिया भी कवर हो जाता है, जबकि इरिसिपिलास में ओनली सुपरफिशियल स्किन है ना, चिकने पांव, याद आ रहे हैं, ठीक है, ओके। सो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस और स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस में कंफ्यूज मत होना, है ना। आपने ईएनटी में भी अभी पढ़ा होगा स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस, जिसमें 7 to 12 सारी नर्व्स जारी होती है ना, जिसमें डायबिटीज मेलाइटिस की हिस्ट्री देते हैं, है ना। सुडोमोनास उसका ऑर्गेनिज्म होता है, आपने पढ़ा होगा। बट बच्चों एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम द स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्या होता है, आप लोगों ने कभी गैंग्लियन सिस्ट देखा है बच्चों, हैव यू एवर सीन गैंग्लियन सिस्ट? ऐसा होता है गैंग्लियन सिस्ट, ठीक है। अब गैंग्लियन सिस्ट मान लो, अब कभी भी हमारा हाथ में पस होता है या हमारी बॉडी में कहीं भी पस बन रहा होता है, तो बॉडी में जो पस होता है उस पस को क्यों हटा देना चाहिए, उस पस को इंसिजन एंड ड्रेनेज क्यों कर देना चाहिए? ऐसा थोड़ी है कि दर्द हो रहा है इस कारण उसको इंसिजन एंड ड्रेनेज कर दिया या एज अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर वो एब्सेस बन गया तो वो जो फ्लूइड है ना, वो फ्लूइड नीचे की बोन को डैमेज करने लगता है, एंड दैट कंडीशन कैन लीड टू द ओस्टियोमाइलाइटिस। वो बोन को डैमेज करने लगेगा, और एक बार बोन डैमेज होने लगी तो भैया फिर आपके पास बचा ही क्या, है ना। आपको स्टेबल कौन करके बैठा हुआ है, आपके हाथ में मान लो गैंग्लियन सिस्ट उग गई, ठीक है, गैंग्लियन सिस्ट को माइनर ओटी में हम लोग करते ही है, परमानेंटली ट्रीट करते हैं उसको, ठीक है। अब उसका या फिर बॉडी में कोई भी पस बना हुआ है, पेरोनाइकिया हो गया आपके पैर के अंदर, पेरोनाइकिया हो गया, ग्रेट टो के अंदर आप जो इन्फ्लेमेशन देखते हैं नेल बेड का, दैट इज अ पेरोनाइकिया, ठीक है, याद आ रहा है। अगेन एक चीज और बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन अभी आज शाम को मॉक टेस्ट के अंदर मैंने देखा था, पेरिकोरोनाइटिस और पेरोनाइकिया दोनों डिफरेंट है ना, याद रखना। पेरिकोरोनाइटिस क्या होता है, कभी कभार आप लोगों ने फील किया होगा कि आपके वो दांत के लास्ट वाला जो पार्ट होता है वहां पे आपको आप सोचते हो टॉन्सिल स्वलन हो गए, वो टॉन्सिल स्वलन नहीं होते हैं, गम स्वलन होते हैं, दैट इज पेरिकोरोनाइटिस, है ना, जो गम स्वलन हो जाते हैं, ठीक है, याद रहा, ओके। सो बच्चों, फूड पॉइजनिंग विद इन 6 hours ऑफ द कंजप्शन ऑफ मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स कौन करवाता है? स्टेफ ओरियस करवाता है। ट्रीटमेंट के ऊपर बच्चों हमेशा इसके अंदर मारामारी चली है। तो पेनिसिलिन क्या कर रहा होता है, इसको ट्रीट कर रहा होता है, ठीक है। पेनिसिलिन ने अगर काम नहीं किया, फेल हो गया ट्रीटमेंट में, तब हम लोग क्या देते हैं, मैथिसिलिन देते हैं। मैथिसिलिन दे रहे हैं, मैथिसिलिन से भी स्टेफ ओरियस अगर रेजिस्टेंट हो गया, जो एमआरए से आप लोग बोलते हो ना
तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस, MRSA। तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस में हम लोग क्या देते हैं, वैंकोमाइसिन, और वैंकोमाइसिन इज आल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सूडोमेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस, सूडोमेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस। अगर वैंकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट हो गया तो, अगर इससे भी रेजिस्टेंट हो गया तो डेप्टोमाइसिन देंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टेफ ओरियस, अच्छा अगर ऑप्शन में पेपर के अंदर कुछ समझ में नहीं आया तो स्टेफ ओरियस मार्क करके आ जाए। ठीक है, क्योंकि 10 में से 8 बीमारियां वही करवा रहा होता है। बट बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आईवी ड्रग एब्यूजर अगर लेस देन 60 डेज दे रखा है तो आप लोग स्टेफ ओरियस मारोगे, मोर देन 60 डेज दे रखा होगा तो आप लोग क्या मार्क करके आओगे, क्या मार्क करोगे, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। अच्छा वीर्य बनने में, वीर्य सीमन बनने में कितने दिन लगते हैं, सीमन बनने में कितने दिन लगते हैं, 74, तो 74 डेज। तो विरिडेंस, तो वीर्य बनने में 74 डेज लगते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस क्या होता है बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस मोर देन 60 डेज। अगर कोई आईवी ड्रग एब्यूजर आईवी ड्रग का एब्यूज करता है तो उस पेशेंट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस क्या करवा सकता है, इन्फेक्शन करवा सकता है। स्टेफ ओरियस कवर। अब याद, सेकंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, पायोजन में सब कुछ पी, पायो मतलब पस, अगार कौन सा है देख लो, याद कर लो, ब्लड अगार, अगेन नीचे ब्लड अगार, सब में ब्लड अगार, याद हो गया। चारों एक साथ पढ़ते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, पायोजेंस के अंदर ब्लड अगार, पिन पॉइंट कॉलोनीज, पी फॉर फेरेंजाइटिस, सबको याद हो गया, सबको फेरेंजाइटिस याद हो गया, स्किन इन्फेक्शन सबको याद हो गया, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम सबको याद हो गया। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बच्चों याद रखना। ठीक है, नाउ स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी, लाइफ का पहला वर्ड क्या होता है, ए। ठीक है, वैसे लाइफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस, लाइफ जो आपकी स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, नियोनेट पीरियड को अर्ली नियोनेट, लेट नियोनेट आप सभी ने सुन रखा है। ठीक है, वर्टिगो फीलिंग आ रही, अच्छा विटलिगो और क्या बोलते हैं एल्बिनिज्म पे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, याद रखना। तो स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी मतलब ए से लाइफ का स्टार्टिंग का पहला वर्ड ए होता है। नियोनेट पीरियड भी तो लाइफ का स्टार्टिंग का होता है। तो ए गैलेक्टी क्या करवाता है, नियोनेटल मेनिंजाइटिस करवाता है, सिंपल। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस क्या करवाएगा, आईवी ड्रग एब्यूजर्स के अंदर, यस वही मैंने बताया था, आईवी ड्रग एब्यूजर्स के अंदर इन्फेक्शन कौन करवाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस कब करवाएगा, मोर देन 60 डेज पे। अगार कौन सा है, ब्लड अगार, सिंपल। और एक बार बताओ, आईवी ड्रग एब्यूजर्स जो होते हैं उनके अंदर ही व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कब होता है, जब पेशेंट या तो आईवी ड्रग एब्यूजर हो, या डेंटल केरिस की हिस्ट्री दी हो, या उसमें जो प्रोस्थेटिक वॉल्व जो है उसके अंदर, मतलब बॉडी के अंदर बच्चों एक रीजन होता है, किस रीजन से आपके जो वॉल्व्स होते हैं, मिट्रल वॉल हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल हो गया, बाइकस्पिड वॉल जितने, वो इन्फेक्ट क्यों हो जाते हैं, क्यों, क्या रीजन होता है। मान लो ये आपका वॉल है कार्डिक, ये आपका मिट्रल वॉल है, तो मिट्रल वॉल किससे, इसकी एनाटॉमी थोड़ी सी याद करो, नीचे क्या होता है बच्चों, कॉर्डा टेंडेनी याद है कि नहीं याद है, ये आपका मिट्रल वॉल है। ठीक है, 2 लिफलेट है उसके, ये नीचे कॉर्डा टेंडेनी ने उसको खींचता है, बंद करता है, खोलता है, बंद करता है, खोलता है। नीचे क्या होती है, और नीचे पेपिलरी मसल होती है, और पेपिलरी मसल किससे अटैच्ड होती है, आपका इंटरसेप्टल सेप्टल से, ठीक है, सेप्टा से, तो सेप्टा से अटैच्ड होती है। ठीक है, याद रखना। तो वहां पे क्या होता है कि जो आपकी जो कार्डियक जो पेपिलरी मसल जो होती है, कॉर्डा टेंडेनाइज के थ्रू इसको सपोर्ट दे रही होती है, इसको मिट्रल वॉल्व को या किसी भी वॉल्व को, वॉल्व्स के अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है ना, प्रॉपर वहां पे, मतलब इतनी डिमिनिश ब्लड सप्लाई होती है, इतनी कम ब्लड सप्लाई होती है कि वहां पे डब्ल्यूबीसी नहीं जा पाती, और डब्ल्यूबीसी नहीं जा पाएंगी तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को हराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इम्यूनिटी ऑलरेडी कार्डियक वॉल्व की लो होती है। तो अब रीजन समझ में आया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ट्रीट करना क्यों टफ है, इसलिए क्योंकि वॉल्व्स के अंदर हम कोई भी एंटीबायोटिक देंगे वो कहां तक जाएगा यार, है ना। तो डब्ल्यूबीसी एक सेल्फ इम्यूनिटी भी तो होनी चाहिए, और ट्रीटमेंट सब जगह पेनिसिलिन ही चल रहा है बच्चों, देख लो, चाहे ए गैलेक्टी हो, चाहे पायोजेंस हो, चाहे स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, निमोनिया आपने कौन से, निमोनिया अगर किसी को होता है तो आप कौन से डिपार्टमेंट में जाते हो, निमोनिया का पेशेंट है, मेडिसिन में बोलना, ईएनटी बोलना यार, है ना, निमोनिया इज अ डिसऑर्डर फॉर द ईएनटी डिपार्टमेंट यार, ईएनटी डिपार्टमेंट को रेफर करो यार, हर चीज थोड़ी मेडिसिन में ट्रीट करवाओगे। ठीक है, क्या करवाओगे, ईएनटी वालों को भेजोगे। अब ईएनटी वालों को भेजा तो ईएनटी की बीमारी ही होती है, निमोनिया के सिम्टम्स, निमोनिया कैन कॉज नंबर 1 थ्रोट में निमोनिया, ईयर में ओटाइटिस मीडिया,
और नोज के अंदर साइनसाइटिस। व्हाट इज निमोनिया? निमोनिया देखो, कोविड वाज आल्सो ड्राई निमोनिया। निमोनिया आपकी लंग्स की पेरेन्काइमा को या पेरेन्काइमा को इन्फ्लाम कर देता है ना, आपकी प्लूरा को इन्फ्लामेशन कर रहा होता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम से स्पष्ट है, ENT। ई से ईयर के अंदर ओटाइटिस मीडिया करवाता है, एन से साइनसाइटिस करवाता है। ठीक है, नोज के अंदर साइनसेस होते हैं ना, यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस है, फिर इथेमोइडल साइनस है, फिर फ्रंटल साइनस और लास्ट में स्पिनोइडल साइनस। तो बच्चों याद रख लो, साइनसाइटिस एंड कैंसर का सीक्वेंस पूछा जाता है ENT के अंदर। तो MEFS इज द सीक्वेंस फॉर द साइनसाइटिस, बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, डेवलपमेंट सबसे पहले कौन सा साइनस बनता है? मैक्सिलरी बनता है, देन इथेमोइडल बनता है, देन स्पिनोइडल बनता है, देन एंड में फ्रंटल बनता है। ठीक है, तो फ्रंटल साइनस सबसे एंड बनता है। अब एंटेरोकोकस बैक्टीरिया आपके सामने। एंटेरो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटेरो? एंट्रो, इंटेस्टाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रो बोलते हैं कि नहीं बोलते? एंट्रो मतलब इंटेस्टाइन। ठीक है, और इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जा रहा है, जाता है या नहीं जाता है? जा रहा होता है। तो बाइल एस्क्यूलिन अगार सीन इन, बाइल एस्क्यूलिन अगार सीन इन एंड सॉरी बाइल एस्क्यूलिन अगार यूजिंग फॉर द एंटेरोकोकस। और क्या करवाता है वो? UTI करवाता है। क्या करवाता है? UTI। बट बच्चों आपसे अगर UTI के बारे में पूछा जाए तो UTI कोजिंग बैक्टीरिया कौन होता है? आपके पूरे UTI के बारे में अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया गया तो UTI के अंदर आप लोग क्या मार्क करके आओगे? UTI में आप लोग क्या मार्क करके आओगे? ई कोलाई। ई कोलाई 100% क्वेश्चन है बच्चों ये आपका। ठीक है, 100% क्वेश्चन इस बार IPC से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 100% इस बार विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। मैंने ये आपको विटामिन 5 क्वेश्चन नीट PG में पूछे, और ये चार्ट मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। मोटिलिटी के ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आएगा, बेसल सेल कार्सिनोमा के ऊपर क्वेश्चन आया तो याद रखना, नाक के ऊपर या कान के ऊपर अगर कोई भी ऐसा कोई रेड या डिफरेंट टाइप का कोई मतलब आपको अल्सर टाइप का कोई लेजन नजर आया तो वो आपका बेसल सेल कार्सिनोमा होगा। लिप्स पे 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक हर्पिस लेबियलिस और एक पोडिस्पोर्ट्स। ठीक है, अब ई कोलाई कोई भी जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की बात आ गई तो वहां पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ई कोलाई ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ई कोलाई ही होगा। अब CS सर्विक्स की बात आती है तो CS सर्विक्स में भी याद रखना, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग मतलब सेक्स करने के बाद में ब्लीडिंग अगर फीमेल के अंदर हो रही होती है तो 2 ही टाइम पे हो सकती है, या तो ड्यू टू फर्स्ट में डिफ्लोरेशन के टाइम पे या फिर CS सर्विक्स में। अब बच्चों कई सारे लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग। अब पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग का कंफ्यूजन पूरे मार्केट में चल रहा है। मेरे को एक बात बताओ, मीनोपोज होने के बाद में एंडोमेट्रियम की एट्रोफी होती है 10 में से 10 पेशेंट में या नहीं होती? आप लोग खुद बताओ कि मीनोपोज हो गया, एंडोमेट्रियम की एट्रोफी होगी कि नहीं होगी? 10 में से 10 पेशेंट में होगी ना, पक्का है। तो 10 में से 10 पेशेंट की एंडोमेट्रियम एट्रोफी होगी। क्या 10 में से 10 पेशेंट को कैंसर होता है? 10 पेशेंट को कैंसर होता है? अगर हम इसका रेशो भी लेके चले 100%, तो 100% मीनोपोज का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीनोपोज? द मीनिंग ऑफ मीनोपोज इज एंडोमेट्रियल की एट्रोफी होगी परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए। तो वो हर एक औरत में होता है और फिर उसके कारण ब्लीडिंग होती है हल्की सी। तो आप लोग खुद बताओ कि पोस्ट मीनोपोजल व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंडोमेट्रियल एट्रोफी? CS सर्विक्स होता है या एंडोमेट्रियल एट्रोफी होता है? सिंपल सी बात है, 10 में से 10 औरतों को एंडोमेट्रियल एट्रोफी होगी, सो एंडोमेट्रियल एट्रोफी वुड बी द आंसर। तो वैसा ना वैसा ई कोलाई, जहां पे भी जेनेटिक यूरिनरी इन्फेक्शन की बात आई, ई कोलाई वुड बी द आंसर। ठीक है बच्चों, एंट्रोकोकस सबको याद हो गया, ई कोलाई सबको याद हो गया। ई कोलाई के बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि UTI कभी भी लिखा हुआ आया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI, क्योंकि 4 किंग है बच्चों बैक्टीरियोलॉजी के। एक हो गया सूडोमोनास, एक हो गया स्टेफ ओरेस, एक हो गया ई कोलाई और एक हो गया क्लोस्ट्रीडियम के चारों फॉर्म्स। कोई भी एक क्वेश्चन वहां से आ सकता है, इन 4 में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है। ठीक है, सो डायरिया जहां पे बात आएगा वहां पे रोटा वायरस के पास जाना है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि लेस देन 12 मंथ ऑफ एज के ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, ये मैंने बता रखा है कि लेस देन 12 मंथ ऑफ एज की अगर बात आती है तो रोटा वायरस इन्फेक्शन करवाता है। ठीक है, अच्छा एक नीट PG के अंदर और क्वेश्चन पूछ लिया था 20 बार कि एक मदर है, उसको ऑलरेडी CS सर्विक्स है। ठीक है, तो उसकी डॉटर को आप क्या प्रिवेंटेबल क्या एडवाइस करोगे? तो यू विल एडवाइस हर गार्डासिल 9 और सर्वारिक्स। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये दोनों क्या चीजें हैं? ये वैक्सीन है बच्चों, ये वैक्सीन है जो प्रिवेंट करते हैं किससे? ये वैक्सीन है जो प्रिवेंट करते हैं किससे? CA सर्विक्स से। ठीक है बच्चों, तो ई कोलाई कवर
बेसिलस एंथ्रेसिस क्या करवाता है, एंथ्रेक्स करवाता है। बेसिलस सीवियस क्या करवाता है, फूड पॉइजनिंग, चाइनीज फ्राइड राइस, ठीक है। ओके, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी आ गया, क्लोस्ट्रीडियम की टीम आ गई। तो इसके अंदर 4 खिलाड़ी मेन है, पहला खिलाड़ी टिटेनी, दूसरा खिलाड़ी बोटुलिनम, तीसरा खिलाड़ी परफ्रिंजेस और चौथा खिलाड़ी डिफिसाइल, चौथा खिलाड़ी डिफिसाइल। तो बच्चों याद रख लो कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या करवाएगा, नाम में स्पष्ट है, टिटेनी से टिटेनस करवाएगा। बोटुलिनम क्या करवाएगा, बोटुलिज्म करवाएगा। परफ्रिंजेस क्या करवाता है, गैस गैंग्रीन करवाता है। डिफिसाइल क्या करवाता है, सूडोमेम्ब्रेनस एंट्रोकोलाइटिस और सूडोमेम्ब्रेनस एंट्रोकोलाइटिस। और कौन कौन आप लोगों ने कभी फील किया एंटीबायोटिक खाने की वजह से दस्त लग गए, है ना? तो दैट इज सूडोमेम्ब्रेनस एंट्रोकोलाइटिस। तो ट्रीटमेंट में क्या करते हो बच्चों आप लोग, वैंकोमाइसिन देते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरी नाम में डिप्थेरिया, ठीक है। यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, पोटेशियम टेलुराइड। बच्चों ये चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को एक बार चार्ट के जाना है, ठीक है। लिस्टेरिया, लिस्टेरिया ml मिलीलीटर बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग, किसी भी ml की 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml 10 ml, है ना? तो ml, तो म्यूलर हिंटन अगार, तो म्यूलर का m से m, l से लिस्टेरिया। नोकार्डिया, नोकार्डियोसिस करवाएगा। एक्टिनोमाइसिटिस, एक्टिनोमाइकोसिस करवाता है। नेसेरिया मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस करवाता है, याद रखना, ठीक है। छाले आ रखे हैं बच्चों मुंह के अंदर, तो थोड़ा सा स्पेल मिस्टेक हो जाता है ना। तो तुम मेनिंजाइटिस नहीं है, वो मेनिंजाइटिस है, ठीक है, कभी बार हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी, अब बच्चों ये तो बहुत कॉमन है टाइफाइड फीवर के लिए, टाइफाइड फीवर के लिए, और ये कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। साल्मोनेला वैसे ऐसे सेलिनाइट ब्रॉथ, सेलिनाइट ब्रॉथ, ठीक है। तो बच्चों बस आप भी लगे रहो, हम भले छाले आए या कुछ भी आए, पैरों में छाले की जगह इस बार जबान में छाले आ गए हैं, है ना बच्चों। तो आपको प्यूबर फोनिया याद आ रहा है, बोलते बोलते टीचर्स नोडल्स, ठीक है, यस। तो टीचर्स नोडल्स ना बन जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग आपके पीछे डेडिकेटेड रहेंगे, ठीक है। बस बच्चों आप मेहनत करना और रिजल्ट देना। परसों पेपर के अंदर, मतलब अब तो कल ही है, कल पेपर के अंदर बिना डरे आज थक जाओ, ठीक है, आज थक जाओ, आज पूरी तरह से थक जाओ, ठीक है। जो बच्चे अभी तक टिके हुए हैं, ये जो है ना, ये जो अभी तक टिके हुए हैं, बस अब थक के आराम से सोना और फिर सुबह उठ जाना, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना। आज सुबह आपको थोड़ा जल्दी उठना है, आज केवल 5 घंटे की नींद लेनी। रीजन बता रहा हूँ, पूरा दिन जागना है, दिन में एक भी झपकी मत लेना। रात की 10 बजे लिवोसिट्रेजिन एक टेबलेट ले लेना, और कोई भी सीडेटिव मत लेना। प्लीज नेवर एवर टेक एनी ज़ोलपीडेम और एल्प्रेक्स टेबलेट, और प्लीज डू नॉट गो टू द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर टेकिंग मोडाफिनिल। ये बिल्कुल रॉन्ग ट्रीटमेंट है। कई सारे बच्चे एल्प्रेक्स लेते हैं, ज़ोलपीडेम लेते हैं, वो आपकी आरईएम एनआरईएम मेमोरी के साथ में इंटरफेयर करती है और आपको याद नहीं रहने देगी। जो भी चीजें याद होंगी वो याद नहीं रहेंगी। यस, यू कैन टेक लिवोसिट्राइजिन, दैट कैन कॉज अ लिटिल बिट सिडेशन, और जिससे आपको थोड़ी बहुत नींद आ सकती है। मोन्टेल्स ले लेना, बट प्लीज डू नॉट गोज बियॉन्ड दिस, है ना। प्लीज इसके अलावा मत जाओ। और मोडाफिनिल प्लीज मत लेना, बिल्कुल मत लेना। वो आपका फोकस बढ़ाने की जगह आपको एग्जाम में हेडेक दे देगा। इफ यू वांट टू टेक एनी मेडिकेशंस, प्लीज टेक आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल। आप कॉम्बीफ्लेम खा के जाना, ठीक है, ताकि हेडेक ना हो। इतना मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एंड फॉर मेमोरी, इफ एनीवन वांट्स टू टेक, दे कैन टेक पायरासीटाम। पायरासीटाम इज डिफरेंट, ठीक है बच्चों। चलो, सुडोमोनास सबको याद हो गया। सुडोमोनास, सुडोमोनास क्या करवाता है, सेप्सिस इन बर्न पेशेंट। मैंने कहा था ना, किंग है सेप्सिस इन बर्न पेशेंट, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, न्यूमोनिया, ओस्टियोमाइलिटिस। स्कल बेस ओस्टियोमाइलिटिस भी कौन करवाता है, यस यही है जो करवाता है स्कल बेस ओस्टियोमाइलिटिस। शंघाई फीवर कौन करवाता है, तो मेरे को पता नहीं, ऐसी एक अंदर से गट फीलिंग आई है अभी, एक अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है, बाबा खाटू श्याम जी की कृपा से सुडोमोनास इस बार का क्वेश्चन है यार। तो दावे पे तो केवल ऊपर वाले का अधिकार है, बाबा जाने उनकी महिमा, ठीक है। पेपर के अंदर आएगा सुडोमोनास, ठीक है, अगर बाबा की कृपा रहेगी तो। शिजेला क्या करवा रहा है बच्चों, बेसिलरी डिसेंट्री करवा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिजेलोसिस। अगर बेसिलरी डिसेंट्री सीन इनटू द शिजेलोसिस। अब बच्चों बाकी सब तो वन लाइनर्स ही है, ठीक है, तो बाकी सब वन लाइनर्स आप याद कर लेना बच्चों, मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत पार्ट बच्चों रह गया है, ठीक है, तो वो एज अ वन लाइनरी फॉर्म में, तो वन लाइनरी फॉर्म तो बच्चों नोट पोस्ट कर देंगे, प्लीज एक बार उसको रीड कर लेना, ठीक है। तो पारस भाई, माइक्रो भी हो गया, मेडिसिन भी हो गया, फार्मा भी हो गया बच्चों का, वो जो ला दिया आपने तो। पारस भाई आ रहे हैं, क्या बात है, ठीक है। तो बच्चों हो क्या बात है दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बस इतनी बात बोलना चाहता हूँ, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। व्हाटएवर हैज डन इज डन, अब कोई वो नहीं है, ठीक है।
बाकी एक कल भी एक सेशन कहीं रखा हुआ है एक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, बच्ची बुच्ची का सर जो सर्जरी ओबीजी की रहेगी वहां पे निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई होप यू गाइज आर ऑल वेल चार्ज, ठीक है। सो एक बार ही हो जाए सर आई विल पास, आई विल पास और आई विल पास, फिर एक लास्ट गाना हो जाएगा और उसके बाद हम अलविदा कह देंगे, है ना। कहते हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं जाना नहीं, हमें छोड़ के हमें छोड़ के, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, हमें याद रखना कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं जाना नहीं, हमें छोड़ के ओ हमें छोड़ के। थैंक यू गाइस। हाँ प्लीज एक गाना मैं भी गाऊंगा, प्लीज भैया जी। ठीक है। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, बाबा तेरी मोर छड़ी लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, बाबा तेरी मोर छड़ी लहराई, रंग तेरी प्रीत का रंग मेरी जीत का, रंग तेरी प्रीत का है लाई लाई लाई, है ना। तो बाबा हम सबके साथ हैं बच्चों, है ना, याद रखना बाबा खाटू श्याम जी हर हारे का सहारा है ना। गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर पारस जी भी और डॉक्टर Thank you. प्रियम हमेशा